Good morning, everyone. I hope I'm audible and visible. I'll just take a confirmation. Okay, so just one more week to go for the INI-CET exams, and here we have this marathon sessions by PW Medit. I'm Dr. Jazir, your dermatology faculty, and today we would be doing the entire subject. A very quick revision, I must say, that based on the most expected questions for this INI-CET exam. And I'm sure that all of you must have been going with your preparations on track. Hi, Amit. Very good morning. Yes. And Derma, as you know, for any exam, let's say, be it for NEET PG or for INI set, we always expect about 4 to 5 questions only. But yes, some of the integrated questions with pharma or micro should also be kept in mind. Amazing. Thank you so much for confirmation. So the basic idea today is I would be completing the entire session in probably a couple of hours. And after this session, I would emphasize that you should come to PW Meded app and try to do the GT, which is ongoing, so that you get an idea about how you're going to face this exam. So without wasting any more time, I will start the session if everything is fine. So I guess in the chat box also all of you have responded positively. To start with, let's begin with special skin lesions. So you all must be wondering like what is a special skin lesion, because these are absolutely special and it is seen specially in some disease. Let's say if you see this magic word, I always call them as magic words because if you are able to see a word like this in your MCQ, that is a comedone. So this comedone is absolutely going to change the diagnosis because this word is only seen in one disease. So can anybody let me know in the chat box, like in which disease do you see a comedone? So comedones are seen in, yeah, it is seen only in or acne vulgaris. So this is seen exclusively in acne vulgaris. So when you're going to prepare for the exam, remember that you may get a very long question, a question which may say like a patient 24-year-old presented to you with the oily skin and a lot of comedones, papules, pustules and nodulocystic lesions over the face as well as the trunk. So when you see such a long MCQ, again, if you are able to see that yes, comedones are given in the question, comedones means the answer should be acne vulgaris. There is no other disease where you can find a comedone. And the second approach should be like in case you get an image like this. So there are two images in the screen that you can see. Yes, Amit, it is going to be a acne vulgaris. Anubhav is also right. And here in both these images, can we quickly label them? So when you see this first image, you can see that something is black in color, right, in the face. So what are these called? Are they open comedones or are they closed comedones? Anyone? So this one is called as a open comedones. So this is called as open comedones, and these open comedones, they have one more name. This is called as a blackheads. So these are called as the blackheads. Whereas the second image, this is also a comedone, and this comedone is called as the white heads or closed comedones. Whiteheads or closed comedones. So basically there are two types of comedones. So just see the image. If the color is black, then you call it as a blackhead. If the color is white, you call it as a whitehead. And the only difference is, why does this lesion turn black in color? It's because of a oxidization reaction, and this oxidization reaction ke wajah se this becomes black and we call it as a open comedone. Perfect. So now let me go to the next one. So all these are special skin lesions that we are discussing. In case you get this image for your exam. Now what do you see here? Whenever you see an image, just try to describe how does it look like. So you can see that there is some red spot in the center, which is covered by a rim of erythema. And in the second one also you can see a similar finding, a red spot in the center with a rim of erythema. Who can tell me like what is this finding? So what is this? Does it have a peculiar name? Because we are talking about special skin lesions here. So what does it look like? Can you relate it to a target? Yeah, this is called as a target lesion.
It is called as a target lesion or iris lesion or a bullseye lesion or a bullseye lesion. So these are the three names that we call for this kind of a finding: target, iris, bullseye. And this target, iris and bullseye can be seen only in one particular condition. And what is that? Excellent, Amit. So that is going to be erythema multiforme. Erythema multiforme. And remember, for your exam, because in NEET PG exam, they may not go into deeper things, but in for INI-CET, you need to expect, like, what are the two types of erythema multiforme? In erythema multiforme, remember, there are basically two types. And these two types are, one is erythema multiforme minor, and the other one is erythema multiforme major. And it's easy to remember क्योंकि minor and major में the only difference is that here there is no mucosal involvement. And in erythema multiforme major there is going to be a mucosal involvement as well. Mucosal involvement is also present. And last, one more point about erythema multiforme is you need to see what is the reason why somebody may develop these kind of lesions in the skin. The main reason here, any idea what are the causes of erythema multiforme? The causes of erythema multiforme could be, just give it a guess. What could be the cause of a erythema multiforme? So one is going to be drugs, and the second is going to be some infection. And the infection that is most commonly associated is HSV as well as mycoplasma. HSV and mycoplasma. So these are the infections that is associated with erythema multiforme. And please remember, the thing you should be prepared is, in case you get a clinical case saying that a patient presented with multiple vesicular lesions in the body on a erythematous base. The moment I see that, okay, there's a group of vesicles, the thought process should be that, okay, whenever there is a group of vesicles, it could be a herpes simplex virus infection. After getting this infection, the patient is developing these kind of lesions in the trunk, especially over the distal part of the extremities. Then think about erythema multiforme. So that is how you need to start analyzing yourself, so that the clinical cases you should be able to correlate it well. Now let us see the next type of special skin lesion. Yes, Gaurav, Amit, Anubhav, all of you are right. I appreciate that you are able to correlate it well. Now let us see the next image. In this next image, what you see is that the examiner is showing you that there is some lesion in between the finger webs. So when you see a lesion in between the finger webs and the MCQ says, this patient presented with a very itchy skin. What is that special lesion that you're looking for, especially in between the finger webs? What's that? Can you just let me know in the chat box? Yes. So this could be Burrows. And you can see Burrows exclusively in a disease called as Scabies. So these are Burrows, and Burrows are seen in Scabies. And if you remember, regarding INI-CET, in the last INI-CET exam, we got a question regarding Scabies. And the examiner emphasized on infantile type of scabies, or that is a scabies that you can see in children, right? So let us just do up some part of scabies here so that we don't miss out on the important things for your exam. Now regarding scabies, you know that the drug of choice is always going to be a 5% of permethrin. But what was asked in the last exam was regarding the treatment, and in the treatment they asked you what is the safe treatment in terms of children or in infants. So what are the drugs that can be safely used? Can we use a permethrin cream or a permethrin lotion in a 6-month-old infant or a 1-year-old infant? What do you think? Yes or no? So yes, Ankit, Ritik, Anubhav, all of you. Yeah. So just answer me this question, because whatever you have answered, I guess it is regarding the previous thing I asked. So please remember that in the case of children, the management here should be like 5% of permethrin. This is safe in more than 2 months old. So if the age of the child or the infant is going to be more than 2 months, it is absolutely safe to be used. And usually what happens, permethrin comes as a cream because you have to apply it over the face in a child.
And Pratyusha says crotamitone. Yes, I would agree, completely agree with you, because crotamitone can be used. It is safe. But the problem with crotamitone is it is not going to be it's not going to kill the Sarcoptes scabies, right? It can only alleviate the itching. And anything else that you can use sulfur, because sulfur is also a safe choice, because sulfur is safe in all infants and in pregnancy and in pregnancy as well. So please keep three things in your mind: crotamitone, absolutely yes, and sulfur. If the question says it's a 1 month old infant, very rare that 1 month old can get a scabies, but yes, if they get a scabies, then the better answer could be sulfur. So Pratyuksha says 5% permethrin in children, but not ivermectin. Absolutely. Ivermectin is contraindicated, because if the age of the child, or let us say the weight of the child, is less than 15 kg, ivermectin is going to be contraindicated. Then a very quick question, that when do you use ivermectin in terms of scabies? So ivermectin ivermectin is used in severe cases. It is used in method of treating with permethrin, or if the patient is having very severe scabies, like a Norwegian scabies, like what you can see in a bedridden patient. Yes, sulfur in all. Absolutely. So now let's go to another topic, and that is going to be acne vulgaris, a very common clinical condition, that is acne vulgaris, which we usually call as pimples. Now, in terms of pimples or acne vulgaris, there is one bacteria which causes acne, and that bacteria is called as QT bacterium. So it looks cute. So remember something like that. It's a face. It may look cute, and that is going to be QT bacterium. And this bacteria was previously called as Propionibacterium acnes. It was called as Propionibacterium acnes. Now, in every MCQ regarding acne vulgaris, you will see a very typical terminology. It's called as a polymorphic lesion. Like be it in PSM, be it in pediatrics or dermatology, you will see these kind of terms. जैसे pleomorphic lesions जो chickenpox में दिखता है, right? And polymorphic lesions that is seen in acne vulgaris. Why do we call Som Subhadra Das Norwegian scabies? Yes, Norwegian scabies is something that you can see in a immunocompromised patient, bedridden patients and all. So when they are bedridden, they don't have the sensation of itch, and the scabies mite can multiply in the skin, and where you can find about millions of mites under the skin. I hope it's clear. Done. In adult patient with scabies, severe cases of Norwegian scabies in immunocompromised patients, yeah, in all those things we can use ivermectin. Coming back to acne vulgaris, so why do we say it as a polymorphic lesion? Because you can see different morphologies. Jैसे comedonal acne, which we have discussed just now, and these are papular acne, when you see most of the lesions are elevated lesions, right? Less than 1 centimeter. Let's call it simple as papular acne. And this one is going to be pustular acne, because you can mostly see pustules. But if it comes as a combination, there are some papules and some pustules, you can even call it as papulopustular acne. And the most severe type of acne is this one, that is called as a nodulocystic acne. It has one more name. It's called as acne conglobata. It's called as acne conglobata. So one type of question that we are going to be aligned with is, you get an image of any type of acne. आपको identify करना पड़ेगा कि ये comedonal acne है, या फिर papulopustular acne है, या फिर nodulocystic acne है. And I think there is no problem in identifying that. Yeah, pleomorphic is seen in chickenpox. And the second thing is, they may test you regarding the treatment of acne, and that is most important. Just remember one very important point here. Treatment of acne is always going to be a retinoid, which is a vitamin A derivative. So in the treatment, let us say, what is the drug of choice in all types of acne except severe acne? Which is severe acne जो बड़ा बड़ा lesions थे, this one, that is nodulocystic acne, right? Now in every type of acne, जैसे comedonal acne, papular acne, pustular acne, in all these things you should go for a topical retinoids. And you have to remember,
the names of topical retinoids, and without remembering, you are not going. Okay, there is a lag in my video. Just a minute. Just a minute. I hope it is sorted. So now let's see. In the drug of choice in all types of acne, except severe acne, is going to be topical retinoids. And please try to remember the name. The name is going to be adapalene as well as tretinoin, because you may get these names in the MCQ. They will not mention that it is a topical retinoid, but a name, adapalene, tretinoin. So please remember that these are topical retinoids. And the next sentence is, what is the drug of choice in severe acne? Severe acne, which I told you, that is going to be a nodulocystic acne, right? Or acne conglobata. In acne conglobata, the treatment should be oral retinoids. So what is this oral retinoids that is available today? It is called as isotretinoin. Isotretinoin. So the takeaway message is, just see these two sentences which I have written, that what is the drug of choice? In both the cases, the drug of choice is a retinoid. You just need to decide, are you going to use a topical agent like a cream or an ointment, or are you going to give a tablet? So just remember, severe cases mein please go for a tablet, and in rest all the cases just go for a topical therapy. Just go for a topical therapy. See, Pratyusha, yes, you are telling that there is a topical antibiotics like clindamycin. I completely agree. क्योंकि acne vulgaris is a disease जहाँ पे we have a lot of treatment modalities. जैसे आप oral antibiotics ले सकते हो like doxycycline, minocycline. You can go for a topical antibiotic like what you said as clindamycin. You can go for chemical peeling, azelaic acid. A lot of treatment options are there. But when it comes to the exam, what should always be present should be a retinoid. That's a takeaway message. So now let's see the next one. The next disease is called as atopic dermatitis. For NEET PG, this has always been a favorite. And for INI-CET, we'll have to see. But remember, let us try to understand or quickly revise what is atopic dermatitis. Atopy is allergy, and dermatitis is also maybe an allergy or an eczema. So this is a patient who presents to you with a very dry skin. Okay, there's a patient who comes to you with a very dry skin. Along with that, there will be a history of atopy. So what is this history of atopy? Like in medicine, you must have learned many atopic diseases like bronchial asthma or allergic rhinitis. All these things are considered to be atopic diseases, right? So here, what you need to see is, the clinical scenario would be a patient is presenting to you with a very dry skin, and dry skin is always associated with itching. So dry skin and itching, along with that, maybe the patient is a patient of bronchial asthma, or there is a family history of bronchial asthma or allergic rhinitis. So when you see this kind of an history, think about atopic dermatitis. In atopic dermatitis, what is important for your exam is to have a clear-cut distinction about what is going to be the presentation in a infantile atopic dermatitis and what is a presentation in a child or an adult. And when I say infant, we all know what is infancy. It's up to 1 year of age. But here we call infantile AD from birth up to 2 years. From birth up to 2 years is considered to be an infantile AD. Now in infantile AD, you have to see for what is a presentation. The presentation will be, the parents will come with a child who may be 1 year old or a 1.5-year-old child, and the presentation is a dry skin over the face. So have a photographic memory of this image. Okay, when you see a dry face, so you can see there is a lesion over the face. Along with the face, you can see some lesion over the extensor surfaces. Face and the extensor surfaces. And what is this extensor surfaces? Because just try to imagine it's a crawling infant. So when there is a crawling infant,
there is an extensor surface is getting communicating with the environment, and the patient may develop symptoms over the extensor surface as well. I hope it's clear. And remaining two things, it's easy. We will not try to say what is happening in childhood and what is happening in adulthood. Anytime the age is more than 2 years, always look for the lesion in the flexures. जैसे antecubital fossa हो गया. So flexures is going to be the most common site where you will look for the lesions in after 2 years of age. Before 2 years of age, just look for the lesions in the face and the extensor surfaces. And yeah, so now let us see how do you make a diagnosis. And this one I will write in red because this is an area where MCQs are always tested, because this is 100% clinical diagnosis. So this is going to be 100% clinical diagnosis. क्योंकि कोई भी eczema में you can see that the patient will have an increased IgE, eosinophils can be high, all those things can be seen. But a increased eosinophil or an increased IgE, all those things does not serve as a reason for your diagnosis here. You just are going to see that this is going to be a clinical diagnosis, and for clinical diagnosis we have a criteria, and this criteria is by the name Hanifin and Rachka criteria. So the name of the criteria based on which we diagnose atopic dermatitis is going to be a Hanifin and Rachka criteria. So yes, dry skin with itching plus asthma, yeah, all those things. Absolutely agree with you. So that is about atopic dermatitis. So please remember, how do you see the lesions in atopic dermatitis based on the age of the patient. Now moving to another one which I consider as a sure shot for your exam, and I'm sure that by this time all of you must have revised about psoriasis. So let's do a very quick revision once together. Broadly, let us divide psoriasis into two types just based on the type of primary skin lesion. So what are those two types based on the primary skin lesion? एक हो गया plaque psoriasis. One is plaque psoriasis क्योंकि here you can see psoriatic plaque lesions, right? And what do you see in the other type of psoriasis is pustular psoriasis. Pustular psoriasis. So we all know that out of a plaque and a pustular type of a psoriasis, the most common type is going to be a plaque type of psoriasis. And it's very important that today we just go through all those images. How do these kind of patients present to you with psoriasis? Let's begin with the plaque type first. ये जो first image है, I've seen that this image has come multiple times in different forms, sometimes in various exams. So let us see what happens in case you see a clinical scenario which mentions that there is a young adult, and this young adult had a history of a streptococcal sore throat. This young adult had a history of a streptococcal sore throat, and after which he develops skin lesions. Skin lesions. Now, this is the most typical history for this kind of a psoriasis, which we call as a acute guttate psoriasis. It is acute guttate psoriasis. So just remember, acute. What do you call something? Why do we call something as an acute or a chronic? It's usually based on the time, right? So what happens acutely on a general way, if I explain, acute can be trauma, isn't it? Or acute can be an infection. You never know when you get an infection, or you never know when you get a trauma, right? So these are going to be acute events. यहाँ पे acute type of psoriasis is always associated with infection. And what's the infection? The infection is called as streptococcal sore throat. After streptococcal sore throat, if you develop these kind of red color erythematous plaques in the body, the answer should be acute guttate psoriasis. Now see the second image. Second image, please have this image clearly in your mind. Anywhere in your body, if you can see a red color of plaque, and this plaque is covered by a white color scaling. So this is going to be called, this is going to be erythematous plaque, erythematous plaque along with silvery white scaling, silvery white scaling. And in this image, what is the region that is being shown? Is it a flexure or an extensor?
So this is going to be an extensor surface. This is going to be extensor, because extensor surface is most common for psoriasis. So this is the chronic type of psoriasis. So let's call it as chronic plaque psoriasis, which is also called as the psoriasis vulgaris. It's a very common type. So this is a chronic plaque psoriasis. So anywhere, let's say tomorrow you get an image in the back, you may get an image over the elbow or over the knees. But if the image is going to show that there is a red color plaque covered with silvery white scaling, the answer goes in favor of chronic plaque psoriasis. Yeah. Now the next one, Amit Sam says raindrop. Yeah, raindrop psoriasis is this one. Okay, this is called as, this can be compared as a raindrop. So glad that you recollect these kind of things. So this is called as a raindrop psoriasis because all those lesions are small lesions. Excellent. So now let's see two more type of plaque psoriasis, and this is going to be self-explanatory. What do you see? You can see there is a thick adherent scaling over the foot, right? So when you see these kind of lesions only in the palms and the soles, you call it as palmoplantar psoriasis. Easy. So this is going to be called as a palmoplantar psoriasis. And see the last image which comes under a plaque psoriasis. Now here, what is the surface? So this probably is the axilla of the patient, and this axilla is a flexural surface, right? So where do you see psoriasis usually? We usually see psoriasis over extensor surface. But rarely if you can see psoriatic plaque lesions over flexures. Let's keep the name also simple. It's called as flexural psoriasis. So this is called as flexural psoriasis or inverse psoriasis. Flexural or inverse type of a psoriasis. Excellent. So Pratyusha, Gaurav, all of you who are answering, very good. So keep going. Now let us see what happens in pustular psoriasis. Pustular, as I told you, plaque is more common than a pustule, right? And in pustular psoriasis, there is only two types, and it's easy to remember. Now see the images. Either the pustular psoriasis can be localized or the pustular psoriasis can be generalized. So whenever you see that a question says a patient presented with multiple pustules over the palms, okay, it's a localized type of a psoriasis. And remember, psoriasis, is it a infection? Earlier I said streptococcal sore throat. After streptococcal sore throat, the patient may develop psoriasis. But remember, psoriasis is not an infection, right? It's a T cell mediated disease. So here, thinking that okay, our patient has got a lot of pustules, and pustules means pus means probably bacteria. Now imagine that you take a swab from this lesion and send it to the microbiology lab. Is it going to grow any bacteria, or is it going to grow any fungus? So what is it going to show? Absolutely, this is not going to grow any bacteria or a fungus. So this will be sterile pustules. So this will be sterile pustules. So this is another buzzword. Okay, it's a magic word or a buzzword, that if it says patient presented with pustules in the trunk and all those pustules are sterile pustules, answer is only pustular psoriasis. And you can decide whether you're localized or generalized based on how the pattern of the rash is. Okay. Yes, Som Subhadra, all of you, thank you so much for responding. In psoriasis, there is one very important image, and this is a certain phenomenon. Now what is happening here? The patient has developed some new skin lesions, but it has a pattern like this. So why this pattern? Because this is actually following a trauma, right? So let's say that our patient has scratched his own skin with his nails. After scratching, what has happened? The scratch is considered as a trauma, and the patient develops new skin lesions. So by the time I write down that new skin lesions develop at the site of trauma, so by this time I'm expecting that you are giving me the answer about what is this phenomenon. Very good. Anubhav, Pratyusha, Gaurav, all of you are answering. Amit. So this is called as Koebner phenomenon. So this Koebner phenomenon has one more name. Very important to know all the names. This is also called as the isomorphic phenomenon.
It's called as the isomorphic phenomenon. So just try to understand what happens in a Koebner. So you will get a new skin lesion at the site of trauma. So today I have given you an image like somebody has scratched the skin. Tomorrow for your exam, the clinical scenario may be different. Let's say a patient had a fall and he had a lacerated wound. So for the lacerated wound, you did a suturing done. So after doing a suturing, the patient is developing a new skin lesion at the site of suture. What is it? Again, it's called as a Koebner phenomenon because that is happening at the site of wound. This phenomenon can be seen in 3 diseases, easy to remember, LVP, where L stands for Lichen planus, V stands for Vitiligo, and P stands for Psoriasis. So please remember 3 diseases where you can see Koebner phenomenon, and this is going to be lichen planus, vitiligo, and psoriasis. Now see one more image here also comes under psoriasis. एक spot diagnosis है. You see this image and you have to tell me what is a sign. क्योंकि dermatology में we have a lot of clinical signs, but this can be a spotter. I'll just give you few seconds so that you would be answering. Yeah, LVP, Koebner. Yeah. So we have a slight lag comes to your messages. So I'll just give you a few more seconds. Yeah, this one is called as the Auspitz sign. So this is called as the Auspitz sign. So what is this Auspitz sign? Just imagine that you take a glass slide and you're just going to scrape over the lesions. So once you scrape over the lesions, ultimately you find that there are some pinpointed bleeding spots that appear over the plaque lesion. So these are pinpointed bleeding spots on scraping the lesion. This is called as Auspitz sign, and this Auspitz sign is seen in psoriasis as well. Yes, punctate bleeding spots. Sanjay, Gaurav, Anubhav, Amit, all of you, very good. Done. So now let's see one more disease that is going to be lichen planus. See, before I go to lichen planus, I just would like to add a few sentences regarding the treatment of psoriasis. Please remember that the overall drug of choice in psoriasis should be a methotrexate. The overall drug of choice should be methotrexate, I mean the systemic agent, and the drug of choice in pustula type of psoriasis, pustula psoriasis, is another retinoid by the name acitretin, And the last one is, what is the drug of choice of psoriasis in pregnancy? Psoriasis in pregnancy. In pregnancy, we cannot give methotrexate, neither can we give acitretin, because acitretin is a teratogenic drug. So in pregnancy, we can go for steroids. So remember broadly methotrexate for all the cases and acitretin when it comes to pustular psoriasis and steroids when it comes to pregnancy. Too much lag. Okay. I feel that I am having a network issue today. Just allow me a minute. I'm just taking a pause. I'm just trying to see if there is some network issue. Just allow me a couple of minutes, 1 minute. So let us just try resuming because I did not try to change my Wi-Fi. Let's try resuming now. Yeah. If there is an issue, just let me know in the chat box and we'll try to resolve it. Chalo.
So after psoriasis, let us see one more disease that also comes under papillosquamous diseases, and that is going to be lichen planus. So in lichen planus, what all things do you remember? Any MCQ which is going to tell you that the patient presented with the purple colored plaques in the trunk, anywhere in the trunk, purple colored plaques, in 90% of the instances, the answer should be a lichen planus, right? So purple color, or sometimes they may mention it as violaceous. So that is going to be a lichen planus. There is a lag. I'll just restore my network and be back just in a minute. Just hold on. I just changed my network. Could you just confirm whether it is better now? Whether my audio and video is in sync? And is there still a lag? If you just confirm, I'll just continue accordingly. Okay, now it's better. Thank you for confirming. So now let's see what happens in lichen planus. Okay, if when you see a word called a purple colored plaque or violaceous color in the skin, then think about lichen planus. In lichen planus, it's a very itchy condition. It's a very itchy condition as well. And the most important thing is this image, which is going to be called as a oral lichen planus. And is there any clinical significance of this oral lichen planus? Because in oral lichen planus, what you can see is, yeah, in oral lichen planus, this is going to be a pre-malignant lesion. It's going to be a pre-malignant lesion, and it is going to be pre-malignant lesion to squamous cell carcinoma. So whenever a patient may present to you with some purple colored lesion in the trunk, along with that there is some whitish, white, lacy, reticulate kind of a pattern, which you can see in the oral mucosa as well. Now this is called as oral lichen planus. Now it's a very important thing, because the reason is it can be associated with squamous cell carcinoma because it is a pre-malignant lesion. And in lichen planus, if they ask you what is the infection that is associated with lichen planus, it should be hepatitis C. The infection that is associated is hepatitis C. And since it's an itchy condition, you can go for antihistamines as well as steroid creams and all for the management. So that is going to be the management of lichen planus. Moving to another one, which is going to be a very common disease. It's called as urticaria and angioedema. So what happens in an urticaria or an angioedema? Here a patient can present to you with a certain skin lesion which is called as wheals or hives. You can see this image. This is the image of a wheals or a hives. Whenever you can see there is a edema underneath the skin, this is called as wheals or hives. This is also a very itchy condition. And the clinical scenario, what you can relate here is, imagine that our patient consumed seafood. After consuming seafood, the patient is developing some itchy wheals throughout the body, and the diagnosis ho gaya urticaria.
So in urticaria, when a patient comes to you, your treatment is always going to be a clinical diagnosis, right? You don't need to do any test to diagnose an urticaria. Based on the history, you will be able to do it. And what is the drug of choice here? The drug of choice here is going to be antihistamines. Antihistamines can be given. And in only in severe cases, जैसे आपने antihistamines prescribe किया and the patient is not getting a full control, in those cases, you may go for a steroid as well. Steroid as well. But when it comes to a exam like INI-CET, you are not expecting that, okay, what is the drug of choice in urticaria? Now, the clinical scenario that you should be prepared here is with, let's say that a patient had a chronic urticaria. The symptoms is coming and going, it's on and off. And you treated the patient with antihistamines, you even added a steroid, but still the patient does not show a good improvement. At that time, what is going to be your next step of management? You are going to add something called as a biological agent, right? So what is the biological agent of choice in the cases of urticaria? So here, please remember this name. It is going to be omalizumab. So omalizumab is going to be, it's another monoclonal antibody, and this is our biological agent of choice in severe cases for the management of urticaria. In the management of urticaria. And in the chapter of urticaria, you can see a very typical terminology which is called as dermographism. Now it's a very interesting phenomenon. What is dermographism? Like imagine I take the tip of my pen and I'm going to just draw or stroke over your skin. Or let me say I'm going to write your own name. What if your skin is going to develop something like how you have stroked over the skin? Like if I stroke over the skin, say writing dermographism, and the skin shows dermographism as an urticarial wheal. What is this phenomenon called? Yes, this phenomenon is called as red dermographism. Red dermographism. And this red dermographism is seen in a condition called as chronic urticaria. The patient who is having a chronic urticaria, in the OPD, what do? We can just stroke over the skin, especially over the forearm, and just wait for a few seconds. In few seconds, at the area where you have stroked over the skin, if you can see an urticarial wheal that develops, it's called as a red dermographism. Now, what is white dermographism? I have an image for white dermographism as well. So just see this image. So what have we done? We have just stroked over the skin, and after stroking, that part of the skin has turned white in color, right? So why does that part of the skin turn white in color? Most probably because of a vasoconstriction. So this is what we call as white dermographism. And this white dermographism can be seen in a disease which is called as atopic dermatitis. आज discuss किया ना, right? That is atopic dermatitis. So in a child who is having a dry skin as well as some lesions over the flexures or extensors, if you do a stroking over the skin, you'll be able to demonstrate a white dermographism. And the last one is a black dermographism. It is quite rare, and this is seen in nickel dermatitis. So this is seen in nickel dermatitis. Clear? So this is all about different types of dermographism. So now let's see this one. Now what do you see here? You can see there is a swollen lips, right? Now this swollen lips, it is not any cosmetic procedure. Now this is something pathological, right? So what is this? So this kind of a swelling of the lips is called as angioedema, and this angioedema is different causes. And let us write about what are the causes based on the age. Let's say a child is presenting to you with swelling of the lips. And what could be the reason that this child has developed an angioedema? It could be due to infections. It could be due to infections. And what is the reason why an adult will come to you with angioedema? The most common cause of an angioedema in an adult is because of a drug. So can you just make a guess? Or it's not a guess now. So what did you learn for what is the reason for an angioedema? Yeah, come in the chat box. Hereditary angioedema is a different thing. Yeah, that is going to be, yeah, captopril drug ACE inhibitor. Excellent. So please write down ACE inhibitor. Okay, ACE inhibitors are going to be the reason why an adult can present to you with an angioedema. But just imagine that an adult patient, he's not taking any drugs.
and he is coming to you with a complaint of recurrent angioedema, but no urticaria. Now, what is this clinical scenario? There is no urticaria in the skin, in the trunk, but the patient says, I'm getting a swelling of my lips very often. Okay, it's a recurrent kind of a thing. I got it this month, I got it after several weeks. So this is like recurrent in nature. If this is the clinical scenario, then think about hereditary angioedema. So this is going to be hereditary angioedema. It is due to a C1 esterase inhibitor defect. C1 esterase inhibitor defect, because of which a patient can develop a recurrent angioedema. Patient can develop a recurrent angioedema. Is that clear? So now moving further, the next one is another very important autoimmune disease. Autoimmune disease, and this autoimmune disease is called as vitiligo. What happens in a vitiligo is it's an autoimmune disease, right? So as in any other autoimmune disease, a patient's body is going to attack his own cells. Now, which cell is getting destroyed in a case of a vitiligo? Like our body is going in a hyper mode and is going to attack our cells. Now, which cell is getting destroyed here? The cell that gets destroyed here is going to be the melanocytes. So there is going to be a destruction of melanocytes in this disease. So once there is a complete destruction of melanocyte in some part of your skin, so that is how we call this as a depigmented skin. Depigmented skin. So this can be a buzzword for you, because otherwise what happens, we may call anything as a hypopigmentation, because what are the two different colors that you can see the skin? Either skin can become darker, मतलब hyperpigmentation हो सकता है, या फिर there can be a hypopigmentation. But here, if the MCQ clearly mentions the patient presented with a well circumscribed depigmented lesion, depigmented matlab think about vitiligo, it can be a possibility. So in the case of vitiligo, these are the different types of vitiligo. A focal, matlab there is just one or two lesions anywhere in the body. Segmental, segmental means this has a dermatomal distribution. Segmental has a dermatomal, that's along a nerve root. So if you get any image जहाँ पे only one side of the face is involved or one side of the neck is involved, and you can see that there is a depigmented lesion, think about a segmental vitiligo. The third one is acrofacial. वो self explanatory है, right? Acral मतलब extremity, facial is the face. So when the extremity and the face is involved, we call it as a acrofacial vitiligo. Or next one is going to be vitiligo vulgaris. What is vulgaris? Vulgaris, the word meaning itself is the most common. यहाँ पे क्या होगा? Like you can see, if the patient is developing a depigmented lesion on the right axilla, he develops a depigmented lesion on the left axilla as well, which means these are going to be symmetrical lesions. Symmetrical lesions can be seen in vitiligo vulgaris. And the last one is vitiligo universalis. अब यहाँ पे देखो, the entire body has turned depigmented, which means this is the most severe type of vitiligo, which is called as vitiligo universalis. So this is all about the basic classification. So if you get an image for your exam, you should be able to identify कि हाँ ये focal हो सकता है या फिर ये acrofacial है, or it is going to be a vitiligo vulgaris. So these are the few things that will help you to differentiate. Now, in the case of vitiligo, important images that you should remember is these two images. Which the first image hai, here we can call this one as a trichrome sign. So what is the meaning of tri? Tri means three, isn't it? And chrome means color. So just try to see that there are three colors in the lesion. If I just zoom this image for you, in the central part, I'm sure all of you are able to identify यहाँ पे एक depigmented skin hai, isn't it? So there is a depigmented skin in the center. Just after the central part, you can see that there is a tanned skin, tanned या फिर hyperpigmented skin, whatever you call it as, right? And then you can see a normal skin. So हो गया three colors: depigmentation, tanned skin, normal skin, and this is called as a trichrome sign. But the next one, I'm definitely not going to tell you ki what is it. So you just see the image.
what is given and tell me what is the finding. The clue is probably this lesion developed after scratching the skin. New lesions developing after trauma. What is that? Yes, this is called as Koebner phenomenon again. Because earlier when we spoke about Koebner, I told you LVP. Here V stands for vitiligo, right? L for lichen planus, V for vitiligo, P for psoriasis. So in vitiligo also we can see Koebner phenomenon. And just one thing regarding the treatment part. In the treatment part, the drug of choice, or let us say the topical drug of choice, is going to be a calcineurin inhibitor. Very important to remember the name of this treatment, and these are called as tacrolimus or pimecrolimus. These are tacrolimus or pimecrolimus. This is considered to be a topical drug of choice. But since this is an autoimmune disease, what other medications can we use? We can go for the any other immunosuppressive agents, जैसे steroid tablets हो गया, या फिर azathioprine, cyclosporin, all those immunosuppressive agents can also be used. Clear? So that is about vitiligo. Now, coming to another pigmentary disease. Now, this has been asked in the last NEET PG exam as well. And it's a spotter. It does not require any clinical history. You see this image? Anyone who gets a brown color, hyperpigmented patch in the face. What is this called? Yeah, a brown color hyperpigmented patch. The spot diagnosis is melasma. It's called as a melasma. Melasma can occur because of various reasons. One of the common reason is due to a sun damage, because our patient may not have used a sunscreen all these years, and because of the daily sun damage that happens to the skin, one fine day the patient is developing a brown color hyperpigmentation. Second reason जो है, it is going to be hormonal. So the second reason is going to be hormonal. And there can be different causes of hormonal, right? Like if a patient is having some endocrine disease, they say the patient is a hypothyroid patient or a hyperthyroid patient. All those things are endocrine diseases. Or you're going to manipulate the hormones, like using a oral contraceptive pills. So this can also lead to a melasma. And even the entire hormonal profile may change in some condition like pregnancy. So pregnancy can also be a reason why a patient may develop melasma. But yeah, pregnancy. So what do you call for melasma in pregnancy? So this has a name. It's compared like a mask of pregnancy, and this is called cloasma. And please remember, it's called as a cloasma. So very good, Pratyusha. Cloasma in pregnancy, especially in the third trimester due to estrogen. Absolutely, completely agree with you. And 90% common in females, all those things. Correct. Now, the second image that you can see in this same PPT is that here again, just try to describe the lesion when you see them on your screen on the day of the exam. So when you describe them, you will never describe it as a patch. How do I describe? I can see that there are multiple, one, two, three, multiple lesions are there. Multiple small brown colored macules can be seen. Melasma is always a patch, whereas brown color macules in the face, this is what we call as freckles. So this image I will be labeling it as freckles. And these freckles are going to be brown macules in the face or sun exposed areas Because what is happening here? Let's say that if you see somebody with very fair skin, let's say Fitzpatrick 1 or 2, very fair skin, blonde hair and all, so they may develop something called as a freckle over the face, over the neck, the arms and forearm, all those sun exposed area. Sometimes in diseases like in neurofibromatosis also, you can find this kind of a freckles. Now the next image is, now if you have a habit of describing a lesion, the moment you see this image, you will never describe it as brown in color. For me, this absolutely looks much darker. So let's say a dark brown or a black color lesions can be seen not only in the face, but the most striking feature is
This is involving the oral mucosa, especially the lips. And all of you should be able to answer ki what is this kind of a finding, because you may kind of integrate it with surgery as well. So what is this? So this is called as lentigenes. Okay, this kind of a finding, you call them as a lentigene. And this lentigene is seen associated with, very good, PJS. So what is this PJS? It is going to be Peutz-Jeghers syndrome. So this is called as Peutz-Jeghers syndrome. Okay. And in Peutz-Jeghers syndrome, as you must have learned in surgery, that this is a patient who may come to you with hematomatous polyps in the intestine, right? So clinical scenario भी याद रखना कि clinical scenario में क्या होगा. A patient may be coming to you, primary complaint होगा abdominal pain. Along with that, there may be some blood in the stools. It's called as melena. So abdominal pain, melena, all those things will be present. Along with that, there is a hyperpigmentation over the lips. And this hyperpigmentation is nothing but lentigenes. So all these things will favor the diagnosis of Peutz-Jeghers syndrome. It's going to be Peutz-Jeghers syndrome. Yeah, STK11 gene mutation, very good. Lentigenes, hematomatous polyps, all these points are absolutely right. Now we will see one more condition where the color of the skin turns blue. Okay, so this is called as ceruloderma because of dermal melanocytosis. There is going to be a blue color in the skin, and this blue skin is called ceruloderma. So what happens, all of you know that a melanocyte, they are derived from the neural crest. So what happens in the entire journey of a melanocyte is it is getting transported from the neural crest towards the stratum basale in the epidermis. So if it gets arrested during this journey and if it gets stuck in the dermis, it's called dermal melanocytosis. And the examples of dermal melanocytosis are three. That is going to be the first one. All these are spot diagnosis. Okay, you don't need any history here. You see a baby who is having some blue discoloration over the skin, especially in the buttocks, lower back, or thighs. What is it called? I already have the answer in the chat box. These are Mongolian spots. Very good. And how about the next two? The next two names are very important and you should never get confused as well. If you see the blue color discoloration over the shoulder area, this is always called as nevus of Ito. And if you see a blue color discoloration over the face, just a trigeminal area of the face, this is called as nevus of Ota. It's called as nevus of Ota. And how can you remember? Like in nevus of Ota, sometimes the eyes is also involved. Okay, aise yaad rakhna, O. Okay, O over the eyes. So this is going to be nevus of Ota, and nevus of Ito is going to be in the shoulder. And among all these things, which is the one that does not require a treatment? Is it a Mongolian spot, or is it a nevus of Ota or nevus of Ito? Yeah, Mongolian spot is going to be a self-limiting condition. So this is going to be self-limiting. You can easily reassure the parents ki there's nothing to worry. These spots may go on its own. But these two requires treatment. And you can also remember what is the treatment here. You'll go for a laser therapy. And this laser is called as a ND-YAG laser. So we'll go for a ND-YAG laser in this case. No, please remember, Som Subhadra Das, the treatment is not phototherapy. Because phototherapy is a treatment modality in dermatology which we can do for diseases like psoriasis, vitiligo, mycosis fungoides, even in some cases of atopic dermatitis. All those are phototherapy. Here we don't go for a phototherapy. Instead, it is going to be a laser therapy. Going to be a laser. Yeah. So now let's move to the next one. Another very important topic that is called as pemphigus vulgaris. What happens? Now, what is a pemphigus? This is going to be a vesicular bullous disease. So any MCQ which says that patient is coming to you and is having bullous lesions in the trunk. So then think about vesicular bullous diseases, especially pemphigus vulgaris. Every time clinical scenario ye hoga ki this is going to be a middle-aged patient. It is going to be a middle-aged patient who will complain of oral mucosal erosions.
along with a flaccid bulla. Oral mucosal erosion along with the flaccid bulla. And what I'm going to highlight here is the most important thing, this oral mucosal erosion. So when you see any MCQ, patient is presenting to you with a vesiculo-bullous lesion. So when you have a bullous lesion in the trunk, and if the question says patient is first complaining that there are erosions in the oral mucosa. So whenever oral mucosa is involved, answer is always pemphigus vulgaris. And यहाँ पे defect क्या हो सकता है? What is a defect here? It is going to be a desmosomal defect if you remember what you have learned. So here the defect is desmoglein 3 followed by desmoglein 1. ये जो desmoglein है, these are desmosomes. और desmosomes का function क्या होता है? The function is to attach the keratinocytes together in the epidermis, right? So जब भी desmosomes will become not functioning properly, when it is going to be malfunctioned, then the cell-to-cell adhesion is lost. So once it is lost, what happens? The keratinocytes will move away from each other, and that will lead to pemphigus group of diseases. Now see, these are very important images for you. So first image ho gaya histopathological examination of pemphigus vulgaris, and the second one is a DIF. And DIF extremely important because this has been the last to last INI-CET question as well. Let's see what happens in the histopathological examination first. यहाँ पे क्या होगा? Because of the desmosomal defect, यहाँ पे you can see a suprabasal split can be seen. So what do you mean by a suprabasal split? क्योंकि ये हो गया अपना stratum basal. Just above the stratum basal, you can see that there is a split that is happening. Because in every bullous disease, you can see there is a split in some level in the skin. यहाँ पे होगा suprabasal split plus you can also find a row of tombstone appearance of the basal keratinocytes. There's a row of tombstone appearance of the basal keratinocytes. Especially in this image, it is not very visible, but yes, you can see that the keratinocytes, the stratum basal are separating from each other. क्योंकि क्या होगा? That the keratinocytes, they are usually attached to each other, right? क्योंकि desmosomes will be working or doing the function very well. When there is a desmosome defect, क्या होगा? The cell-to-cell adhesion is lost. Then what happens? The keratinocytes will move away from each other. When they move away from each other, it looks like something that you see in the graveyard. It's called as a row of tombstone appearance in a graveyard. Perfect. So now let's see what is this DIF finding. So this kind of a pattern that you can see in a DIF, क्योंकि यहाँ पे desmosomal defect है, so this pattern is called as the fishnet pattern. So here you get IgG and C3, which is deposited in a fishnet or a chicken wire pattern. So this is IgG and C3 that is deposited in a fishnet or a chicken wire pattern. Please remember this for your exam. Okay, you get an image of a fishnet or a chicken wire. Always think pemphigus group of diseases. Pemphigus group of diseases. And I'll show you some other DIF finding also in a while. Let's see pemphigus foliaceus. What happens? Now this image is very clear. क्योंकि pemphigus foliaceus में again you get a fishnet pattern. इसीलिए I use the word pemphigus group of diseases will show fishnet pattern. Group मतलब pemphigus vulgaris, pemphigus foliaceus, drug-induced pemphigus, paraneoplastic pemphigus, all those types of pemphigus will have a fishnet or a chicken wire pattern. And here the difference is that the bulla, see pemphigus vulgaris में the bulla was somewhere here, much deeper than pemphigus foliaceus. यहाँ पे ना बहुत superficial bulla हो सकता है. So this is called as a subcorneal split. What is the meaning of a subcorneal split? Because you know the layers of the epidermis. It starts in the stratum corneum, फिर lucidum, granulosum, spinosum, basal, right? So just below the stratum corneum, जो outermost layer है, right? So just below the stratum corneum, when you see a split like this is called as a subcorneal split, and because of which
the patient will present to you. The complaint will be again a flaccid bulla in the trunk. Pemphigus vulgaris may be flaccid bulla tha, right? But here I will write this in red, with no oral mucosal involvement. With no oral mucosal involvement. So all of you just remember one point here. If the question is about vesicular-bullous disease, and if the patient is having a flaccid bulla like in pemphigus foliaceus and in pemphigus vulgaris, in both the cases pemphigus है तो flaccid bulla है, ठीक है? But the differentiating factor is oral mucosa. अगर oral mucosa involved है pemphigus vulgaris, अगर oral mucosa involved नहीं है, then the answer should be pemphigus foliaceus. The answer should be pemphigus foliaceus. Okay. Now we'll see one more disease that is called as bullous pemphigoid. Bullous pemphigoid में क्या होगा? The bulla is formed much deeper. वो epidermis में ही नहीं, below the epidermis is where the bulla will develop. So this histopathology will show you a subepidermal split. So since it's a very deeper bulla, the patient will not present to you with flaccid bulla. Instead, the patient will complain of tense bulla. So the moment you see this word, patient presents with a tense bulla with a subepidermal split, think about bullous pemphigoid. और यहाँ पे क्या हो सकता है? In the DIF, like this is a DIF. So here none of you are able to see a fishnet pattern, right? यहाँ पे कोई fishnet pattern नहीं है क्योंकि ये हो गया epidermis, below is the dermis. So in a region that comes between the epidermis and the dermis, you can see there is a linear green color fluorescence like this. So here your DIF finding will be IgG and C3, which is deposited linearly in the basement membrane zone or dermoepidermal junction. So this region that comes in between the epidermis and the dermis is called as the dermoepidermal junction. So dermoepidermal junction में क्या होगा? एक linear fluorescence होगा, and this linear fluorescence is because of deposition of IgG and C3. I hope it is clear. A Nikolsky sign is positive. So Pratyusha was talking about Nikolsky sign. ठीक है? So let us write about Nikolsky sign. The Nikolsky sign में क्या होगा कि जब भी a patient is going to present to you with a bullous lesion, you just try to apply a tangential pressure into the skin and see if the bulla will peel off. So which type of bulla can rupture very easily and the skin can peel off? Whenever you get a flaccid bulla, right? जैसे pemphigus vulgaris, pemphigus foliaceus. In all these diseases, you get a flaccid bulla and the skin can peel off. But what will happen in this patient, जहाँ पे एक tense bulla है, if you are going to apply a tangential pressure like this in the adjacent skin, nothing is going to happen. The bulla will remain intact, right? क्योंकि यहाँ पे tense bulla होगा. And one more example that you can note down is staphylococcal scalded skin syndrome as well. Staphylococcal scalded skin syndrome as well. All these things are examples of Nikolsky sign. Now some things from the infections part, जैसे you're getting this kind of an image for your exam. The moment you see this kind of a presentation, even if it is a single lesion, the diagnosis is going to be molluscum contagiosum. So in your clinical practice or for your exams in the MCQ, you don't need to even ask a history, because the moment you see this, you know it's molluscum. Reason क्या है? So typical that in the center, can you see this depression? So what is this depression usually called as? Yes, Som Subra Das, everyone is answering, very good. So this is called as a papule with a central umbilication. So when you see that a patient is presenting to you with a papular lesion, but in the central part there is a depression or an umbilication, diagnosis is molluscum contagiosum. In the last NEET PG exam, they asked you what is the histopathological examination finding in molluscum contagiosum. So क्या होगा? So once you are going to remove one of the molluscum contagiosum lesion and you are going to see under a microscope, seeing the histopathology, what is the finding here? Anyone? It's called as the Henderson
Patterson bodies. Henderson-Patterson bodies can be seen. So that is also a very important finding. And one more additional finding that you will remember for your exam is, today we were repeatedly talking about Koebner phenomenon. क्योंकि Koebner phenomenon में क्या हो रहा था? The patient was developing a skin lesion because of trauma. यहाँ पे what you see is a pseudo Koebner phenomenon. So remember what happens in a pseudo-Koebner or a pseudo-isomorphic phenomenon. Imagine that our patient got this lesion as the first lesion. Whenever you get anything in your skin, we always have this tendency, right, to repeatedly touch on this lesion or to try to pop this lesion. So when you touch this lesion and you touch the adjacent skin, since it's a viral infection, क्या होगा? Auto inoculation of the virus होगा. और auto inoculation के वजह से the lesion become 2, 3, 4, 5, multiple lesions will start developing because of auto inoculation. So this pseudo Koebner phenomenon is seen in viral infections like molluscum contagiosum virus as well as viral warts So please remember pseudo Koebner, and answer is all viral infection because of auto inoculation of the virus. Moving to another very important viral infection by HPV, and especially we are going to focus on not the genital warts but the genital warts. This genital warts in the MCQ, they will never mention it as a genital warts. What is the other name for the genital warts? We call it as condyloma acuminata. So in condyloma acuminata, you can see that a patient presents to you with some warty lesions in the genitalia. In the male genitalia or female genitalia, there are warty lesions. And these warty lesions are caused by HPV 6 and 11. ये जो subtypes है 6 and 11, they both are considered to be a low risk subtype. Yes, in sexually active adults especially, and whenever a patient is having active genital warts, it is not advisable to have intercourse because it can spread the infection from one person to the other, right? So here what happens is, this is caused by HPV 6 and 11. और यहाँ पे treatment is something important. Treatment, remember these two names, that is going to be imiquimod or podophyllins. So you can treat a patient of genital warts with imiquimod and podophyllins. And these two things, that is imiquimod and podophyllins, they are immunomodulators. But the problem is they both are going to be teratogenic. इसीलिए there's a very very important MCQ that you should remember. Imagine a clinical scenario जहाँ पे the patient is coming to you and this patient is claiming that she's pregnant. Now, a pregnant female coming to you with a genital warts. Now, what is the next step of management? You don't want this pregnant female to pass on the infection to the baby. So we have to advise a treatment. पर हम imiquimod यूज नहीं कर सकते, podophyllins भी नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये दोनों teratogenic है. So the question is, what is the treatment in pregnancy? The treatment in pregnancy, as I can see, Gardasil that is used for as a prevention for cervical cancer, like let's say HPV infections and all. But once you have already acquired an infection, then Gardasil may not be of help. Now here, yeah, the answer should be cryotherapy. Very good. Om Subradas and Pratyusha, both of you are answering it right. Yes. So now let us see another infection which is called as the herpes simplex virus. In herpes simplex virus, there is only one rule that applies to any HSV infection. The rule is, you will always see group of vesicles in a erythematous base. So when you see a group of vesicles together anywhere in the body, it can be around the lips, it can be in the face, it can be in the trunk, it can be in the genitalia. Anywhere when you find group of vesicles with a erythematous background or a erythematous base, then think about HSV infections. And one image that I've given here
is going to be a type of HSV infection. It is called as herpes labialis. It is called as herpes labialis. We also call it as cold sores. So what is the complaint in this patient? Because I've seen that recently a lot of clinical scenarios have been asked for these MCQs. Just say if the patient is having a recurrent fever along with some recurrent vesicular eruptions that comes around the lips, think about HSV infection, right? So HSV infection around the lips is called as herpes labialis, and in all the HSV infections, the treatment is with antiviral agents. So what is the antiviral agent that you know? Yes, it is going to be acyclovir. It is going to be acyclovir. And in HSV, some of you were telling about multinucleated giant cells and all. Very good. So when you do a Zang smear, you can see multinucleated giant cells. Or if you do a histopathological examination, you can see ballooning of keratinocytes. You can see ballooning of keratinocytes. All those things can be seen in any cases of herpes simplex virus infection. Herpes simplex virus infection. Yeah, above waist HSV1 हो सकता है, below waist HSV2 हो सकता है. That is correct in 90% of the instances also. Good. So glad that you remember all these things. So now moving to another very common infection जो है varicella infection. Varicella मतलब chicken pox है ना. So in chicken pox we usually see this chicken pox in children, and this child will have some prodromal symptoms जैसे fever हो गया, tiredness हो गया, body ache हो गया. All those things are going to be prodromal symptoms. Now after few days of a prodromal symptom, now what happens? There is going to be some eruptions in the skin. So when you get skin eruptions, what helps you to diagnose that a child or an adult has chickenpox? Because chickenpox is a 100% clinical diagnosis. Now here you are looking into a pleomorphic rash. Pleomorphic rash because you can see different stages of the rash in the same patient. Jैसे some lesions can be a macule, some lesions can be a papule, some of them can be a vesicle, even some erosion and crusting can also be seen. But what your eyes should be looking for is a vesicle. And this vesicle should be a beautiful looking vesicle because we compare this as a dew drop on a rose petal appearance. Dew drop on a rose petal appearance. So if you can find that a patient is coming to you, lot of eruptions in the entire body, even if you can see one vesicle which looks beautiful like this, like a dew drop is present over a rose petal. So this appearance, that erythematous background and a vesicle above it, this can be confirmatory for varicella or chickenpox. और ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है, and then you can go for the same thing, that is acyclovir. So maybe most of you who is listening to this lecture right now, you all must have got chickenpox during your childhood. Not everyone, but at least most of you. Now, what is happening is when you treat a patient with chickenpox, are we completely eliminating this virus from our body? Absolutely no, right? So this virus is going to remain dormant in the dorsal root ganglion. So there is a chance that after several years down the line, that there can be a reactivation of the varicella virus. Because we had not eliminated the virus from the body, the virus was sleeping or was just remaining dormant in the dorsal root ganglion. So when there is a reactivation of varicella virus, what do you call for that disease? Do you say that it is chickenpox part 2? No, right? So what is it called? This is called as herpes zoster or shingles. So this one is called as a herpes zoster or shingles. Now what happens? It's a grown up, it's an adult who is coming to you, and this adult is going to say that I've got so many vesicles on a erythematous base. Chalo, you can see something like this. Now when the moment you see this, there is one very striking finding here in this image.
Okay, out of all this vesicle on an erythematous base, I can see that the lesion, they do not cross the midline. Okay, the lesion do not cross the midline. And any lesion that do not cross the midline, it is because it can be along a nerve root. So this is along a dermatomal distribution. Along a dermatomal distribution. So please remember that any image can be given for the exam, right? So if you get a group of vesicles in the face, but it's in the one side of the face, answer hona chahiye herpes zoster. One side of the neck, again answer herpes zoster. One side of the thorax, herpes zoster. One side of the arms, herpes zoster. So you are looking for a grouped vesicle on a dermatomal distribution. यहाँ पे patient का complaint more than the skin rash will be a burning pain. क्योंकि patient ये बोलेंगे कि it feels like somebody has lit fire on my skin. So when you get this kind of a complaint along with this kind of a rash, then think about herpes zoster. And यहाँ पे treatment, again we go for acyclovir because we first deal with the virus, right? And along with acyclovir, how do you deal with the burning pain? Okay, this is the most disturbing symptom for the patient. यहाँ पे क्या use करना चाहिए? You drop on rose petal appearance and yeah. So here you can go for gabapentin. Can go for gabapentin, which is used for this post-herpetic neuralgia or the burning pain that you can see in herpes zoster. Now moving further, we'll see what is tinea corporis. So till now we were talking about viral infections, right? So now your brain takes a switch. So now we move into fungal infections. So tinea corporis is what we usually call as a ringworm. And ringworm, nothing much to explain because our patients themselves, they come to you saying that I got ringworm infection. Why? Why is so easy to diagnose a ringworm infection? Just because of the shape. यहाँ पे होगा annular in shape. And you can see one very important finding. The scaling is seen towards the periphery of the lesion, right? That whitish discoloration can be seen in the periphery of the lesion. So this is going to be peripheral scaling. और central part में clearing होगा, that is called as central clearing. So patient coming to you with the itchy skin lesion, and this lesion is going to be itchy क्योंकि ये fungal infection है. Itchy lesion, round in shape, scaling in the periphery and the central clearing. Think about tinea corporis. And the simple question is, a patient comes to you like this, what is your next step of management? Yes, next step of management should be to do an investigation ताकि हम diagnosis को confirm करें, right? And that investigation should be a KOH. याद रखना, in the entire tinea group of diseases, जैसे tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis, tinea manum, whichever tinea, you will always see fungal hyphae. So whenever you see a fungal hyphae, then the diagnosis is confirmed. The patient is having a fungal infection, and the treatment, the drug of choice is terbinafine. So terbinafine is going to be the drug of choice in tinea corporis, not in just tinea corporis, in all the tinea except tinea capitis. So tinea capitis में क्या होता है? I will just discuss it right now because this is a very important image for your exam once again. यहाँ पे the clinical scenario will be, let us say a child is coming to you with a complaint of a painful swelling. Child is having a painful swelling. And where is this painful swelling? In the scalp. So when a child comes with a painful swelling in the scalp and you see that there is some hair loss, है ना? यहाँ पे you can clearly see that there is a patchy kind of an alopecia that is developing. And if you take a forceps and if you just try to remove the remaining hair within this alopecia, this child is not going to restrict you or object क्योंकि यहाँ पे कोई pain नहीं होगा. There is going to be a easily pluckable hair. Easily pluckable hairs can be seen. So when you see this easily pluckable hair and a painful swelling in the scalp, so this is called as chirion. So यहाँ पे diagnosis है chirion.
and it's one of the type of a tinea capitis. And it's a very very important thing because Kirion has a big clinical significance. और ये clinical significance क्या है? Can lead to a scarring alopecia. So it can lead to a scarring alopecia, and that is the clinical significance of Kirion. And Kirion में please remember the drug of choice is not terbinafine. क्योंकि क्या मैंने क्या बोला था कि every tinea infections your drug of choice is going to be terbinafine except in tinea capitis क्योंकि यहाँ पे it is going to be griseofulvin. So this is going to be griseofulvin. And yes, tinea capitis over scalp, tinea pedis over foot, absolutely all these things are correct. Now let's see what is tinea incognito, the incognito mode, right? So incognito means this is steroid modified tinea. So just try to understand what is tinea incognito. When a patient is coming to you with a round annular lesion with some peripheral scaling and itching, we always will think that yet ringworm infection ho sakta hai, right? But what if you misdiagnosed? No, it is not fungal, it may be eczema or allergy. Or what if the patient did not come to you? Instead, the patient went to the pharmacy directly, he bought some steroid creams and applied it over the skin. Now, when you apply a steroid cream into a fungal infection, what happens? Because the steroid is having anti-inflammatory properties, because of which the scaling will all disappear. Okay, the patient will feel that the symptoms are improving, but steroid cannot kill a fungus, so the infection still remains there. So here what happens is, because of steroid modified tinea, the patient will develop skin lesion with all characteristics of fungal infection being lost. Fungal infection का हर characteristic जो होता है, जैसे peripheral scaling and all those things, everything is lost and it looks something very weird like this. So यहाँ पे the treatment option should be to first to go for a KOH test. KOH 100% positive आएगा क्योंकि the fungus is still there in the skin. So in the treatment, what you do is you stop something and you start something. So what do you stop? You are going to stop on steroids and you start on antifungals and you start on antifungals. So ये हो गया tinea incognito. ठीक है? That is called as tinea incognito. अब देखते हैं कि what is pityriasis versicolor or tinea versicolor. Now pityriasis versicolor or tinea versicolor, this is another very very common fungal infection. ये इतना common है, and there is a reason why it is very common, because this is caused by a fungus which is present in all of our body, right? So what is the name of this commensal fungus? Yeah, so this commensal fungus is called as Malassezia globosa, or more common than Malassezia furfur. It can be a Malassezia globosa or it can be a Malassezia furfur, which causes this fungal infection called pityriasis versicolor. Now please pay attention here. Now what we think about any fungal infection matlab the patient will have itching, right? So patient will come to you with itching and all those complaints. Now this is a non-itchy condition. यहाँ पे कोई itching नहीं होगा. The patient will just come to you because of some color of lesion in the skin. इसीलिए we call this disease as versicolor. अब ये versicolor का मतलब क्या है? Versi means different, color is color. So when you get different color in the body, and I told you already there are only two different colors in the body. एक हो सकता है hyperpigmentation, और दूसरा हो सकता है hypopigmentation. So when a patient will come to you कि मुझे बहुत hyperpigmentation is there in my trunk या फिर hypopigmented lesion is there in the anterior part of my chest, तो ऐसे complaints लेके जब patients आएंगे, which is a non-itchy condition, again you have to do a KOH. इस बार when you do a KOH from the lesion, you can see that ये जो fungal strands हैं, these are the fungal hyphae. But it's not only the hyphae.
you can see some small balls also like this. These are the fungal spores. So you can see the hyphae as well as the spores. And this fungal hyphae and spores, I'm very sure that you remember, it's a very, very typical thing that is being compared to. What is it compared to? This is compared to spaghetti and meatballs appearance. So this can be a spaghetti and meatball, or it can be compared to a banana and grapes appearance. So that is called as pityriasis versicolor or tinea versicolor, and this name should strike you. That is versicolor. Hyper या hypopigmentation हो सकता है in the skin, and please do remember it's a non-itchy condition. It's a non-itchy condition. Now let's see another very, very important topic in derma. It's called as leprosy, है ना? Hansen's disease. So leprosy, you may see in the MCQ as Hansen disease. क्योंकि Hansen's disease, they usually present in different formats. क्योंकि patient का clinical presentation बहुत different हो सकता है. But every patient who is having a leprosy, the basic symptom is going to be the same. क्योंकि एक hypopigmented lesion होगा या फिर एक erythematous lesion होगा. And the most important thing the patient will say, above this hypopigmentation, I'm unable to feel if there is a touch sensation, or I'm unable to differentiate between hot and cold. So sensory deficit is a mandatory finding in all the types of leprosy, right? So in leprosy, let us quickly go through what are the different types of clinical types of leprosy. जैसे एक situation ऐसा होगा कि there is a child who will complain of multiple hypopigmented lesions over the face. So when a child will come to you, just an 8-year-old child, 10-year-old child, and the mother says that, okay, there is multiple hypopigmented lesions in my son or in my daughter's face, who is just 8-year-old or is just 10-year-old. So whenever you see this kind of a hypopigmentation, there should be two differential diagnoses. एक differential diagnosis हो सकता है indeterminate leprosy, which is already written here. The second differential diagnosis can be pityriasis alba. The second differential diagnosis can be a pityriasis alba. Okay, and how do we differentiate is leprosy में क्या होगा? Sensory deficit 100% होगा, right? So if there is a sensory deficit, आपका diagnosis हो गया indeterminate leprosy. पर अगर कोई sensory deficit नहीं है, and if it is only a hypopigmented lesions in the face, then think about pityriasis alba, where you can see scaling is present. Scaling is present, whereas scaling is absent in the cases of indeterminate leprosy. Can TCA be used in warts in pregnancy? The TCA is trichloroacetic acid, Ashutosh. So this trichloroacetic acid is usually it is preferred as a treatment for genital warts in males or females, and it's an OPD procedure. Okay, you can do it instantly. You can see that the moment you apply this trichloroacetic acid, the entire warts, they appear very white in color, but it is not a preferred treatment modality, especially in pregnancy. In pregnancy, the safer modality will still continue to be cryotherapy. So that is about indeterminate leprosy. अब देखते हैं कि tuberculoid leprosy में क्या होगा. If there is an MCQ that comes as a tuberculoid leprosy, which we also call as a TT type of leprosy, here the patient will have a hypopigmented lesion, and the most important finding the examiner will say is that it has a saucer right way up appearance. So all of you know about a cup and a saucer. So the patient will be having 2 or 3 hypopigmented lesion with sensory deficit, but the most important finding is it has an appearance of a saucer right way up appearance. So if there is a saucer right way up appearance, think about tuberculoid type of leprosy. अगर patient को borderline tuberculoid है, जैसे BT type of leprosy, MCQ will definitely tell you कि hypopigmented lesion है या फिर erythematous lesion है, sensory deficit भी है, but that is fixed for all leprosy. But along with that, you can see satellite lesions
or you can see a pseudopodia, or you can see a pseudopodia. Now, what is this satellite lesion? If I just zoom this image, you can see there are small lesions just outside the main lesion. इसको बोलते हैं satellite lesion. And what is pseudopodia? It means like finger-like projection. If you just see how this lesion is expanding, you can see that there's some projections in this lesion. It's called as a pseudopodia. It's called as pseudopodia. Okay? So BT type of leprosy, think about satellite and pseudopodia. And next one जो है borderline. So it's so typical image here, right? So typical that you can get this as a image based question for your exam. यहाँ पे borderline means BB type of leprosy. So in BB type of leprosy, जैसे centrally punched out lesion होगा, right? So this is centrally punched out. So why am I showing you like this? Because if I am just going to punch out this lesion, so in the center you can see normal skin, but you can see some raised borders here outside, right? So this is called as a centrally punched out lesion, or you can compare it to a inverted saucer. So this is inverted saucer appearance, or a Swiss cheese appearance. Inverted saucer or a Swiss cheese appearance. Now just go back and see that if the MCQ is going to tell you the patient is presenting with a hypopigmented lesion, but these lesions, they look like a saucer right way up, so then the answer should be TT type. If the MCQ just changes one word, it looks like a inverted saucer appearance, then the type of leprosy becomes borderline type of leprosy. Clear? If hypopigmented lesion itching and increase in sun exposure area, it is vitiligo or tinea. See, vitiligo is never a itchy condition. Okay, then it is more likely to be some kind of a tinea, but not tinea versicolor. Versicolor is also non-itchy condition. Other types of tinea हो सकता है, जैसे tinea faciae that happens in the face. So moving further, borderline lepromatous. ये borderline lepromatous में we don't have anything very particular. So we can just mention that it is going to be almost symmetrical lesions. You can see almost symmetrical lesion. Or in all the types of leprosy, the most important type for you in any exam should be a lepromatous leprosy, which we call it as LL. So in LL type of leprosy, here you call this face as leonine facies, क्योंकि it is compared to a lion-like face, है ना? Leonine facies is what we can call them. And यहाँ पे क्या दिख रहा है? You can see that the entire texture. Does the normal skin in the face look like this? Absolutely not. Here you can see there are multiple nodular lesions in the face. So here the patient will present to you with nodular lesions in the face. Along with these kind of nodular lesions, you can also see that there is a hypopigmented lesions in the trunk. And this type of leprosy is called as a lepromatous leprosy. So nodular lesions in the face, because of which you call it as a leonine facies. And the meaning of leonine is lion-like face. Okay, leonine facies means lion-like face. और काफी सारे और भी features होगा. जैसे if I just zoom, you can see that there is a loss of eyebrows. The shape of the nose has changed. It's called as a saddle nose deformity. Patient को hoarseness of the voice होगा. All those things can be seen in a lepromatous leprosy. Okay? That's about different types of leprosy, and they usually test you with the treatment part. Or treatment part in leprosy mein, what you need to remember is that forget about saucer right way up, inverted saucer, satellite and all those things. When it comes to treatment, we are just going to count the number of lesions. Just say we can divide them into two types, paucibacillary and multibacillary. Paucibacillary type of leprosy में क्या होगा? You can just try to remember it up to 5 skin lesion. So just count the number of hypopigmented rash or the erythematous rash. It should be less than 5. And there will be no nerve involvement. Nerve involvement मतलब कोई nerve disability नहीं होगा. जैसे wrist drop हो गया एक disability, right? So there is no nerve disability, not even a nerve thickening.
And when you do a skin slit smear, you can see that the bacteria is not seen. It is going to be absent. This contributes to paucibacillary leprosy. If you have understood कि paucibacillary क्या है, then multibacillary is self-explanatory. क्योंकि paucibacillary is having up to 5 lesion, तो multibacillary में कितना होगा? More than 5 lesion होगा. And multibacillary में at least one nerve involvement होगा. अगर ulnar nerve is involved, if the patient is having a claw hand, हो गया multibacillary, right? And when you see under a microscope also, the bacterial load can be seen. So a positive skin slit smear, at least one nerve that is involved, and more than 5 skin lesion, we call it paucibacillary, and you can treat the patient for 12 months. Can you quickly type what are the drugs that you use to treat a case of leprosy? So the drugs, we go for a multi-drug therapy, right? इसीलिए ऊपर लिखा है MDT. MDT is multi-drug therapy. So the multi-drug therapy that we use is dapsone, rifampicin, and clofazimine. Dapsone, rifampicin, clofazimine. So these are the 3 drugs that is used for the management of leprosy. Leprosy mein, there's one very important thing which we cannot discuss today, which we will not omit today, and that is called as a lepra reaction. Because when the patient, sir, if they mention 3 lesions with the nerve involved, okay, it's a very good question. Yedla Akil Reddy. So if the question says the patient is presenting to you with 3 hypopigmented patches in the body, but he has one nerve that is involved. Even if one nerve is involved, then the patient automatically shifts to a multibacillary leprosy. Okay, you have to actually fit into all the 3 in paucibacillary. If any one is going to be that fits into multibacillary, then the answer becomes multibacillary. Is that clear? Yes, very good. So now let's see what is a lepra reaction. The lepra reaction hai, there are 2 types. First is type 1, type 2. The type 1 is also called reversal, and type 2 is also called as erythema nodosum leprosum. Type 1 में जो immunological reaction है, this is because of a hypersensitivity reaction. So which hypersensitivity? So the hypersensitivity here is going to be type 4 hypersensitivity. And yeah, Anubhav Avasthi is saying rule of 5. So rule of 5, यहाँ पे देखते हैं कि what is type 2? Type 3 hypersensitivity. So why did he say about rule of 5? Because 1 plus 4 equals to 5 and 2 plus 3 equals to 5. That is going to be the hypersensitivity. Just remember, type 1 lepra reaction is type 4 hypersensitivity, and type 2 lepra reaction is type 3 hypersensitivity. And which type of patients will develop a lepra reaction? Every borderline type, type 1. So what are the borderline types we have learned? Borderline tuberculoid hoga, borderline hoga, borderline lepromatous B, right? So all these 3 will show type 1 lepra reaction, and every lepromatous type will show type 2. Lepromatous में कितना है? Borderline lepromatous भी है and lepromatous leprosy भी है, right? So these are the 2 types which will show type 2 lepra reaction. And one more thing that you have to find it here is there is only one type of leprosy which can show either type 1 or type 2. And what is the common thing in both the table? Borderline lepromatous reaction. And most of the times the examiner may give you a clinical scenario. Clinical scenario ये होगा कि what is the presentation? How do you understand कि patient को lepra reaction हो रहा है? That is based on the clinical scenario. The question will always say the leprosy patient has no new skin lesion. The leprosy patient has no new skin lesion. Instead, the patient is developing a swelling and inflammation of existing lesions. So when the patient is going to develop a swelling and inflammation of the existing lesions, that is called as lepra type 1 reaction. Okay, there's no new skin lesion. A patient who is a case of leprosy, जो multi-drug therapy ले रहे हैं. Now the patient is coming to you कि जो मेरा centrally punched out lesion था या फिर जो satellite lesions के साथ जो lesion था,
that lesion is now becoming red color, that is becoming inflamed, swollen, then think about lepra reaction. और type 2 reaction में क्या होगा, यहाँ पे there are new skin lesions are seen. New skin lesions can be seen. और जो new skin lesions है, what is that? There is going to be erythema nodosum leprosum, which means the patient will have subcutaneous nodules in the skin. That is why we call it as erythema nodosum leprosum. And along with the subcutaneous nodules in the skin, the patient may also have systemic features like fever. There can be systemic features like fever, and that is called as type 2 lepra reaction. Is it clear? So that is type 1, type 2. Type 1 ho ya type 2. The drug of choice remains the same. The drug of choice is going to be prednisolone. So steroid hai. And most importantly, what are you going to do? Are you going to stop the multi-drug therapy and then going to start the prednisolone? Or are you supposed to continue multi-drug therapy? Please remember, always continue multi-drug therapy and then go for prednisolone Clear? Doses of dapsone rifampicin. See, dapsone is given as 100 mg per day in adults. Okay, rifampicin, we'll have to go for a loading dose. They say we'll have to go for a loading dose and then we can go to the daily dosages. And the same applies with clofazimine also. Just 300 mg of clofazimine is given as a loading dose, and then you give 50 mg of clofazimine daily. Chalo. The next is genital ulcer. And even in the last INI-CET exam, if you have gone through the previous year INI-CET exam, you can see that multiple questions came from the genital ulcer disease. So just pay attention here. It's nothing difficult. It's easy to score. You just need to understand the logic kaise hona chahiye when it comes to genital ulcer disease. So in genital ulcer disease, here, whenever there's a clinical scenario which says there is a truck driver who presents to you with a painful genital ulcer or painless genital ulcer, that is a common theme that you can see in the genital ulcer disease. Always pay attention to the pain. Is it painful or painless? An easy way to remember is, remember all the painless ulcer as a mnemonic called LSD. LSD is a drug. You take a drug, you will not get to know the pain. Think something like that, just for the purpose of remembering it. Okay, LSD is a drug, and when you take a drug, you will not get to know the pain. So LSD stands for painless genital ulcer, and painless genital ulcer, L stands for LGV, S stands for syphilis, and D stands for donovanosis. And D stands for donovanosis. And what are the causes of painful genital ulcer? Painful ka causes hoga chancroid and herpes genitalis. Chancroid and herpes genitalis. These will be the causes of painful genital ulcer. And if you remember this simple mnemonic of LSD, at least 2 options you will be able to rule out every time. Let's say the patient presented to you with a painful genital ulcer and blah blah blah, whatever is the additional part of the MCQ. And the options will be LGV, donovanosis, chancroid, herpes genitalis, which means you can easily rule out LGV and donovanosis because those are going to be painless. And in genital ulcer, please try to remember few very important key points. Like if there is a mention that the patient has painful ulcers, along with that there are buboes. And what do you mean by a bubo? Bubo means it is a lymph node which contains pus. And this is seen in 2 diseases. One disease is chancroid and the other disease is in LGV. Chancroid and LGV, you can see painful bubo along with genital ulcer. Now see different clinical scenario. हर ये जो genital ulcer diseases में clinical scenario में there's going to be a big difference. Like imagine there is a silent disease. Why do I call this disease as a silent disease? Because the patient is coming to you with a painless ulcer. Ulcer is painless and a painless lymphadenopathy. The lymph node hai, that is also not inflamed, or even if it is inflamed, it is painless. Okay, painless ulcer, painless lymphadenopathy is going to be syphilis. Easy if you think S for S. Syphilis एक silent disease है.
साइलेंट डिजीज मतलब पेनलेस अल्सर होगा और पेनलेस lymphadenopathy भी होगा, right? Now see the second one. Now in this one, ulcer is painless, but it has a painful lymphadenopathy. Now how do we remember this? Painless ulcer means it can be anything in LSD, right? LGV, syphilis or donovanosis. For syphilis we have already studied. यहाँ पे तो painless lymphadenopathy भी होना चाहिए. Now it is between LGV and donovanosis. And what you have here? Painful lymphadenopathy. Lymph node is involved. And what's the full form of LGV? The full form of LGV is lymphogranuloma venerum. Lympho, the name itself says lymph node is involved, which means this kind of a painful lymphadenopathy is seen in LGV. It's seen in LGV. Next one, let's see multiple ulcers and painful lymphadenopathy. तो यहाँ पे अल्सर भी पेनफुल है, lymphadenopathy भी पेनफुल है with the undermined edges. This is seen in chancroid. This is seen in chancroid. Hemophilus ducreyi, right? Ducreyi, crying baby. So crying means painful ulcer, painful lymphadenopathy. And next one, some erosions, polycyclic erosions and painful ulcer, painful lymphadenopathy. यहाँ पे भी ulcer and lymphadenopathy is painful, but where do you get a clue of polycyclic erosion? ये जो polycyclic erosion है, this is very typical for herpes genitalis. So this is very typical for herpes genitalis. So please keep that in mind as well. The last one, and this can be an easy image based question. क्योंकि क्या है? If the image based question says that there is an ulcer in the genitalia and this is red in color. So when you see there is a red color ulcer that bleeds to touch. So you can just visualize red color ulcer in the genitalia with something that bleeds to touch. This is going to be donovanosis. This is going to be donovanosis. And I'll give you one more clue here. See the name of this disease, donovanosis. So what is this no? This no implies there is no lymph node involvement. So donovanosis is one such genital ulcer disease जहाँ पे कोई lymph node involvement नहीं होगा. That is why I did not mention that there is any lymph node here. It's just a subcutaneous inguinal swelling. That is how it is mentioned. Okay, हर inguinal swelling lymph node नहीं होता. So this is going to be a subcutaneous inguinal swelling here because donovanosis has no lymph node involvement. And after this, let us talk about some of the drug eruptions. एक हो गया fixed drug eruption. अभी fixed drug eruptions में क्या होगा? That imagine that our patient has consumed a drug, and after consuming a drug, the patient develops a hyperpigmented macule like this. Next time, our patient will take the same drug. What happens? This lesion will reappear at the same site. So two things are fixed here. इसीलिए we call it as a fixed drug eruption. क्या क्या fixed है? Drug is fixed, site is fixed. Like the patient develops hyperpigmented lesion on intake of a drug. The patient develops a hyperpigmented lesion on intake of a drug, and this lesion reappears. The lesion reappears at the same site on retake of the same drug. That is why I've written both those things in red. Same site, same drug. Lesion reappears. This is called as a fixed drug eruption. And एक चीज याद रखना कि ये जो fixed drug eruption है, this always heals with residual hyperpigmentation. मतलब it is not going to fade away completely. एक बार एक fixed drug eruption हो गया, this hyperpigmentation then that can persist for very long period of time. इसीलिए we call it as a residual hyperpigmentation, and it becomes more darker next time you take the same drug. That is called as residual hyperpigmentation. Yeah, NSAIDs can show this as well. Very good. And the next one is Steven-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis.
So this is the most severe type of a drug eruption, right? So what happens in this very, very severe type of a drug eruption is this patient, after taking a drug, there will be a history of a drug intake. Now, after this drug intake, the patient may come back to you with a very different symptom. Patient ने drug लिया होगा maybe for a sore throat, for a toothache, for a headache, right? But taking a drug and the patient comes back to you with massive peeling of the skin. And along with this massive peeling of the skin, अगर patient का at least 2 mucosa is involved, this is the presentation of a Stevens-Johnson syndrome or a toxic epidermal necrolysis. So there's a massive peeling of the skin. It looks like a burns patient, right? And when you examine the oral mucosa, the mucosa of the eyes or the genital mucosa, at least 2 mucosa involved भी होगा, जहाँ पे some erosions या all those things can be present. This is called as this is the presentation of a Stevens-Johnson or 10. And why do we learn Stevens-Johnson and toxic epidermal necrolysis together? क्योंकि दोनों cases में clinical scenarios are same. Only one difference is there, because Stevens-Johnson syndrome has less than 10% body surface area involved, and toxic epidermal necrolysis has more than 30% of body surface area that is involved. So less than 10, Stevens-Johnson, more than 30, toxic epidermal necrolysis. Most of the times क्या होता है, the patient may come to you between 10 to 30% of body surface area involvement. So if there is a between 10 to 30% of the body surface area involvement, then it is called as a overlap. क्या overlap? Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis overlap can be seen. And yeah, carbamazepine, all the anti-epileptic agents, anti-tubercular agents, NSAIDs, all those things. Why to say, even a very commonly prescribed antibiotic like amoxicillin can also lead to these cases like Stevens-Johnson syndrome or toxic epidermal necrolysis. And when you do a histopathology, here you can see necrotic keratinocytes. जैसे इस डिस्कशन में we had discussed about one sign. जैसे if I just zoom this image and I show you that I'm going to apply a tangential pressure like this, and the skin will get peeled off. What was that sign called? We learned about that sign when we learned about vesicular bullous disease. जैसे pemphigus vulgaris, pemphigus foliaceus, 4S, right? Now this is called as Nikolsky sign. But here, please remember, in Stevens-Johnson and toxic epidermal necrolysis, here you can see a pseudo Nikolsky sign. And the reason for pseudo Nikolsky sign is clinically same sign hai. Okay, how we are just applying a pressure in the skin and trying to peel the skin off. But since the etiology is different from acantholysis, क्योंकि pemphigus vulgaris, foliaceus और staphylococcal scalded skin syndrome में there is acantholysis. Acantholysis means the keratinocytes will get separated because of desmosomal defect. यहाँ पे कोई desmosomal defect नहीं है. As you can see necrotic keratinocytes, right? So this is called as pseudo Nikolsky sign. And when you go for your exam, INI-CET exam, in every INI-CET PYQ, when you go through it, you can see that there's a match the following type of a question in dermatology. What is this match the following? They can say that, okay, identify all these Woodslam finding and match it correctly with the disease. Options will be tinea capitis, versicolor, erythema, tuberous sclerosis. On other side will be red, green, white, violet, whatever color. So you always remember, where do you see what color? जैसे tinea capitis में brilliant green, pityriasis versicolor. Pityriasis versicolor, I think rather than mentioning as apple green, please note it as yellow. Yellow color fluorescence, because yellow is more specific than apple green in terms of pityriasis versicolor. Erythema will show a coral red fluorescence. Vitiligo will show white. And one place where you do a urine for Woodslam would be porphyria, cutaneous, tarda. So please make sure. Yes, absolutely logical run. You can definitely watch it because the concepts remain the same across all the exams, right? And regarding the KOH
When is a KOH test done? It is always done when you're going to suspect a fungal infection. So when you do a KOH, there are only 3 findings you need to remember. If the MCQ says there is a fungal hyphae, it is always a dermatophytosis. Dermatophytosis means tinea, and a tinea infection, tinea capitis, tinea pedis, tinea cruris, all those things. And if it is a candidiasis will not show a hyphae. Instead, you can see a pseudo hyphae. And we have already discussed about pityriasis versicolor, where you can see the hyphae and the spore compared to a banana and a grape's appearance. And there is an investigation called as diascopy. Diascopy means what do? We press the skin with a glass slide. Okay, we press the skin with a glass slide. So very simple test. You take a glass slide, just press over the skin. So when you see that there is a blanching, it means it is due to erythema. If there is a non-blanching skin, कोई pigmentary defect होगा या फिर some vascular defect होगा, जैसे petechiae, purpurae and all. Lupus vulgaris, which is also called as a cutaneous tuberculosis, it's a very important finding. यहाँ पे apple jelly nodules can be seen. Sarcoides में sabudana kind of an appearance, that is sago green appearance can be seen. And nevus depigmentosis. एक चीज याद रखना, कोई pigmentary defect है, कोई changes नहीं होगा when you press the skin with a glass slide. तो ये एक pigmentary defect है, इसीलिए there is no blanching. And anemicus is a capillary defect, इसीलिए there is again going to be blanching. And we have to remember some of the common examples of alopecia. Like the kind of question is, all of the following are examples of scarring alopecia, except. Now, when you remember these names, it is easy for you to differentiate. Remember anything that starts with A or T, or even you can remember it as ATA. So, all this ATA comes under non-scarring alopecia, जो एक reversible alopecia है, right? Androgenic alopecia, alopecia areata, trichotillomania, telogen effluvium, anagen effluvium. Anything that starts with A or T. And what is scarring? Scarring में there are different examples, जैसे lichen planus, discoid lupus erythematosus, chirion. All these things are the most common examples where you can see a scarring alopecia. And another investigation that we do is a Zang smear. When do we do a Zang smear? Always remember, you do this in vesiculobullous diseases. Whenever a patient comes to you with vesiculobullous disease, there is one investigation which you can easily do, वो हो गया Zang smear. जैसे what are the vesiculobullous disease? Either infections होगा, अगर किसी को infection हो गया जैसे chickenpox या फिर herpes simplex virus infection. In those infections, if you do a Zang smear, you find a multinucleated giant cell. So in simple words, infections will show multinucleated giant cell. Non-infectious causes. In non-infectious causes, what do you see? You see a Zank or a acantholytic cells. You see a Zank or acantholytic cell that is seen in Pemphigus vulgaris and Pemphigus foliaceus. And yes, this is another part which you have to go through this table. Please don't go for the exam without doing this, because that match the kind of question is very, very probable. Okay, and see, we have a lot of signs. Auspitz sign in psoriasis, Nikolsky sign जो हमने आज डिस्कस किया, pseudo Nikolsky भी आज डिस्कस किया, और Fitzpatrick sign is seen in dermatofibroma. So I put all these signs in dermatology together. So not all, but the most of the important signs here together. So please try to read all the signs in dermatology before your exam. And your DIF is also a very frequently asked topic, that is a direct immunofluorescence. Today, during our discussion, when did we talk about DIF? We spoke about DIF while we spoke about vesiculobullous disease. जैसे fishnet pattern कहाँ पे होता है? Fishnet pattern is seen in Pemphigus vulgaris, Pemphigus foliaceus and all. यहाँ पे fishnet pattern होता है. And linear pattern कब होता है? When there is a deeper bulla, and deeper bulla is seen in bullous pemphigoid. There are a few other disease, जैसे linear IgA disease. Now you need to break your head to remember this. It's easy, क्योंकि linear IgA disease is equal to the DIF finding. क्या होगा DIF finding में? IgA is deposited. How is it deposited? Linearly over the dermoepidermal junction. And dermatitis herpetiformis, that's another vesiculobullous disease where you find granular IgA at papillary tips.
Remember, this is one disease that is associated with celiac sprue or gluten sensitive enteropathy, right? So that is also a very important disease that you need to remember. And coming very specific to INI-CET exam, in INI-CET, this is one exam where those biological agents are usually asked, right? So it's not like NEET PG where you can ignore those biological agents. I won't say to ignore those in NEET PG as well, but here please pay attention. I've put all the biological agents, the common ones, together in the table. Just as psoriasis, we have multiple biological agents which we use. Like you can use anything like USA. You can frame some mnemonic to remember, like ustekinumab, secukinumab, apremilast, adalimumab, apremilast. All those things are used in psoriasis. Atopic dermatitis. अगर किसी का बहुत dry skin है, and this dry skin along with some eczema and all is there, and what is a biological agent you want to use? The answer should be dupilumab. And in chronic urticaria, I think we discussed about urticaria biological agent today during our discussion. That is omalizumab. Now, in pemphigus vulgaris, there is a monoclonal antibody that is against CD20. It's called rituximab. Again, very important, rituximab for pemphigus vulgaris. Alopecia areata. Now, there is a lot of research going on about JAK inhibitors and all. So, what is it? Janus kinase inhibitors and all. So, what are the examples? Alopecia areata, there is something called as baricitinib, and in vitiligo, this has been very recently FDA approved, and that is going to be tofacitinib, that is used in vitiligo. And hidradenitis suppurativa is a disease of the apocrine glands where you get some lesions over the axilla. Here you can go for a adalimumab, which is also a biological agent. Yes, Anubhav will be sharing this PDF in the Telegram group. And I guess we have come towards the end of the discussion. So we have another session by Dr. Sanchit sir for ENT. And I hope that the session was informative for all. And as I've told you right in the beginning of the session, once you have done all these topics, whatever we have done, so please try to go through the grant test which is going on in the Meded app and try to see how good are you able to perform. So thank you so much, and I wish you all the very best. Just one more week for your exams, and do rock the exams and do share us the results. Okay. If there is nothing more that you would like to discuss, then I shall wind it up and would be handing it over to the next faculty. I'll just wait for a second if there is anything to address. If not, we will wind up. Thank you so much, all of you. All the best. So where to get the PDF? The PDF will be available in the Meded Telegram group. And you can see the description in the YouTube video itself.
Hello everyone. Very good evening to all of you. I am Dr. Sanchit Bajpayee, ENT faculty at PW Med, and I welcome you all to another session of Power Packed ENT, जिसमें हम cover करेंगे the entire ENT syllabus from ear to nose to pharynx to oral cavity to larynx. And that also in the next 4.5 to 5 hours. So marathon का मतलब ही यही होता है कि complete coverage करना of the whole subject, and this is my agenda. I really believe on marathons to be very high yield, क्योंकि last time भी जो भी हमने marathon में ENT में पढ़ा था, there was nothing that was out in the paper. सब चीजें within the marathon ही आई थी. So if we deal the high yield topics in the last go, हर चीज हमारे लिए easy बन जाती है and हर चीज catchable बन जाती है. So it's a very simple logic. When the going gets tough, the tough get going. आप लोग बहुत tough हैं. In the last, जो भी इस समय अपनी preparation नहीं छोड़ेगा, वही INI-CET या नीट पीजी किसी में भी एक्सेल करेगा. दिस इज द बिगेस्ट टाइम जब आपके अंदर एंग्शियसनेस आती है और पढ़ाई छूट जाती है बिकॉज ऑफ द डर कि अब क्या होगा तब क्या होगा. वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट टू मच, सो वी स्टॉप रीडिंग. सो माय एजेंडा विल बी टू मेक यू सिट एंड मेक यू रीड, ताकि आप मेरे साथ सारी इंपॉर्टेंट चीजें ले जाएं, सब चीजें रिवाइज कर लें, एंड इट इज गोइंग टू बी अ पीस ऑफ केक व्हेन यू डील विद एटलीस्ट माय क्वेश्चंस इन ईएनटी. अगर आपने आज कर लिए, ये सारी की सारी चीजों से बाहर कुछ नहीं आने वाला है. Let me be very specific, right? Chalo. So this is going to be my marathon for ENT. I wish you all कि आप लोग बैठे for the whole thing. You will enjoy, and it is going to be continuous. कहीं हम break नहीं करेंगे, हम बस दौड़ेंगे पूरे syllabus को लेके, and we are going to cover at least 100 high yield topics from ENT in one go. चलिए start करते हैं, and it will be an interactive session. So I would love to see your answers coming up. I would love to see you all speaking with me, because in between, I don't want you all to doze off. I want you all to be with me during the whole session so that आपको चीजें समझ में आती रहे. चलिए. So what exactly we are going to do? We are going to start off from the right number one, ear. Ear सबसे important है INI-CET exams में. Ear and larynx make maximum questions. तो हम लोग start करेंगे with ear. Okay? So take a copy and keep scribbling whatever I am telling you. One of the most important topics that the ear starts off with is embryology of ear. हर साल एम्ब्रियोलॉजी से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है. सो लेट्स से एम्ब्रियोलॉजी ऑफ ईयर हैज बीन डिवाइडेड इनटू व्हाट इज द एम्ब्रियोलॉजी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सटर्नल ईयर एंड मिडिल ईयर. एक्सटर्नल ईयर जो होता है, दैट इज बेसिकली कंट्रीब्यूटेड बाय द फर्स्ट एंड सेकंड फेरेंजियल आर्च. फर्स्ट एंड सेकंड फेरेंजियल आर्च. तो हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो में जो फर्स्ट और सेकंड फेरेंजियल आर्च होती है, दैट बेसिकली फॉर्म्स रूल ऑफ 6. तो 6 हमें याद रखनी है चीजें. एवरीथिंग इन द पिन्ना इज एसोसिएटेड विद 6. So pinna looks like a 6. So everything in the pinna is around 6. That means first and second pharyngeal arch pe at 6th week of gestation 6 tubercles bante hain, and we call these tubercles as tubercles of His. तो ये देखो, this first and second arch they condense to form 6 tubercles of His, and ये कब बने? They basically form at the 6th week of gestation. अब ये जब फ्यूज करेंगे, all these tubercles fuse together to form the complete pinna by 20th week of gestation. यानी whole pinna forms by 20th week. Question ये आता है कि if suppose there is a deformity in a patient, or a patient has got some pinna issue, या पिन्ना में कोई deformity है, at what age will you correct that pinna? पिन्ना प्लास्टी कब करेंगे? तो पिन्ना प्लास्टी और पिन्ना करेक्शन is again done by 6, that is after 6 years of age. Any patient who has got any deformed pinna, you have to treat that condition surgically after 6 years of age. ठीक है? तो rule of 6, that is 6th week of gestation, 6 tubercles of His, first and second pharyngeal arch, and you do any correction of pinna after 6 years, be it for whatsoever. If the first and the second pharyngeal arch fuse abnormally, या फिर ये first और second pharyngeal arch fuse नहीं करे, then what will happen? There will be a visible opening present in front of the ear, and this is called as preauricular sinus. So what is preauricular sinus? It is basically an opening, or it is an abnormal sinus which opens because of the abnormal fusion of the first and the second pharyngeal arch. Very good. आप लोगों ने already बता दिया, right? So this is about, in general, what you need to know about the pinna embryology as far as external ear is concerned. अब आ जाते हैं into the middle ear embryology. Right? Middle ear की embryology में हमें क्या पढ़ना है? तो again telling you, there are only two things. That is, this is your first pharyngeal arch. This is your second pharyngeal arch. Each pharyngeal arch has got an outer side which is lined by ectoderm, center का part which is lined by mesoderm,
एंड अंदर का पार्ट विच इज लाइंड बाय एंडोडर्म. सो हर आर्च का एक एक्टोडर्मल साइड है, एंडोडर्मल साइड है और मीजोडर्मल साइड है. On the ectodermal side of each arch, there is first pharyngeal cleft. तो इसको हम कहते हैं cleft. Ectodermal side पे हमेशा cleft होता है. Endodermal side पे there is something called as pouch. So this is your first pharyngeal pouch. Now always remember what is the first pharyngeal cleft going to make. ये जो हमारा first pharyngeal cleft है, जो ectodermal side पे है, which is nothing but it is an indentation between the first and the second arch. This will form our future external auditory canal. ये हमारी future की external auditory canal बनाएगा. So if I ask you in one simple word, what is the embryological derivative of first pharyngeal cleft? It is the external auditory canal. अब this first pharyngeal pouch, which is on the endodermal side, ये क्या करेगा? This first pharyngeal pouch, this basically goes and expands distally. ये expand हो जाता है. तो जब ये expand होता है first pharyngeal pouch, then it forms one segment which is distal and one segment which is proximal. Proximal मतलब starting, and this segment is distal. The distal expanded segment of the first pharyngeal pouch, the distal expanded segment of the first pharyngeal pouch, this is going to form the future tympanic cavity. Tympanum मतलब middle ear. So middle ear की cavity बनाता है the distal part of the first pharyngeal pouch. And the proximal portion of the first pharyngeal pouch is going to make the future eustachian tube. Now, because this first pharyngeal pouch is contributing to the formation of eustachian tube and tympanic cavity, हम इस चीज को भी बोलते हैं tubotympanic recess. We call this recess as tubotympanic recess. The reason being, it is forming eustachian tube, it is forming tympanic cavity. So the first pharyngeal pouch is also called as future tubotympanic recess. Proximal part of tubotympanic recess forms the eustachian tube. Distal expanded portion of the tubotympanic recess forms the future middle ear या tympanic cavity. This is an important question. ठीक है? First pharyngeal cleft, ectodermal side forms the future external auditory canal. Very important. If there is maldevelopment of the first pharyngeal cleft, या कि if the first pharyngeal cleft is not completely formed well, then what will happen? This first pharyngeal cleft becomes closed. This becomes closed. And this forms a condition called as oral atresia. Oral atresia means that the first pharyngeal cleft has not opened. ये बंद रह गया. So when the patient was born, you have got a closed ear canal. So if the first pharyngeal cleft did not recanalize, did not reopen, then that will be called as oral atresia. Again, when will you do the correction? After 6 years of age. Okay, fine. Chalo. Now, this is about what you need to know in general. Now, always remember there are 3 ossicles that are present in your ear, right? Malleus, incus, and stapes. Malleus and incus are derivatives of first pharyngeal arch. Stapes suprastructure is a derivative of second pharyngeal arch, and stapes foot plate is a derivative of otic capsule. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि malleus and incus बेसिकली कहां से आ रहे हैं? They are coming from the mesoderm or the mesenchyme of the first and second pharyngeal arch. Stapes suprastructure means the upper part of the stapes is coming from what? It is contributed by the mesoderm or the mesenchyme of the second pharyngeal arch. And the foot plate of the stapes, the base of the stapes, that is which is coming from your otic capsule. So सबसे important question यही है, that which among the following is a contribution from otic capsule? It is the stapes foot plate. Okay. Again, an important point. There are 2 joints in your ossicles. Incus and malleus form incudomalleal joint. Question आता है, what type of joint is incudomalleal joint? It is a type of saddle variety of joint. Second question that comes at the second joint between incus and stapes. This is incudostapedial joint. What type of joint is this? This is a ball and socket variety of joint. Okay, fine. So these are the basic questions that come with ossicles, right? One more important question related to ossicle. Which is the first part of the ossicle to get necrosed in cholesteatoma? Or if there is chronic otitis media, which is the first part of the ossicle to get necrosed? The first ossicle to get necrosed is the long process of incus. Long process of incus में सबसे least blood supply होती है. So this is the first part of the incus to get necrosed in chronic otitis media.
Okay, because it has got the least blood supply. Fine. Chalo, आगे बढ़ते हैं. Now let me come to the next part. Now this is an extremely important question for in general for your INI-CET exams, and that is what is the boundary of a space called as Prusak space. So what I've shown you here, this is a particular diagram, right? What you're seeing over here, this is your pars flaccida, and below this is your pars tensa. This is your pars tensa. The green one is the pars tensa, above one is your pars flaccida. Now, can you see this potential small little space here? This is called as Prusak space, right? Now, the issue is that Prusak space की क्या importance है? Prusak space is the most common space to have primary acquired cholesteatoma. That means cholesteatoma which usually have any particular significance with a retraction pocket. जो cholesteatomas retraction pocket के अंदर grow करते हैं, they usually occur in this Prusak space. It is the most common site. That's the most important point. Now, what are the boundaries of the Prusak space? Let's see that. Now, if you concentrate on this space, this little space over here, this space has got anteriorly the pars flaccida, जो red color की है. Posteriorly, it has got the neck of the malleus, because this is your malleus, just below the head is your neck of malleus. Now, superiorly, there is a ligament, and this ligament is called as lateral malleal ligament. And inferiorly, you have got some process of the malleus, which is called as lateral process of malleus. So, two laterals. ऊपर का lateral is lateral malleal ligament. नीचे का lateral is lateral process of malleus. Anteriorly, it is pars flaccida. Posteriorly, it is the neck of malleus. These four boundaries form the Prusak space, right? What is Prusak space? This little space, superiorly bounded by the lateral malleal ligament, inferiorly bounded by the lateral process of malleus, two laterals. Anteriorly, it is the pars flaccida. Posteriorly, it is the neck of malleus. This is the most common site to be involved in primary acquired cholesteatoma or for forming a retraction pocket. Extremely important. ठीक है? चलो, आगे बढ़े. Now comes important questions related to mastoid. Now imagine, what is mastoid? Mastoid is a bone which is present behind your ear, right? Now in mastoid, we have certain questions which always come, right? So mastoid में क्या होता है? First we need to figure out that this is a mastoid of a man who is lying down, right? Let's say I'm like this and I lie down. Now when I lie down and you are operating, so basically this is my lying down image when you are seeing me, right? So what you are seeing that this is my external auditory canal. ये मेरी external auditory canal है and you are seeing the middle ear structures. This is superior, this is posterior, this is inferior, this is anterior. Okay? Now, let's say you have drilled the whole of the mastoid. What is the posterior limit in mastoidectomy? Can you see this blue colored structure? This blue colored structure which is present within the mastoid, this is your sigmoid sinus. This is called as sigmoid sinus. Sigmoid sinus is behind the mastoid. So अगर हम लेट जाएंगे, so it will be behind. Posterior limit of mastoidectomy is sigmoid. What is my superior limit of my mastoid? Superior limit of the mastoid, this is my dura. This is called dural plate, or this is also called as the dura, because this is the one which is separating my mastoid from middle cranial fossa. Right? Can you see an angle present between the dural plate and the sinus plate or the sigmoid sinus? The sinus and the dura, they have got an angle here. This angle is called as sinodural angle. And they ask sinodural angle का नाम क्या होता है? It is called as Sitteley's angle. Sitteley's angle को हम लोग sinodural angle बोलते हैं. It is an angle which is formed between the dura and the sigmoid sinus. Important high yield question. Now, when you drill your mastoid, you will have three semicircular canal. तीन semicircular canal दिखती हैं. जो भी canal आपको सीधी सीधी दिखेगी, the straight canal that you are seeing, because see, this is your lateral semicircular canal which is coming out. When you lie down, this canal will appear to be straight. So whatever you are seeing straight, this is lateral semicircular canal once they have given for identifying what is this. So this, whatever you see straight, this is lateral semicircular canal. Now whatever you see perpendicular to the lateral canal, this is posterior semicircular canal. Why posterior is perpendicular? Because imagine this is how your posterior canal is when you are standing, and when you lie down, your posterior becomes horizontal. So this is your posterior canal. Now an important point. If I draw an imaginary line along the lateral semicircular canal, which bisects my posterior semicircular canal at 90 degrees.
If I draw an imaginary line along the lateral canal which bisects my posterior canal at 90 degrees, this line is called as Donaldson line. What is the importance of Donaldson line? Donaldson line ke 1 centimeter inferior, if I drill over here, this is the place where I will find my endolymphatic sac. So when we do a surgery called as endolymphatic sac decompression, which is a very common surgery done for Meniere's disease, we drill in this area. So that when we drill, we usually find the endolymphatic sac here. And Donaldson line is very important to identify the endolymphatic sac. It is always inferior to the Donaldson line. Always remember that. Okay, fine. So this is important here. Now, another important question. The angle formed between all the three semicircular canals. The angle formed between all the three semicircular canals, this angle is called as solid angle. Solid angle is the angle formed between all the three semicircular canals. Okay, fine. Chalo. So this is about in general what they ask in mastoids. Basically, they will ask you ki ye sab kya hote hain, what are these structures, and this is some important pointers for mastoid. Chalo, let's start now. Now let's go into the next very important, that is tuning fork test. Okay, tuning fork test. Tuning fork test से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, right? Now tuning fork test में you need to know at least 4 important tuning fork test: Rinne's, Weber's, absolute bone conduction, as well as Schaubeck's. I've given you what all you need to know. I'm going to just recap to you what exactly is given here. If I talk about Rinne's test, always remember air conduction is more than bone conduction. जो air जाता है वो bone से ज़्यादा होता है. Air conduction is more than bone conduction in normal people. It is also seen in another condition where bone conduction falls, and that is sensorineural hearing loss, SNHL. So whenever they say Rinne's is positive Rinne means that the air conduction is more than bone conduction, and you should have only two things in mind: either the patient is normal or has SNHL. If they say that Rinne's is negative, that means bone conduction is more than air conduction, and that is only seen in conductive hearing loss because the air conduction falls down. Right? Now, very important point. Always remember कि अगर उन्होंने positive Rinne's का case दिया है, they will always give Weber's finding also. In a normal person, Weber's is always centralized. That means the perception of sound is equal in both the ears. Weber's lateralizes to the worst ear in conductive hearing loss, and Weber's lateralizes to the better ear in sensorineural hearing loss. So, on the basis of Weber's test, you will understand whether they are asking for SNHL or whether they are asking for CHL. This is extremely important. So, जब भी कोई tuning fork का question आएगा, पहले Weber's finding देखना, then you go and see what is the Rinne finding. Because on the basis of Weber's, you will automatically come, if they give you a middle ear pathology, they will be conductive hearing loss. If they give you acoustic neuroma, if they give you, someone who has got Meniere's disease, then they are talking about obviously an inner ear pathology, which will have sensorineural hearing loss. Very important finding in Rinne is false negative Rinne. False negative Rinne is classically seen in severe SNHL, which is unilateral. If one-sided there is severe SNHL, so what happens? There is transmission of sound from the contralateral side through transcranial vibration. इधर का कान transcranially vibrate करके sound send करेगा to the opposite cochlea, and that is why you get the false result. So false negative Rinne is seen in whom? It is seen in cases of severe sensorineural hearing loss on one side. ठीक है, fine. चलिए, अब आ जाते हैं कि what is this ABC and Schaubeck? If they say absolute bone conduction, absolute means what? That the tragus is closed. So what does the patient, what exactly the examiner is doing? Examiner tuning fork लेता है. He puts it over the patient, and when he puts it over the patient को वो सुनाई देता है sound, and when he stops hearing, he puts his finger up, and then that vibrating fork is placed over the examiner. अगर examiner को सुनाई फिर भी दे रहा है, that means the examiner has got a better hearing than compared to the patient. इसे कहते हैं absolute bone conduction test. So usually what happens is that in normal people the bone conduction is same as that of the examiner in absolute bone conduction test when you're closing the tragus and you're comparing the bone conduction of the patient in respect to the examiner. But always remember, if the ABC is reduced or if the absolute bone conduction test is low, obviously the patient has got sensorineural hearing loss क्योंकि उसमें there is always going to be shortened or lesser bone conduction in comparison to the examiner. So the ABC will be shortened in the patient in comparison to the examiner in cases of SNHL. Right?
अब अगर आपने ट्रेगस बंद नहीं किया एंड द ट्रेगस इज ओपन, then that particular test is called as Schauback test. Normal Schauback is same as that of the examiner to the patient, same. But the only thing you need to remember 2 points. Agar patient ka bone conduction is shorter than the examiner, then it is SNHL. If the bone conduction is longer than the examiner, then it is CHL. So in cases of Schauback, conductive hearing loss में Schauback becomes lengthened in terms when we take the examiner versus the patient. ठीक है, that's the only difference. Tragus बंद करना है तो absolute bone conduction खुला हुआ है, then that is conductive hearing. जब खुला हुआ है, that is something which is Schauback test. This is what, but they will concentrate more on this. They will always give you something about Weber's, something about Rennie's. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Important audiograms. Now always remember, I'm going to take up BERA, I'm going to take up impedance audiometry and I'm also going to take up important pure tone audiograms. ठीक है, पहले हम लोग impedance audiometry कर लेते हैं. Impedance means resistance. इसमें हम लोग क्या करते हैं? We put a probe inside the ear and we give a sound, right? अब जब वो sound जाता है ear के अंदर तो वो tympanic membrane पे लड़ता है and that gets reflected, and when it gets reflected it is taken in the form of a machine and that machine creates a graph. There are two parameters which we test in impedance audiometry. एक होता है pressure और एक होता है compliance. Pressure मतलब middle ear का pressure and compliance means the mobility of the tympanic membrane. जो हमारी mobility होती है tympanic membrane की, that is something which is seen over on compliance. ठीक है? अब always remember, normally the central pressure here is 0. This side is positive, let's say 200, and this side is minus 200. If you get a graph where there is normal compliance and normal pressure, we call this graph as A graph. A matlab A for normal. So A for normal means what? It is basically nothing but it is normal pressure, normal compliance. Compliance का मतलब movement और middle ear का pressure is pressure. अगर आपके पास कोई patient आया जिस particular patient के otosclerosis है, right? Let's say otosclerosis है. Otosclerosis का मतलब the stapes is fixed. या फिर उसके चौकी डिपॉजिट्स हो गई है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, दैट इज कॉल्ड एज टिम्पैनोस्क्लेरोसिस. तो इसमें होगा क्या? व्हेन सच पेशेंट्स विल कम, लेट्स से दिस इज योर मैलियस, दिस इज योर मैलियस, दिस इज इंकस एंड दिस इज स्टेपीज, एंड दिस स्टेपीज हैज गॉट अ चौकी डिपॉजिट. अब अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे साउंड आएगा तो क्या ये स्टेपीज मूव करेगा? नहीं. इट विल हैव अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस टू मूवमेंट. तो क्या ये ओटोस्क्लेरोसिस मिडल ईयर के प्रेशर की प्रॉब्लम है? नहीं. दिस इज अ प्रॉब्लम विद कंप्लायंस, दिस इज अ प्रॉब्लम विद मूवमेंट. तो इन पेशेंट्स में आपको क्या मिलेगा? You will get a graph where compliance is reduced but the pressure is normal. And if the compliance is reduced and the pressure is normal, इसे हम कहते हैं AS curve. S stands for sclerosis, याद रखना. तो AS curve is seen in all types of sclerosis, otosclerosis, tympanosclerosis, because the movement of the tympanic membrane is reduced. In simple words. ठीक है? Now comes the next important point. Let's say आपके पास पेशेंट आया और उसके मैलियस और इंकस के बीच में चोट लग गई. Now the ossicles are discontinued. So now when the sound will come, the tympanic membrane will move double of what it is moving. ये कुछ ज्यादा ही मूव करेगी because there is nothing attached behind. मैलियस, इंकस, स्टेपीज सब एक दूसरे से अलग हो गई हैं. That's called as ossicular discontinuity. Discontinued ossicles. So if you have discontinued ossicles, what will be the finding? आपकी compliance कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगी. You will never be able to close this curve because you are never going to measure कि कितना tympanic membrane अंदर move कर रही है. This lax hypermobile tympanic membrane is going to cause a curve और इस curve को कहते हैं a D curve. Remember D for discontinuity of ossicles. This is very important. Patient आया, road traffic accident, came back to you. You did a pure tone audiometry. You saw some hearing losses there. You did impedance audiometry. You saw AD curve. What is the diagnosis? Discontinued ossicles. ठीक है, क्योंकि अलग हो गई हैं हमारी ऑसिकल्स. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सिचुएशन. यू हैव गॉट अनदर पेशेंट एंड दिस पेशेंट इज हैविंग एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी. एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी में नेसोफैरिंग्स में यूस्टेशियन ट्यूब बिकम्स क्लोज्ड. इफ द यूस्टेशियन ट्यूब बिकम्स क्लोज्ड, देयर विल बी नेगेटिव प्रेशर इनसाइड द मिडिल ईयर, बट देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन मोबिलिटी ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. So if there is negative pressure inside the middle ear, you will get a normal compliance curve, but it will be on the negative side. A negative pressure curve is called as C curve. Remember, C stands for closed eustachian tube. Eustachian tube opening is closed, so it will develop negative pressure inside the middle ear, and that is why you will have C curve on negative pressure.
नाउ कमिंग टू अनदर सिचुएशन, आपके पास एक पेशेंट आया and that patient had got history of chronic otitis media. You see a perforation is present in the ear. If there is a perforation, you do impedance audiometry. What are you going to find? B curve. Obvious reasons. B का मतलब क्या होता है? That now you have got nothing. B अभी क्वेश्चन आया था. Flat curve means B curve. Flat means B curve. अब flat का मतलब है that there is no compliance and no pressure that you are measuring. अब दो चीजों में फ्लैट कर्व दिखती है. F for flat, F for fluid, F for flat, F for फटा हुआ eardrum, or I can simply call it a perforation. So if there is a perforation in the tympanic membrane, obviously you cannot assess the middle ear pressure. वो तो नेगेटिव ही है, वो तो obviously zero होगा because it is equal to the external ear. As well as अगर किसी के fluid है middle ear में, that is otitis media with effusion, you will never be able to measure neither the movement or the pressure inside the middle ear because your tympanic membrane is too stiff to move. And that is why you will get a flat curve, and flat curve का मतलब होता है B curve. ठीक है, दो सिचुएशंस में दिखता है. तो इस तरीके से ये आपके इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है. ऑलवेज रिमेंबर, यही आपको कर्व्स आएंगी. दिस इज हाउ द एग्जामिनर विल गिव यू एंड दे विल आस्क यू क्वेश्चंस कि कौन सी कर्व किस में दिखती है. ठीक है, ये खत्म हो गया हमारा इन शॉर्ट व्हाट इज इंपेडेंस ऑडियोमेट्री. चलिए आगे बढ़े. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू गो इनटू इंपॉर्टेंट प्योर टोन ऑडियोग्राम्स. If they give you a case of a reproductive age group female with bilateral progressive hearing loss, again telling progressive hearing loss है, bilateral है, reproductive age group female मतलब 30 to 40 years of age, and usually this hearing loss got worsened after pregnancy. You did a pure tone audiogram and pure tone audiogram पे आपको दिखा कि bone conduction में 2000 hertz पे dip है. अब कैसे पता चलेगा ये bone conduction की लाइन है कि air conduction की लाइन है? If on your audiogram you see dotted line, symbol dot से ज्वाइन हो रहे हैं, तो B for broken, B for bone, and जो भी लाइन सॉलिड होगी वो एयर कंडक्शन की लाइन होगी. This is the simplest method. In this audiogram, you are seeing that the bone conduction is dipping at 2000 hertz. Bone conduction की dip at 2000 hertz. This is called as Carhart's notch. Carhart's notch is classically seen in cases of otosclerosis. Simple, बहुत बार पूछा गया. This is favorite audiogram. ठीक है. अच्छा, now coming to the second one. This is a audiogram of a 40-year-old male who works in an aviation industry. प्लेन की आवाज की वजह से आपके पास एक रूटीन चेकअप कराने आए and you saw this kind of an audiogram. What are you seeing here? Now here if you see that both the sides, both the ears का मतलब क्या हुआ? Whatever symbol you are seeing of right ear, they are of red color, R for right, R for red. Whatever symbols you are seeing for blue color, they are for left ear. तो blue हमेशा left होता है और right हमेशा red होता है. अब एक चीज याद रखना, whenever you see that the symbols are falling together, अब देखो ये सारे symbols एक साथ गिर रहे हैं, तो S for SNHL, S for साथ साथ. If you see that all the symbols are falling together, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, that means this is SNHL and SNHL में all symbols go down साथ साथ. तो what are you seeing here? Right ear के भी symbols साथ साथ गिर रहे हैं, both air conduction and bone conduction. Left ear के भी symbols साथ साथ गिर रहे हैं, both air conduction and bone conduction, and they all are dipping together at 4000 hertz. This dip present at 4000 hertz of these symbols, this is called as a boiler maker notch. Boiler maker notch. Boiler maker industry में बहुत आवाज होती है. Boiler maker, iron smith, copper smith, aviation, these are the industries they will give you. So in that case, you will see that this 4000 hertz पे SNHL आएगा, and we call it because of their profession as boiler maker notch. This is a classical feature of noise induced hearing loss. ठीक है? Fine? चलो अब आगे बढ़ते हैं. Now you go on this चढ़ता हुआ ऑडियोग्राम. मैंने आपको बताया था द सिंबल ऑफ एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन अगर साथ साथ है तो S for साथ साथ, S for sensory neural. Here also all the air conduction and bone conduction symbols are together. मतलब ये एक SNHL है. Now this SNHL is rising. आप देखो ये लैडर की तरह चढ़ रहा है. So we also call this as a laddergram या step up audiogram क्योंकि step up कर रहा है. This is called as a rising curve on pure tone audiometry. अब राइज जब भी ऑडियोग्राम करेगा कोई और डायग्नोसिस नहीं है. द ओनली डायग्नोसिस दैट विल बी कमिंग इन योर माइंड इज नथिंग बट मीनियर्स डिजीज. मीनियर्स डिजीज में हमेशा प्योर टोन ऑडियोमेट्री चढ़ती है.
It goes up like a ladder, and this is basically because of the fundamental called as recruitment. ये क्यों होता है? Because of recruitment. Recruitment का क्या मतलब होता है? Meniere's disease में क्या होता है? The hair cells start to die. अब जब hair cells मरने लगेंगे तो the remaining hair cells start to work double in order to compensate the function of the lost hair cells. अब अगर मेरे 4 दोस्त हट गए तो मैं क्या करूंगा? I am going to work 4 times more in order to compensate to that function. So what will my hearing be? My hearing will suddenly become very sensitive. And when my hearing will become sensitive, my pure tone will rise. That is why, because my hair cells are working double of what they were. And that is why you see a rising curve on Meniere's disease. ठीक है? अब आ जाओ ये. What is here? You see right side के red हैं, left side के blue हैं, साथ साथ गिर रहे हैं. Again, साथ साथ means SNHL. And if you see, all these symbols are dropping down like a slope. They are dropping like a slope. This is ulta of what is this? This is rising, this is dropping. Now what is this called as? This is basically nothing, but this is called as a down sloping audiogram. And this is down sloping SNHL, or SNHL क्यों? क्योंकि all air conduction and bone conduction are साथ साथ dropping down. What are the differential diagnosis of a down sloping audiogram? Question number 1. अगर मैंने कहा कि this audiogram is of a 65-year-old male, what is your diagnosis then? Bilateral SNHL in a 65-year-old male has to be only age-related. So then your answer will be presbyacusis. Presbyacusis में there is down-sloping audiogram. तो अगर मैंने आपको age बताऊंगा, if I talk about after 60 years and I give you this audiogram, so obviously my answer will be SNHL related to age is presbyacusis. अगर मैं आपसे ये पूछता that this patient was admitted in the ICU for tubercular treatment and this patient had a lot of amikacin given to that patient, after amikacin usage this was the audiogram that was given, so the answer will be ototoxicity. तो दूसरी condition जिसमें दिखता है that is ototoxicity. So if I tell you about a drug history and I ask you this, then obviously this is about ototoxicity. Now the third is, if I tell you that this particular patient is a patient of having vertigo, which is on and off, this patient has tinnitus, as well as this patient has recently developed hearing loss. Now you examine the patient, you see that on the MRI, you see a finding over the vestibulocochlear nerve. Then your diagnosis will be what? It will be vestibular schwannoma. So it will be vestibular schwannoma. This is the third important differential diagnosis of a downsloping audiogram. But generally vestibular schwannoma unilateral होते हैं, bilateral नहीं होते. Bilateral generally ototoxicity होती है और presbyacusis होता है. If you see unilateral downsloping audiogram, then it is usually vestibular schwannoma or acoustic neuroma. Okay. Now, even this is seen in late stages of Meniere's disease. Meniere's के initial stages में you see rising curve, but in the late part of Meniere's, when the Meniere's has been profound, that time in late stages of Meniere's disease also, you will see this particular audiogram. And this is also seen in cases of congenital syndromic conditions. Congenital syndromes, जैसे कि Turner syndrome. तो टर्नर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, उन बच्चों में अगर हियरिंग लॉस होता है तो सिंड्रोमिक चिल्ड्रन के ऑडियोग्राम्स भी बायलैटरल, सिमेट्रिकल एंड एसएनएचएल डाउन स्लोपिंग दिखती है. So this is all about the important history of audiograms as well as कि PTAs में कैसे क्वेश्चन आएंगे and what you need to remember about in each audiogram whenever you are giving it. ठीक है, चलिए अब आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन, दैट इज बेरा. बेरा का मतलब क्या है? ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री. अब इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री? इसका मतलब यह होता है दैट दिस इज द मोस्ट कॉमन टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग डन इन चिल्ड्रन. अगर मैं बोलूं विच इज द बेस्ट टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग ऑफ हियरिंग लॉस इन चिल्ड्रन, it is nothing but this is brainstem evoked response audiometry. Don't get confused, BERA or ABR is the same. Auditory brainstem response या brainstem evoked response audiometry, they are both the same terms. ठीक है? अब इंपॉर्टेंट क्या होता है? बेरा में क्या होता है? बेरा में we keep electrodes over the vertex and we keep a microphone in the ear of the child, और वो ईयरफोन से हमें क्लिक देते हैं, क्लिक साउंड. That click sound will travel in the whole auditory pathway, and that auditory pathway will create impulses. Those impulses or those potentials are caught by the electrodes over the vertex, और वो electrodes जब catch करते हैं वो potentials को, when the sound is traveling through the auditory pathway, they make a graph, and this graph is called as a BERA graph.
बेरा के ग्राफ पे देर आर 7 वेव्स विच यू विल सी 1 2 7, ये बनेंगी हमारी इंपॉर्टेंट बेरा की वेव्स. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि कौन सी वेव कौन सा सिग्निफाई करती है. तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट लेट्स से दिस इज योर इनर ईयर, दिस इज योर हेयर सेल्स. हेयर सेल्स से निकलेगी वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व which will go into your brainstem and finally it will go into your brain. So always remember, whenever you are giving any kind of sound to the patient, that patient, the sound is traveling through the auditory pathway ईकोलीमा. और इकोलीमा का क्या मतलब है? एट्थ नर्व टू कॉक्लियर न्यूक्लियस, कॉक्लियर न्यूक्लियस टू ऑलिवरी कॉम्प्लेक्स, ऑलिवरी कॉम्प्लेक्स टू लैटरल लेमनिस्कस, लैटरल लेमनिस्कस टू इंफीरियर कॉलिकुलस, इंफीरियर कॉलिकुलस से मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से ऑडिटरी कॉर्टेक्स. इकोलीमा इज द पाथवे जो हमारा नॉर्मल ऑडिटरी पाथवे होता है. बट ऑलवेज रिमेंबर, बेरा में थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होती हैं. बेरा में जो लीड्स बन रही हैं, जो ग्राफ बन रहा है, दे आर डिफरेंट, और यही गलती करते हैं मैक्सिमम पीपल. बेरा में आपको याद रखना है, दीज 7 वेव्स आर फॉर्म्ड बाय ई कोली. MA नहीं आता, यानी कि द फर्स्ट वेव इज फॉर्म्ड बाय E, सेकेंड इज ऑल्सो बाय E, थर्ड इज बाय C, fourth is by O, fifth is by L, then 6 and 7 they are by E. So E coli, M and A do not contribute to Bera formation, medial geniculate body and auditory cortex. So E coli is something that you need to remember. अब what is E coli? E coli का मतलब है the moment the sound will cross into the vestibulocochlear nerve, इस part of vestibulocochlear nerve को कहते हैं distal segment, because this is away from the brain. So distal segment of the 8th cranial nerve is going to be wave number 1. When this sound will travel next to the brain, this will travel in the proximal portion of the vestibulocochlear nerve. This is going to be wave number 2, proximal part, जो just brain के अंदर जाने वाली है. That is something which is wave number 2. Now comes wave 3. Wave 3 कहां पे आई? Cochlear nucleus. Wave 4 कहां पे आई? Olivary complex. Wave 5 कहां से आई? Lateral lemniscus. वेव 6 एंड 7 कहां से आई? इंफीरियर कॉलिकुलस. आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस. अब अगर मैं आपसे पूछूं, सिंपली मुझे बस एक चीज सोच के बताना, अगर मैंने आपसे पूछा विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट वेव ऑन बेरा, विदाउट अ डाउट द बेस्ट एंड द मोस्ट रोबस्ट वेव ऑफ बेरा इज नंबर 5, क्योंकि देखो ये सबसे बड़ी है. तो आई ऑलवेज चेक माई 5th वेव द मोमेंट इट इज मेड. सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे रोबस्ट, सब कुछ, दैट इज 5th वेव, राइट? दैट इज produced by what? It is produced by lateral lemniscus. So the most robust wave of Bera is number 5. Best wave to see on Bera is number 5. What produces 5th wave is lateral lemniscus. Straightforward questions. अब मैं आपको INI-CET का क्वेश्चन बताता हूं. There are 2 things that you see in Bera waves. एक, कोई भी वेव कितने टाइम के बाद आती है? That is usually in milliseconds, and this period is called as latency period. And the second thing that you see is at how much level or amplitude this wave is getting formed, which is called as amplitude. तो ये देखो, ये इनके amplitude है 0.25, 0.5, ये सब इनके amplitudes हैं. After how much time each wave is getting formed, that is called as latency. Usually all the 7 waves get formed on the first 10 milliseconds. अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, और मेरा क्वेश्चन ये होता है कि let's say there is a patient who has come to you, और ये exact question है INI-CET का, and that patient has got normal amplitude, but the patient has got increased latency of wave 5. Increased latency of wave 5 का मतलब क्या हुआ? That the wave 5 is now formed very late. तो अगर wave 5 बहुत late form हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? That means the sound is getting transferred very slow from the cochlea to the brain. बहुत धीरे धीरे आ रहा है, और वो किस कंडीशन में दिखेगा? जब कोई मेरी 8th नर्व में ट्यूमर हो जाएगा. अब अगर 8th नर्व में ट्यूमर हो गया, we call it what? That is basically vestibular schwannoma. So in vestibular schwannoma, wave 5 latency period will be higher. This is a classical question of INI-CET. They love asking this. So wave 5 latency will be much longer. ये 6-7 seconds के बाद आएगी, because there is a vestibular schwannoma that is present before it. ठीक है? There the latency period increases. ये याद रखिएगा. I think Javier has already answered that. Right? Okay. चलिए, अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, that now your wave 1 is absent, wave 1 नहीं बनी, तो where is the lesion? अगर wave 1 नहीं बनी, तो obviously the lesion is proximal to it, that means it is in the cochlea, because cochlea से ही तो vestibulocochlear nerve में आएगा. So if the wave 1 is absent on Bera, so obviously where is the lesion? Before it.
So that will be, the answer will be the lesion is inside the cochlea. This is also a previous INI-CET question. ठीक है, simple. So this is about Bera interpretation, very very important for you. Most important screening method यही है. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अलावा कौन सा स्क्रीनिंग मेथड है, so there is another screening method which is auto-acoustic emission. तो हमारा क्या होता है ना, ऑटो अकॉस्टिक एमिशन. एमिशन मींस दैट दिस इज अ पोटेंशियल व्हिच इज नॉर्मली जनरेटेड बाय आवर हेयर सेल्स. और हमारे जो आउटर हेयर सेल्स होते हैं ना, वो एंडोलिम्फ में मूव करते रहते हैं. And when they are moving, even at rest, when they are moving, they are creating certain potentials which we catch by using a microphone in the ear. So O for OAE and O for outer hair cell. Question ये आता है, OAE is basically generated from what? It is generated by the movement of our outer hair cells in the endolymph. And this is one more screening tool for Bera. So basically अगर जब भी हम बच्चे की hearing screening करते हैं, पहले OAE करते हैं, फिर Bera करते हैं. If OAE is absent, then we go for Bera. If OAE is present, then we don't go for Bera because Bera is a longer time to take, right? And it is very well answered. It is done on the first day of the newborn. जैसे बच्चा पैदा होता है, पहले दिन हम OAE चेक कर लेते हैं, right? अगर OAE absent है, तो obviously we have some issues with the cochlea and we go for Bera testing. ठीक है, चलिए. तो ये हो गई कहानी about the questions which are probable in cases of ear and its basic stuff. अब आ जाओ पैथोलॉजीज पे. So we are going from external ear to middle ear to inner ear, और इस तरीके से सारी पैथोलॉजीज खत्म करेंगे. We are going to take some amount of time in ear to finish क्योंकि ear सबसे लंबा है. Diseases of external ear में मैं आपको फटाफट बस दिखाता चलूंगा. It's more of a visual representation of whatever I'm showing you as IBQs. First disease is otomycosis. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आया that the patient is from a tropical climate having severe itching inside the ear and has got a foul smelling odor discharge that is coming out, the answer is most commonly otomycosis. और generally ये diabetics में ज्यादा होता है. अगर मैं आपसे पूछूं what is the most common organism that is responsible for this, then it is Aspergillus niger and Candida albicans. Aspergillus हमेशा काला होता है because it is written as Aspergillus niger. Niger means black, so it has got black filamentous colonies, right? As well as if you see Candida, Candida हमेशा white होता है, उसका नाम ही albicans है. Alba means white, so it is curdy white. So when you see, तो आपको दिखेगा filament white and black and white. तो आपको ये black heads दिखेंगे. This is Aspergillus niger, and you will see whitish appearance, curdy white, and that is Candida albicans. Now this looks like a newspaper, so that is why it is also called as a wet newspaper appearance. ठीक है? How do you treat otomycosis? Treatment of otomycosis is oral toileting. That means you remove all the debris जो भी है fungus की, वो सब निकालनी है, and we give clotrimazole ear drops. Clotrimazole या फिर nystatin ear drops. ठीक है? This is the treatment. Another important condition is Ramsay-Hunt syndrome. हम लोग सबने देखा, Justin Bieber was the one who came over online, और Justin Bieber ने suddenly अपने fans को दिखाया कि what has happened to him. What happened to Justin Bieber was Ramsay-Hunt syndrome. So Ramsay-Hunt was a very big scientist and he was a big neurologist at the time of World War II, और उन्होंने देखा World War II के सारे कैंप में एक particular virus फैल गया, and that virus was nothing but it was our varicella zoster virus. Now this varicella zoster virus causes inflammation of the facial nerve. और फेशियल नर्व का नैरोएस्ट सेगमेंट कौन सा होता है? द नैरोएस्ट सेगमेंट ऑफ द फेशियल नर्व इज लैब्रिंथाइन सेगमेंट. लैब्रिंथाइन सेगमेंट इज ओनली 0.64 to 0.68 millimeters in diameter. So because this is the narrowest as well as this is the shortest segment, ये सिर्फ 4 मिलीमीटर का होता है. This is the most common segment to be involved with varicella zoster inflammation. ये सबसे common होता है, right? So what happens is there is reactivation of varicella inside the geniculate ganglion, जो कि एक facial nerve का ganglion होता है. varicella जिसकी chickenpox हो रखी होती है ना, उसके varicella जाके geniculate ganglion में बैठ जाता है, and it reactivates during the time of immunocompromised states. Now when it reactivates, it causes something called as herpes zoster oticus. तो herpes zoster oticus में triad मिलता है, and what is the triad? If you get a person who has got visible blisters which are present over the pinna and the external auditory canal, खूब सारे blisters होंगे, right? Now, when that blisters are going to happen, they will cause a lot of pain. So the patient will have a lot of pain, which will be otalgia, and the patient will have one half of the face which will be completely paralyzed, and that will be lower motor neuron type of facial palsy. तो अगर आपको तीन चीजें दिखी पेशेंट में, ब्लिस्टर दिखे बहुत सारे, you find that the patient is having low motor neuron palsy on one side, and you see that the patient is basically having severe ear pain. Answer is Ramsay-Hunt syndrome. अब क्वेश्चन आता है, what is basically you're going to do in this case? There are two drugs that you're going to give. One is antivirals. Antivirals में the drug of choice is acyclovir.
which is given 2000 mg per day. तो एसाइक्लोवीर ऐसा ड्रग है जिसकी 400 mg की टैबलेट आती है, we give for 5 days, right? 400 mg 5 times a day for 5 days. So usually we give 2000 mg of acyclovir, right? And the second thing that you will give is a steroid. Why steroids? Because steroids में prednisolone, methylprednisolone, hydrocortisone, डेक्सामेथासोन, ये सारे स्टेरॉइड्स नर्व के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, नर्व के एडिमा को कम करते हैं. तो नर्व जहां पे आएगी वहां पे स्टेरॉइड आएंगे. नर्व हमेशा steroids are saving for nerves. That is why wherever the nerve comes, steroid will come. So prednisolone together with acyclovir is the treatment of choice. ठीक है, चलिए अब आ जाता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इफ दे गिव यू अ क्वेश्चन ऑफ अ डायबिटिक मैन, that diabetic man has got severe ear pain, that diabetic man has got severe profuse as well as foul smelling ear discharge, and you see granulations inside the ear canal, what is the most common? This is malignant otitis externa, also given the name as skull base osteomyelitis, also given the name as necrotizing otitis externa. नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना भी कहते हैं. तो बेसिकली दिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑर्टरी कैनाल, सॉफ्ट टिश्यूज एज वेल एज बोन्स. ये जो सारी की सारी बोन और एक्सटर्नल ऑर्टरी कैनाल सब चीजें खराब हो जाती हैं, एंड इट स्प्रेड्स टू द बेस ऑफ स्कल एंड कॉजेस क्रेनियल नर्व पैल्सीज. दैट इज व्हाई दिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन व्हिच कॉजेस मोर देन 50% मोर्टेलिटी. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें ये याद रखनी है कि ये दो चीजें आपको इसमें देंगे. पहली चीज देगा कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज या फिर ऑर्गेनिज्म. So the organism that is the most common is Pseudomonas aeruginosa, right? Second thing that they will ask you in this is that it occurs in whom the most. It is most common in immunocompromised hosts, that is including diabetes mellitus. दूसरा नाम क्या होता है? Necrotizing otitis externa, skull base osteomyelitis. Now, very important, here they will have the classical feature that जो भी patient होंगे, diabetics होंगे, they will have severe ear pain, they will have प्यूरिलेंट ओटोरिया, बहुत फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज निकलेगा कान से, एंड दे विल गिव यू दैट द पेशेंट हैज गॉट मल्टीपल क्रेनियल नर्व पैल्सीज, क्योंकि ये स्कल बेस इन्वॉल्व करता है, तो मल्टीपल क्रेनियल नर्व्स भी पैरालाइज हो जाती है. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मोस्ट कॉमन क्रेनियल नर्व टू बी इन्वॉल्व्ड, द मोस्ट कॉमन क्रेनियल नर्व विल बी फेशियल नर्व. फेशियल नर्व सबसे कॉमन क्रेनियल नर्व है which will get involved in this case. Now, the hallmark feature of any disease which is erosive, जब भी कोई भी बोन इरोडिंग प्रोसेस होती है, तो जब भी हमारी बोन इरोड होती है, सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्युलेशन टिश्यू. ये हमारे हीलिंग टिश्यूज होते हैं. तो व्हाट विल यू सी व्हेन यू एक्चुअली लुक इनसाइड द कैनाल, यू विल फाइंड दीज डर्टी ग्रैन्युलेशन टिश्यूज रेड इन कलर, which will be many in the external artery canal. So if I ask you what is the hallmark sign for malignant otitis externa, you have to tell they are granulations at the bony cartilaginous junction. Why? Because यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है और वहां पे हीलिंग टिश्यू बन रहा है, बहुत सारे ग्रैन्युलेशंस बन रहे हैं, which is the hallmark sign. क्लासिकल क्वेश्चन. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस पेशेंट की बोन डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो हाउ विल आई सी दैट दिस बोन ऑफ द एक्सटर्नल ऑर्टरी कैनाल इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड? Bone, anywhere where you want to see bone destruction, you will want to do a bone scan. So the investigation of choice for looking at bony destruction is technetium 99 bone scan. Technetium 99 एक रेडियो न्यूक्लियाइड होता है, we give it intravenous. तो हमेशा जहां पे भी इन्फ्लेमेशन या बोन इरोजन हो रहा होता है ना, technetium 99 is usually taken up a lot at that area. And that is the point of time you get to know कि bone destruction हो रहा है, and you confirm using a technetium 99 bone scan. तो अगर मैंने आपसे बोला investigation of choice to find out bone destruction, answer is technetium 99. अब आप क्या करेंगे? Now in order to treat this condition, you will start the patient on antibiotics. So you will give this patient ciprofloxacin. Ciprofloxacin is a drug of choice because ciprofloxacin is a fluoroquinolone which hates Pseudomonas. सबसे अच्छा gram negative cover यही देता है. So ciprofloxacin hates Pseudomonas. It's the most potent anti-pseudomonal drug, and that is why half of the ENT practices is dependent on ciprofloxacin as a drug for ear conditions, right? तो होगा क्या जब आप ciprofloxacin देंगे, तो ये particular inflammation reduce होगा. तो जब ये inflammation reduce होगा ना, तो you need to give the ciprofloxacin for 4 to 6 weeks. तो अब हमें कैसे पता चलेगा that this patient is getting better? So you will keep doing 2 important tests in the patient. That is on follow-up. You will see laboratory में ESR and CRP levels. ESR और CRP क्या होते हैं? These are acute phase reactants. They always rise in inflammatory pathologies. ये एक inflammatory pathology है. तो अगर if you see that these laboratory parameters are dropping, that means the inflammation is getting reduced, your treatment is good. Now comes the next point.
that अगर in case ESR और CRP आपके बढ़ रहे हैं, they are increasing, then obviously this bone destruction is continuing and it's not working. तो आपको change करना पड़ेगा drug. The second thing is gallium 67 scan. Gallium 67 का मतलब होता है that this is one particular scan जो हम लोग क्या करते हैं, when we give gallium 67 it is taken up by the inflammatory site. अगर gallium 67 is not taken up, that means obviously the patient has improved. अगर gallium 67 is a radionuclide which is taken up, तो obviously it is not there. That means the patient is not improving with your treatment. तो अगर मैं पूछूं what is the best on follow-up, तो radiological follow-up is by gallium 67 and biological or laboratory follow-up by ESR and CRP levels, just to check कि आपका treatment काम कर रहा है कि नहीं. First line of treatment is always medical. Drug of choice ciprofloxacin. If ciprofloxacin is resistant, then the second drug that you give is ceftazidime. ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे. आई थिंक ऑलरेडी आप लोगों ने सबने बता दिया है, राइट? सब लोगों ने बहुत बढ़िया. जेवीआर इज गिवन अ होल समरी ऑफ व्हाट इट इज. तो ये जो बताया है, दिस इज समथिंग व्हिच इज द टेक्नीशियम 99 बोन स्कैन की स्टेजिंग, राइट? व्हाट ही इज टेलिंग राइट नाउ. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस टेक्नीशियम 99 इज द वन व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन ऑन फॉलोअप. सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो हमारी बोन इरोजन देखेगी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आ गया क्वेश्चन कि आपके पास एक पेशेंट आया, दैट पेशेंट हैज गॉट अ हिस्ट्री ऑफ URTI and that patient has got now fever and it has got earache. तो अब आपने inside the ear देखा, you see a congested tympanic membrane, you see multiple vessels on the tympanic membrane, and this is a classical appearance called as cartwheel appearance. Cartwheel appearance. What is the diagnosis? The diagnosis is acute suppurative otitis media. Very, very important. So whenever you have got any particular aspect of acute onset disease of ear, especially in a child with URTI, तो obviously URTI में वो infection travel कर गया होगा from the eustachian tube into the ear and it has inflamed the middle ear and that causes a leash of blood vessels over the tympanic membrane, जिसे कहते हैं cartwheel appearance. This is a classical signature for acute suppurative otitis media, where pus starts to form behind the tympanic membrane. अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि acute suppurative otitis media का क्या management है, the best management of acute suppurative otitis media is antibiotics and decongestants. तो मैं आप usually INI-CET क्या पूछता है, वो पूछेगा आपसे what is the next step of management in this case. So next step of management is always medical. Antibiotics देंगे for bacterial cover, right? At the same time decongestants, that means oxymetazoline, xylometazoline जो आप Otrivin की use करते रहते हैं नाक में. What is that going to do? That is going to open up the eustachian tube and drain out the pus. So basically you're reducing the compartment pressure and that is why this is the most important management strategy. In case आपका medical line of management fail हो गया, तो failed case में what will we do? In that case we will do myringotomy. मिरिंगा मतलब होता है ईयर ड्रम, ऑटमी मतलब होता है ओपन करना. नाउ मिरिंगोटमी में दो टाइप के इंसिजन दे सकते हैं. वन इज इन द एंटेरो इंफीरियर क्वाड्रेंट. तो सबसे पहले तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को समझो, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. इफ इन द फिगर योर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज टिल्टेड टुवर्ड्स द राइट, तो वो राइट साइड की है. इफ इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो वो लेफ्ट साइड की है. ऑलवेज रिमेंबर, जिस साइड पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टिल्टेड है वो साइड एंटीरियर है, दूसरा साइड पोस्टीरियर है. दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई. अब देखो इसमें यू सी दैट द होल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज टिल्टेड टुवर्ड्स मी लेफ्ट साइड, तो ऑब्वियसली ये लेफ्ट साइड की टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, राइट. नाउ आई टोल्ड यू दैट द साइड टुवर्ड्स व्हिच इट इज टिल्टेड इज एंटीरियर, मतलब ये एंटीरियर है, दिस इज पोस्टीरियर, राइट. नाउ यू सी, if you draw four quadrants of the tympanic membrane, then you will have one quadrant antero-superior, one quadrant antero-inferior, postero-inferior, postero-superior. Now, always remember one thing, that the cone of light or the reflection of the light of the otoscope will always be in the antero-inferior quadrant. तो एक और तरीका क्या find करने का है कि look at the cone of light. If you can see the cone of light, it will always be in the antero-inferior quadrant, and you can figure out which side tympanic membrane they are talking. ठीक है. अब मिरिंगोटमी करने के लिए वी गिव टू टाइप्स ऑफ इंसिजन्स. वन इज कॉल्ड एज रेडियल इंसिजन. रेडियल का मतलब होता है स्ट्रेट, विच इज गिवन बिटवीन द अंबो. अंबो का मतलब द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द मैलियस ऑन द पास टेंसा एंड द एन्युलस. एन्युलस इज द रिम अराउंड द पास टेंसा. So in between them you give a straight incision and you drain out the fluid. That is called as radial approach, right?
Now comes another. There is another type of incision where we give circumferentially. Circumferential means, see, this is circumferential, a little curved. This is given in the posterior-inferior quadrant. ये antero-inferior है because it is tilted this way. This is antero-inferior quadrant. Posterior-inferior में we can give a circumferential incision. Always remember, radial incision is usually given in otitis media with effusion क्योंकि उसमें बहुत पस नहीं होता. Obviously, it's a sterile fluid. It is very thin. Circumferential incision is usually given in cases of ASOM. That's another important point. क्योंकि उसमें पस होता है, you need to take out the pus which has consolidated. Second important thing, kabhi kabhi in cases of ASOM we don't give circumferential incision. Sometimes we give two incisions in ASOM. एक antero-inferior में radial, एक antero-superior में radial. If we give two radial incisions, antero-superior and antero-inferior, तो ये ऐसे लगेगा ना किसी ने कैन को खोल दिया है. So this looks like something like a beer can principle. What is beer can principle? Beer can principle is a principle जिसमें हम दो incisions देते हैं radial, one in antero-superior, one in antero-inferior. Right? And this is going to relieve the pressure easily. आप सारा पस निकाल पाएंगे, and that is why this beer can principle is followed in ASOM, not in OME. ठीक है? चलिए, तो ये हो गया about myringotomy. Now, if I ask you, which among the following is the quadrant you will not do myringotomy? So you will never do a myringotomy in the posterior-superior quadrant. This is the most unsafe quadrant of tympanic membrane. Why? क्योंकि इसके just पीछे होता है 𝐒𝐄𝐝 joint. If you accidentally pierce here, you might injure the 𝐒𝐄𝐝 joint, and that might lead to conductive hearing loss. That is why never ever touch the posterior-superior quadrant. It is the most unsafe quadrant, and that is the area we need to respect. ठीक है? Because it has got 𝐒𝐄𝐝 joint. चलिए आगे बढ़े. Now you see this case. If you get a child has adenoid hypertrophy, and that adenoid hypertrophy child has got now conductive hearing loss. You see the tympanic membrane. And now when you see the tympanic membrane, so see this. This particular child, iski tympanic membrane is tilted towards the right. Right? Ye ho gaya iska malleus. This is the malleus. This is the cone of light. What is this side? This side is anterior, this side is posterior. Tilted towards the right, that means this is right-sided tympanic membrane. What do you see in this tympanic membrane? Behind the normal tympanic membrane, you have got fluid. You have got air fluid levels. What is this air fluid levels? You see a lot of bubbles behind a normal tympanic membrane. If you see a lot of bubbles behind a normal tympanic membrane, the answer is adenoid associated otitis media with effusion. Right? अब क्वेश्चन ये आता है कि इस केस में आप क्या करेंगे? How will you treat this child? तो never forget, अगर उन्होंने आपसे ये बोला ना कि एडिनॉइड से एसोसिएटेड है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, तो आपका आंसर होगा आई विल डू अ myringotomy प्लस एडिनॉइडेक्टमी. If they just give you adenoids alone, no conductive hearing loss, then adenoidectomy is enough. But see the question carefully. अगर उन्होंने adenoid के साथ CHL बताया है, that means the patient has got glue ear. बिल्कुल ठीक आप लोग बोल रहे हैं, glue ear है. तो अगर serious otitis media mentioned है, conductive hearing loss mentioned है, so the answer of management will be adenoidectomy with grommet insertion with myringotomy. That will be the complete management strategy, not adenoidectomy alone. ठीक है? अब इसमें भी हम क्या करते हैं? Once we need to drain out the fluid, we make a radial incision, right? Now, once we make the radial incision, we open this. अब होगा क्या? If we open this, most of the time it closes on its own. तो ताकि ये खुला रहे, we take a ventilation tube, and that ventilation tube is called as grommet. तो grommet कुछ इस तरीके का होता है. It's like this. So what we do? We insert this grommet through the tympanic membrane. One part of the tube is inside, one part of the tube is outside. So what will happen now? The discharge or the fluid which will keep collecting, it will keep coming out of this grommet. ये अपने आप आता रहेगा. So if you see anywhere over the tympanic membrane एक white color का open button type की चीज, so this is grommet. This is ventilation tube. ठीक है? Fine. So always remember, this is how the question will be. Most common cause of otitis media with effusion in children is adenoid hypertrophy. Most common cause of OME in adults is nasopharyngeal carcinoma. Classical presentation of single-sided OME in an adult. It is nasopharyngeal carcinoma. बच्चों में ही सिर्फ रहते हैं, right? बच्चों में ही सिर्फ adenoid रहते हैं. After 12 years of age, adenoids go away. You don't find anything else. But always remember, in adult, if you have an OME, if you're seeing this kind of a picture, then you have to see for NPC also, nasopharyngeal carcinoma also. ठीक है? चलिए आगे बढ़े. Okay, big gun.
क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, एटिकोएंड्रल डिजीज, या फिर इसे हम अनसेफ ईयर भी कहते हैं. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, अनसेफ ईयर और एटिकोएंड्रल डिजीज तीन तरीके की होती है. Either it is a congenital cholesteatoma, or it is a primary acquired cholesteatoma, or it is a secondary acquired cholesteatoma. तीन हो गए हमारे ये major, right? Now, if they tell you that there is a child who has come with hearing loss, and if you see this is the tympanic membrane of the child, so what are you seeing over here? Here you are seeing that there is a pearly white mass. अब पहले तो ये decide करो कौन सी side की है. See, this is tilted towards the right, so this is right side. This side is anterior, this side is posterior, right? And you can even see the cone of light in the antero-inferior quadrant. So obviously, this quadrant is antero-superior. So what you are seeing over here in this child who has come with conductive hearing loss, you see that there is a pearly white mass. There is a pearly white mass behind a normal tympanic membrane. So if you see any child coming to you with a mass in the antero-superior quadrant, most common quadrant is antero-superior, and this is pearly white, and the pars tensa, pars flaccida is all normal. What is your diagnosis? The diagnosis is congenital cholesteatoma. So congenital means that this is there since birth. So what happens is, during the time of birth, there are certain epithelial cells. These epithelial cells stay inside the middle ear. वो जाते नहीं हैं, they don't go away, and they stay inside the middle ear and they grow. Most commonly at the antero-superior quadrant. तो इसीलिए इसको कहते हैं Teed's epithelial cell rest theory. This is the theory which gives the foundation of congenital cholesteatoma. That states that कि जब बच्चा पैदा होता है तो epithelial cells stay inside the middle ear and they proliferate. Right? So epithelial cells ही वही skin है. That is the skin. Skin in the wrong place is a very vague term, but यही skin है. These epithelial cells stay inside the antero-superior quadrant and they form a pearly white mass. Right? Now, if you find any child who has got a pearly white mass with a normal tympanic membrane, pars tensa and pars flaccida, this child has got no prior history of discharge or any surgery. There is no surgery done. There is no discharge in the child. This criteria is given the name as Levenson's criteria. What is Levenson's criteria? It is a criteria for congenital cholesteatoma, right? That is basically the one which states that if there is a child who has got a pearly white mass behind a tympanic membrane, pars tensa is normal, pars flaccida is normal, even if the child has got prior history of otitis media, that does not form the grounds of exclusion. The patient has got no prior history of discharge, क्योंकि होल ही नहीं है तो discharge कैसे होगा? There's no prior history of any surgery. Then it is basically a congenital cholesteatoma. Yes, it can involve the inner ear, not metastasis. Metastasis गलत word है, वो कैंसर के लिए होता है. Inner ear is a common site to be involved. हो सकता है कभी-कभी inner ear में भी दिख जाए. Inner ear में exactly नहीं दिखता, but the second most common site for this pearly white mass to form is the petrous apex. Petrous bone का जो apex होता है, there also you can form or you can find this pearly white mass to be present. ठीक है, Dr. Anubhav? Okay. So this is something which is on the basis of Teed's epithelial cell rest theory. अब आ जाते हैं into the second game. Second आ गया primary acquired cholesteatoma. What do you understand by primary acquired cholesteatoma? अब इसको ऐसे समझो. Primary acquired cholesteatoma का मतलब है if they give you any question, इस क्वेश्चन में they will tell you that the patient has got no history of discharge, no history of perforation. यानी कोई भी perforation नहीं है, कोई भी discharge नहीं है, but still there is a cholesteatoma. What is that? That is a primary acquired cholesteatoma. Primary acquired cholesteatoma usually occurs in retraction pockets. In retraction pockets. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि प्राइमरी अक्वायर्ड कोलेस्टेटोमा की थ्योरीज क्या बोलती हैं, राइट? सो प्राइमरी अक्वायर्ड कोलेस्टेटोमा की बेसिक जो थ्योरीज होती हैं, दैट इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. पहली थ्योरी होती है विट-मैक्स थ्योरी. विट-मैक्स थ्योरी. सेकेंड थ्योरी दैट यू नीड टू नो इज रूडीज थ्योरी. थर्ड थ्योरी दैट यू नीड टू नो इज Teed's theory. These are the three theories which basically understand or which give us an understanding about what is primary acquired cholesteatoma. अब इसका क्या मतलब है? What are these theories? ये important questions हैं आपके एग्जाम में. Let's say this is your external auditory canal
एक्सटर्नल ऑर्टरी कैनाल का एक इंपॉर्टेंट प्रोट्रूजन होता है नीचे, एंड दिस प्रोट्रूजन इज गिवन द नेम एज स्क्यूटम. इसे हम स्क्यूटम कहते हैं. वी कॉल दिस एज स्क्यूटम. स्क्यूटम पे भी क्वेश्चन आया है. व्हाट इज स्क्यूटम? स्क्यूटम इज नथिंग बट इट इज अ सुपीरियर प्रोजेक्शन विच इज प्रेजेंट इन आवर एक्सटर्नल ऑर्टरी कैनाल. ठीक है. लेट्स से दिस इज आवर पार्स फ्लैसिडा एंड दिस इज आवर पार्स टेंसा. ये हमारी पार्स टेंसा हो गई और ये हमारी पार्स फ्लैसिडा हो गई. ओके. नाउ यू हैव गॉट योर मैलियस. मैलियस हमारी किस पे अटैच होती है? द मैलियस अटैचेस. मैलियस हमारी अटैच होती है टू दी पार्स टेंसा. मैलियस पे अटैच होती है इंकस. इंकस अटैच होती है टू स्टेपीज विच ओपन्स इन आवर इनर ईयर. ठीक है. पहली थ्योरी, विटमैक्स थ्योरी. विटमैक्स थ्योरी मींस रिट्रैक्शन पॉकेट थ्योरी. Now, what do you understand by this retraction pocket theory? That means there is an important tube which opens into the middle ear. This is called as eustachian tube. If a patient has got any mass in the nasopharynx, this eustachian tube will block. If the eustachian tube will block, then there is going to be negative pressure inside the middle ear. When there will be negative pressure inside the middle ear, the most common area to get that effect will be the Prusac space. Prusac space मैंने बताया था, ये space है Prusac space, just behind the pars flaccida. So Prusac space will be the first one to get affected, and what will happen, क्योंकि pars flaccida is very flaccid, this pars flaccida will go inside like a pocket, and this is called as retraction pocket. Now inside this retraction pocket, क्योंकि हमारी ये पूरी की पूरी tympanic membrane is lined on the outer side by epithelial cells, the epithelial cells start to collect inside this retraction pocket. And if epithelial cells will collect in this retraction pocket, it will expand this pocket. ये expand करती चली जाएगी and it will form a cholesteatoma. This is called as Wittmann's theory of retraction pocket, which is a very important theory for primary acquired cholesteatoma. तो हुआ क्या? अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, so this is what a primary acquired cholesteatoma looks like. If you see, this is the right side tympanic membrane क्योंकि ये right की तरफ tilted है. Pars tensa में कोई problem नहीं है. ऊपर का देखो, pars flaccida has a hole. Why? Because there is a retraction pocket over here. ये retract कर गया अंदर, and now cholesteatoma is filled inside. You can see even these whitish debris of the cholesteatoma, the flakes of the cholesteatoma inside this, right? ये होती है हमारी important retraction pocket theory. Second, रूडी थ्योरी का मतलब होता है बेसल सेल हाइपरप्लेजिया थ्योरी. बेसल सेल हाइपरप्लेजिया थ्योरी का क्या मतलब है? बेसल सेल हाइपरप्लेजिया थ्योरी का ये मतलब है that now this particular tympanic membrane जो pars flaccida है, इसकी जो epithelial cells हैं, right, the basal cells, the epithelial cells, they start to proliferate, and when they start to proliferate inwards, they form a cholesteatoma. So it is basically the epithelial cells which are proliferating inwards. The basal layer of the epithelial cell, when it proliferates, that forms a cholesteatoma called as Rudy's basal cell hyperplasia. Hyperplasia का मतलब number of cells increase. Finally आते हैं Sades metaplasia theory. Sades metaplasia का मतलब क्या होता है? Sades metaplasia का ये मतलब होता है that now because of constant infections जो eustachian tube की वजह से हो रहे हैं, the constant infections that happen in the middle ear, जैसे acute otitis media बार बार होता रहा, that changes the epithelium from one side to another. One epithelium when it changes to another, it's called metaplastic. So जो ऊपर का epithelium होता है, it becomes squamosal. The attic or the upper type of epithelium becomes squamous type, and when it becomes squamous type, it is called as unsafe. So the epithelium which is normal changes into squamous type, and that is what is called as metaplasia theory. So तीन important theories हैं for primary acquired cholesteatoma, right? Now, if they give you secondary acquired cholesteatoma, that means this is secondary to a perforation. Patient has a history of perforation. Patient has a history of discharge. Primary acquired में discharge और perforation की history नहीं थी. इसमें discharge और perforation की history होगी. This is secondary to a perforation. That means there is a perforation in the tympanic membrane now. Now, what is this theory going to be? This theory is going to be Haberman's theory. And Haberman ये बोलता है that when there is a perforation, and usually this perforation is a marginal perforation. Usually it is a marginal perforation. Marginal का मतलब है if this is a tympanic membrane, this perforation is at the margin. And in marginal perforations, the annulus is lost. Annulus नहीं रहता. So always remember, annulus is a guide or a protector of our tympanic membrane. अगर annulus नहीं होगा, so what will happen? All this epithelium which is present inside the external artery canal, it will start growing or migrating inside. So all this epithelium of the external artery canal, it migrates inwards through this marginal perforation, and this is called as Haberman's epithelial migration theory, also called as migration theory or epithelial migration theory, given by Haberman.
So this is called as the theory for secondary acquired cholesteatoma. ठीक है, फाइन. सो दिस इज समथिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो मैंने आपको बताया, मैंने आपको ये भी दिखाया हाउ विल यू सी दीज केसेस. किसमें आपको परफोरेशन देखना है, किसमें डिस्चार्ज की हिस्ट्री देखनी है, किसमें रिट्रैक्शन पॉकेट देखना है, किसमें कंजेनाइटल देखना है. ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं. अब एक चीज और मैं बता दूं, अगर कोलेस्टेटोमा का क्वेश्चन आया एंड दे आस्क यू व्हाट शुड बी द मैनेजमेंट ऑफ कोलेस्टेटोमा, इट इज नथिंग बट मैस्टोइड एक्सप्लोरेशन. You have to explore the mastoid. There is no line of medical treatment in cholesteatomas क्योंकि ये अनसेफ है, ये डेंजरस है, तो you have to go straight away for surgery. अगर ट्यूबोटिम्पैनिक डिजीज का क्वेश्चन आता है तो ट्यूबोटिम्पैनिक डिजीज में भी वेट टिल द टाइम डिस्चार्ज कम हो जाएगा. डिस्चार्ज कम होने के बाद वी विल ऑपरेट एंड डू अ टिम्पैनोप्लास्टी. कोलेस्टेटोमा में हमें नहीं रुकना है. कोलेस्टेटोमा में वी हैव टू ऑपरेट एज सून एज पॉसिबल, नहीं तो पेशेंट विल एंड अप इनटू कॉम्प्लिकेशन. ठीक है, चलिए एक और बात बता देता हूं. लेट्स से आपके पास एक और क्वेश्चन आया and in that particular question that was asked some time back in INI-CET, और उसमें उन्होंने कहा कि there was a patient, उसके somebody slapped his ear, और slap के बाद he had severe tinnitus, conductive hearing loss, and he has got some kind of a decrease or oral fullness inside the ear. Now that particular patient comes to you और आपने देखा कि उसकी जो tympanic membrane है उसमें एक irregular perforation है. What is this? If this perforation is acute after a slap, then obviously this is a traumatic perforation. Traumatic perforations are always irregular. Traumatic हमेशा irregular होते हैं, याद रखना. So if it is an irregular perforation or a traumatic perforation, question ही आएगा what will you do in this case? So always remember traumatic perforation में you need to do nothing. The only thing that you need to do is wait and watch strategy. Wait and watch. क्यों? क्योंकि this particular traumatic perforation will heal on its own. 90 to 99% of the cases heal on their own. Why? Because ये जो irregular edges हैं, they will proliferate and they will close the perforation after some time. अगर ये perforation 3 महीने से ज्यादा रहा, it does not heal, then in that case you need to do a meringoplasty. But in traumatic perforations, the rule of the book is never do anything, don't touch. Don't even let water enter inside the ear. अगर आपने इसमें ear drop दे दी तो ये perforation अपने आप बड़ा हो जाएगा. So don't do anything, wait and watch, keep the ear dry in traumatic perforations if they give you a history of trauma. Remember this line, remember this question. Okay? So it heals on its own. It heals on its own. Traumatic perforation के लिए ये याद रखना. If they give you a case in which they have told कि patient के prior history of chronic otitis media थी and now the patient has conductive hearing loss and you see this kind of a picture on tympanic membrane. तो व्हाट इज दिस? ये देखो, ये पर्ली व्हाइट नहीं है, ये एंट्रो सुपीरियर क्वाड्रेंट में भी नहीं है. यू सी दैट देयर इज चॉक लाइक डिपॉजिट ओवर द पार्स टेंसा. चॉक लाइक डिपॉजिट्स ओवर द पार्स टेंसा. बेसिकली क्या होता है? दिस इज नथिंग बट कैल्शियम डिपॉजिट्स. तो कैल्शियम स्टार्ट्स टू डिपॉजिट इन द फाइब्रस लेयर ऑफ द पार्स टेंसा. And when this fibrous layer of pars tensa has got chalky deposits, we call this process as hyalinization. ये होता है hyalinization. And this is nothing but this is called as tympanosclerosis. मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था tympanosclerosis के बारे में. Where if I do any impedance audiogram in this, तो impedance में AS कर्व दिखेगी. मैंने बताया था आपको S for sclerosis. तो इससे tympanic membrane बहुत stiff हो जाती है. And if it becomes stiff, obviously it will not move to your sound, and that is the reason you will have this kind of a picture. So chalky white deposit, tympanosclerosis. Hyalinization of the tympanic membrane occurs. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नाउ इफ यू हैव गॉट, दिस इज अ ट्रिक केस. ये एक बार क्वेश्चन आया था बहुत पहले, और इसमें ट्रिक ये है कि आपके पास एक पेशेंट है क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया का, आप उसको एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक से ठीक ही नहीं होता. देयर इज पर्सिस्टेंट डिस्चार्ज स्टिल एंड देयर इज प्यूरिलेंट डिस्चार्ज. तो बेसिकली अब क्या है? दिस इज नथिंग बट टीबी. टीबी का क्या मतलब है? ट्यूबरक्यूलस ओटाइटिस मीडिया में आपको याद रखने हैं 6 P's. इफ दे टेल यू दैट योर पेशेंट इज हैविंग पेनलेस ओटोरिया, आता जा रहा है बट पेनलेस है, तो फर्स्ट पी इज पेनलेस ओटोरिया. व्हेन यू सी द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यू सी एक परफोरेशन नहीं है, 2-3 परफोरेशंस हैं, 2-3 भी हो सकते हैं. दैट मींस मल्टीपल परफोरेशंस. तो दैट मींस यू डोंट हैव परफोरेशन, यू हैव परफोरेशंस. सेकंड पी. इफ दे टेल यू दैट थ्रू दिस परफोरेशन, आपको देखिए बहुत पिंक पिंक कलर के ग्रैन्युलेशन दिख रहे हैं. टीबी इज अ ग्रैन्युलोमैटस डिसऑर्डर, इट हैज गॉट ग्रैन्युलेशंस. So P for pale granulations. In TB, you will have persistent discharge even after antibiotics. क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट ATT होता है और कुछ नहीं. If you have got facial palsy, because TB is a bone eroding process,
तो टीबी बोन इरोड करती है, सो इट इज वेरी कॉमन टू हैव लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पल्सी, राइट? एंड दिस टीबी विल हैव प्रोग्रेसिव मिक्स्ड हियरिंग लॉस, यानी कि द पेशेंट विल हैव एसएनएचएल प्लस कंडक्टिव हियरिंग लॉस, बोथ मिक्स्ड टाइप। तो ये होती है क्लासिकल टीबी की पिक्चर, एंड दीज आर द 6 P's ऑफ ट्यूबरकुलस ओटाइटिस मीडिया। टीबी के 6 P ये होते हैं, ठीक है? ये याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलिए अब आ जाते हैं इनटू द नेक्स्ट, और ये अगेन फेवरेट क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मोस्ट कॉमन इंट्राटेम्पोरल कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, तो इंट्राटेम्पोरल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया होती है मैस्टोइडाइटिस, पिट्रोसाइटिस, लैब्रिंथाइटिस, sensorineural hearing loss and facial palsy. These are the 5 important intratemporal, temporal bone के अंदर जो complications होती हैं for chronic otitis media. अगर मैं पूछूं आपसे what is the most common intratemporal complication among them, then it will be mastoiditis. Most common is mastoiditis, intratemporal complication, ठीक है? अब क्वेश्चन आता है कि mastoiditis में आपको क्या दिखेगा? So this will be the mastoiditis picture. What are the signs of mastoiditis that you can see over here? The signs of mastoiditis that you can see over here is a red hot erythematous ironed out mastoid. ऐसे लग रही है गरम गरम किसी ने आयरन रख दी है यहाँ पे. That red hot iron looks like in the mastoid, right? So this is called as ironed out appearance. Big edematous mastoid. Now, if the mastoid is inflamed, it will push the pinna downward and forward. So there will be forward displacement of pinna. That is the second sign, what you can see over here. Third sign of mastoiditis, कान के पीछे, पिन्ना के पीछे groove होता है, which is called as retro-auricular groove. So this groove, obviously ये groove दिखेगा नहीं because there is so much of swelling behind. So there is obliteration of retro-auricular groove. Question यही आता है that this is the same picture that they give, and they usually ask which among the following is not a sign seen in mastoiditis. राइट? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के पीछे होता है मास्टोइड. So now if the mastoid is inflamed, so this is anterior wall, this is posterior wall of external auditory canal. ये external auditory canal है, इसके पीछे mastoid है. So which part of the external auditory canal is associated with the mastoid? Posterior wall. So whenever there is going to be mastoiditis, mastoiditis is going to push, the inflammation is going to push the posterior wall anteriorly. Why? Because there is so much of pressure over the posterior wall that it is going to pressurize and it will be pushed anteriorly. This is the process which happens because of osteitis. Osteitis मतलब bone इतनी ज़्यादा inflame हो जाती है that it keeps pushing the posterior wall anteriorly. So when you look, you will see that the posterior wall is sagging inside, and this is called as sagging of posterior canal wall. This is the next sign which you see in mastoiditis. What is the next sign you see in mastoiditis? Now, when you go inside this canal, and if you see the tympanic membrane, you will see a perforation over the tympanic membrane. And when you see a perforation over the tympanic membrane, तो tympanic membrane के perforation के through बहुत सारा discharge will come out. Why? Because this pus is filled inside the mastoid. ये बहुत सारा है. It will keep throwing its pus inside the middle ear, and middle ear pus निकालता रहेगा. Now this pus will be pulsatile, क्योंकि this pus is coming out from the mastoid and it is under tension. So this is going to be causing pulsatile otorrhea. Pulsatile otorrhea का क्या मतलब है? Pulsatile otorrhea का मतलब है that the otoscope light will shine and go because it is in the pulsation manner. तो ये pulsatile otorrhea जो निकलता है, this is basically called as the lighthouse sign, क्योंकि lighthouse की जो light होती है वो बिल्कुल ऐसी ही होती है. It comes and goes, so your discharge shines. That's called as pulsatile otorrhea. ठीक है संजय, I'm going to cover Grissinger sign बस इसके बाद ही. So I'll give you, सारी चीजें आएंगी. अब नेक्स्ट क्या फीचर होता है mastoiditis का? एक और इंपॉर्टेंट फीचर है mastoiditis का कि अगर आप इस पस को you suction out, so once you suction the pus will fill again. Again you suction the pus will fill again. Why? Because the mastoid is a reservoir of pus. तो उसे कहते हैं reservoir sign. Reservoir sign. That means once you suction, the discharge will fill again, and that is what I have written over here. ये सारी की सारी चीजें आपको दिखती हैं in cases of mastoiditis. अगर मैं आपसे पूछूं what is the most common organism for mastoiditis, answer will be Streptococcus pneumoniae. ये क्वेश्चन है.
सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग मास्टोइडाइटिस एस निमोनी। ठीक है, चलो वेरी गुड, आप लोग बहुत एक्टिव हैं, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, पल्सेटाइल मास आएगा, अभी आएगा, अभी आया नहीं है। अब अभी मुझे एक क्वेश्चन आया था ग्रिसिंगर साइन का, सो आई हैव टू कवर, अभी मैं आऊंगा उसके बारे में, अभी मैं बताऊंगा व्हाट इज दैट। अब आता है सेकंड, मैंने आपको बताया था पीट्रोसाइटिस। पीट्रोसाइटिस को हम लोग ग्रैडिनिगो सिंड्रोम भी कहते हैं। पीट्रोसाइटिस को याद करने के लिए यू नीड टू रिमेंबर 3 Ds ऑफ पीट्रोसाइटिस। इफ दे गिव यू दैट द पेशेंट हु हैज कम टू यू हैज गॉट ईयर डिस्चार्ज, D for discharge, has got deep-seated retroorbital pain, pain behind the eye, and third is diplopia. That means the lateral rectus is paralyzed, जो abducent nerve से supply होती है, and that is paralyzed and that is causing diplopia. So discharge, diplopia, and deep-seated retroorbital pain. This is a classical triad for pietrositis या Gradinego triad या Gradinego syndrome. ठीक है? So diplopia occurs because of 6th nerve palsy, जिसकी वजह से lateral rectus काम नहीं करती. And the deep-seated retroorbital pain occurs because of 5th nerve involvement, because of the irritation of the trigeminal ganglion. ठीक है? Yes, investigation of choice HRCT. Because CT scan पे हर चीज देखो, एक चीज याद रखना, CT पे बेस्ट बोन दिखती है, MRI पे बेस्ट सॉफ्ट टिश्यू दिखते हैं. तो whenever you want to see bones, CT. Do you want to see the Petrus bone for pietrositis? Do a CT. Very good. Javier is giving up all the questions over here. Most common intracranial complication, if I ask you, intratemporal अगर पूछूं तो mastoiditis, intracranial it is meningitis. Most common intracranial, right? Now there is one condition जो बड़ी common सी पूछी जाती है, lateral sinus thrombosis. This is one great affection for this question in INI-CET. बहुत पूछा जाता है. Lateral sinus thrombosis, इसका मतलब क्या होता है? If that particular mastoid abscess, जो भी हमारा mastoid है, ये हमारा mastoid है, this is our mastoid. I told you mastoid के posterior wall पे sigmoid sinus होता है. If your pus has now eroded into the sigmoid sinus and this pus has caused a thrombus formation, ये एक thrombus बन जाता है, and this is a septic thrombus which happens in the sigmoid sinus. This is called as sigmoid sinus thrombosis या lateral sinus thrombosis. अब होता क्या है? If this sigmoid sinus is going to get blocked, so obviously there are certain visible signs that you will see. Always remember, sigmoid sinus नीचे कंटिन्यू करता है as internal jugular vein. तो ये नीचे sigmoid sinus comes out of the jugular foramen to form the internal jugular vein, right? So internal jugular vein के साथ ये आगे जाता है. अब क्वेश्चन ये होता है, what are the symptoms of this particular disease? This is a septic thrombus. तो होता क्या है? जब इस thrombus, कभी भी ये thrombus अगर टूटेगा, so it will form a septic emboli. Septic emboli का मतलब ये thrombus टूटा और सारे organisms हमारे blood stream में आ गए. अब जैसे ही ऑर्गेनिजम्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में आएंगे, यू विल गेट अ स्पाइक ऑफ फीवर, देन अगेन योर बॉडी विल कंटेन इट, देन अगेन यू विल गेट अ स्पाइक ऑफ फीवर, देन अगेन अ स्पाइक ऑफ फीवर. तो ऐसे नहीं लग रहा है जो आप लोग गार्डनिंग में फेंस लगाते हैं वो ऊपर नीचे होती है. तो दिस इज कॉल्ड एज अ पिकेट फेंस पैटर्न, एंड हेक्टिक पिकेट फेंस फीवर इज अ क्लासिकल इंपॉर्टेंट सीन विच इज सीन इन केसेस ऑफ lateral sinus thrombosis. क्योंकि जैसे ही थ्रोम्बस टूटेगा वैसे ही हमारे ब्लड में खूब सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, फीवर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, राइट? ओके. सेकेंड साइन क्या होता है? अब दिस sigmoid sinus has got one vein which is attached to it, and this vein is called as emissary vein. Emissary vein का क्या काम होता है? Emissary मतलब दो बड़े venous systems को जोड़ने वाली. तो emissary vein is a small tributary of the sigmoid sinus which drains the scalp. ये सारे scalp को drain करती है emissary vein. So there is an important vein of the scalp called as occipital vein, and there is another vein of the scalp called as posterior auricular vein. ये सारा हमारा scalp का drainage इन दोनों veins के through होता है. All the blood from these veins goes into the emissary vein and emissary drains it into the sigmoid sinus. अब होगा क्या? अगर ये particular thrombus propagate कर गया, this propagation of the thrombus will block the emissary vein. And emissary vein अगर block हो गई, तो क्या ये सारी दोनों की दोनों veins drainage करेंगी? नहीं. There will be collection or edema over this area. So what will happen? You will see this kind of a picture. That there will be huge edema over the post-oral as well as the occipital area. This is called as Grisinger's sign. Now always remember I told you, अगर मैंने mastoid में inflammation बताया, red color का mastoid बताया, तो वो mastoiditis है. अगर मैंने mastoid पे edema दिखाया, this is Grisinger. Why? Because emissary vein block हो गई है. Emissary vein is going and draining all these veins of the scalp. और अगर वो block हो गई है तो edema दिखेगा. तो Grisinger sign is a feature of lateral sinus thrombosis. ये बात समझ में आई? अगर मैं mastoid पे ये बताता हूं that the patient had got some kind of a road traffic accident,
एंड नाउ ही हैज कम विद दिस इज इकाइमोसिस. इकाइमोसिस मतलब ब्लड का बहुत बड़ा पैच है. इकाइमोसिस इन द पोस्ट ऑरल एरिया. दिस लुक्स लाइक कि पेशेंट जंग के बाद आया है, कोई बैटल लड़के आया है. सो दिस इज कॉल्ड एज बैटल साइन. बैटल साइन इज अ फीचर ऑफ बेसिलर स्कल फ्रैक्चर्स. So these are the classical things that you need to remember. Grisinger sign, basilar skull fracture and यानी बैटल साइन एंड मैस्टोइडाइटिस में क्या दिखता है. ठीक है. अब इसके दो इंपॉर्टेंट टेस्ट भी हैं. वन इज कॉल्ड एज टोबी आयर टेस्ट, वन इज कॉल्ड एज क्रोई-बेक साइन. ये दोनों पॉजिटिव होते हैं. व्हाट इज क्रोई-बेक साइन, ये क्वेश्चन है. क्रोई-बेक साइन का क्या मतलब है कि अगर ये जो थ्रोम्बस है सिग्मोइड साइनस में, इफ इट प्रोपेगेट्स डाउन एंड इट ब्लॉक्स द आईजेवी, अगर आईजेवी ब्लॉक हो गई तो अब एक तरफ की आईजेवी ब्लॉक हो गई है, एक तरफ की आईजेवी चल रही है. So now what happens is if I press the normal side IJV, and I do any kind of examination of the retina, there will be retinal venous congestion. क्योंकि अब मेरी दोनों साइड की IJVs कुछ भी सप्लाई नहीं कर रही हैं, रेटिनल वेन्स एनगॉर्ज हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं. So this is called as Crooy-Beck sign या Crooy-Beck test. So pushing my normal IJV and seeing retinal congestion, दिस इज कॉल्ड एज क्रोई-बेक साइन या क्रोई-बेक टेस्ट. दूसरा होता है टोबी आयर टेस्ट. ये भी क्वेश्चन है. टोबी आयर टेस्ट को हम लोग क्विकनस्टेड्स टेस्ट भी कहते हैं. क्विकनस्टेड्स टेस्ट, व्हाट इज दिस? क्विकनस्टेड्स टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग एक लंबार पंक्चर करते हैं. वी डू अ लंबार पंक्चर एंड वी नोट द सीएसएफ प्रेशर. हम लोग सीएसएफ के प्रेशर को नोट करते हैं. अब होता क्या है, नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर लेट्स से 50 to 100 के बीच में. नाउ इफ आई प्रेस अ नॉर्मल साइड आईजेवी, there will be a rapid rise and rapid fall of CSF. जैसे ही मैं दबाऊंगा rapid rise करेगा CSF, छोड़ूंगा rapid fall करेगा CSF. Why? Because IJV is connected to our intracranial system and obviously when you press the IJV, ICP gets raised. When you leave it, ICP drops down. तो आपको दिखेगा अपने डायल पे कि ICP बढ़ा, ICP कम गया. लेकिन एक साइड पे थ्रोम्बस है. So on the thrombosed side, you will get a very slow rise and a slow fall of CSF because that side is thrombosed. This is called as Tobey-Ayer test or Quickenstead's test to be positive. ठीक है जी, फाइन. तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट व्हाट यू डू इन लैटरल साइनस थ्रोम्बोसिस. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. इफ आई शो यू एन एमआरआई ऑफ लैटरल साइनस थ्रोम्बोसिस, एमआरआई इज द क्लासिकल, दिस इज अ क्लासिकल कॉन्ट्रास्ट एमआरआई, गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट दिया है एंड यू सी अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर इन इट. कि हमेशा याद रखना कि कॉन्ट्रास्ट सारी की सारी वेसल्स ले लेती हैं एंड दे शाइन विद कॉन्ट्रास्ट. बट यहां पे थ्रोम्बस बना हुआ है और अगर थ्रोम्बस बना हुआ है सो ऑब्वियसली दैट एरिया विल नॉट शाइन. So this is called as an empty delta sign. Empty delta sign. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट रहा है. Empty delta का मतलब if the contrast is taken up, it will shine white. तो देखो ये ड्यूरा है, ड्यूरा is taken up the contrast because it has got vessels and it is shining. And you see the black center. ये black center इसलिए है क्योंकि सेंटर में थ्रोम्बस है. इसमें कुछ भी नहीं लिया गया contrast. That is why it forms an empty delta. Delta which is black in the inside. Right? And that is called as an empty delta sign, which is classically seen in lateral sinus thrombosis. ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे. एक्स्ट्रा क्रेनियल एक्स्ट्रा टेम्पोरल कॉम्प्लिकेशन. ये आया था अभी रिसेंटली पेपर में, ये पूछा गया अगर पेशेंट के एक्स्ट्रा क्रेनियल एक्स्ट्रा टेम्पोरल कॉम्प्लिकेशन है. बहुत लोग इसको गलत कर गया है द लास्ट टाइम. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो. लेट्स से दिस इज अ मैन, राइट, एंड दिस इज द क्लैविकल of that man and this is the hyoid bone. ये hyoid bone है, ये clavicle है. ये पेशेंट की, ये इस इंसान की मैंडिबल है. This is the mandible. अब this is the zygomatic process of this particular, क्योंकि देखो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के आगे ये मेरी जाइगोमा है. This is the zygomatic process. Behind the ear is your mastoid. ये आपका mastoid है. Now there is a muscle which is attaching between the mandible to the hyoid or hyoid to the mastoid. ये कौन सी है? This is my posterior belly of digastric. This is anterior belly of digastric. Right? ये मेरी digastric. ये मेरा submandibular triangle है. These are my two bellies. वैसे ही एक और मसल है which is coming down and it is attaching to the clavicle. And what is this muscle? This is your sternocleidomastoid. This is my sternocleidomastoid, which has got a clavicular belly and a sternal belly. Now, एक और मसल होती है जो मेरे कोरोनॉइड प्रोसेस पे अटैच होती है. मैंडिबल के ऊपर एक कोरोनॉइड प्रोसेस होती है ना, ये छोटी सी प्रोसेस है कोरोनॉइड प्रोसेस. इस पे कौन सी मसल अटैच हो रही है? टेम्पोरालिस मसल. दिस इज माय टेम्पोरालिस मसल. ठीक है, अब खुद सोचो,
अगर इस पर्टिकुलर मैस्टोइड के अंदर पस आ गया, व्हाट इज द मोस्ट डिपेंडेंट पोर्शन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस पेशेंट? टिप. तो सबसे पहले मैस्टोइड में क्या टूटेगा? टिप. So if that tip breaks and all the pus comes into the sheath of sternocleidomastoid, यानी if they tell you chronic otitis media का पेशेंट है और sternocleidomastoid यहां पे कहीं स्वेलिंग दिखा दी, इसका ये लोग वो भी दे सकते हैं, they can give you an image कि यहां पे स्वेलिंग है. What is that? This, if it forms over the sheath of sternocleidomastoid, this is a Bezold abscess. Bezold is sheath of sternocleidomastoid. If that particular pus trickles down and it forms pus along the posterior belly of digastric, this is called as Sitley's abscess. इसे हम Sitley's कहते हैं. If this particular pus goes and it goes into the root of zygoma, ये FMG में क्वेश्चन आया था, zygoma के पास इतनी बड़ी स्वेलिंग दिखा दी थी, उन्होंने पूछा था what is this? This is nothing but this is zygomatic abscess. तो क्वेश्चन देखना, if they are telling you about, these are very simple questions to ask, right? अगर ये पर्टिकुलर पस चला गया बिलो द टेम्पोरालिस मसल, तो उसे हम कहेंगे डीप टेम्पोरल एब्सेस, एंड डीप टेम्पोरल एब्सेस इज आल्सो कॉल्ड एज लक्स एब्सेस. ठीक है, अगर ये चला गया इनटू जस्ट बिलो योर मसल बेली ऑफ द टेम्पोरालिस मसल, तो उसे हम कहेंगे लक्स एब्सेस. तो ये सारी, और इफ इट कम्स आउट ऑफ द मैस्टोइड हियर ओनली, तो इट विल फॉर्म अ पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर एब्सेस, यहीं पे निकल गया. तो दीज आर द क्लासिकल एक्स्ट्रा क्रेनियल एक्स्ट्रा टेम्पोरल, ये टेम्पोरल बोन और क्रेनियम दोनों से बाहर कॉम्प्लिकेशन है. एंड दिस इज अ क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ हाउ दे पर्टिकुलर अपीयर. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर मैं आपसे पूछूं इसको ट्रीट कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली यू हैव टू डू इंसिजन एंड ड्रेनेज विद एंटीबायोटिक्स. जो भी आपकी एब्सेस है, वी हैव टू ड्रेन दैट एब्सेस, वी हैव टू स्टार्ट एंटीबायोटिक्स, एंड वंस द डिस्चार्ज इज स्टॉप्ड, जब डिस्चार्ज बंद हो जाएगा, देन वी हैव टू डू अ टिम्पेनोप्लास्टी. तब हम ईयर के लिए टिम्पेनोप्लास्टी करेंगे, क्योंकि वही है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, वहीं से सब कुछ आ रहा है, राइट? So this is the ideal management as well as what are these extracranial, extratemporal complications. ठीक है, याद रखना, very very important. चलिए, अब आ जाते हैं into the next facial nerve related questions. facial nerve के मैंने सारे questions इस पे लिख दिए हैं. अब अगर मैं आपसे बात करूं, facial nerve के 3 पार्ट होते हैं, intracranial part, intratemporal part and extracranial part. intratemporal part of facial nerve जो होता है, जो temporal bone के अंदर होता है, that has got 4 types. That is four segments. That is meatal segment, labyrinthine segment, horizontal segment and vertical segment. तो होता क्या है कि facial nerve comes from the pons and then it comes inside the middle ear compartment. Let's say this is your middle ear. This is your middle ear. ठीक है, अब ये मेरा medial wall of middle ear है. Medial wall of middle ear में एक central में bulge होता है which is called as promontory. This is posterior, this is anterior. Promontory के posterior superior होती है oval window, promontory के posterior inferior होती है round window. ठीक है, oval window के just सब बगल में यहां पे होता है bulge of lateral semicircular canal. Why am I telling you this? ये सब facial से associated है. Posterior wall में एक projection होता है which is called as pyramid. इसे हम pyramid कहते हैं, pyramid की तरह दिख भी रहा है. Now important. Facial nerve comes from the brain into the internal acoustic meatus. जब facial nerve internal acoustic meatus के अंदर आती है, this segment is called as meatal segment. Meatal segment is roughly around 8 mm. ये 8 मिलीमीटर का segment है. Now, once this meatal segment finishes, now this facial nerve goes up till the roof of the middle ear. ये roof of middle ear है, जिसे हम tegmen tympani कहते हैं. Here, it forms a ganglion which is called as geniculate ganglion. Geniculate को geniculate क्यों कहते हैं? क्योंकि geniculate ganglion एक जन्म का मतलब होता है bent knee. ये एक bent knee की तरह है, ये ऐसा है, ऐसे लग रहा है ना कोई ऐसे folded knee बैठा हुआ है. It's like a bent knee. That's why it's geniculate ganglion. ये facial nerve का ganglion है. ठीक है? The part of the facial nerve from this geniculate, from the meatus till the geniculate ganglion, इस part को कहते हैं labyrinthine segment. लैब्रिन्थाइन सेगमेंट ये अगर 8 mm था, इसी का हाफ 4 mm होता है, एंड इट इज ओनली 0.64 to 0.68 millimeters in diameter. तभी दिस इज द शॉर्टेस्ट एंड द नैरोएस्ट सेगमेंट ऑफ द फेशियल नर्व. इसमें सबसे कॉमन एलिमेंट पैल्सी इफेक्ट यही होती है. नाउ फ्रॉम द जेनिकुलेट गैंग्लियन दिस पर्टिकुलर नर्व टर्न्स, इट कम्स ओवर द मीडियल वॉल ऑफ मिडिल ईयर एंड इट क्रॉसेस द लैटरल सेमीसर्कुलर कैनाल एंड ओवल विंडो के बीच में,
and it runs behind the pyramid and comes out of the stylomastoid foramen. तो मैंने क्या बताया, जेनिकुलेट गैंग्लियन से ये हॉरिजॉन्टल हो गई, मीडियल वॉल पे आई, and then it comes between the oval window and the lateral canal and behind the pyramid, and then it comes out of the stylomastoid foramen over the face. फेस पे 5 ब्रांचेस देती है. तो what exactly have I done? जेनिकुलेट गैंग्लियन से लेके पिरामिड तक ये जो हॉरिजॉन्टल कोर्स है, दिस इज कॉल्ड एज द हॉरिजॉन्टल पार्ट या टिम्पैनिक पार्ट, which is roughly around 11 mm. And the last, पिरामिड से लेके स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन तक, पिरामिड से लेके स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन तक, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज वर्टिकल सेगमेंट ऑफ फेशियल नर्व. जेनिकुलेट गैंग्लियन के बाद ये फर्स्ट टर्न कर रही है, दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट जेनु. जेनु का मतलब होता है बेंड. And the second genu is between, when it crosses between the lateral canal and the oval window, this is the point where it forms the second turn or second genu. अब मेरा क्वेश्चन सिंपल है, अगर मैं आपसे एक सिंपल सी एक चीज पूछूं कि which is the narrowest segment of the facial nerve जो हमेशा रैम्जे हंट बेल्स पैल्सी में इफेक्ट होगा, you will have to tell me it is labyrinthine segment. अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं which is the most common site for facial nerve for congenital dehiscence, मतलब डेहिसेंस का मतलब होता है फेशियल नर्व भी बोन से कवर्ड है. द बोन दैट कवर्स द फेशियल नर्व इज कॉल्ड एज फेलोपियन कैनाल. तो मतलब अब ये फेशियल नर्व के ऊपर बोन नहीं है, तो यानी वो बोन डेफिशिएंट है या डेहिसेंट है. तो अगर बोन डेहिसेंट है और बोन नहीं है, तो इसका मतलब है सबसे कॉमन एरिया टू हैव कंजेनाइटल डेहिसेंस इज हॉरिजॉन्टल या टिम्पैनिक सेगमेंट. तो ये हो गया द मोस्ट कॉमन साइट फॉर कंजेनाइटल डेहिसेंस, टिम्पैनिक और हॉरिजॉन्टल पार्ट. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एरिया टू गेट इंजर्ड ड्यूरिंग सर्जरी, इट इज सेकंड जेनु. सर्जरी में सबसे कॉमनली सेकंड जेनु हिट होता है. सेकंड मोस्ट कॉमन एरिया टू गेट हिट ड्यूरिंग सर्जरी, इट इज द वर्टिकल सेगमेंट ऑफ फेशियल नर्व. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सबसे कॉमन सेकंड जेनु इंजर होता है आयाट्रोजेनिकली, उससे बाद सेकंड मोस्ट कॉमन इज द वर्टिकल सेगमेंट ऑफ द फेशियल नर्व. ठीक है, दिस इज अबाउट व्हाट यू रिक्वायर इन फेशियल नर्व, और ये मैंने सब चीजें यहां पे लिख दी हैं. I've written this in the table और यही साथ सीधे सीधे क्वेश्चंस आए. ठीक है, चलिए आगे बढ़े. अब कुछ इंपॉर्टेंट सिंड्रोम्स भी पूछे गए हैं when they have started asking you about this particular topic. That means if I ask you what is the most common cause of Bell's palsy, facial palsy, you will tell me it is Bell's palsy. Bell's palsy generally जो होती है, it is idiopathic. This is idiopathic lower motor neuron palsy. It generally happens after a viral infection. Generally, it is hypothesized कि viral infection के बाद आती है, but usually it is idiopathic. Most common facial palsy यही होती है. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके पास एक पेशेंट आया और उस पेशेंट के एक ब्रेन स्टेम में लीजन है, एंड ब्रेन स्टेम में लीजन के बाद द पेशेंट हैज गॉट इप्सिलैटरल लोअर मोटर न्यूरॉन पैल्सी, इप्सिलैटरल लैटरल रेक्टस पैल्सी एंड कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया. दूसरे साइड पे हेमीप्लेजिक है, एक साइड पे लैटरल रेक्टस और फेशियल पैल्सी है. तो ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज मिलार्ड गुबलर सिंड्रोम. क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास एक पेशेंट है जिसके फेशियल पैल्सी है विच इज रिकरेंट, बार बार हो रही है, एंड यू सी दैट द लिप्स ऑफ द पेशेंट आर एडिमेटस, बहुत बड़े एडिमेटस लिप्स हैं, एंड यू सी द टंग ऑफ द पेशेंट इज फिशर्ड, बहुत सारे फिशर्स हैं टंग पे. तो फिशर्स ओवर द टंग, एडिमा ओवर द लिप्स एंड रिकरेंट फेशियल पैल्सी, मेल्करसन रोजेंथल सिंड्रोम. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास एक पेशेंट आया, मोस्टली अ सार्कोइडोसिस पेशेंट, दैट पेशेंट हैज गॉट बायलैटरल पैरोटिड एनलार्जमेंट विद फेशियल पैल्सी. तो अगर किसी के बायलैटरल पैरोटिड एनलार्जमेंट है, फेशियल पैल्सी है एंड इवन यूवीआइटिस है, देन दैट इज कॉल्ड एज हीरफोर्ड सिंड्रोम. एंड फाइनली अगर मैंने आपसे पूछा कि अगर आपने एक पैरोटिडेक्टमी करी, पैरोटिडेक्टमी करने के बाद नाउ द पेशेंट इज कंप्लेनिंग कि जब भी वो खाना खाता है, ही हैज स्वेटिंग ओवर हियर, ओवर द एरिया, व्हाट इज दैट? That is called as Fraze syndrome. Fraze syndrome is also called as auriculotemporal syndrome. It is also called as gustatory sweating. और क्यों होता है ये? Because of the aberrant innervation of the auriculotemporal nerve fibers and they start innervating the sweat glands of the skin. तो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई मिलने लगती है स्वेट ग्लैंड्स को, जब भी वो खाना खाएगा it will start sweating over here. And that is what is called as gustatory sweating और Fraze syndrome और auriculotemporal syndrome. इसे बायलार्गर सिंड्रोम भी कहते हैं, कुछ भी नाम दे दो, बट मोस्ट कॉमनली gustatory sweating बोली जाती है. ठीक है, फाइन. चलिए, ओके, नाउ ब्रांचेस ऑफ द फेशियल नर्व. ओके, यू वांट टू नो द मोटर ब्रांचेस. 5 ब्रांचेस होती हैं मोटर ब्रांचेस.
जो 5 इंपॉर्टेंट मोटर ब्रांचेस होती हैं, दे आर टेम्पोरल, जाइगोमैटिक, बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर, सर्वाइकल। 5 इंपॉर्टेंट मोटर ब्रांचेस, टेम्पोरल, जाइगोमैटिक, बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर एंड सर्वाइकल। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब if they give you any case where they have told about a reproductive age group female, this particular female has got bilateral progressive hearing loss which is symmetrical, दोनों में हो रहा है, but this is conductive type of hearing loss. Now you do a tympanic membrane examination and you see a reddish hue, a reddish shadow in the posterior superior quadrant. क्यों posterior superior है? See, this is the right side tympanic membrane tilted towards the right, तो ये anterior है, ये posterior है, and this area is reddish. So what is this? This is called as a flamingo pink sign. This is called as a flamingo pink sign, also called as Schwartz sign, also called as Schwartz sign, या फिर इसे flamingo pink sign भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि this flamingo pink sign, if it is positive in otosclerosis, what will be the mechanism? What will be the treatment? So if the patient has got Schwartz sign which is positive, then your treatment of otosclerosis will be sodium fluoride. ठीक है? If I tell you that now the Schwartz sign is not seen, it is negative, that means the sclerosis is permanent, तब आप क्या करेंगे? Then your answer will be stepidotomy. मतलब स्टेपीज को हटा के वी विल क्रिएट अ फेनेस्ट्रेशन ओवर द फुट प्लेट एंड वी विल कीप अ पिस्टन। तो ये आपकी INI-CET का एग्जैक्ट इमेज है जो आपको दिया गया है, वेयर दे आर शोइंग दैट दे आर प्लेसिंग दिस पिस्टन ओवर द ओवल विंडो। स्टेपीज हटा दी गई है एंड दिस इज अ टेफ्लॉन पिस्टन। ये एक टेफ्लॉन पिस्टन होता है विच वी प्लेस इन ओटोस्क्लेरोसिस व्हेनेवर वी डू स्टेपिडोटमी। ठीक है, बट हमेशा याद रखना शॉर्ट साइन के बारे में, if it is positive or it is not positive। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नाउ ओटोटॉक्सिसिटी में 3 ड्रग आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए, राइट? वी यूजुअली से द निमोनिक एबीसीडी याद रखो, एक बी भी है इसमें, तो इट इज एबीसीडी। ए स्टैंड्स फॉर अमीनोग्लाइकोसाइड्स, वेरी कॉमन क्वेश्चन। अमीनोग्लाइकोसाइड्स आर डिवाइडेड इनटू 2, कॉक्लियोटॉक्सिक एंड वेस्टिबुलोटॉक्सिक। कॉक्लियोटॉक्सिक का मतलब ये वो अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं which only damage hearing, which only damage cochlea. Vestibulotoxic means these are the ones which only damage your balance. Balance means the patient primarily has vertigo. So कॉक्लियोटॉक्सिक, कॉक्लिया कान होता है ना, कान, तो यू कैन रिमेंबर द निमोनिक कान, कानामाइसिन, एमिकैसिन, नियोमाइसिन, कान से कान। वेस्टिबुलोटॉक्सिक, यू कैन रिमेंबर द निमोनिक नो जीएसटी, नेटिलमाइसिन, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टोब्रामाइसिन। तो दीज आर द वेरी कॉमन वंस विच आर गिवन एज एमसीक्यूज। ठीक है, ये हो गया पहला ए। सेकंड ए इज एनाल्जेसिक, मोस्ट कॉमन एनाल्जेसिक टू क्रिएट दिस इज एस्पिरिन। थर्ड इज एंटी मलेरियल, एंटी मलेरियल में मोस्ट कॉमन इज क्विनिन, क्लोरोक्विन। अब इसमें ए के साथ 3 ए होते हैं और फिर ए बी सी डी भी कर सकते हो। बी फॉर बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर मोस्ट कॉमन इज प्रोप्रेनोल, प्रैक्टोलॉल। ठीक है, then comes A, B, C. C for chemotherapeutic agents, that is cytotoxic drugs यानी cisplatin. C stands for chelating drugs, जिसका मतलब है iron chelators, which is nothing but desferrioxamine. And finally D stands for diuretics, which is furosemide. तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये आया था, मैं बताता हूं INI-CET में, there is a patient of congestive, there is a patient of heart failure, and that particular patient in heart failure, he's been advised diuretics, and that particular diuretics has been going on for some time, furosemide चल रही है। Now once you have been given those diuretics या furosemide, the patient developed hearing loss, you did an Peyton audiometry, उसमें दिखा SNHL। अब मुझे आप बताइए what will be the next treatment? So the next treatment is stop diuretic, क्योंकि डायूरेटिक्स एक चीज ऐसी करते हैं विच कॉज स्ट्रायल एडिमा। ये याद रखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, डायूरेटिक क्यों करते हैं एफएनएचएल? दे कॉज ट्रायावास्कुलरिस में एडिमा। सो द मोमेंट यू स्टॉप अ डायूरेटिक, दिस ट्रायल एडिमा विल डिक्रीज एंड योर रिवर्स एंड योर हियरिंग विल रिवर्स। दैट इज व्हाई डायूरेटिक्स कॉज रिवर्सिबल एफएनएचएल। इनको जिस दिन रोकोगे ये वापस आ जाएगा। दे डोंट कॉज परमानेंट डैमेज, दे हैव रिवर्सिबल वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।
अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आया, लास्ट INI-CET क्वेश्चन, वेयर दे हैव मेंशन्ड दैट द पेशेंट हैज गॉट वर्टिगो फॉर लास्टिंग 1 to 2 minutes, happens over on turning his head right or left, then without a doubt answer is BPPV. BPPV में कोई भी oral symptom नहीं होते. There's not going to be tinnitus, कोई hearing loss नहीं होगा, कोई discharge नहीं होगा, just vertigo होगा lasting for 1 to 2 minutes. अपने आप ठीक हो जाता है, पोजिशनल हेड चेंज पे होता है, एंड इट इज एसोसिएटेड विद नोजिया एंड वॉमिटिंग. रिमेंबर दिस लाइन. अगर वो आपको क्वेश्चन देते हैं जिसमें वो मेंशन करते हैं वर्टिगो, डेफनेस, टिनिटस, ऑरल फुलनेस, VDTA, देन योर आंसर शुड बी मीनियर्स डिजीज. अब इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है मीनियर्स वर्सेस बीपीपीवी में. मीनियर्स का जो भी एपिसोड ऑफ वर्टिगो होगा ना, दैट विल ऑलवेज बी मोर देन 20 minutes to 30 minutes. बीपीपीवी का वर्टिगो 1 से 2 मिनट का होगा. मीनियर्स के वर्टिगो में ऑलवेज देयर विल बी वर्टिगो फॉलोड बाय डेफनेस, फॉलोड बाय SNHL, टिनिटस आएगा, भरा भरा कान रहेगा, ऑरल फुलनेस होगी. बट हियर देयर विल बी नथिंग लाइक दिस, राइट? सो दिस इज अ कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस बिटवीन द टू, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डिसाइफर आउट. अगर उन्होंने आपसे क्वेश्चन दिया कि डेफनेस पहले आती है फिर वर्टिगो आता है, तो दिस इज रिवर्स मीनियर्स, एंड रिवर्स मीनियर्स इज कॉल्ड एज लर्मोइस सिंड्रोम. फर्स्ट सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस एंड देन वर्टिगो, उल्टा. नहीं तो VDTA ये सीक्वेंस है. अगर D और V आया उल्टा, दैट इज रिवर्स मीनियर्स एंड वी कॉल इट एज लर्मोइस सिंड्रोम. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब हियर इधर देखो. This is the most common cause of vertigo, right? Episodes lasting for seconds to minutes occurs on positional change. If I ask you what is the most common canal involved in BPPV, it is posterior canal because of the gravity. So what exactly is the diagnostic measure? Diagnosis of BPPV is by Dix-Hallpike maneuver. एक maneuver होता है जिसमें हम लोग head को अलग अलग turns करते हैं, and that head when it is turned in different positions, that gives us nystagmus and vertigo. So if I ask you the diagnostic technique for BPPV, it is Dix-Hallpike. If I ask you the treatment, it is Epley's. ये दोनों मेनूवर आपको याद होने चाहिए कि Epley's is treatment, Dix-Hallpike is diagnosis. ठीक है, चलिए. सो अगर आपके पास मैंने एक और चीज दी, दैट नाउ द पेशेंट हु हैज कम टू यू, दिस पर्टिकुलर पेशेंट हैज गॉट सडन लॉस ऑफ हियरिंग सिंस 3 days, एंड यू डू अ प्योर टोन ऑडियोमेट्री, आपको उसमें SNHL दिखा, एंड दैट SNHL इज मोर देन 30 decibel, और 3 फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व है. तो ये कौन सा आदमी है? दिस इज अ केस ऑफ सडन सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस. रूल ऑफ 3 का मतलब है अगर आपके पास कोई भी केस आया where there is sudden loss of hearing which has occurred within 3 days, you do a pure tone audiometry, आपको more than 30 decibel loss दिखा, 3 consecutive frequencies पे दिखा. consecutive का मतलब 500, 1000, 2000, 1000, 2000, 4000, 3 contiguous या continuous frequencies पे दिखा, more than 30 decibel loss and within 3 days, rule of 3. This is a classical case which is of sudden sensory neural hearing loss. अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, सो द आंसर इज IT3. तो 3 IT3. तो IT3 कैसे याद रखेंगे? मोस्ट कॉमन इज इडियोपैथिक. 80% हमें पता ही नहीं है क्यों होता है, बट देयर हैव बीन प्रोपोजिशंस दैट इट इज बिकॉज ऑफ अ पोस्ट वायरल इन्फेक्शन व्हिच कुड बी बिकॉज ऑफ HSV, मम्स, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, CMV, ये सब दिया गया है, राइट? बट इफ आई आस्क यू कि इडियोपैथिक है, तो इडियोपैथिक सबसे कॉमन हम मानते हैं. इसके अलावा देयर आर 3 T's, ट्रॉमा, ट्यूमर एंड टॉक्सिन. पेशेंट के RTA हो गया, टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर हो गया, दैट इज वन ऑफ द कॉज. पेशेंट हैज गॉट अ ट्यूमर ओवर द वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, दैट विल लीड टू SNHL, वेस्टिबुलर schwannoma. पेशेंट हैज गॉट टॉक्सिन्स, या फिर वो ओटोटॉक्सिक ड्रग ले रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई भी ओटोटॉक्सिक ड्रग दैट कैन प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर थिंग. नाउ इफ आई आस्क यू हाउ विल यू मैनेज, आई टोल्ड यू जहां पे नर्व आती है वहां पे हमेशा मैनेजमेंट स्टेरॉइड होता है. So the drug of choice in such cases are always steroids. Now these steroids can be given oral, they can be given IV. You can even give injections of these drugs into the middle ear, that is called intratympanic. So कोई भी हो, the only source is steroid because steroid reverses edema over the vestibulocochlear nerve. ठीक है? अब इसके साथ we can give antiviral drugs, क्योंकि मैंने बताया most common viral infection से associated होता है, which is idiopathic. You can even give a therapy called as hyperbaric oxygen therapy. What is hyperbaric oxygen therapy? ये important है. तो आजकल के जमाने में वी हैव HBOT. HBOT का क्या मतलब होता है कि लेट्स से ये एक वेसल है और वेसल में सप्लाई नहीं आ रही है, द वेसल हैज बिकम इश्मिक. ये वेसल इश्मिक हो गई है. So when it has become ischemic, तो obviously the oxygen of the vessel has dropped down.
अब आरबीसीज आर द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, राइट? अब यहां पे क्लॉग हो गया है, ये वेसल इश्यमिक हो गई है, आरबीसीज काम ही नहीं कर रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर एरिया को, अब इसी वेसल के नीचे नर्व है, अब ये नर्व जो है, बिकॉज दिस वेसल इज क्लॉग्ड, इट इज नॉट गेटिंग इनफ परफ्यूजन एंड दैट इज द रीजन द नर्व इज नॉट वर्किंग। तो हम लोग क्या करते हैं, हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी, वी सीट द पेशेंट इनसाइड अ चेंबर, और उस चेंबर में वी गिव 2.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100% ऑक्सीजन, यानी हम ऑक्सीजन पुश करते हैं, and this oxygen is pushed under pressure, and when it is pushed under pressure, that oxygen perfuses into the nerve, and that is what causes that vascular ischemia to reverse and the nerve to become regenerative. So high pressure oxygen which is delivered to the patient so that vascular ischemia can be reversed, that is called as hyperbaric high pressure oxygen therapy. ये आजकल दिया जा रहा है, ये अपने रिसेंट एडवांस से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? चलिए, अब ये प्रोबेबिलिटी बढ़ी है, दिस इज समथिंग विच इज इंक्रीज्ड इन प्रोबेबिलिटी इनसाइड द ईयर। ईयर सबसे बड़ा सेगमेंट है, मोर देन हाफ ऑफ द सेगमेंट इज ईयर। व्हाट इज दिस? अगर आपके पास पेशेंट आया एंड इन दैट पेशेंट दे हैव मेंशन्ड अ ट्रायड, ट्रायड का मतलब पेशेंट हैज गॉट कंडक्टिव हियरिंग लॉस, एपिसोडिक वर्टिगो एंड ऑटोफोनी। तो आपको एक चीज पता होगी, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन सीईए, ये ट्रायड है सीईए। कंडक्टिव हियरिंग लॉस का पेशेंट है, ई इज फॉर एपिसोडिक वर्टिगो, आते जाते वर्टिगो है, एंड द पेशेंट हैज गॉट ऑटोफोनी, मतलब अपनी आवाज ज्यादा सुनता है। दिस इज अ क्लासिकल ट्रायड विच फॉल्स इनटू सेमी सर्कुलर कैनाल डेहिसन सिंड्रोम। व्हाट इज दिस डेहिसन सिंड्रोम? इसमें क्या होता है, इफ यू सी सेमी सर्कुलर कैनाल हमेशा सी की तरह दिखेंगी, तो दिस इज अ सीटी स्कैन और ये एग्जैक्ट सीटी आईएनआई-सीटी का है। तो दिस सीटी शोज, देखो ये सी के ऊपर काला काला डिफेक्ट है, देखो यहां पे बोन नहीं दिख रही है, ये डिफेक्ट हो गया है। नाउ इफ यू सी सच काइंड ऑफ अ सीटी, तो इधर क्या बन गई है, एक एक्स्ट्रा विंडो बन गई है, एक्स्ट्रा डिफेक्ट बन गया है। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज थर्ड विंडो, और इसे हम कहते हैं थर्ड विंडो फिनोमिनन। तो थर्ड विंडो फिनोमिनन इज सीन इन सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल डेहिसन सिंड्रोम। होता क्या है इस सिंड्रोम में, बेसिकली क्या होता है, दैट योर सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल लूजेस इट्स बोन अबव, ये बोन चली जाती है। तो नाउ व्हेन द साउंड ट्रैवल्स इनटू द मैलियस टू द इंकस टू द स्टेपीज, एंड व्हेन दिस साउंड रीचेस द ओवल विंडो, तो बेसिकली ये साउंड कॉक्लिया में जाना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है, ये साउंड शटल हो जाता है एंड इट गोज इनटू दिस लैटरल इनटू द सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, एंड दिस साउंड डिसअपियर्स वाया द थर्ड विंडो। ये गायब हो जाता है साउंड, क्योंकि एक एक्स्ट्रा विंडो बन गई है। थर्ड विंडो कैसे, एक ओवल विंडो है, एक राउंड विंडो है, ये तीसरी विंडो है, बिकॉज द सुपीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल हैज लॉस्ट इट्स बोन अबव, एंड नाउ द साउंड शटल्स थ्रू दिस एंड डिसअपियर्स। So that is why the patient will develop conductive hearing loss, क्योंकि कॉक्लिया के इशू नहीं है, SNHL नहीं होगा, दिस इज कंडक्टिव हियरिंग लॉस, कंडक्शन ऑफ साउंड ही नहीं हो पा रहा है। ई एपिसोडिक वर्टिगो, क्योंकि ये साउंड शटल कर रहा है थ्रू द कैनाल, तो कैनाल के फ्लूइड मूव करेगा, पेशेंट विल हैव वर्टिगो, एंड द पेशेंट विल हैव ऑटोफोनी, पेशेंट को अपनी आवाज कुछ ज्यादा ही सुनाई देगी। दिस इज अ क्लासिकल ट्रायड फॉर ऑफ सुपीरियर SSCD, सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल डेहिसन सिंड्रोम। ठीक है, याद रखना, ये सीटी याद रखना, क्लासिकली इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास कोई भी केस आया where they have told you that the patient has unilateral SNHL, the patient has got tinnitus, and the patient has got episodes of vertigo, you did an MRI. This MRI with a gadolinium contrast showed this kind of an image. इस इमेज में क्या दिख रहा है? दिख रहा है कि कोई एक आइसक्रीम टाइप की निकली हुई है. This is called as an ice cream cone appearance. An ice cream cone appearance is classically seen in vestibular schwannoma. ठीक है, ये क्लासिकल है, जनरली यूनिलैटरल होते हैं. Bilateral vestibular schwannomas are only seen in neurofibromatosis type 2, 2 for 2. दो schwannoma neurofibromatosis 2 में दिखेंगे, नहीं तो जनरली इट इज अ यूनिलैटरल लॉजिक, हमेशा ही यूनिलैटरल होता है. अब किससे निकलता है ये? तो बेसिकली इफ यू सी, दिस इज आवर इंटरनल अकूस्टिक मियाटिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस इज आवर इंटरनल अकूस्टिक मियाटिस. Internal acoustic meatus को we can divide it into 4 quadrants by 2 important bony ridges. The vertical ridge is called as Bill's bar. इसको हम लोग कहते हैं Bill's bar. And the horizontal ridge which forms this ridge is called as falciform crest. इसे कहते हैं falciform crest.
तो हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एज अ फैल्सिफॉर्म क्रेस्ट और वर्टिकल को कहते हैं बिल्स बार। ये डिवाइड करता है हमारे पूरे इंटरनल अकूस्टिक मियाटस को इनटू 4 क्वाड्रेंट्स, 2 ऑन द एंटीरियर साइड, 2 ऑन पोस्टीरियर साइड। क्वेश्चन आता है एंटेरो सुपीरियर से क्या निकलता है? तो एक कोल्ड ड्रिंक होती है 7 अप, 7 हमेशा अप होती है ऑन दी एंट्रो सुपीरियर हाफ, 7 अप, तो 7 मतलब फेशियल हमेशा यहां पे होगी। एंट्रो इंफीरियर से क्या निकलेगा? तो एक कोल्ड ड्रिंक होती है जिसका नाम होता है कोका कोला, तो कोका कोला इज ऑलवेज डाउन, 7 हमेशा अप, कोका कोला डाउन। तो कोका कोला मींस कॉक्लियर डिवीजन ऑफ वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व के 2 डिवीजन है, कॉक्लियर और वेस्टिबुलर। अब पोस्टेरो सुपीरियर में क्या जाएगा? जो बची कुची नर्व है, सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व एंड इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the most common site of origin of vestibular schwannoma? The Schwann cells of inferior vestibular nerve. The Schwann cells of inferior vestibular nerve, they try to proliferate and they cause this tumor, and this tumor is vestibular schwannoma. What is the first symptom of vestibular schwannoma? Obviously पहली nerve कौन सी दबेगी? Cochlear division, because they don't have a partition in between. So if there is cochlear division which is getting compressed, what will be the first clinical symptom? SNHL and tinnitus. ठीक है, नाउ इफ दिस पर्टिकुलर ट्यूमर गोज इनटू द 7th cranial nerve, 7th हमेशा याद रखना एक चीज, 7th के जो मोटर फाइबर्स होते हैं, दो होते हैं फाइबर्स, राइट, सेंसरी एंड मोटर। फेशियल नर्व के जो मोटर फाइबर्स हैं दे आर इन द सेंटर एंड द सेंसरी फाइबर्स आर अराउंड। तो मतलब सेंसरी फेशियल के बाहर होते हैं, मोटर सेंटर में होते हैं। तो व्हेन दिस ट्यूमर स्प्रेड्स ओवर द 7th nerve, it will compress the sensory fibers and the motor fibers will be spared. If the sensory fibers are again, if they are compressed, so what will happen? Facial nerve supplies the posterior part of your ear canal. So when you touch your posterior canal with a stick, you will not be able to feel anything. And this happens because of the compression of the sensory fibers of facial nerve. That is hypoesthesia of posterior canal wall. And this is called as Hitzelberger sign. हजारों बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Hitzelberger sign, hypoesthesia of the posterior canal wall because it is supplied by the sensory fibers of the facial nerve. मोटर फाइबर्स कभी भी नहीं जाते हैं because मोटर फाइबर्स आर spared, क्योंकि वो रेजिलियंट होते हैं, वो सेंटर में होते हैं, छुपे हुए होते हैं, तो दे आर spared। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया INI में? Which among the following is not a feature that you will see in cases of facial in cases of vestibular schwannoma? And answer is low motor neuron facial palsy, क्योंकि that is spared, मोटर फाइबर्स है ही नहीं। Now the next thing is that if this tumor comes out, then this tumor will involve 5th nerve. 5th matlab trigeminal. What is the earliest clinical sign seen in 5th nerve involvement? The earliest clinical sign seen in 5th nerve involvement is basically absent corneal reflex. Absent corneal reflex. Sub questions hai. What is the investigation of choice? MRI with a gadolinium contrast. What do you see? Ice cream cone appearance. ठीक है, चलो ये हो गए क्वेश्चन वेस्टिबुलर schwannoma के। ओके, फाइनली आ जाओ रिहैबिलिटेशन पे, फिर इसके बाद हमारा ईयर खत्म, क्योंकि ईयर सबसे बड़ा सेगमेंट है। आ जाओ अब कॉक्लियर इंप्लांट पे, ये भी है, ये तो एक हिट क्वेश्चन आने वाला है, बिकॉज दिस इज अ रीसेंट एडवांस, दे हैव गॉन रिसेंटली इनटू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कॉक्लियर इंप्लांट में वो क्या पूछेंगे? अगर मैं आपसे बोलूं बेस्ट कैंडिडेट फॉर अ कॉक्लियर इंप्लांट कौन है, सबसे अच्छा कैंडिडेट, सबसे अच्छा कैंडिडेट है बायलैटरल प्रोफाउंड SNHL का, जिसमें हियरिंग एड काम नहीं कर रही। So if I ask among your 4 options, which is the best candidate among them? So the best candidate will always be bilateral severe to profound sensory neural hearing loss not responding to hearing aids. ठीक है, that is the best answer. अब remember, cochlear implant में क्वेश्चन क्या बनेंगे? cochlear implant में वो क्वेश्चन ये पूछेंगे कि cochlear implant किस अप्रोच से किया जाता है। So the approach that we do cochlear implant by is posterior tympanotomy. Posterior tympanotomy. इसे हम लोग फेशियल रिसेस अप्रोच भी कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल दिस एज फेशियल रिसेस अप्रोच। तो होता क्या है, सी व्हेन वी ड्रिल द मैस्टॉइड, जब हम मैस्टॉइड को ड्रिल करते हैं तो वी बेसिकली डिलिनिएट द फेशियल नर्व। ये देखो, ये फेशियल नर्व है। देयर इज वन ब्रांच ऑफ द फेशियल विच इज कॉल्ड एज कॉर्डा टिम्पैनी, जो हमारे मिडल ईयर में चली जाती है। द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्डा एंड द फेशियल, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज फेशियल रिसेस। अगर हम इस स्पेस में केयरफुली ड्रिल करेंगे तो उसको कहते हैं पोस्टीरियर टिम्पैनोटमी। टिम्पैनम मतलब मिडिल ईयर, ऑटमी मतलब खोलना। तो वंस वी ओपन द एरिया, तो मैस्टॉइड के थ्रू ही बिटवीन द कॉर्डा एंड फेशियल वी आर ड्रिलिंग,
and we are opening the posterior part of our middle ear. Now that is called as posterior tympanotomy. Now अब होता क्या है, once we drill in, we will see our round window. ये देखो round window दिख रही है. The moment we see the round window, this is where we will push the cochlear implant electrode. इसी के थ्रू हम cochlear implant के electrode को push करते हैं. Question क्या आता है? Cochlear implant electrode is pushed through round window. When this electrode goes through the round window, ये कहां पे जाएगा? It will go into the scala tympani, क्योंकि scala tympani corresponds inside inner ear का वो compartment जो correspond करता है round window को is scala tympani. So now the placement of electrode is inside scala tympani. See the question. Approach posterior tympanotomy या facial recess approach. Pushed through round window. Electrode placed inside स्केला टिम्पनी. ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे. ठीक है. अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, व्हाट इज द कैंडिडेट यू विल नॉट डू दिस सर्जरी, किस कैंडिडेट में आप ये नहीं करेंगे सर्जरी? तो ऑलवेज रिमेंबर देयर आर इंपॉर्टेंट 3 इंडिकेशंस वेर यू विल नॉट डू अ सर्जरी. फर्स्ट इज एब्सेंस ऑफ कॉक्लिया. कॉक्लिया है ही नहीं, तो हम इलेक्ट्रोड कहां पे लगाएंगे? This is called as Michael's aplasia. Aplasia का मतलब है ही नहीं, cochlea is absent. So if the cochlea is absent, Michael's aplasia. ठीक है. मैं हमेशा इसमें कैसे बताता हूं कि माइकल जैक्सन बहुत बड़ा सिंगर था. Why he became famous? क्योंकि वो खुद की नहीं, वो सिर्फ खुद की सुनता था, वो किसी दुनिया की नहीं सुनता था. तो माइकल एप्लेजिया का मतलब है इफ यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड. तो कुछ भी अगर नहीं है बाहर का आप सुनेंगे तो ऑब्वियसली सिर्फ अपनी सुनेंगे. तो यही एक तरीका है जिससे आपको याद रहेगा कि आपका जो कॉक्लिया है वो नहीं है, इट इज कंप्लीटली एब्सेंट. किसमें एब्सेंट है? माइकल जैक्सन से. माइकल याद रखना, माइकल एप्लेजिया इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ कॉक्लिया. सेकेंड चीज है, कॉक्लियर इंप्लांट करने के लिए आपको 2 चीजें वर्किंग चाहिए. वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व वर्किंग चाहिए और ब्रेन वर्किंग चाहिए, क्योंकि वही साउंड लेके जाएंगे. अगर वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व वर्किंग नहीं है तो कंप्लीटली कॉक्लियर इंप्लांट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. यानी कि इफ देयर इज नर्व एप्लेजिया या अगर नर्व में ट्रांसेक्शन हो गया है, तो नर्व काम नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली साउंड लेके कौन जाएगा? नहीं कर सकते. और अगर ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन स्टेम में कोई प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली वहां पे भी कुछ काम नहीं होगा. तो इफ देयर इज अ ब्रेन पैथोलॉजी देन ऑल्सो योर कॉक्लियर इंप्लांट विल नॉट वर्क. तो क्वेश्चन है कि इन तीनों कंडीशंस में कॉक्लियर इंप्लांट नहीं करेंगे. अब एक क्वेश्चन रिसेंटली आपसे पूछा जाता है अबाउट कॉक्लियर एनोमलीज जो आता है. कॉक्लियर एनोमलीज क्या होती हैं? एक कॉक्लियर एनोमली मैंने ऑलरेडी बता दी, दैट इज माइकल एप्लेजिया. माइकल एप्लेजिया मींस कंप्लीट एब्सेंस ऑफ कॉक्लिया. ठीक है. सेकेंड एनोमली इज कॉल्ड एज शाइबीज डिस्प्लेजिया. ये सारी कॉक्लियर एनोमलीज हैं. शाइबी डिस्प्लेजिया का क्या मतलब होता है? शाइबी डिस्प्लेजिया का मतलब है, शाई में क्या आ रहा है? एस और सी आ रहा है. ये बहुत सिंपल तरीका है. एस और सी आ रहा है तो मतलब शाइबी डिस्प्लेजिया में फैक्यूलो कॉक्लियर डिस्प्लेजिया भी होता है. फैक्यूल और कॉक्लिया नहीं बनता. एस और सी से स्टार्ट हो रहा है तो एस और सी याद रखो, फैक्यूल और कॉक्लिया. थर्ड टाइप इज कॉल्ड एज अलेक्जेंडर डिस्प्लेजिया. अलेक्जेंडर डिस्प्लेजिया को याद रखने के लिए याद रखना है ABCD. A फॉर अलेक्जेंडर, D फॉर डिस्प्लेजिया. क्या प्रॉब्लम है विद द B and C? बेसल टर्न ऑफ कॉक्लिया. देखो सिंपल सिंपल. ठीक है. और फोर्थ एनोमली कॉक्लिया की है मॉन्डिनी डिस्प्लेजिया. मॉन्डिनी में क्या होता है? इफ कॉक्लिया इज अराउंड 2.5 टर्न्स, हियर द कॉक्लिया इज हैविंग ओनली 1.5 टर्न. सिर्फ आधा कॉक्लिया बना है. So here only there are 1.5 turns of the cochlea. सिर्फ आधा कॉक्लिया है, not 2.5 turns. तो उसे हम कहते हैं मॉन्डिनी. तो माइकल मतलब कंप्लीट गया, शाइबी मतलब एस और सी सैक्यूलो कॉक्लियर, अलेक्जेंडर ABCD बेसल टर्न ऑफ कॉक्लिया, एंड मॉन्डिनी का मतलब अब सिर्फ आधा रखा है, यानी 1.5 turns of cochlea left. These are the cochlear anomalies which commonly get asked in INI-CET. The only cochlear anomaly you will not do a cochlear implant is Michael. बाकी सब में करने के तरीके हैं. ठीक है.
हो गया? दिस इज व्हाट यू नीड टू नो इन कॉकलियर इंप्लांट. चलो आगे बढ़े. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, बाहा. In those cases where you cannot do or you cannot give air conduction hearing aid, air conduction के लिए hearing aid नहीं दे सकते. किन में नहीं दे सकते? मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था. Those people who have got EAC atresia, मतलब external auditory canal बंद हो गई है. I told you the external auditory canal is formed from the first pharyngeal cleft. वो बंद हो गया है. It is not formed. So obviously they will have EAC atresia. Second, अगर chronic discharge है ईयर में, right? If the patient is having otitis externa, in all of these cases you will not be able to have any air conduction hearing aid. तो उनमें भी bone conduction hearing aid देनी पड़ती है. Bone conduction hearing aid के 3 पार्ट होते हैं. One is called as speech processor, one is called as abutment, ये सेंट्रल पार्ट है, और एक पार्ट जो हम स्कल में फिक्स करते हैं इसे कहते हैं टाइटेनियम स्क्रू. तो व्हाट डू वी डू? बेसिकली हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये 2 स्टेज प्रोसीजर होता है. दे आर डन इन टू स्टेजेस. हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वी ड्रिल अ होल इन द स्कल एंड वी पुट दिस टाइटेनियम स्क्रू इनसाइड. नाउ दिस टाइटेनियम स्क्रू जब हम फिट कर देते हैं, दिस स्क्रू विल टेक अराउंड 4 to 6 months to integrate inside the bone, which is called as osseointegration, to fit inside the bone. जब ये फिक्सचर टाइटेनियम कंप्लीटली बोन ले लेगा, after 6 months we'll do stage 2. That means now we'll fix the abutment to the screw, and abutment के पीछे we'll put the speech processor. Now what happens is this speech processor catches all the sound and it bypasses the external and middle ear and it sends all this sound directly to the cochlea. तो bone conduction के through सारा का सारा sound जा रहा है to the cochlea. It is bypassing the external and middle ear. This is why it's called as BAHA, bone anchored hearing aid. अब उसे anchor कर रहे हैं to the bone so that hearing can happen. ठीक है, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है. वेयर इट इज डन, EAC atresia, यही क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंडिकेशन. ठीक है, चलिए ओके, लास्ट स्लाइड फॉर ईयर. इसके बाद हमारा नोज स्टार्ट होगा. सो अगेन ईयर इज ह्यूज, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू. अब ईयर की लास्ट स्लाइड में ये आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया. इफ यू गेट एनी पेशेंट वेयर दे हैव गिवन यू पेशेंट हैज कंडक्टिव हियरिंग लॉस, पेशेंट हैज गॉट pulsatile tinnitus, and you see a red colored mass behind the normal tympanic membrane, this is nothing but this is glomus tympanicum. Glomus tympanicum. अब glomus tympanicum में there are certain important visible signs. अगर आपको एक रेडिश मास दिख रहा है behind the normal tympanic membrane, this looks like a sun rising, right? तो इसे कहते हैं rising sun sign. Second sign of glomus tumor. अगर we put pressure over this mass, तो इसमें हम क्या करते हैं, we put Siegel's speculum, and Siegel's speculum से we put pressure inside the external auditory canal. That pressure once it is applied over this tumor blanches. ये blanch कर जाता है, white हो जाता है. जैसे हाथ के ऊपर pressure लगाते हैं तो ये blanch हो जाता है, right? White हो जाता है. The tumor blanches on pressure. If the tumor blanches on pressure, it is called as brown sign. B for brown, B for blanch. Third sign. This tumor is supplied by external carotid artery. So if we put pressure over the carotid artery, this tumor will blanch. अगर carotid पे pressure लगा के tumor blanch करता है, that is called as aquinose sign. So brown sign, rising sun sign, aquinose sign, ये आपको याद रखने हैं. These are the classical cases of glomus tympanicum. अब देखो 2 तरीके के ग्लोमस होते हैं. एक होता है tympanicum, एक होता है जुगुलर. एक जुगुलर वेन के जो एडवेंटिशिया उससे निकल रहा है, एक टिम्पैनिक प्लेक्सस जो प्रोमोंटरी पे है उससे निकल रहा है. तो ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू गेट कंडक्टिव हियरिंग लॉस, pulsatile tinnitus alone, then it is tympanicum. If you get any patient with conductive hearing loss, tinnitus with palsies, cranial nerve palsy, then this is glomus jugular, क्योंकि ये जुगुलर फोरामेन से निकल रहा है. अब क्वेश्चन ये है कि जुगुलर जो फोरामेन होता है उससे क्या क्या निकलता है. जुगुलर फोरामेन से निकलता है 9, 10 and 11th cranial nerve. Glossopharyngeal, vagus and 11th final accessory comes out of jugular foramen. यानी अगर कोई भी ट्यूमर जुगुलर फोरामेन के तरफ होगा तो it will compress all the 3 nerves. What will be the CT finding of glomus jugular? CT या HRCT finding of glomus jugular is called as Phelps sign. Phelps sign. ठीक है, अब ये हमारा HRCT टेम्पोरल बोन है. ये मैंने ऐसे सर को काटा और ऊपर से देखा.
जब मैंने ऐसे सर को काटा और ऊपर से देखा तो जो भी मुझे ट्राइंगल टाइप का दिख रहा है, वट एवर आई एम सीइंग लाइक अ ट्राइंगल, दिस इज माई पीटरस बोन, ये मेरी पीटरस बोन है। ठीक है, अब देखो इसी ट्राइंगल में, लेट मी जस्ट टेक आउट दिस ट्राइंगल, इसी पीटरस बोन में आप देखोगे आपको एक फिंगर की तरह कोई चीज दिखेगी, फिंगर, जैसे आपने यहां पे फिंगर लगा दी है, ये दिख रहा है, मैंने फिंगर लगा दी यहां पे, तो ये जो फिंगर लाइक इंप्रेशन है ना, ये हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। ठीक है, ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट है। यहां पे एक फोरामेन होता है जिसका नाम होता है जुगुलर फोरामेन, जिससे निकलती है 9, 10 और 11th क्रेनियल नर्व। ठीक है, टुगेदर विद द इंटरनल जुगुलर वेन। तो ये जो बीच की बोन है, कैरोटिड आर्टरी और इस जुगुलर फोरामेन की जो बीच की बोन है, इस बोन को हम लोग कहते हैं कैरोटिको जुगुलर स्पाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर कोई ट्यूमर इस पर्टिकुलर जुगुलर फोरामेन से निकला, देन इट विल इरोड दिस कैरोटिको जुगुलर स्पाइन। कोई भी चीज सीटी में जो व्हाइट दिखती है वो बोन है, जो ग्रे दिखती है वो ट्यूमर या सॉफ्ट टिश्यू है। तो इफ यू सी हियर, यू विल बी सीइंग कि ये जो फिंगर लाइक इंप्रेशन है ये कैरोटिड आर्टरी का दिख रहा है, बट यू कैन नॉट सी द बोन, यू कैन ओनली सी दिस ग्रे 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 ट्यूमर। दैट मीन्स दिस साइड पे देयर इज इरोजन ऑफ द कैरोटिको-जुगुलर स्पाइन, एंड इरोजन ऑफ कैरोटिको-जुगुलर स्पाइन इज क्लासिकली सीन कॉल्ड एज फेल्प्स साइन। ठीक है, ये याद रखना, दिस इज हाउ यू रीड फेल्प्स साइन। ये जहां ग्रे ग्रे दिख रहा है ना, दैट इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज फेल्प्स साइन। ओके फाइन, चलिए ये क्लासिकल है, वेरी वेरी क्लासिकल फॉर ग्लोमस। ओके, फेज 2, कमिंग टू नोज एंड पैरानेजल साइनस। तो पहली ग्रिल हमारी खत्म हो गई, दैट इज ईयर। ईयर में मैंने बताया जितने भी प्रॉब्लम क्वेश्चन थे हमने सब डिस्कस किए। दैट इज व्हाट यू रिक्वायर इन ईयर एज योर लास्ट टाइम रिवीजन। जितना भी मैंने बताया ये सारे पोटेंशियल क्वेश्चन है जो कभी भी आ सकते हैं। अब हम लोग फटाफट नोज में जाते हैं। नोज बहुत ईजी है, तो हम लोग फटफट फटफट रैपिड फायर करेंगे। नोज इज गोइंग टू टेक द लीस्ट ऑफ टाइम इन कंपैरिजन टू एवरीथिंग। ठीक है, चलिए नोज को जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। यू हैव गॉट अ न्यूबॉर्न चाइल्ड, और उस न्यूबॉर्न चाइल्ड के आपने देखा कि वो बच्चा जो है वो उसके एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, एंड द चाइल्ड हैज हैविंग साइक्लिकल साइनोसिस। साइक्लिकल साइनोसिस का मतलब है बच्चा रोता है और बच्चा सोता है। बच्चा रोता है सोता है का मतलब कि बच्चा व्हेन इट्स बॉर्न, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट चिल्ड्रन आर, व्हेन द न्यूनेट्स आर बॉर्न, न्यूनेट्स आर ऑब्लिगेट नेजल ब्रीदर्स। ऑब्लिगेट नेजल ब्रीदर्स का मतलब है बच्चे सिर्फ नाक से सांस लेना जानते हैं, दे डोंट कैनॉट ओपन देयर माउथ एंड ब्रीथ। And why neonates cannot open their mouth and breathe? उसका reason ये है because their larynx is very high placed at the level of C1, C2. So if they open their mouth, the larynx will shut. So now, if this child is having cyclical cyanosis, that means now the nose is closed from behind, right? And the child is now crying because he's getting cyanosis, and during crying, accidentally वो air अंदर जाती है, patient ठीक हो जाता है, फिर वो मुंह बंद करता है, फिर से वो cyanosis हो जाता है, फिर से वो रोता है, फिर से ठीक हो जाता है। तो बच्चा रोता है और बच्चा सोता है। This is called as cyclical cyanosis. राइट, सो दिस साइक्लिकल साइनोसिस का चाइल्ड में आपने एक इन्वेस्टिगेशन करी, और आपने क्या किया, जब आपने इन्वेस्टिगेशन करी तो इन योर नेजोफैरिंगोस्कोपी यू फाउंड दैट दिस चाइल्ड हैज गॉट कंप्लीटली क्लोज्ड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी। अब अगर आपने पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी क्लोज्ड एक तरफ देखा तो इट इज यूनिलैटरल, अगर दोनों तरफ देखा विच इज मोर सिवियर, इट इज कॉल्ड एज बायलैटरल ख्वानल एट्रीशिया। यूनिलैटरल ख्वानल एट्रीशिया जो होता है उसमें कोई सडन सिम्टम नहीं होते, क्योंकि एटलीस्ट बच्चा एक साइड से सांस ले रहा है। बट बायलैटरल ख्वानल एट्रीशिया में आपको साइक्लिकल साइनोसिस मिलेगा बिकॉज द चाइल्ड इज नॉट ब्रीदिंग एट ऑल। राइट, नाउ व्हेन द चाइल्ड इज डायग्नोज्ड विद ख्वानल एट्रीशिया, तो सबसे कॉमन सिंड्रोम कौन सा होता है जो ख्वानल एट्रीशिया से एसोसिएटेड होता है? इट इज चार्ज सिंड्रोम। चार्ज का मतलब क्या होता है? C फॉर कोलोबोमा ऑफ द आइरिस, H इज फॉर हार्ट डिफेक्ट्स, A is for atresia, जो आपको दिखा ख्वानल एट्रीशिया, R is retardation of growth, G for genitourinary anomalies, and E stands for ear anomalies. ये आपने पढ़ा भी होगा। चार्ज syndrome is very very common. चार्ज syndrome is a syndrome which is associated with CHD7 mutation, which is present on chromosome number 8. तो 7 and 8. तो चार्ज मतलब CHD याद रखो, चार्ज syndrome है CHD। CHD जीन का म्यूटेशन होता है 7 एसोसिएटेड ओवर क्रोमोसोम नंबर 8। ठीक है, अब इसमें एट्रीशिया बड़ा कॉमन होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर बच्चे के एट्रीशिया है तो अब आप क्या करेंगे? तो इन केसेस ऑफ एट्रीशिया यू नीड टू ऑब्वियसली डू अ सर्जरी। नाउ हाउ विल यू डू अ सर्जरी? तो सबसे पहले यू डू एन इमरजेंसी एयरवे मैनेजमेंट, और एयरवे मैनेजमेंट के लिए आपको मुंह बच्चे का खोलना है कुछ करने के लिए ताकि वो बच्चा ब्रीथ करे। तो इन ऑर्डर टू ओपन द माउथ ऑफ द पेशेंट हम लोग क्या करते हैं? वी टेक अ निपल, जो बॉटल की निपल होती है,
और इस बॉटल निपल को हम लोग कट कर देते हैं, और कट करने के बाद इस बॉटल को निपल को हम लोग अंदर लगा देते हैं मुंह के. And when we place that nipple inside the mouth, obviously the child is going to breathe through this hole because now the child's mouth is open. And because child को आता नहीं है ओपन करना, आपने उसको जबरदस्ती ओपन करके रख दिया है. And you tie this nipple around the occiput. इसको आप occiput के अराउंड टाई कर देंगे. This is basically called as a McGovern's nipple. Very important. So सबसे पहला मैनेजमेंट इन केसेस ऑफ बायलैटरल एट्रीशिया क्या होगा? You will put a McGovern's nipple to open the mouth of the child. Now comes what will you do next? Next will be that I am going to operate. Now when I operate atresia, we always take down this particular opening. हम पूरी opening से जितना भी हमारा ये membrane है, bone है, वो सब हटा देते हैं. Now always remember the rule of the book is कि कभी भी आप सर्जरी करेंगे तो कहीं पे भी आप कट करेंगे तो वो फाइब्रोज वापस से हो जाएगा. तो इन ऑर्डर सो दैट ये सारी की सारी एजेस जब आपने हटाई है ये, ताकि ये फाइब्रोज ना करे, we place one important ointment at these edges. And that drug which we place at the edge is called as mitomycin C. Mitomycin C is an anti-fibroblastic agent. तो मिटोमाइसिन सी का काम यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है. ये फाइब्रोज नहीं होने देता हमारे एजेस को, एंड इट कॉजेज एंटी-फाइब्रोब्लास्टिक इफेक्ट. ठीक है, फाइन. तो मैकगोवन्स निपल के बाद सर्जरी, एप्लीकेशन ऑफ मिटोमाइसिन सी. चार्ज सिंड्रोम. बस यही क्वेश्चन आए हैं, यही आपको याद रखना है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. यू हैव गॉट 2 children and both these children have got swelling over the dorsum of the nose. अब अगर swelling है over the dorsum of the nose, एक तरफ ये swelling कैसी दिख रही है? This swelling appears to be bluish. This swelling is transilluminant. This swelling is compressible. This swelling is soft. And this swelling increases when the baby cries. यानी जब बच्चा क्राई करता है तो ये स्वेलिंग बढ़ जाती है. इफ द स्वेलिंग इंक्रीजेस व्हेन द बेबी क्राइज, दैट टेस्ट इज कॉल्ड एज फूस्टेनबर्ग टेस्ट. फूस्टेनबर्ग टेस्ट का मतलब होता है व्हेन द बेबी विल क्राई तो ये स्वेलिंग बढ़ जाएगी. ये कौन सी स्वेलिंग है? दिस स्वेलिंग इज एनसेफेलोसील. दिस इज एनसेफेलोसील. इसका क्या मतलब होता है? एनसेफेलोस का मतलब ही है ब्रेन एंड मेनिंजेस. तो व्हेन there is a defect in the frontal bone, या frontal bone में defect हो जाता है, तो what happens naturally is कि बच्चे की जितनी भी meninges होती हैं as well as the brain, they tend to pop out as a swelling which is called as encephalocele. seal का मतलब cavity, जो एक बनी हुई है बड़ी सी जिसके अंदर brain और meninges है. अब ये swelling जो है वो bluish होगी, transilluminant होगी, it will be pulsatile, it will be compressible, it will be soft. And अगर बच्चा रोएगा तो obviously क्योंकि this swelling has a connection with the brain, the swelling will increase in size जैसे ही वो बच्चा रोएगा because the CSF will raise, and that test is called as Furstenberg test. ये एनसेफेलोसील में फूस्टेनबर्ग टेस्ट पॉजिटिव होता है. दूसरी तरफ आ जाओ, there is another swelling present over the dorsum of the nose, but ये bluish नहीं है, ये transilluminant नहीं है, ये compressible है पर ये little hard है. This has got a negative Furstenberg test. इसमें कोई भी क्राई करने पे इंक्रीज नहीं हो रहा. तो ये क्या है? What is this swelling? So this is nothing but these are your dysplastic cells जो यहां पे बन गए हैं, and we call this as glioma. तो ग्लायोमा एक पर्टिकुलर छोटा सा ट्यूमर होता है जिसमें डिस्प्लास्टिक सेल्स जो होते हैं which जो इकट्ठा हो जाते हैं ओवर द डॉर्सम ऑफ द नोज, एंड दैट प्रोड्यूसेस नेगेटिव फूस्टेनबर्ग टेस्ट, क्योंकि इस स्वेलिंग का कोई भी कनेक्शन इंट्राक्रेनियल कंपार्टमेंट से नहीं है, ये सब उसके बाहर है. तो दिस इज अ नेजल ग्लायोमा. तो हमेशा याद रखना, अगर वो बोले आपसे फूस्टेनबर्ग टेस्ट नेगेटिव, अगर आपसे बोले ये स्वेलिंग ट्रांसल्यूमिनेंट नहीं है, अगर वो बोले ब्लूइश नहीं है, अगर ये बोले कि ये पर्टिकुलर कंप्रेसिबल नहीं है, तो ये ग्लायोमा की तरफ है. अगर ये बोले तो ये ऑब्वियसली एनसेफेलोसील की तरफ है. फूस्टेनबर्ग टेस्ट इज अ क्लासिकल लैंडमार्क बिटवीन द टू. ठीक है, चलिए अब आ जाती है तीसरी चीज. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिविएशन ऑफ द नोज. इफ द नेजल डिविएशन इज ओनली इन द सेंटर और डिविएशन वापस आ जाता है टुवर्ड्स द टिप, मतलब नाक बीच में से टेढ़ी है बट टिप पे आई तो सीधी हो गई, दिस इज कॉल्ड एज अ क्रुकेड नोज डिफॉर्मिटी. क्योंकि क्रुक देखो सी की तरह लग रहा है तो क्रुकेड नोज है. और अगर देयर इज अ कंप्लीट डिविएशन ऑफ द नोज वेयर द होल नोज हैज गॉन अवे फ्रॉम द मिड लाइन, दिस इज कॉल्ड एज अ डिविएटेड नेजल डिफॉर्मिटी. दोनों केसेस में हमें करनी होती है सेप्टोराइनोप्लास्टी. राइनोप्लास्टी का मतलब नोज जॉब, वेयर वी करेक्ट द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द नोज. ठीक है, चलिए आगे बढ़े. यू हैव गॉट अ मिडिल एज मैन.
and this man has got a huge tumor which is present over the tip of the nose. So what is this? Tip of the nose पे अगर ग्लोबुलर ट्यूमर दिखा तो उसे कहते हैं राइनोफाइमा. राइनोफाइमा को हम लोग पोटैटो नोज भी कहते हैं. Now why this rhinophyma happens? It occurs due to the hypertrophy of the sebaceous glands. तो अगर देखो नाक के ऊपर बहुत सारे sebaceous glands होते हैं, ये sebaceous glands की hypertrophy हो जाती है and that causes a visible tumor over the tip of the nose which is called as rhinophyma. अब किसमें होता है rhinophyma? So they will give you a very important clue. तो अगर आपको याद रहे तो हमेशा याद रखिएगा कि एज अगर हो मोर देन 50, एंड्रोजन एक्सेस मतलब हार्मोन्स एक्सेस में, एंड्रोजन इज ऑब्वियसली मेल्स, तो मेल में एक्सेसिव हार्मोन्स. सेकेंड चीज, अनट्रीटेड एक्ने रोजेशिया, अगर पेशेंट के एक्ने है वो ठीक नहीं हुई है, अनट्रीटेड एक्ने रोजेशिया, एंड एनी मेल हु इज अल्कोहलिक. ये क्लूज हैं. तो मैंने आपको बताया 4A ऑफ राइनोफाइमा. एनीवन age more than 50, androgen excess, acne rosacea and an alcoholic, they will all be towards rhinophyma or potato nose. ठीक है, चलिए अब आ जाता है नेक्स्ट. अगर मैंने दिखाया आपको कोई भी चीज, मतलब एक नेजल एग्जामिनेशन, एंड इफ आई शो यू कि मैंने टिप उठाई नाक की और एक तरफ सेप्टम ऐसे निकल के बाहर आ गया, दिस टाइप ऑफ सेप्टल डिविएशन इज कॉल्ड एज कॉर्डल सेप्टल डिविएशन, also called as anterior dislocation. Dislocation का मतलब the moment I lift the nose, the septum becomes dislocated and comes to one side. It's a type of septal deviation. This is called as anterior dislocation. If I show you any particular picture inside the nose where there is a sharp bend of the nasal septum, sharp bend का मतलब है this is a nasal spur. अब दो क्वेश्चन स्पर से आते हैं. One question is what? One question is related to spur is that if this particular spur impinges over the middle turbinate, देखो ये middle turbinate है, इसको ये छू रहा है. middle turbinate के अंदर एक important nerve होती है anterior ethmoidal nerve. Now when the septal spur impinges over the anterior ethmoidal nerve which is supplying the middle turbinate, it creates hemifacial pain. Hemifacial pain in cases of spur is associated with Schleder's neuralgia. What is Schleder's neuralgia? It is basically hemifacial pain which is associated with anterior ethmoidal nerve irritation जो middle turbinate को सप्लाई करता है जब स्पर उस पे impinge करता है. दूसरा कॉमन क्वेश्चन, what is the most common type of deviation which causes bleeding? The most common deviation to cause bleeding is septal spur, क्योंकि ये obviously सबसे sharp होता है. ठीक है? Now somebody is asking about incision of septo and rhinoplasty. Okay. So see, there are two incisions which we give over, one in septoplasty, one in SMR. Septoplasty का जो incision होता है is given at the caudal border of the septal cartilage. देखो ये मेरी septal cartilage जहां पे start हो रही है, अगर मैंने इसी पे incision दिया, this incision is called as Freer's incision. Freer's incision is given in septoplasty. If I give an incision 5 millimeters posterior, मतलब थोड़ा और अंदर 5 millimeters posterior to the caudal border of the septum, that incision is called as Killian's incision. Killian's incision is 5 mm posterior to the caudal border of the septum. इसके 5 मिलीमीटर पीछे. This is an incision which we give in submucous resection or SMR. Always remember, Freer's incision को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, Killian को बाहर नहीं निकाल सकते. तो इसीलिए Freer's incision के साथ we can add a rhinoplasty incision. Rhinoplasty में हम सेंटर में यहां पे incision देते हैं. We give an incision over the columella. So that is why you can add the Freer's incision with this incision in cases of if you're doing a septoplasty. Rhinoplasty उसके साथ कर सकते हैं. You can add on this incision. But SMR incisions you cannot do a rhinoplasty. वो क्योंकि बहुत posterior है. ठीक है? चलिए. Okay. What is this test? आपने एक तरफ nasolabial fold को पकड़ा और उसे lateralize किया, पेशेंट की breathing better हो गई. What is this? This is called as Cottel's test. Cottel's test is done to see the patency of internal nasal valve. What is the boundary of internal nasal valve? अगर मैंने ये अपनी एक नाक निकाल ली और यहां पे लगा दी, तो बेसिकली दिस इज माई सेप्टम, दिस इज माई सेप्टम, ये मेरा सेप्टम है. लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर. दिस इज माई नेजल सेप्टम. ठीक है? अब सोचो मैंने एक साइड की नाक ऐसे लगाई है, तो दिस इज माई मीडियल बाउंड्री. लैटरल बाउंड्री पे मेरे कार्टिलेजेस हैं. What cartilages are present over on the nose? ये मेरी होती है अपर लैटरल कार्टिलेज,
and below is my lower lateral cartilage, and this is my nasal floor. ये मेरी एक साइड की nasal cavity है. Upper lateral cartilage, lower lateral cartilage और center में septum. Now if I peek inside, अगर मैं अंदर देखूं तो यहां पे मेरा turbinate है. This is my inferior turbinate. ठीक है? What is internal nasal valve? Internal nasal valve is the narrowest area of the nasal cavity which have got the maximum resistance to airflow. सबसे ज्यादा नाक में airflow resistance हमारा internal nasal valve देता है. What are the boundaries? This is my internal nasal valve. ये. What are the boundaries? Boundaries of internal nasal valve is medially it is our septum. ये देखो medially septum है. Laterally it is the lower end of our upper lateral cartilage. ये मेरा lower end of upper lateral cartilage है. इसे मैं caudal end of upper lateral cartilage भी बोल सकता हूं. So the caudal border of upper lateral cartilage is my lower border laterally, and inferiorly it is our inferior turbinate. This is your internal nasal valve, and it is the narrowest area of your nasal cavity which has got the maximum resistance to airflow. तो जब भी किसी के डीएनएस होता है, तो डीएनएस जब होगा तो सबसे पहले ये एरिया नैरो हो जाएगा, और अगर ये एरिया नैरो हो गया तो ऑब्वियसली पेशेंट के बहुत रेजिस्टेंस होगी, और अगर बहुत रेजिस्टेंस होगी तो आप क्या करेंगे? अगर मैंने कॉटल्स टेस्ट किया, सो इन कॉटल्स टेस्ट आई एम पुशिंग द नेसोलेबियल फोल्ड अवे, सो बेसिकली दिस लैटरल वॉल इज गोइंग अ लिटिल अवे, एंड व्हेन इट इज गोइंग अवे ये एरिया खुल रहा है एंड द पेशेंट ब्रीथ्स बेटर. तो इफ द पेशेंट विल ब्रीथ बेटर, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर मैंने सेप्टम करेक्ट कर दिया, the patient's breathing will definitely improve. This is the test to basically find out if the surgery will be helpful to the patient or not. And this is why this test is done bedside before the surgery. ठीक है, चलिए आगे बढ़े. Now comes, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि दो इंसिजन होते हैं सेप्टोप्लास्टी एसएमआर में. इफ इट इज डन एट द कॉर्डल बॉर्डर, उसे कहते हैं हेमी ट्रांसफिक्सेशन इंसिजन या फिर फ्रियर्स इंसिजन. फ्रियर्स इंसिजन हेमी ट्रांसफिक्सेशन इंसिजन भी कहा जाता है, and it is done in cases of septoplasty. If we give any incision 5 millimeters behind the caudal border of the septum, we call this incision as Killian's incision, and this is given in cases of SMR. So Killian SMR और Freer septoplasty. ये चीज याद रखना, ठीक है? ये सेम वही आंसर है जो आपने पूछा था. ओके फाइन, आपने एक सर्जरी करी, यू डिड अ सर्जरी ऑफ अ पर्सन, और सर्जरी करने के बाद नाउ योर सिस्टर कॉल्स यू, और सिस्टर कहती है सर आ जाइए और बहुत सारे पेन हो रहा है पेशेंट को. अब आपने सेप्टोप्लास्टी करने के बाद आप गए और आपने देखा कि द पेशेंट हैज गॉट विजिबल बायलैटरल रेड कलर्ड बॉगी स्वेलिंग्स, बॉगी विजिबल रेड कलर्ड स्वेलिंग्स पोस्ट सेप्टोप्लास्टी. व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट दिस इज सेप्टल हेमाटोमा. ठीक है, दिस इज सेप्टल हेमाटोमा. सेप्टल हेमाटोमा का मतलब क्या होता है? दैट इफ दिस इज योर सेप्टम, सेप्टम के साइड में हमारे म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल फ्लैप्स हैं, एंड म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल फ्लैप्स और सेप्टम के बीच में देयर इज कलेक्शन ऑफ ब्लड. दैट इज कॉल्ड एज सेप्टल हेमाटोमा. इट इज ऑलवेज बायलैटरल, बॉगी, सिमेट्रिकल, रेड इन कलर. सो नाउ व्हाट विल यू डू? ये हमारे म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल फ्लैप है ना हमारा, ये सेप्टम है, इसके ऊपर हमारा म्यूकोजा है, पेरिकॉन्ड्रियम है. अब ये उठ गया है, एंड ऑब्वियसली व्हेन इट हैज, जब ये उठ गया है तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है? वी नीड टू ड्रेन इट. So what you're going to do, you're going to do an emergency incision and drainage, जिसमें आप एक निक लगाएंगे and you're going to drain out all the blood. So how will you treat it? You will do an emergency incision and drainage. That is the treatment. And once you have done the emergency incision and drainage, you need to pack this particular thing tightly. So you need to pack the nose tightly once you have done the incision and drainage, and that is what you need to do as septal hematoma management. अगर आपने नहीं किया, this cartilage will necrose and it will cause septal perforation, या फिर ये septal abscess में बदल जाएगा. It will turn into an abscess. You need to do this as soon as possible. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चलिए अब आता है, आपके पास एक पेशेंट आया. दिस पर्टिकुलर पेशेंट इज अ पेशेंट जो आपके पास आके कहता है कि मेरी एक तरफ की नोज से मुझे बहुत सारी ब्लीडिंग होती है और कभी कभार होती है, and I get a lot of nasal pain episodes. Now, when you examine the patient, you see a stone-like mass inside the nasal cavity. Stone-like mass. तो इसका मतलब क्या हुआ कि let's say this is your nasal cavity, and when you examine this patient, you see कि इसके अंदर एक stone-like mass है. What is this mass? This is a rhinolith. Rhino का मतलब nose, lithos का मतलब stone. So this is a calcareous mass within the nasal cavity. क्यों होता है ये? This happens because of a missed foreign body.
अगर किसी भी इंसान के फॉरेन बॉडी बचपन में चली गई और वो मिस हो गई और उसने कोई निकलवाई नहीं, तो क्या होगा? दैट फॉरेन बॉडी विच गोज इनसाइड द नोज, इट इनिशिएट्स अ ग्रैन्युलोमैटस रिस्पॉन्स अराउंड इट। तो इसके अराउंड ग्रैन्युलेशन टिश्यू इकट्ठा होने लगता है, इट स्टार्ट्स टू प्रोलिफरेट, and around the granulation tissue there is deposition of calcium and magnesium salts. There is abnormal deposition of calcium and magnesium salts. And when कोई भी foreign body के around calcium या magnesium salts deposit हो जाते हैं, it forms a stone like calcareous mass. This stone like calcareous mass is given the name as rhinolith. Now how do you treat it? So you basically break this and you do a piecemeal removal. पीस मील रिमूवल का क्या मतलब होता है? इसको छोटा कर करके, छोटा छोटा करके वी टेक इट आउट वन बाय वन, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग मास। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ राइनोलिथ? अब खुद देखो ये कितना, हाउ मच इट इज हैविंग, हाउ मेनी प्रोजेक्शंस आर कमिंग आउट। और देखो ये प्रोजेक्शंस जो है नेजल सेप्टम को बार बार छू रहे हैं। तो व्हेन दीज प्रोजेक्शंस विल बी अ लॉट एंड दे विल कीप इरोडिंग द नेजल सेप्टम, आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम दे विल क्रिएट अ होल इन द नेजल सेप्टम विच इज नेजल परफोरेशन. So septal perforation is the most common complication of rhinolith, which are for a long period of time. ठीक है? और क्या करते हैं? piecemeal removal. चलिए आगे बढ़े. Okay, very good. Now, this is the whole chart about what are the tumors of nose and paranasal sinuses that you need to remember for your exams. इस सारे के सारे इनमें मैंने 4 important tumors आपको, sorry, 3 important tumors I have given you over for tumors of nose and PNS. और ये बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और मैं आपको इंपॉर्टेंट सर्जिकल इमेजेस भी दिखाऊंगा विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंसिजन से रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका आता है. तो अगर मैं आपसे अगर मैंने आपको कभी भी एक केस दिया वेर आई टेल यू दैट देयर इज अ 50-year-old मेल हु हैज कम विद अ फ्लैशी मास इन राइट नेजल और लेफ्ट नेजल कैविटी, एक नेजल कैविटी में फ्लैशी मास है, एंड दैट मास हैज गॉट यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड ऑन एंड ऑफ एपिस्टैक्सिस. तो देखो मैंने क्या बोला, फ्लैशी मास, 50-year-old female, a male, having one-sided mass which is unilateral nasal obstruction, and at the same time the patient has got on and off epistaxis. Then your answer should be undoubtedly it is inverted papilloma. Inverted papilloma is the most common benign tumor of the nose, but it has a malignant potential. अब क्योंकि एक papilloma है, that is why it is caused because of HPV. तो इसकी एक लोकली अग्रेसिव क्वालिटी होती है और ये बन जाता है इनटू मैलिग्नेंसी अगर आपने इसे छोड़ दिया. एंड वेयर डज इट अराइज फ्रॉम? तो ये इन्वर्टेड पैपिलोमा अराइज करता है फ्रॉम द लैटरल वॉल ऑफ द नोज, नोज की लैटरल वॉल से अराइज करता है. ये सब क्वेश्चन है. अब एक चीज याद रखना, व्हाट इज द नोज लाइंड बाय? नोज इज लाइंड बाय एन एपिथेलियम कॉल्ड एज pseudo-stratified ciliated columnar epithelium. ये हमारी नोज की लाइनिंग है. इसका एक फैंसी सा नाम है. This lining epithelium of the nose is also called as Schneiderian membrane. अब क्योंकि ये ट्यूमर श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन या फिर म्यूकोजा जो हमारी है लैटरल वॉल पे और श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन से निकलता है, इसलिए इस ट्यूमर को हम लोग श्नाइडेरियन पैपिलोमा भी कहते हैं, या फिर इसे हम लोग सिंपल वर्ड्स में इन्वर्टेड पैपिलोमा भी कहते हैं. अब ये इन्वर्टेड पैपिलोमा क्यों होता है? इन्वर्टेड पैपिलोमा ये इसलिए होता है क्योंकि अगर सपोज ये मेरी सेल की लाइनिंग है, ये मेरी सेल की लाइनिंग है, अगर ये ट्यूमर ऐसे निकलेगा तो नॉर्मली ट्यूमर बाहर निकलते हैं ना, ऐसे निकलते हैं, ये उल्टा निकलता है. व्हेन यू सी द हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ दिस ट्यूमर ग्रोज लाइक इनवर्ड्स, ये अंदर ग्रो करता है, इसकी हिस्टोपैथोलॉजी इन्वर्टेड होती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज इन्वर्टेड पैपिलोमा. क्योंकि ये श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन से निकल रहा है विच इज द नॉर्मल एपिथेलियम ऑफ द नोज, इट इज कॉल्ड एज श्नाइडेरियन पैपिलोमा. क्योंकि इस ट्यूमर को सबसे पहले रिंगर्ड्स ने देखा, रिंगर्ड्स वाज द साइंटिस्ट, इसलिए इसका दूसरा नाम रिंगर्ड्स ट्यूमर भी होता है. ये सब क्वेश्चन है. अब एक चीज याद रखना, ये सबसे कॉमन बिनाइन नेजल कैविटी ट्यूमर है, सबसे कॉमन, ठीक है. और कोई भी आपका जो इंसान आएगा उसमें यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, फ्लैशी मास विद एपिस्टैक्सिस में इन्वर्टेड पैपिलोमा आंसर बनता है. अगर मैं एक चीज बोलूं, अगर मैं यही यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, ग्रेश ग्लिसनिंग मास इन द नेजल कैविटी इन अ 16-year-old boy बोलता, what will be your answer then? Your answer will be androchonal polyp. But अगर मैं 50-year-old man में एक फ्लैशी मास बोल रहा हूं एक कैविटी में, तो मेरा आंसर इन्वर्टेड पैपिलोमा हो जाएगा. तो सी द डिफरेंस, एज डिफरेंस है यहां. 16, 17, 18, 20, 30 साल पे एंड्रोकोनल पॉलिप इज द मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी वन साइड पे, बट ये ज्यादा एज की है. अब
इसका ट्रीटमेंट क्या है? वी रिमूव द मीडियल वॉल ऑफ मैक्सिला कंप्लीटली, तो उसे कहते हैं मीडियल मैक्सिलेक्टमी। ये कंप्लीटली अंदर ही से करते हैं, एंडोस्कोपिक करते हैं। वी रिमूव द कंप्लीट मीडियल वॉल ऑफ मैक्सिला, वी कॉल इट मीडियल मैक्सिलेक्टमी बिकॉज इट इज अराइजिंग फ्रॉम द लैटरल वॉल ऑफ द नोज। तो हमें पूरा एरिया हटाना है बिकॉज इट इज अ वेरी रिकरेंट ट्यूमर। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर द कैच पॉइंट ऑफ दिस इज मेल विद यूनिलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन विद एपिस्टैक्सिस 40 to 70 के बीच में। ये मैंने वहां पे लिख दिया है रिमार्क्स। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आया जिसमें उन्होंने कहा कि देयर इज फ्रंटल साइनस में हार्ड मास, बहुत ही हार्ड मास है जो फील हो रहा है ओवर द फ्रंटल साइनस, तो दिस इज एन ऑस्टियोमा। ऑस्टियोमा इज द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ पैरानेजल साइनसेस। सबसे कॉमन ऑस्टियोमा किसमें होता है? इट मोस्ट कॉमनली हैपेंस ओवर फ्रंटल साइनस। एथमॉइड में रेयर है बट फ्रंटल में सबसे कॉमन। अब अगर लेट्स से ये मेरा फ्रंटल साइनस है, लेट्स से दिस इज माय फ्रंटल साइनस व्हिच इज ओपनिंग इनसाइड द नोज। अगर इस फ्रंटल साइनस के अंदर एक बोनी आउटग्रोथ हो गई या एक ऑस्टियोमा हो गया, तो क्या इसका जितना भी म्यूकस है वो निकल पाएगा? नहीं। और अगर म्यूकस नहीं निकलेगा इस फ्रंटल साइनस के बाहर बिकॉज इस ओपनिंग इज ब्लॉक्ड, सो दिस विल expand the frontal sinus and it will form a mucocele. म्यूकोसील का मतलब म्यूकस से भरी हुई कैविटी। वाई? बिकॉज इसकी जो आउटलेट है उसमें एक बड़ा सा ट्यूमर हो गया, दैट इज आवर बोनी ट्यूमर कॉल्ड एज एन ऑस्टियोमा। तो दैट इज वाई द क्लिनिकल फीचर विल बी अ म्यूकोसील। बड़ा सा एक फ्रंटल साइनस दिखेगा जिसके अंदर डिस्चार्ज भरा हुआ है। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द ऑपरेशन दैट यू विल डू, तो द ऑपरेशन फॉर एन ऑस्टियोमा, बिकॉज ये फ्रंटल और एथमॉइड को इन्वॉल्व करता है, दिस इज कॉल्ड एज अ लिंच-होवर्थ प्रोसीजर। अब क्या होता है लिंच-होवर्थ? ये देखो, ये आपकी आंख है, this is the eye, right? And this is the nose. This is the nose. So basically what happens is we create an incision from the medial canthus and we extend it towards the frontal bone. Medial canthus से शुरू करो और frontal की तरफ ले आओ, extend कर दो up till the frontal area. तो medial canthus to frontal, ये अगर मैंने incision दिया तो I can open up this area completely. And when I open this area, I can completely take out that tumor after vision. So this is called as a Lynch-Howarth technique. या लिंच इंसिजन भी कह सकते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं सबसे कॉमन हिस्टोलॉजिकल सबटाइप ऑफ ऑस्टियोमा क्या है? इट इज आइवरी ऑस्टियोमा। आइवरी ऑस्टियोमा इज द मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल सबटाइप। ये एक टाइप होती है, आइवरी हार्ड होती है, दैट इज व्हाई कॉल इट एन आइवरी ऑस्टियोमा। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, अगर कार्सिनोमा का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा क्या आएगा? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में दे विल ऑलवेज गिव यू अ हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब स्मोकिंग, हिस्ट्री ऑफ डस्ट एक्सपोजर। तो याद रखना, वुड डस्ट सबसे कॉमन कॉज होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा नाक में। अब वुड दो तरीके की होती है, हार्ड वुड और सॉफ्ट वुड। सॉफ्ट वुड जैसे कि यूकेलिप्टस, हार्ड वुड जैसे पाइन, टीक, सिडार, ये सारी हार्ड वुड है। यूकेलिप्टस सॉफ्ट वुड है। तो वुड इंडस्ट्री में बहुत सारी वुड कटिंग होती है और वुड कटिंग से जो डस्ट उड़ती है उससे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बहुत कॉमन होता है। नेजल कैविटी कार्सिनोमा वेरी कॉमन। तो दे विल ऑलवेज गिव यू वुड डस्ट एक्सपोजर या फिर स्मोकिंग। अगर उन्होंने बोला कि पेशेंट सॉफ्ट वुड इंडस्ट्री में काम करता था, एस फॉर सॉफ्ट, एस फॉर स्क्वामस सेल। अगर पेशेंट को बोला हार्ड वुड इंडस्ट्री में काम करता था, HA फॉर एडिनोकार्सिनोमा। हार्ड वुड कॉजेज एडिनोकार्सिनोमा, सॉफ्ट वुड कॉजेज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। एस फॉर सॉफ्ट, एस फॉर स्क्वामस। Whenever they give you squamous cell carcinoma questions, the most common site for squamous cell carcinoma is maxillary. So always remember the classical feature will be obstruction epistaxis nodes. Nodes benign tumors में नहीं पॉजिटिव होते हैं। तो नोड अगर आया लेवल 1A, लेवल 1B, 1B मतलब सबमैंडिबुलर, लेवल 1A सबमेंटल, लेवल 2 अपर जुगुलर, दे गिव नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, एक साइड पे है, एपिस्टैक्सिस है, प्रोफ्यूज एपिस्टैक्सिस हो रही है, 50-60 साल का आदमी है, वुड डस्ट एक्सपोजर है, स्क्वामस सेल तो स्मोकर है। तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन थिंग? दैट इज अ कार्सिनोमा। बैड हिस्ट्री कार्सिनोमस। मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा मैक्सिलरी। ठीक है, अब इनके केसेस में क्या करोगे? तो यू विल डू मैक्सिलेक्टमी फॉलोड बाय कीमो एंड रेडिएशन। तो द ट्रीटमेंट विल बी सर्जरी विच इज नथिंग बट मैक्सिलेक्टमी। मैक्सिलेक्टमी मतलब कंप्लीट रिमूवल ऑफ मैक्सिला फॉलोड बाय कीमो एंड आरटी, कंकरेंट कीमो आरटी। कंकरेंट का मतलब साथ साथ, कीमो प्लस रेडिएशन। ठीक है, तो ये होगी कहानी अबाउट सारी की सारी डिफरेंशियल्स ऑन ट्यूमर्स ऑफ नोज एंड पीएनएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, तभी मैंने एक चार्ट में आपको ये दे दिया है। अब मैं आपको इंसिजन दिखाता हूं।
ये इंसिजन आपके आते हैं। एक इंसिजन इनमें से पिछले साल के INI-CET में आया था। तो अगर अगर आपको कोई भी पेशेंट में एक इंसिजन दिखाया गया विच स्टार्ट्स फ्रॉम द मीडियल कैंथस, टर्न्स अराउंड द एला ऑफ द नोज, देन कम्स डाउन टू द फिल्ट्रम, फिल्ट्रम मतलब द अपर लिप के बीच में जो गैप है, एंड देन यू डू अ लिप स्प्लिट हो गई, दिस इज कॉल्ड एज अ वेबर फर्ग्यूसन इंसिजन। अब देखो इसमें ट्रिक है, अगर इंसिजन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द मीडियल कैंथस अराउंड द एला एंड लिप स्प्लिट है तो वेबर फर्ग्यूसन, अगर लिप स्प्लिट नहीं है तो लैटरल राइनोटमी। तो ओनली डिफरेंस बिटवीन वेबर फर्ग्यूसन एंड लैटरल राइनोटमी इज, लैटरल राइनोटमी में मैं ब्लू कलर का बना देता हूं, लैटरल राइनोटमी भी मीडियल कैंथस से स्टार्ट होगा, एला के अराउंड होगा, फिल्ट्रम तक जाएगा, बट लिप स्प्लिट नहीं होगी, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ लैटरल राइनोटमी इंसिजन। अगर लिप को स्प्लिट कर दिया दैट इज वेबर फर्ग्यूसन। ठीक है, अब एक और मैक्सिलरी कार्सिनोमा से एसोसिएटेड, इफ यू ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द मीडियल कैंथस टू द एंगल ऑफ मैंडिबल एंड दिस लाइन इज कटिंग योर मैक्सिलरी साइनस एरिया, any tumor above this line is called as suprastructure tumor, any tumor below this line is called as infrastructure tumor। इस लाइन को हम कहते हैं ऑनग्रेन लाइन, दिस इज कॉल्ड एज ऑनग्रेन लाइन। क्वेश्चन ये आता है, सुप्रास्ट्रक्चर अगर ट्यूमर है तो ये ब्रेन की भी पास है, ऑर्बिट के भी पास है, दिस हैज अ पुअर प्रोग्नोसिस। एनी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्यूमर इज अवे फ्रॉम द ब्रेन एंड द ऑर्बिट, दिस हैज गॉट अ बेटर प्रोग्नोसिस। तो प्रोग्नोस्टिक लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड एज ऑनग्रेन्स लाइन। ठीक है, डिवाइड्स इट इनटू सुप्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, सुप्रास्ट्रक्चर पुअर प्रोग्नोसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर प्रोग्नोसिस। ठीक है, चलिए अब दो इंसिजन जो आपके मैक्सिलेक्टमी में आते हैं, इफ दे शो यू एनीथिंग लाइक दिस, ये देखो इसमें क्या मार्क किया हुआ है, मीडियल कैंथस से आए अराउंड द एला एंड दे कट द फिल्ट्रम एंड दे कट द अपर लिप एंड दे ओपन दिस होल स्किन लाइक अ फ्लैप, ऐसे लग रहा है डोर की तरह से खोल दिया है और सेंटर से मैक्सिला हटा दी। तो what is this procedure which has been performed? This is a Weber Ferguson incision, और क्योंकि इन्होंने मैक्सिला का कंप्लीट रिमूवल कर दिया, देखो सेंटर में कोई मैक्सिला दिख नहीं रही है, they've opened it like a door, तो ये है मैक्सिलेक्टमी। What is the procedure shown here? This is maxillectomy, total maxillectomy। ये याद रखना, ये मैक्सिला के साथ है, ये मैक्सिलेक्टमी है, ऐसे फ्लैप उठा के छोड़ दिया गया, अंदर से सब निकाल लिया। नाउ सी द सेकंड इंसिजन, अगर आपको लगा ना कि ये दोनों लिप, ये अपर लिप को ऐसे उठा के एक्सपोज कर दिया है, द अपर लिप इज कंप्लीटली एक्सपोज, गम्स के अंदर इंसिजन देके ऊपर गए, देखो ये अपर लिप को कंप्लीटली ऊपर कर लिया, दिस इज द नोज, दिस इज द अपर लिप, और अपर लिप पे रिट्रैक्टर्स लगा के वी आर नाउ एक्सपोजिंग द मैक्सिला। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मिड फेशियल डीग्लविंग, मतलब मिड फेस को हम डीग्लव कर रहे हैं, मिड फेस से सारे टिश्यूज हटा रहे हैं, ये एक और अप्रोच होती है। तो दिस इज कॉल्ड एज मिड फेशियल डीग्लविंग। इसमें कंफ्यूज मत होना, लास्ट टाइम बहुत लोगों ने ये वाले को डीग्लविंग लिखा था। डीग्लविंग में हमेशा याद रखना, जो इंसिजन है ना गम्स के ऊपर पड़ेगा, अंदर पड़ेगा, और ये अपर लिप को उठा दिया जाएगा। अगर अपर लिप उड़ गई एंड यू गो इनसाइड, दैट्स मिड फेशियल डीग्लविंग, मिड फेस में होगा वो, लैटरल नहीं होगा, तो दैट इज मिड फेशियल डीग्लविंग एंड दिस इज मैक्सिलेक्टमी का इंसिजन, दिस इज मैक्सिलेक्टमी। ये याद रखना दोनों, दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिड फेशियल डीग्लविंग एंड मैक्सिलेक्टमी। ठीक है, एक ना एक इंसिजन आएगा, ये आप याद रखना, एक ना एक इंसिजन विल पॉप आउट 100%। चलो अब दो तरीके के फ्रैक्चर होते हैं नाक में, ठीक है, एक है कि किसी ने आपको सामने से मारा, एक है किसी ने आपको नीचे से मारा। अगर कोई आदमी सामने से मारता है, फ्रंटल ब्लो, तो दिस इज योर सेप्टल कार्टिलेज, दिस इज योर परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड, दिस इज वोमर, दिस इज योर बोनी कार्टिलेजिनस जंक्शन, कार्टिलेज और बोन के बीच का जंक्शन। इफ समवन बीट्स यू फ्रॉम फ्रंट, यानी फ्रंटल ब्लो, तो उनमें फ्रैक्चर लाइन जो होगी दैट विल स्टार्ट एंड इट विल रन अलोंग द सेप्टल कार्टिलेज अप टिल द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड। नाउ दिस लाइन ऑफ फ्रैक्चर इज पैरेलल टू द बोनी कार्टिलेजिनस जंक्शन, देखो ये बिल्कुल पैरेलल है और सेप्टल कार्टिलेज के अलोंग रन कर रही है। तो दिस इज कॉल्ड एज जार्ज अवे, जार्ज अवे, अवे चला गया। जार्ज अवे फ्रैक्चर्स में पैरेलल लाइन ऑफ फ्रैक्चर होगी टू द बोनी कार्टिलेजिनस जंक्शन। अब किसी ने अगर ऐसे मारा, नीचे से मारेगा कोई, तो ऑब्वियसली फ्रैक्चर वर्टिकल होगा, और वर्टिकल फ्रैक्चर यानी सेप्टल कार्टिलेज वर्टिकल गई तो उसे हम कहते हैं शेवलेट। तो शेवलेट फ्रैक्चर इज अ फ्रैक्चर जो नीचे से मार के होता है, दैट इज अ ब्लो फ्रॉम बिलो, एंड जार्जवे मींस इफ देयर इज अ ब्लो फ्रॉम द फ्रंट, दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है,
नाउ CSF rhinorrhea के क्वेश्चंस बड़े स्पेसिफिक हैं. Whenever they give you CSF rhinorrhea का case, they will tell you a patient having a road traffic accident comes to the emergency, and now you see that there is blood dropping out with some fluid from the nasal cavity. What is this? This is CSF rhinorrhea. इसके क्या इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं? तो अब आप क्या करते हैं, जब उसका ब्लड गिर रहा है CSF के साथ, तो आपको पता नहीं है वो CSF मिक्स्ड है कि नहीं. अब CSF मिक्स्ड है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो यू टेक अ ब्लॉटिंग पेपर, यू गिव टू द पेशेंट, और ब्लॉटिंग पेपर पे वो अपना एक ब्लड की ड्रॉप गिराता है. Now when he drops that blood over on blotting paper, तो क्या होता है, over blotting paper blood is heavy, so it stays in the center and CSF is lighter, so CSF forms a ring around the blood. This is called as halo sign, also called as a target sign, also called as double target sign, also called as bullseye sign. ये सारे नाम है इसके, all or less the same. That is the first sign in CSF rhinorrhea. Second sign, ऑलवेज रिमेंबर CSF और नेजल डिस्चार्ज दोनों कलरलेस हैं. CSF कैन नेवर बी स्निफ्ड बैक. अगर आपका डिस्चार्ज बाहर आता है, क्या करते हैं, और वो वापस चला जाता है. लेकिन CSF जो होता है ना, दैट विल कम टू द टिप ऑफ द नोज एंड इट विल ड्रॉप डाउन. इट कैन नॉट बी स्निफ्ड बैक बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द ब्रेन. सो दैट इज कॉल्ड एज स्निफ साइन. यू कैन नॉट स्निफ बैक CSF, यू कैन स्निफ बैक नेजल डिस्चार्ज. एक होता है हैंकरचिफ साइन. नेजल डिस्चार्ज हैज गॉट म्यूकस, CSF में कोई म्यूकस नहीं होता. We always tell the patient कि अगर आपको जो भी आपका watery discharge आ रहा है, you collect it over a hanky. Now always remember, जब आप hanky पे अपनी nose को ऐसे छिड़कते हैं, तो that hanky becomes stiff. Why? Because it is mucus. But CSF is not mucus. So obviously handkerchief will never stiffen if you have CSF and you wash your hanky with it. Fourth is reservoir sign. Reservoir sign का मतलब क्या होता है कि this usually happens in posterior rhinorrheas. पोस्टीरियर राइनोरिया का मतलब किसी के CSF राइनोरिया हो रहा है और वो पेशेंट सो गया. अब जब वो सोया, तो ऑल द CSF गेट्स कलेक्टेड इनटू द स्फीनोइड साइनस व्हिच एक्ट्स एज अ रिजर्वायर. व्हेन दैट पेशेंट विल गेट अप, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑल द CSF विल कम आउट. तो जब लेटेगा तो इट विल गेट कलेक्टेड इन द स्फीनोइड साइनस लाइक अ रिजर्वायर, एंड द मोमेंट द पेशेंट गेट्स अप, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑल द CSF कम्स आउट. दैट इज कॉल्ड एज रिजर्वायर साइन. दैट मींस the sphenoid sinus acts as a reservoir of CSF to collect during the time in supine position, and the CSF comes out in a gush due to gravity when the patient gets up. ये हो गया reservoir sign. अगर मैं आपसे बोलूं what is the laboratory investigation of choice, then it is beta-2 transferrin. Beta-2 transferrin is basically a protein which is created by the choroid plexus, और ये सिर्फ और सिर्फ CSF में मिलता है और कहीं नहीं दिखता. लेकिन आज की डेट पे वी हैव गॉट बेटर टेक्निक्स ऑफ लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, और आज हमारे पास एक बेटर 100% सेंसिटिव एंड 100% स्पेसिफिक प्रोटीन है जिसका नाम है बीटा ट्रेस प्रोटीन. तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि व्हाट इज द लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, और मैंने सिर्फ ऑप्शन में बीटा-2 ट्रांसफेरिन लिखा है, तो आंसर बीटा-2 ट्रांसफेरिन है. अगर मैंने ये दोनों ऑप्शन दे दिए, तो आंसर बेटर बीटा ट्रेस प्रोटीन है. दोनों अच्छे हैं, बट ये ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा स्पेसिफिक है, ऑलमोस्ट 100%. इफ आई टेल यू व्हाट इज दिस इज लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, देन इट इज CT और MR सिस्टर्नोग्राफी. इसका क्या मतलब है? दैट यू विल गिव अ डाई टू द पेशेंट, दैट डाई विल ट्रैवल ऑल अलोंग द CSF, एंड CSF से वो डाई निकलता हुआ दिखेगा थ्रू द डिफेक्ट, और हम उसी में CT और MR की फिल्म्स लेंगे, एंड MRI और CT फिल्म से हम देखेंगे कि डिफेक्ट से कहां से CT से वो डिफेक्ट से CSF निकल रहा है. वी विल प्लान द सर्जरी अकॉर्डिंगली. दैट इज व्हाट इज CT MR सिस्टर्नोग्राफी. ठीक है, फाइन. चलिए, ये हो गया अबाउट CSF राइनोरिया. ओके, यू हैव गॉट अ पेशेंट जिसकी हिस्ट्री है स्विमिंग इन लोकल पॉन्ड्स. ये सब जो मैं बता रहा हूं ना, ये सब क्लासिकल, यही आंसर, ये क्वेश्चन ये लोग बदलते नहीं है, यही पूछेंगे. लोकल पॉन्ड में जाके एक आदमी ऑफ तमिलनाडु और अ पेशेंट हु इज इन फ्रॉम श्रीलंका, वो जाके लोकल पॉन्ड में नहाता है विद द कैटल, एंड नाउ दैट पेशेंट हैज कम विद अ स्ट्रॉबेरी लाइक मास ओवर ऑन राइट साइड ऑफ द नेजल कैविटी, एंड दिस मास ब्लीड्स ऑन टच. तो उसके यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है एंड इट ब्लीड्स ऑन टच. एंड व्हाट यू सी ओवर हियर, यू सी अ स्ट्रॉबेरी लाइक लीजन. व्हाट इज द स्ट्रॉबेरी लाइक लीजन? This strawberry like lesion is nothing but this is rhinosporidiosis. Rhinosporidiosis is a granulomatous disease of the nose which occurs because of an aquatic protestin which is called as Rhinosporidium seaberry. ठीक है, कोस्टल एरियाज की हिस्ट्री होगी. तो Rhinosporidium seaberry को पहले हम लोग बैक्टीरिया बोलते थे, फिर फंगस बोलने लगे, बट ये एक aquatic protestin है जो हमारे गंदे पानी में मिलता है.
and it goes and it seeds into the mucocutaneous junction of the nose और वहां पे मल्टीप्लाई करता है, and that is what causes this particular friable lesion to form. तो ये यूनिलैटरल होता है, राइट? अब क्वेश्चन ये होता है कि जब हम इस पर्टिकुलर चीज को देखते हैं ना, तो ये स्ट्रॉबेरी की तरह दिखता है. व्हाई? बिकॉज ये जो स्ट्रॉबेरी के व्हाइट डॉट्स है ना इन द सेंटर, दीज आर नथिंग बट दीज आर स्पोरेंजिया. ये स्पोरेंजिया हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. तो अगर मैं इसकी बायोप्सी लूंगा, द बायोप्सी ऑफ दिस पर्टिकुलर लीजन विल शो मी लार्ज स्पोरेंजिया. ये देखो, ये स्पोरेंजिया हैं, एंड स्पोरेंजिया के अंदर इसके मल्टीप्लाई करते हैं स्पोर्स, एंड द स्पोर्स आर ऑलवेज बेसोफिलिक. So you will see basophilic spores which are present inside these large bodies which are called as sporangia. And this is a classical picture for rhinosporidiosis. Okay, तो ये white dots over the red, this is a strawberry like mass. ये याद रखना. Bleeds on touch, unilateral nasal obstruction, ये इसका है which shows a sporangia with basophilic spores. ठीक है. अब क्वेश्चन ये आता है, इसको ट्रीट कैसे करोगे? So the treatment of this condition is surgical excision with cauterization of base. तो सर्जिकल एक्सिजन विद कॉटराइजेशन ऑफ बेस का क्या मतलब है कि बेसिकली ये मेरी अगर नाक है तो मैं जहां से ये निकल रहा है, राइट, सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस ऑफ, और जहां से निकल रहा है, राइट, वहां को आई विल कॉटराइज, ये मैं जला दूंगा, बिकॉज दिस बेस कंटेन्स दी ऑर्गेनिजम्स, एंड बेस में अगर मैंने नहीं जलाया, इफ आई डोंट कॉटराइज देन इट विल कम बैक अगेन. तो कॉटराइजेशन ऑफ बेस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वहीं से वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट. नाउ दिस इज अ हाईली रिकरेंट डिजीज क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म चलती रहती है. इट्स अ ग्रैन्युलोमैटस डिजीज. तो इसीलिए इफ आई आस्क यू व्हाट इज गोइंग टू बी द मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट टू प्रिवेंट इट, दैट इज डैबजोन. तो पहले मैं क्या करूंगा, आई विल डू अ कॉटरी ऑफ द बेस एंड एक्सरसाइज इट, देन आई विल गिव 100 mg डैबजोन एवरी डे फॉर अराउंड 4 to 6 months टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ दिस लीजन. दिस इज ऑल अबाउट राइनोस्पोरिडियोसिस एंड इट्स रिलेटेड क्वेश्चंस. चलिए, अब दूसरे केस में आपके पास एक और पेशेंट आया, एंड दिस पर्टिकुलर पेशेंट हैज गॉट हार्ड नोड्यूल्स व्हिच आर वुडी लाइक. वुडी मतलब बिल्कुल वुड लाइक हार्ड नोड्यूल्स इन बायलैटरल नेजल कैविटीज, एंड दैट इज कॉजिंग बायलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, राइट. अब when you see these kind of nodules, big nodules over in bilateral nasal cavity. What is this? This is rhinoscleroma. Rhinoscleroma is a chronic granulomatous disease of the nose which is caused by Klebsiella rhinoscleromatis. Rhinoscleroma से rhinoscleromatis, Klebsiella, gram negative, right? Okay. Now, rhinoscleroma की 3 स्टेज होती हैं. Atrophic stage, granulomatous stage, and cicatricial stage. These are the 3 stages of rhinoscleroma. अब क्या मतलब है एट्रोफिक स्टेज का, कि शुरू में जब राइनोस्क्लेरोमा होता है इट बिहेव्स लाइक एट्रोफिक राइनाइटिस, मतलब ग्रीन कलर के क्रस्ट होंगे, गंदी सी फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगी. सो जस्ट लाइक एट्रोफिक राइनाइटिस, कंप्लीट एट्रोफी हो जाती है नेजल कैविटी की, ग्रीन कलर के क्रस्ट होते हैं, गंदा सा डिस्चार्ज होता है. लेकिन विद टाइम ये मल्टीप्लाई करेंगे जब ऑर्गेनिजम्स, तब वो बड़े बड़े हार्ड नोड्यूल्स बनाएंगे ओवर द इनसाइड द नोज. एंड द क्लासिकल फीचर ऑफ दीज नोड्यूल्स इज दैट दीज नोड्यूल्स दे आर फर्म एंड दे डू नॉट अल्सरेट. ये एक क्लासिकल फीचर है, याद रखना. जब भी आपको राइनोस्क्लेरोमा बताएंगे दे विल से दैट इट डज नॉट अल्सरेट, क्योंकि दीज नोड्यूल्स हील विद फाइब्रोसिस. ये टूटेंगे और फाइब्रोज हो जाएंगे. दे नेवर एवर अल्सरेट. यही क्लासिकल फीचर है. तो ये अगर याद रहेगा ना तो आपको याद हो जाए, जहां लिया डू नॉट अल्सरेट वहां आया राइनोस्क्लेरोमा. तो अब होगा क्या, ड्यूरिंग द टाइम ये बहुत सारे वुडी हार्ड नोड्यूल्स बढ़ेंगे. तो ड्यूरिंग द टाइम दे आर एक्सपैंडिंग, तो ये हमारी नाक ना बहुत बड़ी हो जाएगी, एंड इट विल फॉर्म अ ह्यूज नोज. ये दिस डॉर्सम विल बी ह्यूज. दैट ह्यूज नोज व्हिच फॉर्म्स इन द ग्रैन्युलोमैटस स्टेज, देखो नाक बड़ी हो गई है. दिस लुक्स लाइक अ ज़ीब्रा एंड अ हॉर्स क्रॉस टुगेदर. और अगर ज़ीब्रा और हॉर्स को मिला के क्रॉस बनाएंगे तो उसे कहते हैं हेब्रा. तो ये दिखती है हेब्रा नोज. दिस इज कॉल्ड एज अ हेब्रा नोज डिफॉर्मिटी. तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि हेब्रा नोज डिफॉर्मिटी इज सीन इन विच स्टेज ऑफ राइनोस्क्लेरोमा? इट इज सीन इन ग्रैन्युलोमैटस स्टेज, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े नोड्यूल बन जाते हैं, राइट. अब मैंने आपको एक चीज बताई, अल्सरेट नहीं करेंगे, फाइब्रोज करेंगे, यानी नोड्यूल टूटे और फाइब्रोज कर गए. अगर फाइब्रोज होती है कोई भी चीज तो क्या करती है, वो बिल्कुल श्रिंक कर जाती है. तो जब ये फाइब्रोज होंगे तो नाक एकदम पतली हो जाएगी. तो द नोज विल लुक लाइक दिस एनिमल. ये देख रहे हो, ये साउथ अमेरिका का बड़ा फेमस एनिमल है, इसे टापीर कहते हैं. तो साउथ अमेरिका में ये टापीर इज अ हर्बीवोर. इसी के जैसी नाक हो जाती है. देखो ऐसी नाक हो गई, बिल्कुल पतली सी छोटी सी. तो दिस पतली सी छोटी सी नाक which happens because of cicatrization या fibrosis, this is seen in cases, this is called as a tapir nose.
तो टापीर मतलब जानवर से आया, तो दिस इज अ टापीर नोज डिफॉर्मिटी विच इज सीन इन सिकैट्रिशियल स्टेज, एंड हेब्रा नोज डिफॉर्मिटी इज द वन विच इज सीन इन केसेस ऑफ ग्रैनुलोमेटस स्टेज। अब क्वेश्चन क्या आएगा आपका एनआईसीटी में? क्वेश्चन आपका एनआईसीटी में यह आएगा कि इसके केस में आप करेंगे क्या, मैनेजमेंट कैसे करते हैं? तो ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी बैक्टीरियल इंफेक्शन में प्रोलिफरेटिव स्टेज में कभी भी सर्जरी नहीं करनी। तो द मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट इज अ मेन स्टे। Tetracyclines are the treatment of choice, right? So usually we start off with tetracyclines and then we follow that patient up for rhinoplasty. तो सबसे पहले remember, so the most important, either you give tetracyclines or you can even give streptomycin to the patient. तो या तो streptomycin देते हैं 1 ग्राम BD या फिर tetracycline स्टार्ट करते हैं and you follow it up with septorhinoplasty. फर्स्ट मेडिकल देन सर्जिकल। तो यही क्वेश्चन आया है 4-5 साल पहले कि क्या करेंगे राइनोस्क्लेरोमा में, विल यू डू सर्जरी स्ट्रेट अवे? नो, टिल द टाइम सिकैट्रिशियन नहीं हुआ है तब तक नहीं करनी है सर्जरी। तो यू हैव टू फर्स्ट गिव मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट एंड देन डू सर्जरी। ये गोल्ड रूल है, ये मत भूलना। एक्टिव इंफेक्शंस में हम कभी भी सर्जरी नहीं करते। तो फर्स्ट गिव एंटीबायोटिक्स एंड देन डू सर्जरी। ठीक है, चलो ये हो गया अबाउट राइनोस्क्लेरोमा। नाउ इफ आई टेक अ बायोप्सी ऑफ राइनोस्क्लेरोमा, तो बायोप्सी के केस में मुझे क्या दिखेगा? ये भी एक क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेटेड पैथोलॉजी के साथ। बायोप्सी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज हॉलमार्क। ये आपको बताएगी एंड इट विल कंफर्म कि पेशेंट के है राइनोस्क्लेरोमा। यू विल सी टू थिंग्स, बहुत सारे एम्प्टी व्हाइट एरिया। दीज एम्प्टी व्हाइट एरिया, इन्हें हम फोम सेल्स कहते हैं। ये एक तरीके के मैक्रोफेजेस होते हैं। And these empty white cells, foam cells, they are classically called as Mikulicz cells. इनका एक स्पेसिफिक नाम है and we call them as Mikulicz cells. Now interspersed with these Mikulicz cells, इनके बीच में you can even see that these are your red cells. बहुत सारे red दिख रहे हैं। These red cells are nothing but these are your plasma cell inclusion bodies. तो होता क्या है, यू नो दैट योर प्लाज्मा सेल्स आर देयर एंड प्लाज्मा सेल्स क्रिएट एंटीबॉडीज। तो इन दिस केस एंटीबॉडीज गेट ट्रैप्ड विद इन द प्लाज्मा सेल, और अगर एंटीबॉडी ट्रैप हो जाती है विद इन द प्लाज्मा सेल, निकल नहीं पाती, तो दे स्टेन पिंक इन कलर। अगर आप दोगे ना तो ये पूरा का पूरा स्टेन पिंक कलर का लेगा। दीज आर कॉल्ड एज प्लाज्मा सेल इंक्लूजन बॉडीज। ये अंदर ही रह गई, ये निकल ही नहीं पाई, दे गेट ट्रैप्ड एंड दीज आर कॉल्ड एज रसल बॉडीज। They are called as Russell bodies. तो एक दिखेगा आपको foam like Mikulicz cells and the second is plasma cell inclusion bodies which are Russell bodies which are the classical hallmark for rhinoscleroma diagnosis. ठीक है, चलिए। Okay, now you have got one patient जिसके थी frontal sinusitis. Frontal sinusitis के लिए आपने देखा कि वो पेशेंट के अब एक बॉगी स्वेलिंग हो गई है फ्रंटल एरिया में। There's a boggy swelling over the frontal area. What is this? This is called as Pott's puffy tumor. Most common complication which happens because of untreated frontal sinus infections. तो frontal sinus की जो bone है वो osteomyelitic हो जाती है. There is osteomyelitis of the frontal bone and that causes this pus formation under the skin and this is called as Pott's puffy tumor. Percival Pott ने सबसे पहले देखा था. That is why it's called as Pott's puffy tumor. अब दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ये कौन सा व्यू है? अगर आपको आदमी का व्यू ऐसा दिखा तो ये वाटर्स व्यू है। अगर आपको आदमी का व्यू ऐसा दिखा तो ये कैल्डवेल व्यू है। वाटर से वाटर क्यों? क्योंकि ऐसे पानी पीते हैं, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। पानी पीने से याद आपको रखना है कि वाटर ऐसे पिया जाता है। तो होता है क्या है, व्हेन यू डू वाटर्स व्यू तो बीम जाती है ऑक्सीपिटोमेंटल। दैट इज वाई वाटर्स व्यू का दूसरा नाम ऑक्सीपिटोमेंटल व्यू भी होता है। इसमें बेस्ट साइनस टू गेट विजुअलाइज्ड इज मैक्सिलरी। ठीक है, देखो मैक्सिलरी दिख रहे हैं, फ्रंटल दिख रहे हैं एंड थ्रू द ओपन माउथ यू कैन इवन सी स्फीनोइड साइनस, राइट? अब वाटर का जो नेचुरल फॉर्म है वो मुंह बंद है। अगर हम मुंह खोल लेते हैं तो वो मॉडिफाइड वाटर्स होता है, और मॉडिफाइड वाटर्स को हम पियर्स व्यू भी बोलते हैं। तो नॉर्मल वाटर्स व्यू मुंह बंद होता है, पर मॉडिफाई करा जाता है अगर मॉडिफाइड व्यू में, क्योंकि वी वांट टू सी वन साइनस थ्रू द माउथ एंड दैट इज स्फीनोइड साइनस।
अब अगर आपने ऐसे किया एंड यू हैव अ बीम कमिंग पोस्टीरियर एंटीरियर, सो दिस इज ऑक्सीपिटोफ्रंटल व्यू। ऑक्सीपिटोफ्रंटल को हम लोग कहते हैं कैल्डवेल व्यू। कैल्डवेल व्यू में बेस्ट दिखता है फ्रंटल साइनस। अगेन बोथ आर क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू सी ऑन एन एक्सरे दैट देयर इज समथिंग व्हाइट बिलो एंड देयर इज समथिंग ब्लैक अबव, इन दी एक्सरे हमेशा याद रखना ब्लैक इज एयर, व्हाइट इज बोन और ग्रे इज सॉफ्ट टिश्यू या फिर फ्लूइड। तो देखो यहां पे फ्लूइड नीचे दिख रहा है और ऊपर एयर दिख रही है, तो दिस इज कॉल्ड एज एयर फ्लूइड लेवल। एयर फ्लूइड लेवल इज क्लासिकली फीचर ऑफ acute sinusitis, क्लासिकल फीचर फॉर acute sinusitis। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेजल पॉलिप पे। नेजल पॉलिप में जो क्वेश्चंस आए हैं बस मैं उस पर ही बात करूंगा। अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसे आया दैट देयर इज अ यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, ग्रे कलर का ग्लोबुलर मास, 17-18 साल का लड़का, तो ऑब्वियसली इट इज एंट्रोकोनल पॉलिप। इफ यू गेट एनी पेशेंट where there is bilateral nasal obstruction, grape like mass, देखो 1 2 3 बहुत सारे grape like masses दिख रहे हैं, they are gray, they are glistening, then that is ethmoidal polyp। अब क्वेश्चन आता है कि what are the syndromes which are associated with polyps? Very important, what are the syndromes which are associated with nasal polyps? सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। पहला सिंड्रोम इज कार्टगनस सिंड्रोम। कार्टगनस सिंड्रोम में दिखती हैं 3 चीजें। What is that? Bronchiectasis, sinusitis, chronic sinusitis plus situs inversus। कोई भी पेशेंट आया बिकॉज इट्स अ सीलियरी डिसऑर्डर, तो सीलिया काम नहीं करेंगे नाक में तो साइनोसाइटिस, ब्रोंकाई में कोई सीलिया काम नहीं करेंगे तो ब्रोंकिएक्टासिस, यू विल फाइंड कैविटेटरी लीजंस इन द लंग्स एंड द पेशेंट का हार्ट उल्टा होगा, दैट इज डेक्स्ट्रोकार्डिया, साइटस इनवर्सस। अगर आपके पास क्वेश्चन आया यंग सिंड्रोम, तो याद रखना ब्रोंकिएक्टासिस, क्रॉनिक साइनोसाइटिस सेम टू सेम होती है लाइक कार्टिगनस। द ओनली थिंग इन यंग दैट चेंजेस इज यंग लोगों में क्या होता है, एजूस्पर्मिया। तो यंग लोगों में बस एक चीज याद रखनी है, ऑब्स्ट्रक्टिव एजूस्पर्मिया, बाकी दोनों सेम है। ब्रोंकिएक्टासिस, क्रॉनिक साइनोसाइटिस दोनों में होता है। और ये ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया इसलिए होता है बिकॉज एपिडिडाइमिस होती है, उसमें भी जो सीलिया होते हैं ना, फॉर द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स द सीलिया आर लॉस्ट इन द एपिडिडाइमिस, सो दे गेट ट्रैप्ड। तो इसीलिए ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, द स्पर्म्स गेट ट्रैप्ड एंड दैट इज व्हाट कॉजेस दिस पर्टिकुलर कंडीशन। तो ये हो गया यंग सिंड्रोम। थर्ड इंपॉर्टेंट सिंड्रोम आपको जो याद रखना है वो है सैम्टर्स ट्रायड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मैनेजमेंट तक पूछा गया है। ठीक है, इन सम फ्यू इयर्स बैक देयर वाज मैनेजमेंट वाज आस्क्ड, तो ये मैं बताऊंगा सैम्टर्स ट्रायड का कैसे मैनेजमेंट है, आपको याद क्या करना है। सैम्टर्स ट्रायड का निमोनिक है आम आदमी पार्टी, एस्थमा, एस्पिरिन इंटॉलरेंस एंड पॉलिप्स। अब क्वेश्चन ये आया था सैम्टर्स ट्रायड में कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, हाउ विल यू ट्रीट सैम्टर्स ट्रायड। तो एक चीज आप लोग याद रखना कि आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि इसका जो क्वेश्चन आता है ना वो थोड़ा टफ था, तो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कि इसका क्वेश्चन कैसे आता है। तो सैम्टर्स ट्रायड होता क्या है, एस्पिरिन इंटॉलरेंस, राइट, इसमें क्या हो रहा है। सो बेसिकली यू हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज एरिकिडोनिक एसिड पाथवे। एरिकिडोनिक एसिड होती है, एरिकिडोनिक एसिड पाथवे होता है, राइट। दे आर मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स, और मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स में एक एंजाइम होती है फॉस्फोलाइपेज A2। फॉस्फोलाइपेज A2 एक एंजाइम होती है जो हमारे मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स को एक्टिवेट करती है, ये आपको पढ़ा होगा इन योर पैथोलॉजी ऑल्सो। एंड दीज हैव गॉट 2 साइड्स ऑफ पाथवे कॉल्ड एज कॉक्स पाथवे एंड लॉक्स पाथवे। लॉक्स पाथवे हमारे ल्यूकोट्राइन्स बनाते हैं, कॉक्स पाथवे से हमारे इंपॉर्टेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर प्रोटेक्टिव, प्रोस्टाग्लैंडिन हमें प्रोटेक्ट करते हैं, राइट, बिकॉज दे आर एंटी इंफ्लेमेटरी, ये इंफ्लेमेशन को कम करते हैं। तो होता क्या है, ये हमारा लॉक्स और कॉक्स बैलेंस में चलता है। तो अब हो क्या रहा है, अगर कोई भी इंसान एस्पिरिन खा रहा है तो एस्पिरिन बेसिकली ब्लॉक्स द कॉक्स पाथवे, तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनते ही नहीं है। तो हाइपर एक्टिवेशन किस पाथवे का हो जाता है, लॉक्स का, और लॉक्स जितना बनेगा उतने ल्यूकोट्राइन्स बनेंगे। एंड द मोस्ट कॉमन ल्यूकोट्राइन्स दैट गेट फॉर्म्ड आर LT, B4, C4 एंड D4। अब अगर ल्यूकोट्राइन्स B4, C4, D4 बढ़ गए तो उससे होगा क्या, दे विल कॉज ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन,
जिसकी वजह से होगा एस्थमा, दे विल कॉज इंक्रीज nasal allergy, that will be the reason which will cause polyps. तो आपको बेसिकली आपका हुआ क्या, आपने एक पाथवे ब्लॉक कर दिया तो लॉक्स पाथवे ज्यादा हो गया जिसमें ल्यूकोट्राइन्स बन रहे हैं, एंड ल्यूकोट्राइन्स आर कॉजिंग इंक्रीज hyper responsiveness of nasal allergy and they are also causing increase in bronchoconstriction which is causing asthma. तो अब आपको करना क्या है, हाउ विल यू ट्रीट सिम्पटम्स, ये क्वेश्चन आया, हाउ विल यू अप्रोच दिस केस. तो अप्रोचिंग दिस केस विल बी, सबसे पहले स्टॉप एस्पिरिन which is called as aspirin desensitization. So you have to stop aspirin as soon as possible. ये हो गया first point. And the second point is that you need to give the patient long-term leukotriene antagonist. क्योंकि ये चीज बढ़ रही है, ल्यूकोट्राइन बढ़ रहे हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं. You need to give leukotriene receptor antagonist जैसे कि Montelukast, Zafirlukast, Lucas जितने होते हैं. तो ये हो गया आपका इसका ट्रीटमेंट. तो ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, एस्पिरिन डिसेंसिटाइजेशन विद ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट व्हिच आर लॉन्ग स्टैंडिंग. ये क्वेश्चन आया है, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू दिस पर्टिकुलर लॉजिक. ये हो गई कहानी आपकी पॉलिप्स की. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ वी कम टू आवर सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ नोज एंड पैरानेजल साइनस. इसके बाद हम लैरिंग्स में जाएंगे सीधे, एंड दैट इज अबाउट एक पर्टिकुलर पेशेंट है और उस पेशेंट के तीन चीजें हैं. दैट इज that patient has got green colored crust inside the nasal cavity, that patient has got foul smelling nasal discharge, इस foul smelling nasal discharge को हम लोग ओजीना भी कहते हैं, and the patient has got roomy nasal cavity. देखो मेरी पूरी कैविटी का साइज बढ़ गया है, roomy nasal cavity. तो roomy nasal cavity, foul smelling nasal discharge and green colored crust, ये तीन किसका ट्रायड होते हैं? They are a triad which are called as Frankel's triad. And Frankel's triad is basically a triad for atrophic rhinitis. This is a triad for atrophic rhinitis. Atrophic rhinitis का कौन सा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म होता है? Atrophic rhinitis के ऑर्गेनिज्म का नाम है Klebsiella ozeni. तभी इसका जो फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है that is called as ozena. Now the best part about this condition is कि जब भी ये होता है तो ये हमारी नर्व एंडिंग्स को खराब कर देता है. Now because the nerve endings of the particular patient are destroyed, so ये पेशेंट खुद के अपने फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज को नहीं स्मेल कर पाते, and that is a mercy to them, and that is why that is called as merciful anosmia. That is called as merciful anosmia. So anywhere you get a patient with green colored crust, foul smelling nasal discharge, merciful anosmia, roomy nasal cavity, ये सारे के सारे फीचर्स होते हैं एट्रोफिक राइनाइटिस के. अब इसको आप ट्रीट कैसे करते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है कि इसका क्या इसका ट्रीटमेंट है. सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन? तो इसका निमोनिक है डॉग्स बार्क इन द पार्क. डॉग्स बार्क इन द पार्क, ये इसका निमोनिक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है एट्रोफिक से, यही पूछा जाएगा. तो पहला फॉर डी स्टैंड्स फॉर डूशिंग. अगर मैं पूछूं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज अल्कलाइन नेजल डूशिंग. डूशिंग इज डन बाय 3 salts, sodium bicarbonate, sodium diborate and sodium chloride. These are mixed in 280 ml of water and the patient has to rinse the nasal cavity. Sodium bicarbonate क्रस्ट को डिसॉल्व करता है, सोडियम डाइबोरेट एक एंटीसेप्टिक है और सोडियम क्लोराइड एडिमा कम करता है. That is why you add these salts together and you mix it in a 280 ml solution. O stands for estradiol nasal spray. You know that atrophic rhinitis में डिस्ट्रक्शन हो रहा है. डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज इंटेंस वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन. ईस्ट्राडायोल एक इंपॉर्टेंट वेजोडाइलेटर है, तो हम इसके नेजल स्प्रेज आते हैं, ये स्प्रे वेजोडाइलेशन करते हैं. अब आता है जी इज ग्लूकोज प्लस ग्लिसरीन ड्रॉप्स. ग्लिसरीन एक ल्यूब्रिकेंट है और ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज जब भी नाक के अंदर जाएगा जहां पे इंफेक्शन है तो एनारोबिक कंडीशन बनी हुई है, तो ग्लूकोज इन एनारोबिक कंडीशन विल फॉर्म व्हाट? इट विल फॉर्म लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड से क्या होगा? इट विल डिक्रीज द पीएच एंड इट विल किल द ऑर्गेनिजम्स. दैट इज व्हाई ग्लूकोज एंड ग्लिसरीन की 25% ड्रॉप्स आर हेल्पफुल इन दिस कंडीशन. फोर्थ is S. S is submucosal placental extract.
तो प्लासेंटल एक्सट्रैक्ट आपने देखा भी होगा, बहुत टाइम आपने सर्जरी में यूज भी किया होगा। ये एक नेचुरल सब्सटेंस होती है, अगर हम इसे नोज में इंजेक्ट कर देते हैं तो हमारी हीलिंग बेटर हो जाती है। तो इसके सब म्यूकोसल इंजेक्शंस लगाते हैं, दैट्स व्हाट इज फॉर हीलिंग ऑफ द नोज। नाउ कम्स bark, B12, विटामिन ए, विटामिन डी एंड आयरन सप्लीमेंटेशन, क्योंकि बॉडी ऑब्वियसली रिक्वायर्स दीज थिंग्स टू हील वेल। नाउ कम्स ए स्टैंड्स फॉर एंटीबायोटिक्स। जहां पे भी आया क्लिप्शिला इज हेटेड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिन। आई ऑल्सो गिव दिस स्ट्रेप्टोमाइसिन इन क्लिप्शिला राइनोस्क्लेरोमैटिस। यहां पे भी क्लिप्शिला उजेनी है तो यू विल गिव स्ट्रेप्टोमाइसिन। ए के बाद आता है आर इज रिच प्रोटीन डाइट, give a lot of protein to the patient. Then comes K is a solution, इसे कहते हैं केमिसेटिन solution. केमिसेटिन solution में क्या होती हैं? तीन चीजें जो होती हैं वो होती हैं CDE. C stands for chloramphenicol, D stands for vitamin D2 and E stands for estrogen. ये तीन कंपाउंड्स को मिला के ये सोल्यूशन लेके हम लोग नाक में डाल देते हैं, that's called as केमिसेटिन solution. और लास्ट आता है पार्क, P इज पोटेशियम आयोडाइड। दिस इज ऑल्सो गुड फॉर हीलिंग एंड आयोडीन इज गुड फॉर एंटीबैक्टीरियसिडल इफेक्ट्स। तो डॉग्स बार्क इन द पार्क। अब इसके लिए हम लोग एक सर्जरी भी करते हैं, सर्जरी का नाम है यंग्स ऑपरेशन। तो यंग्स ऑपरेशन में हम क्या करते हैं कि जो नेजल कैविटी होती है, अब इसमें आपका एक यही डायग्राम भी बन के आता है, इसके हम एक साइड से स्किन को उठाते हैं, दूसरे साइड से स्किन को उठाते हैं and we suture these flaps together. So we close the nasal cavity. एक साइड से स्किन उठाई, lateral साइड से, medial साइड से, and we suture it in the center. This improves healing into the cavity, क्योंकि जितनी एयर अंदर जाएगी उतने क्रस्ट बनेंगे। This is called as Young's operation. ठीक है। अगर आपने इस फ्लैप के बीच में एक छोटा सा होल बना दिया 3 मिलीमीटर्स का, तो ये होता है मॉडिफाइड यंग्स। अब मॉडिफाइड यंग्स में ऑब्वियसली पेशेंट को थोड़ी सांस भी आ जाती है और कॉस्मेटिकली भी थोड़ा ठीक लगता है। दैट इज व्हाई हम लोग इस फ्लैप्स को ज्वाइन करने के बाद एक छोटा सा सेंटर में होल बना देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड यंग्स प्रोसीजर। ठीक है, चलो ये हो गया कहानी अबाउट एट्रोफिक राइनाइटिस। अच्छा, एक और चीज है, एक क्वेश्चन इन्होंने ये दिया था, पेशेंट के सेम पिक्चर है, सेम मतलब ये क्रस्टिंग हो रही है, डिस्ट्रक्शन है, बट सैडल नोज डिफॉर्मिटी है। तो मतलब अगर पेशेंट के फीचर्स ऑफ एट्रोफिक राइनाइटिस हैं एंड उन्होंने ये वर्ड मेंशन कर दिया सैडल नोज, तो अब याद रखो सैडल नोज का मतलब है ये पूरा डॉर्सम अंदर सैक कर गया है। तो अब ये किस में दिख सकता है? तो ये 3 कंडीशन में दिख सकता है, टीबी, सिफिलिस एंड वेगनस ग्रैन्युलोमाटोसिस। एट्रोफिक राइनाइटिस विद सैडल नोज डिफॉर्मिटी। तो अगर आपके क्वेश्चन में आपको मिला सैडल नोज एट्रोफिक राइनाइटिस है एंड इफ दे गिव यू अ क्लू ऑफ सी एंका पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्वियसली वेगनस ग्रैन्युलोमाटोसिस ऑब्वियसली इट कॉजेस वैस्कुलाइटिस, राइट? अगर उन्होंने सी एंका पॉजिटिव दे दिया सैडल नोज के साथ, तो आंसर होगा वेगनर्स। अगर आपके क्वेश्चन में उन्होंने ये दिया कि देयर इज डर्टी ग्रैन्युलेशंस व्हिच आर फॉर्म्ड इनसाइड द नोज, देयर इज सेप्टल परफोरेशन, मतलब कार्टिलेज एंड जो है सेप्टम का वो परफोरेटेड है, तो सेप्टल परफोरेशन इज कॉमन टुगेदर विद ग्रैन्युलेशंस, सेप्टल परफोरेशन टुगेदर विद ग्रैन्युलेशंस, दिस इज कॉमन इन टीबी। टीबी हमेशा कार्टिलेज को अटैक करता है, टीबी फॉर कार्टिलेज। और अगर सिफिलिस है तो सिफिलिस विल ऑलवेज कॉज बोनी डिस्ट्रक्शन, मतलब क्लासिकल बोन डिस्ट्रक्शन होगा, इसमें गम्मैटस अल्सर्स बनेंगे, गम्मा बनेंगे, नॉन हीलिंग गम्मास। तो गम्मा है, बोन डिस्ट्रक्शन है तो सिफिलिस, सी एंका पॉजिटिव है, एट्रोफिक राइनाइटिस, सैडल नोज है तो वेगनर्स। अगर कार्टिलेज के ऊपर परफोरेशन है, डर्टी ग्रैन्युलेशन इनसाइड द नोज है तो टीबी। ये याद रखना, ये 3 फीचर्स इन्होंने रिसेंटली ऐड किए हैं और ये क्वेश्चंस में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है टू फिगर आउट। ठीक है, चलो लास्ट स्लाइड ऑफ नोज। जहां पे सीटी आता है तो सीटी में हमेशा सबसे पहले देखना है कि कौन सी इमेज है, एंड इसके बाद देखना है जो भी काला है वो एयर है, जो भी व्हाइट है वो बोन है, और जो भी ग्रे है वो सॉफ्ट टिश्यू है। नाउ सी दिस लुक्स लाइक समवन सीइंग यू, तो मैंने ऐसे काटा है करोनल सेक्शन। अब करोनल सेक्शन में देखो, दिस इज योर ऑर्बिट, ऑर्बिट की रिम देखो व्हाइट है, अंदर से ऑर्बिट इज ग्रे बिकॉज इट हैज द आई बॉल।
नाउ दिस इज योर सेप्टम इन द सेंटर, ये हमारा नेजल सेप्टम है, ये हमारे टर्बिनेट्स हैं विच आर स्क्रोल लाइक प्रोजेक्शंस, ये देखो स्क्रोल की तरह ये प्रोजेक्शंस हैं, राइट। तो दिस इज आवर इंफीरियर टर्बिनेट, ये हमारा मिडिल टर्बिनेट है, ठीक है। अब फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट पे देखो, यहां पे फ्लोर है ऑर्बिट की, ये फ्लोर है ऑर्बिट की, ये हमारा मैक्सिलरी साइनस है। अगर फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट पे एक सेल मिला, सेल प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट, तो इस सेल को कहते हैं हैलर सेल। व्हाट इज हैलर सेल? हैलर सेल इज एन एंटीरियर एथमोइडल एयर सेल which has migrated to the floor of the orbit. अगर एंटीरियर एथमोइडल एयर सेल नीचे आ जाता है टू द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट, उसे कहते हैं हैलर सेल, ठीक है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। अब देखो पॉइंट नंबर 2, यहां पे मिडिल टर्बिनेट दिख रहा है, ये जो मिडिल टर्बिनेट है ग्रे कलर का, लेकिन अगर इस तरफ का मिडिल टर्बिनेट देखो तो इस मिडिल टर्बिनेट में कुछ काला काला है, यानी ग्रे के अंदर काला है। अगर मिडिल टर्बिनेट के अंदर एयर दिख गई तो इसे कहते हैं कॉन्का बुलोजा, एयर विद इन द मिडिल टर्बिनेट। मतलब ये मिडिल टर्बिनेट बिल्कुल जे की तरह दिखता है, अगर जे के अंदर आपको कुछ ब्लैक दिख गया तो ये होगी कॉन्का बुलोजा विच इज एयर और न्यूमेटाइज मिडिल टर्बिनेट, ठीक है। अब अगर आप नाक के पीछे का एरिया देखें, दिस इज द पोस्टीरियर, दिस इज योर नेजल कैविटी पोस्टीरियर पार्ट, and you see a Batman shaped bone, ऐसे लग रहा है कोई बैटमैन ऐसे खड़ा हुआ है, you see a Batman shaped bone, you see that these are your pterygoid plates, these are your pterygoid plates, right? This is your sphenoid bone, ये देखो ये sphenoid है, this is your sphenoid bone. Within the body of sphenoid bone you have got two sinuses, sphenoid sinus, ये right और left sphenoid sinus है, but sphenoid sinus के अंदर आपको दो sinus नहीं तीन दिख रहे हैं, you see three things. What is this? This is your Onodi cell. Onodi cell is a posterior ethmoidal air cell which has migrated into the sphenoid sinus. तो अगर anterior ethmoidal air cell floor of orbit पे आता है तो उसे हैलर कहते हैं, और अगर embryologically posterior ethmoidal air cell sphenoid के अंदर चला गया, migrate कर गया और pneumatize कर गया तो sphenoid 3 या कभी कभी 4 भी दिखेंगे। तो always the onodi goes superiorly and laterally, देखो ये ऊपर और laterally गया है, तो ये superolateral जो सेल है this is onodi। अब क्वेश्चन ये आता है ओनोडी क्यों डेंजरस है? बिकॉज ओनोडी इज वेरी क्रिटिकली नियर वन स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज ऑप्टिक नर्व। लेट्स से इफ देयर इज डिजीज इन द ओनोडी, तो व्हेन वी आर डूइंग सर्जरी लाइक फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, तो ये बोन बहुत थिन है, तो वी कैन एक्सीडेंटली इंजर द ऑप्टिक नर्व एंड पेशेंट कैन गो ब्लाइंड। तो इंजरी टू ऑप्टिक नर्व इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन विद ओनोडी सेल एंड दिस इज व्हाई वी शुड बी वेरी केयरफुल इन फेस, स्पेशली इन स्फेनॉइड साइनस, इट कैन लीड टू डिजास्टर्स कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। हम हमेशा कहते हैं फेस इज द इजीएस्ट वे टू हार्म अ पेशेंट, इजीएस्ट तरीका है ये टू हार्म अ पेशेंट बिकॉज यू डोंट नो द एनाटॉमी, सो दिस इज व्हाई ओनोडी इज इंपॉर्टेंट। तो तीन याद रखना है, ओनोडी कैसा दिखता है, हैलर कैसा दिखता है और कॉन्का बुलोजा कैसा दिखता है, ये हमने तीनों यहां पे डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब मैं दो इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स बता देता हूं। लार्जेस्ट एथमोइडल एयर सेल क्या होता है? लार्जेस्ट एथमोइडल एयर सेल इज कॉल्ड एज बुल्ला एथमोइडालिस। Bulla ethmoidalis is the largest ethmoidal air cell. Anterior most ethmoidal air cell कौन सा होता है? Anterior most ethmoidal air cell is agar nasal. agar nasal सबसे आगे का anterior most ethmoidal air cell है, और जो bulla ethmoidalis है that is the largest ethmoidal air cell. ठीक है, फाइन, बस। एक चीज याद रखना, दैट इज अपॉन द साइनस ड्रेनेज। सबसे पहला साइनस टू बी सीन रेडियोलॉजिकली ऑन एन एक्सरे इज मैक्सिलरी साइनस। फर्स्ट साइनस टू बी सीन रेडियोलॉजिकली इज मैक्सिलरी साइनस। लास्ट साइनस टू बी सीन रेडियोलॉजिकली इज फ्रंटल साइनस। फ्रंटल हमेशा लास्ट में आता है, दैट इज द लास्ट साइनस टू डेवलप रेडियोलॉजिकली। ये 6 से 8 साल में दिखना शुरू होता है। दिस इज समथिंग व्हिच इज स्टार्ट्स इन मंथ्स, इन जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तभी दिखने लगता है। दिस इज समथिंग व्हिच इज योर रेडियोलॉजिकल थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। डन। सो दिस फिनिशेस ऑल इन ऑल व्हाट यू रिक्वायर फॉर नोज एज वेल एज एनीथिंग अराउंड इन द पैरानेजल साइनसेस, ठीक है। तो हमने दो चीजें खत्म कर ली, वी हैव फिनिश्ड द होल ऑफ ईयर एंड वी हैव फिनिश्ड द होल ऑफ नोज। देखा कितना बढ़िया है, कितनी सारी चीजें हम लोग इतनी छोटी छोटी टाइम में कर ली है।
एंड दिस इज व्हाई रिकैप एंड मैराथन्स आर सो इंपॉर्टेंट, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे अभी, आप लोग के अंदर अभी सबसे बड़ी फीलिंग क्या होगी ना कि हम कर क्या रहे हैं? सबसे अंदर मेरे अंदर जब मैंने दिए थे एग्जाम ना, तब सबसे बड़ी मेरी बात यही हुई थी कि हम करते क्या है, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो ये टाइम पे ना बाय मैराथन्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइम पे आप किताबें लेके नहीं बैठेंगे, no matter how much you try, because that anxiousness builds inside, and that is why these marathons work, because at this particular stage you will forget about everything, कहोगे चलो यहीं बैठ के हम सुन लेते हैं, राइट? तो एक एक कहानी है, वो ऐसी है कि दो फ्रॉग होते हैं, और वो दो फ्रॉग जो होते हैं वो एक बड़ा सा वेल होता है, दोनों दोनों फ्रॉग अंदर कूद जाते हैं वेल के। नाउ दैट वेल इज सो डीप दैट नोबडी कैन कम आउट ऑफ दैट वेल। तो एक फ्रॉग को पहले ही पता है कि भाई नीचे जाके मरना ही है, तो वो फ्रॉग क्या करता है, वो बैठ जाता है, पूजा करता है, और वो कहता है कि ऊपर कौन जाएगा, कोशिश करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि दैट वेल इज सो डीप कि भाई वहां तो हमें मरना ही है, कोई फायदा नहीं है इतना कूद के ऊपर जाने का, इतनी विल वेस्ट आवर एनर्जी। जो दूसरा फ्रॉग है ना, वो लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, और एक दिन वो कुएं से बाहर निकल जाता है। तो जब वो बाहर निकलता है तो उसे लोग भाई ये निकल गया, दिस इज द फर्स्ट टाइम एवरीथिंग हैज हैपेंड, एंड एवरीबॉडी स्टार्ट्स क्लैपिंग। तो वो फ्रॉग पता है क्यों निकलता है बाहर? तो रीजन होता है कि वो डेफ होता है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता। एग्जाम यही है, आपको अभी कुछ नहीं सुनना है कि ये टफ पेपर है, कि ये आसान पेपर है, कि इसमें ये हो जाएगा, उसमें वो हो जाएगा, इसमें ये कहानी, उसमें वो कहानी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कुछ नहीं है, ये एक एग्जाम है, ये आपका एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ये आपकी जिंदगी नहीं है। ऐसे 10 पेपर आएंगे, ऐसे 50,000 आप बार एग्जाम देंगे, यू विल गो थ्रू लाइफ, यू विल डू द सेम थिंग रिपीटेडली टिल द एंड ऑफ टाइम। Doctors never stop giving exams. Take this as an exam. Don't be perturbed. Don't be perplexed about कि क्या होने वाला है। वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है, that's an uncontrollable variable. So why to worry about it? जो देखा ही नहीं है उसके बारे में वरी करने का क्या फायदा? तो आपका काम है अच्छे से देना, and you have to be deaf in this zone. You don't need to learn anything extra कि कहीं से बाहर से कोई चीज आ रही है ना, वो वेरिएबल्स को स्टॉप करो। If you're not deaf, you're not going to, everything is going to bother you. घर पे कुछ बातें होंगी, बाहर से कोई बातें होंगी, दोस्त कुछ बताएंगे, टीचर्स कुछ बताएंगे, डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग। दिस इज योर एग्जाम, योर लाइफ, ऑब्वियसली यू आर डूइंग एवरीथिंग टू पुट योर एफर्ट्स इनटू इट। तो यही तो मैटर करता है, आपने 100% एफर्ट ही तो देने, इसके बाद आपको छोड़ देना है किस्मत पे, कि अगर बढ़िया है तो फिर हम निकलेंगे, बात खत्म हो गई। तो इट्स ऑल अ थिंग वेयर यू कैन हाउ टू कीप योर नर्व्स वेल। बाकी INI-CET में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, एक एग्जाम है, लोग ही निकालते हैं, वी आर नॉट एलियंस हु टू क्रॉस दिस एग्जाम, राइट? चलो, तो इसके साथ शुरू करते हैं, व्हाट यू रिक्वायर टू नो इन लैरिंग्स। लैरिंग्स ऑब्वियसली फेवरेट होता है, बट लैरिंग्स से डर भी लगता है, क्योंकि लैरिंग्स से समझ में नहीं आती बहुत सारी चीजें। बट लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक, लैरिंग्स सिर्फ पेक्टोरियल होगा, लैरिंग्स से कुछ भी ज्यादा इधर उधर नहीं सोचना है, लैरिंग्स से बहुत सिंपली बस डायग्राम्स देखना है और समझते जाना है। पहला केस सिनारियो, दिस इज अबाउट अ 6-year-old चाइल्ड हु कम्स टू यू विद इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर। तो पहला लॉजिक इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर है। स्ट्राइडर का मतलब क्या होता है? अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो इंस्पिरेशन के समय साउंड आ रहा है, एक्सपिरेशन नॉर्मल। सेकेंड, चाइल्ड हैज गॉट हाई ग्रेड फीवर, चाइल्ड इज सिटिंग इन अ ट्राइपॉड पोजिशन, ऐसे बैठा है, ठीक है? व्हाट इज दिस? नाउ यू गो इनसाइड एंड यू सी दैट द एपिग्लॉटिस ऑफ द पेशेंट इज लाइक अ चेरी रेड. So this is called as a cherry red epiglottis, also called as a cherry red sign. तो जब epiglottis बहुत बड़ी चेरी की तरह हो जाएगी, so this condition is acute epiglottitis. Always remember, acute epiglottitis is inflammation of the epiglottis and the supraglottic structures. Most common organism in children is Haemophilus influenza. H. influenza is the most common organism which is in children. Most common organism in adult is Streptococcus pneumoniae. That is the reason, अगर आप बच्चों में देखें तो we have got H. influenza vaccines which is given in the school going age, because this is the maximum time where children develop such kind of inflammations, right? तो इसीलिए H. influenza बच्चे और Streptococcus pneumoniae adults. Okay? Now if you see this narrows the space, तभी इसके inspiratory stridor आया. Now, how will you see this? You can do an X-ray also. If you do an X-ray, you will see a thumb-shaped epiglottis. ये देखो, ये thumb की तरह epiglottis है. This is called as thumb sign. This is called as thumb sign. अब होता क्या है कि ये मेरी टंग है और ये मेरी epiglottis है.
The space present between the tongue and the epiglottis, this space is called as वेलिक्यूला. इसे हम वेलिक्यूला कहते हैं, स्पेस जो हमारी टंग और एपिग्लॉटिस के बीच में होती है. तो अगर एपिग्लॉटिस थंब शेप की हो जाएगी तो ऑब्वियसली वेलिक्यूला की शैडो गायब हो जाएगी. एंड वेलिक्यूला इज अ ब्लैक कलर्ड शैडो. तो देखो ये इतनी बड़ी हो गई है कि मेरा वेलिक्यूला दिख ही नहीं रहा है. So the second sign you see on X-ray is an absent vallicula sign. Absent vallicula sign. एक हो गया thumb sign, एक हो गया absent vallicula sign. Both the signs are seen in cases of X-ray. ठीक है? अब क्वेश्चन आता है कि what will be the treatment in this particular child? तो always remember croup और epiglottitis का ट्रीटमेंट सेम है. The same treatment जो आप croup के लिए भी करते हैं, epiglottitis के लिए भी करते हैं. अब वो क्या होता है? This is a very simple mnemonic that I'm going to tell you, and this mnemonic is called as the 7H mnemonic for treating epiglottitis as well as croup. ये क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं इन डिटेल. पहली चीज है कि जो भी बच्चा आता है क्रूप या लैरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस या फिर एपिग्लोटाइटिस का, उसको आप H फॉर हॉस्पिटलाइज करते हैं. तो पहला हो गया हॉस्पिटलाइजेशन. सेकेंड थिंग इज आप उसका हेड एंड एलिवेट करते हैं. क्यों? क्योंकि कभी भी याद रखना कि कभी भी कोई एयरवे की प्रॉब्लम है तो हेड एंड एलिवेट करेंगे तो हमेशा ब्रीदिंग बेटर रहेगी. जितना पेशेंट सुपाइन जाएगा उतना एपिग्लॉटिस पीछे गिरेगी, जितना पीछे गिरेगी उतना ज्यादा ब्रीदिंग में इश्यूज आएंगे. तो हेड एंड एलिवेशन. थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है हाइड्रेशन. ये बच्चे खाना भी नहीं खा पा रहे हैं. व्हाई? बिकॉज एपिग्लॉटिस इज सो स्वोलन. So even they cannot swallow their saliva. So the saliva keeps drooling out. That is why इन बच्चों को हाइड्रेशन देना जरूरी है. फोर्थ H इज हाइड्रोकॉर्टिसोन. जैसे ही बच्चा आया उसको आपने देना है इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन स्टैट. हाइड्रोकॉर्टिसोन स्टेरॉइड है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एडिमा को कम करेगा. जितना एडिमा कम होगा उतना बेटर एयरवे में ब्रीदिंग होगी. राइट? दिस इज इंस्टेंट, ये लाइफ सेविंग है. फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज है हाई ग्रेड एंटीबायोटिक्स. तो एपिग्लोटाइटिस ऑब्वियसली क्या है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो आपको बैक्टीरियसिडल ड्रग्स देने होंगे, जैसे पेनिसिलिन हो गए, सेफेलोस्पोरिन हो गए. राइट? अब आता है नंबर 6. नंबर 6 में आता है कि यू हैव टू गिव हाई डोज नेब्यूलाइज्ड रेसिमिक एपिनेफ्रिन. हाई डोज नेब्यूलाइज्ड रेसिमिक एपिनेफ्रिन. अब ये हाई डोज नेब्यूलाइज्ड रेसिमिक एपिनेफ्रिन का क्या मतलब है? एपिनेफ्रिन जो है वो एक सिंपेथोमाइमेटिक ड्रग है, सिंपैथेटिक सिस्टम पे एक्ट करता है. इस पर्टिकुलर एपिनेफ्रिन को हम नेब्यूलाइज कराते हैं बच्चे को. तो क्वेश्चन क्या आया है कुछ टाइम पहले कि इनमें से एक बच्चा आपके पास आया, वो इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर में है, उस बच्चे के ऑलमोस्ट वाइटल्स ड्रॉप कर रहे हैं. व्हाट इज वन ड्रग यू विल गिव टू सेव द एयरवे इन दिस चाइल्ड? तो एयरवे सेविंग में सबसे बड़ा खिलाड़ी है रेसिमिक एपिनेफ्रिन है. ये बच्चे की जान बचाएगा. ये क्वेश्चन था और ये आंसर है ये हाई डोज नेबुलाइज एपिनेफ्रिन. और ये इवन क्रूप में बहुत काम का है. तो इसमें क्या करते हैं? एपिनेफ्रिन हम लोग सीधे नेबुलाइज करके देते हैं. एंड व्हाट एपिनेफ्रिन डज इज कि एपिनेफ्रिन इज अ सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग एंड इट इज अ नॉन सिलेक्टिव सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग. मतलब नॉन सिलेक्टिव, इट विल एक्ट ऑन अल्फा 1, इट विल एक्ट ऑन बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स. अब जब वो नेबुलाइज जाएगा अंदर तो अल्फा 1 ब्लड वेसल पे होते हैं, तो ब्लड वेसल्स पे वो करेगा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन. जैसे ही वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, सारी डायलेटेड वेसल्स जो इन्फ्लेम्ड वेसल्स हैं वो बहुत कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी, एयरवे में डायमीटर इंक्रीज होगा. इफ दिस एक्ट्स ऑन बीटा 1 इज ऑन द हार्ट पे आयोनोट्रोपिक एक्शन होगा, बेटर होगी धड़कन. बीटा 2 इज ओवर द स्मूथ मसल्स ऑफ द एयरवे. स्मूथ मसल्स विल रिलैक्स क्योंकि ये करता है ब्रोंकोडाइलेशन. So that is why you give high dose nebulized racemic epinephrine in cases of these children. ठीक है? तो हमने क्या किया? हॉस्पिटलाइज किया, हेड एंड एलिवेट किया, हाइड्रेशन किया, हाइड्रोकॉर्टिसोन दिया, हाई ग्रेड एंटीबायोटिक्स दिया, हाई डोज नेबुलाइज्ड एपिनेफ्रिन दिया. एंड एट द सेम टाइम यू स्टार्ट द चाइल्ड ऑन हाई प्रोटीन डाइट. एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज ऑब्वियसली बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, दे विल लूज वेट, दे विल हैव फेलियर टू थ्राइव. तो यू नीड टू गिव देम अ हाई प्रोटीन डाइट ताकि इनकी फाइटिंग कैपेसिटी बढ़े. तो ये रहा आपका 7H विच इज रिलेटेड विद ट्रीटमेंट ऑफ क्रूप एंड एपिग्लोटाइटिस. अब एक चीज याद रखना, अगर ये बच्चा एपिग्लोटाइटिस का था तो ये स्कूल गोइंग एज में था, 2 to 4, 5 ईयर वाला. ठीक है? हाइड्रोकॉर्टिसोन इज यूजुअली अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द चाइल्ड. राइट? जनरली हम लोग 30 to 50 mg स्टार्ट देते हैं, बड़े होते हैं तो 100 mg स्टार्ट देते हैं. नाउ इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर केस जिसमें पेशेंट के 3 चीजें दिखी, वेयर देर इज अ 6 months
to 2 years child, यानी अब बच्चा और छोटा हो गया है. And this particular child has got 3S. 3S का मतलब severe chest retractions, chest पूरी तरीके से retracted है. Patient has stridor which is biphasic. ये आया नया टर्म. Biphasic का मतलब होता है stridor both on inspiration and expiration. ये biphasic है. Biphasic stridor is a basic. The answer is that the inflammation is at subglottic level. अब देखो सबग्लॉटिक लेवल क्या होता है. सबग्लॉटिक का मतलब होता है हमारा जो क्रिकॉइड होता है ना, क्रिकॉइड कार्टिलेज इज क्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, और क्रिकॉइड के अंदर का एरिया को हम कहते हैं सबग्लॉटिस. अगर लैरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस हुई तो क्रिकॉइड के अंदर का सबग्लॉटिक एरिया बहुत नैरो हो गया, और साथ ही साथ ट्रेकिया भी ऑल साइड से क्लोज्ड है. ट्रेकिया भी नैरो हो गया, ब्रोंकस भी नैरो हो गया. तो अब मेरा सारी की सारी रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर्स नैरो हो गई है डायमीटर में. तो अब व्हेन दिस नैरोइंग, there will be a sound on inspiration and there will be a sound on expiration. This is called as biphasic. Biphasic is a classical feature for subglottic pathologies. ये याद रखना. Now comes the third S, and the third S is seal-like barking cough. Seal-like barking cough. तो ये 3S से अगर आपके पास बच्चा आया तो आपके दिमाग में एक चीज चली, that this might be a feature of croup, laryngotracheobronchitis. जैसे मेरे तीनों सबग्लॉटिक एरिया, ट्रेकिया और ब्रोंकस की नैरोइंग हो जाती है. अगर एपिग्लोटाइटिस was a bacterial infection, croup is a viral infection. Most common organism to cause croup is parainfluenza type 1, 2, 3. Together with influenza virus, together with respiratory syncytial virus, adenovirus. बट मैं अगर सबसे कॉमन वायरस पूछूं, इट इज parainfluenza type 1, 2 and 3. ठीक है. अगर आप इन बच्चों का एक्सरे लेते हैं तो एक्सरे में हमेशा मैंने बताया था कि द एयर कॉलम अपीयर्स टू बी ब्लैक. सेंटर में मेरे ट्रेकिया है, राइट. तो सेंटर में मेरे ट्रेकिया है, वो काला काला है, और देखो ये काला काला बिल्कुल टेपर कर रहा है, नैरो कर रहा है. तो ये क्यों हो रहा है टेपर? बिकॉज यहां पे नैरोइंग हो गई है. नाउ दिस अपीयर्स टू बी लाइक द टॉप ऑफ अ चर्च. तो टॉप ऑफ चर्च को क्या कहते हैं? स्टीपल. तो इसीलिए इस साइन का नाम होता है चर्च स्टीपल साइन. Church steeple sign. The other name is also called as a pencil tip sign because this looks like a pencil tip. And the other name of this sign is also called as a wine bottle sign. So all these signs are classical features of laryngotracheobronchitis या croup. Best part, इसका treatment और last treatment 7H same है. But यहाँ पे antibacterials की ज्यादा कोई रोल नहीं है क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है. यहां पे बाकी के सब देंगे, और इसमें जान बचाने वाला ड्रग कौन है? नेबुलाइज्ड रेसिमिक एपिनेफ्रिन, एयरवे मैनेजमेंट के लिए. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब आ गया आपके पास एक पेशेंट. दिस पेशेंट हैज गॉट फीचर्स ऑफ वेट लॉस. ये तो आप मुझे आंसर बताएंगे कि ये आप कैसे ढूंढेंगे. पेशेंट के वेट लॉस है, पेशेंट के कॉन्स्टेंटली पुटम में ब्लड आता है, एंड एट द सेम टाइम पेशेंट हैज गॉट लो ग्रेड फीवर इन द नाइट. अब आपने वो पेशेंट की कॉफ को देखते हुए आपने लैरिंग्स का एग्जामिनेशन किया, और लैरिंग्स के एग्जामिनेशन में देखो बहुत ही डर्टी लैरिंग्स मिल रहा है. डर्टी का मतलब आपने देखे बहुत सारे गंदे गंदे अल्सर हैं, राइट. सो आपने पहला फीचर क्या देखा? दैट देयर आर अल्सर्स व्हिच आर प्रेजेंट ओवर द लैरिंजियल इनलेट, राइट. सेकेंड चीज आपने क्या देखी? अगर आप वोकल कॉर्ड्स को देखें ना तो ऐसे लग रहा है वोकल कॉर्ड्स को कोई खा के चला गया है. somebody has bitten and रन अवे. तो ऐसे लग रहा है माउस खा के चला गया है. तो इसे हम कहते हैं मॉथ बिटन या माउस निबल्ड अपीयरेंस. माउस निबल्ड या मॉथ बीटन अपीयरेंस क्या होती है कि दीज आर बेसिकली अल्सर्स, और ये क्रेटर्स बन जाते हैं वोकल कॉर्ड्स पे. दिस इज अ क्लासिकल साइन ऑफ टीबी लैरिंजाइटिस. ये टीबी में दिखता है. वैसे ही आपको एक और इसमें फीचर दिखेगा, इसमें नहीं दिख रहा, बट इसमें क्या होता है, जो एपिग्लॉटिस होती है ना, एपिग्लॉटिस बिकम्स ह्यूज, बड़ी हो जाती है. And that epiglottis, when it becomes huge, that is called as turban epiglottis. टर्बन होता है ना, टर्बन पहनते हैं सर पे, तो टर्बन की तरह बड़ी हो जाती है, and that is what is called as turban epiglottis, right? And you will see कि अंदर बहुत सारे छोटे छोटे नोड्यूल्स बन गए, ग्रैन्युलेशंस बन गए. नोड्यूल्स या ग्रैन्यूल्स को हम लोग कहते हैं मैमिलेशंस. जो छोटे छोटे नोड्यूलर ग्रोथ्स हो जाती है, हम मैमिलेशंस कहते हैं. तो you will see मैमिलेशंस,
you will see mouse nibbled appearance, you will see ulcers, and you will see a turban epiglottis. These are all classical features of TB laryngitis. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ट्रीट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट ऑब्वियसली कोई भी टीबी का ट्रीटमेंट है तो ट्रीटमेंट हमेशा एटीटी होगा, विदाउट अ डाउट. ठीक, चलो आगे बढ़े. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट. यू हैव गॉट अ चाइल्ड हु इज जस्ट बॉर्न, एंड बॉर्न होने के 2 महीने बाद आपके पास पेशेंट आता है, मदर आती है और कहती है हमारे जो बच्चा है इसके इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर है, मतलब बच्चे की आवाज आ रही है सांस लेने में. तो नाउ यू हैव गॉट अ चाइल्ड and the child has got inspiratory stridor and this child has got a weak cry. जब ये रोता है तो बहुत weak है इसकी cry. Inspiratory stridor है, weak cry है, and when you do a laryngoscopy you see a papillomatous growth inside the laryngeal inlet. So now what do you see? You see a papillomatous growth over in the laryngeal inlet. ये क्या है? This is जुवेनाइल ऑनसेट रिकरेंट रेस्पिरेटरी पैपिलोमाटोसिस, जिसे सिंपली हम लोग निमोनिक कहते हैं जॉर्प. जुवेनाइल ऑनसेट रिकरेंट रेस्पिरेटरी पैपिलोमाटोसिस. दिस इज समथिंग विच अकर्स ड्यू टू वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ एचपीवी. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक ऐसा वायरस है जिसे एपिथेलियम में बहुत मजा आता है. एपिथेलियम ट्रॉपिक वायरस है, ये एपिथेलियम में ग्रो करता है. एचपीवी के 2 वेरिएंट्स होते हैं, लो रिस्क वेरिएंट्स एंड हाई रिस्क वेरिएंट्स. लो रिस्क वेरिएंट्स होते हैं बेसिकली 6 and 11 स्ट्रेन, हाई रिस्क होते हैं 16 and 18. तो जो 16 and 18 होते हैं दे आर द वंस ऑफ एचपीवी व्हिच कॉज मैलिग्नेंसी, एंड 6 and 11 स्ट्रेन्स जो होते हैं ना दे कॉज पैपिलोमास, वॉर्ट्स, ऑल दीज थिंग्स. तो ये होता है 6 and 11 से, व्हिच कॉजेज दीज काइंड्स ऑफ पैपिलोमैटस ग्रोथ ओवर द लैरिंग्स. तो बच्चे के हमेशा इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर होगा क्योंकि बच्चा सांस नहीं लेगा, एंड एट द सेम टाइम क्राई बहुत वीक होगी. तो इस केस में आप क्या करेंगे? What will you do in this case? अब इस केस में सबसे पहले आप याद रखना है we do 4 management which is A, B, C, D. ABCD करते हैं in juvenile respiratory papillomatosis. A for alpha interferon therapy. Alpha interferon is good for HPV. HPV के अगेंस्ट जाता है. B एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है which has been recently added for this management. And this is bevacizumab. Bevacizumab. This is a monoclonal antibody which works for HPV. Recently add हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है. C stands for Cidofovir. Cidofovir is an antiviral drug. तो Cidofovir क्या करते हैं ना, we put Cidofovir, we inject Cidofovir in this vocal cord जहां से निकल रहा है. और D मतलब debulking सर्जरी. तो व्हाट वी यूजुअली डू और स्टार्ट ऑफ विद कि सबसे पहले हम डीबल्क करते हैं, सबसे पहले हम लेजर लगा के इसे हटा देते हैं, एंड डीबल्किंग करने के बाद वी पुट इंट्रालीजनल सीडोफोविर जहां से वो निकल रहा है. तो जहां से वो निकल रहा है वहां पे सीडोफोविर डाल दिया सो दैट इट डज नॉट रिकर बैक. दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज द एबीसीडी ऑफ जुवेनाइल ऑनसेट रेस्पिरेटरी पैपिलोमाटोसिस. बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आपके पास एक पेशेंट आया. इस पर्टिकुलर पेशेंट की कंप्लेन है दैट सिंस द चाइल्ड इज बॉर्न द चाइल्ड हैज गॉट इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर. चाइल्ड हैज गॉट इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर यानी बच्चा पैदा हुआ, सो यू हियर अ स्क्वीक व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न. व्हाट इज दिस कंडीशन? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर इन चिल्ड्रन. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर इन चिल्ड्रन इज लारिंगोमेलेशिया. सबसे इंपॉर्टेंट, मेलेशिया का मतलब होता है सॉफ्ट होना. ऑस्टियोमेलेशिया में सॉफ्ट बोन हो जाती है, लारिंगोमेलेशिया में सॉफ्ट लैरिंग्स हो जाता है. तो लारिंगोमेलेशिया, ये लास्ट क्वेश्चन एज इट इज आया है जो मैंने इसमें बोला भी था, ये एफएमजी में आया था. तो व्हाट हैपेंस इन लारिंगोमेलेशिया? 4 चीजें होती हैं लारिंगोमेलेशिया में. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? नंबर 1 इज फ्लैसिड कार्टिलेजेस. फ्लैसिडिटी ऑफ कार्टिलेज मतलब कार्टिलेज बहुत सॉफ्ट हो रही है. नंबर 2 दैट थिंग द प्रॉब्लम हैपेंस इज हाइपोटोनिया ऑफ मसल्स. जो भी हमारी मसल्स हैं लैरिंग्स की वो बहुत हाइपोटोनिक है. थर्ड प्रॉब्लम दैट हैपेंस इन केसेस ऑफ लारिंगोमेलेशिया इज शॉर्ट एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स. अभी मैं सब समझाऊंगा. एंड द फोर्थ इज रिडंडेंट म्यूकोजा. अब इनका क्या मतलब है? ये 4 चीजों का. ठीक है, तो व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न उसके ये 4 प्रॉब्लम्स हैं. 4 प्रॉब्लम्स का क्या मतलब है कि लेट्स से इसका ये लैरिंग्स है,
ये उसकी टंग है, दिस इज द टंग, एंड नाउ हिज कार्टिलेजेस आर वेरी वीक। तो जैसे ही वो बच्चा सांस लेता है ना, उसकी कार्टिलेज कर्ल हो जाती है, कर्ल हो जाती है। जब सांस लिया कर्ल हो गई। एंड व्हाट कर्ल्स? ये एपिग्लॉटिस कर्ल्स। और अगर ये एपिग्लॉटिस कर्ल होती है तो इसे कहते हैं ओमेगा शेप्ड अपीयरेंस या ओमेगा साइन। ठीक है, फाइन, सब कुछ लिख दिया है। सोम शुभ्रदास, वेरी नाइस। चलो, अब सेकंड प्रॉब्लम क्या है? आफ्टर फ्लैसिडिटी ऑफ कार्टिलेज, जिसकी वजह से ओमेगा हो रहा है। दूसरा, हाइपोटोनिया ऑफ मसल्स है, द मसल्स आर वेरी वीक, कंट्रोल नहीं है मसल्स के ऊपर। थर्ड प्रॉब्लम क्या है कि इनकी जो एरिटेनॉइड है ना, एरिटेनॉइड और एपिग्लॉटिस के जो बीच के फोल्ड हैं, दे आर वेरी स्मॉल, शॉर्ट एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स। एंड द फोर्थ प्रॉब्लम इज कि जो ये एरिटेनॉइड है, इसके ऊपर बहुत सारा एक्सेसिव म्यूकोजा है। एक्सेसिव म्यूकोजा को कहते हैं रिडंडेंट म्यूकोजा। ऐसे समझ लो, एरिटेनॉइड के ऊपर डबल एक्सेल कपड़े लगे हुए हैं। जैसे मैं हूं, मेरा अगर लार्ज साइज है और मैंने ट्रिपल एक्सेल शर्ट खरीद ली और ट्रिपल एक्सेल शर्ट पहन के मैं तूफान में चला गया, तो तूफान में मेरी जो सारी शर्ट है ना, वो फटफट 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 करेगी। यहां पे लैरिंग्स ने एक्स्ट्रा साइज के कपड़े पहने हुए हैं, जिसे हम कहते हैं रिडंडेंट म्यूकोजा। तो व्हेन नाउ द एयर विल गो इनसाइड दिस एयर, बिकॉज ऑफ द फ्लैसिडिटी ऑफ कार्टिलेज, शॉर्ट फोल्ड्स और ये रिडंडेंट म्यूकोजा ये फटफट करेगा, इट विल फॉल इनवर्ड्स, it will create a very low space for the patient to breathe, and that is the reason why this patient will have inspiratory stridor. अब क्वेश्चन आता है, अब करेंगे क्या इसमें? तो laryngeal maturity usually comes by 2 to 4 years of age. तो मेरा आंसर होगा I will do nothing, I will wait and watch, conservative management for at least 2 to 4 years of age. But if the child has got saturation जो 90% से नीचे गिर रहा है, child is having failure to thrive, child is not able to feed well, या poor feeder है, in that case we will choose to do a surgery. सर्जरी लैरिंगोमलेशिया की होती हैं दो, एक होती है एपिग्लॉटोपेक्सी, एपिग्लॉटोपेक्सी, और दूसरी होती है सुप्राग्लॉटोप्लास्टी। एक सर्जरी है एपिग्लॉटोपेक्सी, दूसरी है सुप्राग्लॉटोप्लास्टी। अब इनको हम क्या क्या करते हैं? एपिग्लॉटोपेक्सी, पेक्सी का मतलब जोड़ना, एपी और ग्लॉटो मतलब एक सूचर लिया, एंड वी टाई दिस सूचर फ्रॉम द टंग टू द एपिग्लॉटिस, ताकि जो एपिग्लॉटिस है वो खुल जाए, मोर स्पेस। दिस इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटोपेक्सी। सुप्राग्लॉटोप्लास्टी को क्या मतलब है? सुप्राग्लॉटोप्लास्टी का मतलब है वी गिव रिलीज इंसिजंस ओवर द एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स। इनको हम काट देते हैं। जब ये कट जाएंगे तो ऑब्वियसली द लैरिंग्स विल बिकम अ लिटिल बिगर इन साइज, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एरी एपिग्लॉटोप्लास्टी, क्योंकि एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स को वी आर कटिंग। So either you call it supraglotoplasty or ariepiglotoplasty and epiglotopexy. These are the surgical treatments only when wait and watch fails. मैं फर्स्ट ट्रीटमेंट पूछूंगा तो वेट एंड वॉच है, दैट इज कंजर्वेटिव। ठीक, चलो, लैरिंगोमलेशिया खत्म। अब इसमें देखो, ये भी दिख रहा है, यू कैन सी ओमेगा शेप्ड एपिग्लॉटिस, यू कैन सी एक्सेसिव म्यूकोजा व्हिच इज प्रेजेंट ओवर दिस एरिटेनॉइड, एंड यू कैन सी द एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स आर वेरी वेरी शॉर्ट। ये सब दिख रहा है, ठीक है, ओके, वेरी नाइस। अब आपके पास पेशेंट आया, मैंने आपको क्या बताया था रूल ऑफ थंब? अगर आपके पास सबग्लॉटिक पैथोलॉजी है तो आंसर है बाइफेजिक स्ट्राइडर। अगर आपके पास सबग्लॉटिक पैथोलॉजी है, वोकल कॉर्ड दिख रहे हैं, वोकल कॉर्ड के नीचे देखो एक छोटा सा पिन होल है, तो पेशेंट इज नॉट एबल टू ब्रीथ, क्योंकि बाकी सारा एरिया बंद है। तो दिस इज सबग्लॉटिक स्टेनोसिस। ग्लॉटिस के नीचे स्टेनोज हो गया है, सबग्लॉटिक स्टेनोसिस। तो सबग्लॉटिक स्टेनोसिस में क्वेश्चन ये आता है कि सबग्लॉटिक स्टेनोसिस में पेशेंट आएगा विद बाइफेजिक स्ट्राइडर, बाइफेजिक स्ट्राइडर। दिस इज व्हाट इज सबग्लॉटिक स्टेनोसिस। सबग्लॉटिस स्टेनोज हो गई है, छोटी हो गई है। अब आते हैं दो इंपॉर्टेंट सवाल। सबग्लॉटिक स्टेनोसिस दो तरीके की होती है, वन इज कंजेनाइटल स्टेनोसिस एंड वन इज एक्वायर्ड स्टेनोसिस। कंजेनाइटल स्टेनोसिस में इट्स यूजुअली एसोसिएटेड विद सिंड्रोम्स, जैसे कि पालिस्टर हॉल सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। These are the common ones which cause congenital stenosis, मतलब कंजेनाइटली हमारा जो एरिया है वो छोटा है। दूसरा हो गया अक्वायर्ड। अक्वायर्ड का सबसे कॉमन कॉज क्या है? प्रोलॉन्ग्ड एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। ये लाइन एज इट इज याद रखना, क्योंकि यही आएगा। Patient has got prolonged endotracheal intubation, multiple intubation history, now comes with biphasic stridor. You see a pinhole below the glottis. Subglottic stenosis answer है, ठीक है? अब now comes the next point, that how do you grade this stenosis? Grading of the stenosis is done by Cotton-Meyer staging.
If this hole is 0 to 50 centimeters, then this is called as grade 1. If it is 51 to 70 centimeters, 70%, then it is grade 2. If this hole is 71 to 99%, it is grade 3. And if you cannot see any lumen, no detectable lumen, then it is grade 4. So this is cotton Meyer. अगर 0 to 50% area involved है stenosed है तो 1, 51 to 72, 71 to 93 और कुछ भी नहीं दिख रहा तो 4. 1 and 2 को हम लोग कहते हैं अर्ली स्टेज स्टेनोसिस और 4 and 5 को हम लोग कहते हैं एडवांस स्टेज स्टेनोसिस. ठीक है. अब आता है क्वेश्चन कि आप करेंगे क्या अगर सबग्लॉटिक स्टेनोसिस आ गया. तो अगर किसी भी पेशेंट के अर्ली स्टेज स्टेनोसिस है तो उसके केस में वी डू समथिंग कॉल्ड एज लेजर एक्सिजन विद बलून डायलेशन. लेजर एक्सिजन विद बलून डायलेशन. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारा होल है तो अब हम लेजर लेते हैं. वी टेक अ लेजर बीम, मोस्टली CO2 लेजर, एंड वी क्रिएट क्रूशिएट इंसिजन्स. क्रूशिएट मतलब 4 कॉर्नर्स में ऐसे खोला. तो वी ओपन इट बाय क्रूशिएट इंसिजन. एंड क्रूशिएट इंसिजन देने के बाद, क्योंकि हमें पता है कि ये सारी चीजें वापस से फाइब्रोज हो जाएंगी, जस्ट लाइक खोनल एट्रीशिया, उसमें भी हम काट रहे थे एंड वी हैड टू अप्लाई समथिंग वेरी नाइस. So now we will want to put something and we will put mitomycin C. We will put mitomycin C. Why? Because mitomycin C आपको पता है it is an anti-fibroblastic agent. Right? अब क्योंकि ये होल बड़ा रहे and it does not collapse again and it does not fibrose again, now you will do serial balloon dilations. एक कैथेटर बलून आता है, उस कैथेटर को हम लोग अंदर लगाते हैं और बलून को हम डायलेट कर देते हैं. नाउ दैट बलून पुट्स प्रेशर ओवर दिस स्टेनोटिक सेगमेंट एंड व्हाट हैपेंस, दिस सीरियल बलून डायलेशन, मतलब हम मल्टीपल अटेम्प्ट्स करते हैं. तो आफ्टर द एक्सिजन ऑफ दैट वी विल सीरियली डायलेट इट. यानी हर बार हर 2-2 हफ्ते के बाद हम पेशेंट को बुलाएंगे एंड बलून से स्टेनोटिक सेगमेंट को डायलेट करते रहेंगे एटलीस्ट फॉर 7 to 8 टाइम्स. एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू कॉज रिवर्सल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज स्टेनोसिस. लेकिन अगर इन केस 3 और 4 स्टेज स्टेनोसिस है तो उसमें ये काम नहीं करेगा. 3 and 4 स्टेज स्टेनोसिस में हमें उस एरिया को हटाना पड़ता है एंड दैट इज कॉल्ड एज क्रिकोट्रेकियल रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस. इसका मतलब है क्रिकोइड के अंदर हमारा सबग्लॉटिक एरिया, क्रिकोइड को ही निकाल दिया, जो भी छोटा मोटा ट्रेकिया पे स्टेनोसिस है वो भी हटा दिया, और बची कुची जो भी हमारी थायराइड है वी सूचर इट विद द ट्रेकिया. तो क्रिकोट्रेकियल रिसेक्शन मतलब क्रिकोइड और ट्रेकिया का अपर पार्ट हटा दिया एंड बचे कुचे ट्रेकिया को थायराइड से सूचर कर दिया. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्रिकोट्रेकियल रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस. ये करते हैं अगर ग्रेड 3 और 4 स्टेनोसिस होती है, नहीं तो 1 और 2 में एक्सिजन एंड बलून डायलेशन. ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. ओके, सिंपल. यू हैव गॉट अ प्लेयर हु इज अ ट्रम्पेट प्लेयर, या फिर इस पेशेंट इज अ ग्लास ब्लोअर, या फिर ये पेशेंट एक ग्लास ब्लोअर है and he has come with a progressive swelling on the left side of the neck which increases in size on Valsalva maneuver. What is the diagnosis? Laryngocele. What is laryngocele? अब ये CT पढ़ना सीखो, इस laryngocele का बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैंने अपनी नेक को ऐसे काटा कोरोनल सेक्शन में तो what will you see? अगर मैंने अपनी नेक को काटा तो बेसिकली above is your hyoid bone, this is your hyoid bone. हाइयोइड के नीचे होती है थायराइड कार्टिलेज, हाइयोइड के नीचे होती है थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज के नीचे होती है क्रिकोइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज के नीचे होती हैं ट्रेकियल रिंग्स. There is a membrane which is present between thyroid and hyoid, which is called as thyrohyoid membrane. There is a membrane present between thyroid and cricoid called as cricothyroid membrane. There is a membrane present between trachea and the cricoid called as cricotracheal membrane. और उसके बाद हमारी मेम्ब्रेन ऑफ ट्रेकिया आ जाती है. हमने ऐसे काटा हुआ है कोरोनल, यही सीटी दिख रहा है कोरोनल है. अब अगर हम लोगों ने इसमें पार्ट्स ऑफ लैरिंग्स बनाया तो आवर लैरिंग्स कम्स डाउन लाइक दिस. एक उसका ऊपर प्रोजेक्शन होता है, फिर एक पीछे होता है, फिर एक नीचे होता है और वो नीचे आ जाता है. फिर आए, फिर एक ऊपर गया, फिर पीछे गया, फिर उसके बाद नीचे आया एंड देन यू कम डाउन. Once you divide this larynx, the upper जो ऊपर का प्रोजेक्शन मैंने बनाया है, this is your false vocal cord. Lower one, this is your true vocal cord. An elliptical space present between the false vocal cord above and the true vocal cord below. This elliptical space is called as laryngeal ventricle. It's called as laryngeal ventricle.
ventricle dilates laterally and superiorly into a blind space. देखो laterally and superiorly ventricle is dilating into a blind space. ये बंद है. This space where it has dilated, this is called as laryngeal saccule. तो saccule क्या है? It is a extension of the ventricle laterally and superiorly. Saccule contains a lot of glands. These glands are nothing but these are mucus glands. ये म्यूकस ग्लैंड से जो म्यूकस निकलता है ये हमारे ट्रू वोकल कॉर्ड और फॉल्स वोकल कॉर्ड को lubricate करता है. That is why this saccule is also called as the oil can of larynx. Now what happens is, if suppose somebody is a trumpet player या weight lifter या glass blower, तो वो सब लोग अपने larynx में हवा रोकते हैं. You think weight lift जब आप करते हैं तो आप यहां पे हवा रोकते हैं. So when you put a lot of pressure over here at the level of the larynx, this increases the transglottic pressure, and that pressure can accidentally let that air जो भी यहां पे collect आपने करी है वो escape कर सकती है through the ventricle into the saccule, and this can get trapped in the saccule. Now if this air gets trapped in the saccule, ये saccule dilate होगा and it will come out of the thyrohyoid membrane like a swelling, and this swelling will be palpable in the neck. Now this swelling is filled with air, and this is nothing but this is your laryngocele. Seal का मतलब cavity containing air inside the larynx. अब अगर पेशेंट Valsalva मैनूवर करेगा तो Valsalva में भी he is putting a lot of pressure inside the larynx. Air is escaping inside through the saccule and it is getting into the laryngocele. तो ये Valsalva पे इंक्रीज करेगी. अब अगर मैंने इस स्वेलिंग को बाहर से रिड्यूस किया, अगर मैंने स्वेलिंग को बाहर से दबाया तो एक साउंड निकलेगा गुड़ 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 गुड़. And that sound which will come out by reduction of this swelling, that gurgling sound is called as Bryce sign. BRYCE. तो देखो laryngocele में भी RYCE होता है और Bryce में भी RYCE होता है. तो इसीलिए Bryce sign is basically a feature of laryngocele. ठीक है. Halitosis इसमें नहीं दिखती, वो दिखती है क्लासिकली इन pharyngeal pouch. इसमें क्लासिकल फीचर नहीं होता हालिटोसिस का. ठीक है, चलिए. तो ये हो गया अबाउट ब्राइस साइन, ये हो गया ये. अब सेम चीज देखो, अगर मैंने ऐसे काटा और यहां पे रखा, दिस इज व्हाट यू आर सीइंग हियर, राइट? नाउ यू सी दिस इज योर सेम फनल शेप्ड कैविटी जो मैंने बनाई है ना, दिस इज द सेम फनल शेप्ड कैविटी विच इज फॉर्म्ड ओवर हियर. ये भी वही है, बट इधर देखो, इधर का सैक्यूल कितना बड़ा हो गया. सी दिस, इट इज कंटेनिंग एयर, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज योर लारिंगोसील, क्योंकि इसमें सैक्यूल सडनली बड़ा हो गया. तो दिस इज हाउ टू आइडेंटिफाई. यही डायग्राम को यहां आइडेंटिफाई करो, दिस इज योर लारिंगोसील. अब आता है क्वेश्चन, आप क्या करेंगे? नाउ whenever you see laryngocele, if it is a small laryngocele, then you do something called as marsupialization. Marsupialization क्या होता है? marsupial क्या, कौन होते हैं? kangaroos, right? उनका खुला रहता है पाउच. तो बेसिकली वी कट द laryngocele and we open it. That's called as marsupialization. और अगर ये लार्ज laryngocele है तो वी डू ट्रांससर्वाइकल एक्सिजन. ट्रांससर्वाइकल एक्सिजन का मतलब यहां पे एक इंसिजन दो, खोलो, टोटल अपना जो भी हमारा लारिंगोसील का सैक है उसे एक्सरसाइज करके निकाल लो. सर्जरी इज द इजीएस्ट थिंग टू डू, बस काटना ही तो है. यू जस्ट कट ऑफ एंड रिमूव इट. दैट्स कॉल्ड एज ट्रांससर्वाइकल एक्सिजन. यही इसका ट्रीटमेंट है और कुछ नहीं. एंड टेल द पेशेंट नॉट टू प्ले द ट्रम्पेट, नॉट टू ब्लो द ग्लास, नॉट टू वेट लिफ्ट फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम. ठीक है, ये खत्म होता है लारिंगोसील. आ जाओ, अब वोकल कॉर्ड डिसऑर्डर्स आ गए. 4 इंपॉर्टेंट वोकल कॉर्ड डिसऑर्डर्स आएंगे और चारों के बारे में मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं कि क्या इंपॉर्टेंट है इनमें. ठीक है, अब इनको समझने के लिए पहली चीज आप ये समझो कि वोकल कॉर्ड की लेयर कितनी होती है. अगर मैं वोकल कॉर्ड से एक पीस निकाल लूं बाहर, दिस वोकल कॉर्ड हैज गॉट 5 लेयर्स. इसकी इनर मोस्ट लेयर वोकल कॉर्ड की एक मसल है. इस मसल का नाम होता है वोकैलिस मसल. वोकैलिस मसल के ऊपर एक लेयर है जिसे कहते हैं डीप लेमाइना प्रोप्रिया. लेमाइना का मतलब शीट, प्रोप्रिया का मतलब लेयर. डीप लेमाइना प्रोप्रिया के ऊपर होती है इंटरमीडिएट लेमाइना प्रोप्रिया. इंटरमीडिएट लेमाइना प्रोप्रिया के ऊपर होती है सुपरफिशियल लेमाइना प्रोप्रिया. सुपरफिशियल लेमाइना प्रोप्रिया के ऊपर होता है एपिथेलियम. तो 5 लेयर होती हैं वोकल कॉर्ड की. इनर टू आउटर, वोकैलिस, डीप लेमाइना प्रोप्रिया, इंटरमीडिएट लेमाइना प्रोप्रिया, सुपरफिशियल लेमाइना प्रोप्रिया और एपिथेलियम. ऑलवेज रिमेंबर, डीप और इंटरमीडिएट लेमाइना प्रोप्रिया को साथ में कहते हैं हम लोग वोकल लिगामेंट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोकल लिगामेंट. The other name for superficial lamina propria
इज रिंकी स्पेस। इसका नाम रिंकी स्पेस भी होता है। नाउ दिस रिंकी स्पेस, दिस कंटेन्स अ लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स। इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, अब व्हाट इज द फर्स्ट वोकल नॉड्यूल? 40-year-old teacher comes to you, chronic voice abuse, now develops hoarseness of voice. You see bilateral, अब देखो, bilateral symmetrical swellings which are less than 3 millimeters in diameter, whitish at the junction of the anterior 1/3 and posterior 2/3 of the cord. यानी posterior 2/3 और anterior 1/3 के जंक्शन पे bilateral symmetrical less than 3 mm की whitish swellings मिली। ये आंसर क्या है? ये वोकल नॉड्यूल है। नॉड्यूल हमेशा बायलैटरल होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, दे आर ऑलवेज व्हाइटिश टू येलोइश एंड दे ऑलवेज अकर एट द जंक्शन ऑफ द एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द कॉर्ड। व्हाई? क्योंकि जब हमारे वोकल कॉर्ड्स बंद होते हैं ना, तो वॉइस अब्यूज में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन एंटीरियर 1/3 और पोस्टीरियर 2/3 के गैप पे होता है। एंड बिकॉज दैट फ्रिक्शन causes again and again, that trauma causes fibrosis, and fibrosis की वजह से दो छोटे छोटे नोड्यूल निकल आते हैं। अब अगर मैं आपसे, तभी मैं बोलूंगा क्रॉनिक वॉइस अब्यूज है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे वोकल नोड्यूल हो सकता है, that's what it is, because that is something we are abusing our voice. Now this is something where what will work? The only answer is medical treatment. कभी भी हमें बॉडी में, कभी भी हम एक ब्लेड लगाएंगे ना, तो ब्लेड हमेशा स्कारिंग करेगा, और स्कार से हमेशा ज्यादा वॉइस खराब होगी। तो द मोमेंट यू गेट सच नोड्यूल्स, डोंट पुट द ब्लेड, ट्राई ट्रीटिंग इट विद मेडिकल लाइन ऑफ थेरेपी। तो आपका क्वेश्चन है कि आप क्या करेंगे इस केस में? तो व्हाट विल यू डू इन दिस केस? यू विल डू वॉइस थेरेपी, वॉइस रेस्ट एंड थेरेपी। आप कहेंगे पेशेंट को कि बंद करो बोलना, कुछ नहीं करना है, राइट? सो दिस इज समथिंग व्हाट यू डू इन वोकल नोड्यूल। मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज वॉइस रेस्ट, ताकि हीलिंग हो सके। अब आपके पास दूसरा पेशेंट आया। दूसरे पेशेंट में क्या है? दूसरे पेशेंट में हिस्ट्री है कि ये आरसीबी का फैन है, ये गया देखने के लिए मैच, और सडनली इसने, विराट कोहली ने सेंचुरी मार दी, इसने ये उठा स्टैंड में और विराट कोहली के लिए चिल्लाना शुरू किया। नाउ चिल्लाने के बाद सडनली आपके पास ये 14 डेज के बाद आता है विद होर्सनेस ऑफ वॉइस, एंड नाउ यू सी व्हाट? यू सी अ हिस्ट्री ऑफ सडन अब्यूज ऑफ वॉइस, एंड you see a unilateral pedunculated swelling, reddish in color, and this swelling is more than 3 mm in diameter. मतलब ये एक ही वोकल कॉर्ड पे है, ये पेडंक्यूलेटेड है, ये ऐसी निकली हुई है, ये रेडिश है, and this is the one which is more than 3 mm at the junction of anterior 1/3 and posterior 2/3. सेम, क्योंकि यहां पे भी सबसे ज्यादा ट्रॉमा फ्रिक्शन हुआ है। तो जब इसने चिल्लाया विराट कोहली, सो द मोमेंट हिज वोकल कॉर्ड शट, वोकल कॉर्ड के अंदर हैमरेज हुआ, हैमरेज की वजह से ब्लड कलेक्ट हो गया जस्ट बिलो द एपिथेलियम, एंड इट प्रोट्रूडेड एज अ पॉलिप। व्हाट इज दिस? दिस इज अ वोकल पॉलिप। ये जनरली यूनिलैटरल होगा। नाउ व्हाट विल बी द प्रॉब्लम हियर? इसमें आप क्या करेंगे? इसका मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज सर्जरी, सर्जिकल मैनेजमेंट। इसमें कोई भी वॉइस रेस्ट काम नहीं आएगा, क्योंकि ये एक हेमरेजिक मास है जो लटक रहा है, एंड दिस मास इज पेडंक्यूलेटेड, सो इट इज मूविंग विद एयर, सो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क विद वॉइस थेरेपी, नॉट गोइंग टू वर्क विद वॉइस रेस्ट। हियर यू नीड टू कंप्लीटली एक्सरसाइज इट आउट। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। आपके पास एक 40-45 ईयर ओल्ड फीमेल आई। दैट 40-45 ईयर ओल्ड फीमेल इज अ क्रॉनिक स्मोकर, and that smoker has now presented with deepening of voice. Yani a woman having a male like voice, right? So basically what is that? What this is Rinke's edema. Rinke's edema का दूसरा नाम क्या होता है? Pseudomyxomatous laryngitis. We also call this as smoker's larynx. अब इसमें क्या हो रहा है, इसको ऐसे समझो। मैंने आपको यहां पे बताया था कि Rinke's स्पेस जो है वो है हमारी सुपरफिशियल लेमाइना प्रोप्रिया। कोई भी अगर बार बार स्मोक करता है, इफ somebody keeps smoking for a long period of time, there is chronic irritation to these vessels. When these vessels become chronically inflamed,
these vessels start to leak. ये बहुत फ्रेजाइल हो जाती हैं और ये लीक करने लगती हैं. And when they start to leak, इनकी वजह से फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है in this superficial lamina propria. Because these vessels have become very fragile and they have started to leak because of increased capillary permeability, fluid starts to collect below the epithelium in the superficial lamina propria. If fluid starts to collect in the superficial lamina propria, this whole thing will get edematous. कैसे लगेगा? बहुत मोटा हो गया है. Now, when this particular thing will get edematous, you will see that the vocal cords will become edematous along the entire length. देखो पूरी लेंथ में vocal cords have become double in size. So this is called as Rinke's edema because ये Rinke स्पेस में होता है या फिर ये सुपरफिशियल लेमाइना में होता है. इसे हम pseudomyxomatous कहते हैं क्योंकि ये जेली लाइक सब्सटेंस होती है. And it is also called as smoker's larynx because it occurs in female smokers more. Right? So basically, what exactly happens over here कि this is something where you will see deepening of voice. You will see deepening of voice in a female. Now the most important aspect to this particular thing is कि आप हमेशा देखेंगे कि फीमेल मेल की तरह साउंड करेगी over in a telephonic conversation. यानी whenever a female will talk, see always remember whenever the vocal cords are stretched, they are thin, तो आवाज ऊंची निकलती है. Whenever the vocal cords are heavy, आवाज भारी हो जाती है. Males have bulkier cords, females have very thin cords. अगर भारी हो गया फीमेल का कॉर्ड तो वॉइस हेवी हो जाएगी. सो यू माइट मिस्टेक अ वुमन फॉर अ मैन ओवर ऑन अ टेलीफोन. दैट्स व्हाट इज द कंप्लेन. द सेकंड कंप्लेन इज व्हाट दैट देयर इज सो मच ऑफ डिक्रीज इन स्पेस इन ब्रीदिंग दैट द पेशेंट कैन ऑल्सो डेवलप स्ट्राइडर. दैट्स द सेकंड कंप्लेन. ठीक है. नाउ कमिंग टू द appearance. How does it look like? This looks like somebody has filled water inside a bag. So this is called as bag of water appearance. Bag of water appearance is classically seen in Rinke's edema. How will you treat this condition? Stop smoking. And the next part is you do a surgery, and that surgery is reduction glottoplasty. That surgery is reduction glottoplasty. Reduction का मतलब we put incisions over the vocal cords, and once we put the incision over the vocal cord, तो होगा क्या? We once put the incision over the epithelium, we will take the suction and we will suction out all this edema out. और जैसे ही edema को हम suction out कर लेंगे, we will get to reduce the vocal cord. और जब reduce हो जाएगा vocal cord, तो it will become more flatter. This is called as reduction glottoplasty. Plasty मतलब repair as well as reduction of the vocal cord in size. ठीक है? चलिए आगे बढ़े. Okay, now you have got a particular patient where this particular patient has come with a history of repeated intubation. और intubation की history के बाद now there is a problem with the voice. Now there is hoarseness of voice. Right? तो what exactly happens is कि कभी किसी के intubation अगर होता है तो repeated intubation से posterior part of the vocal cord में injury होती है. और posterior vocal cord में जब इंजरी होती है, so there forms granulation tissue. So if you see any particular question जिसमें posterior part of vocal cord पे कोई swelling लगी हुई है, this is nothing but this is an intubation granuloma. सारी की सारी swelling मैंने anterior दिखाई है. ये एक लौती swelling है जो बिल्कुल वो arytenoid की जो vocal process होती है, ये arytenoid की vocal process है, यहां पे हो गई. Why? Because जब भी हम intubation करते हैं ना, this is the commonest area to get injured. यहीं से ट्यूब जाता है. So if this particular area gets injured, it forms a granulation, it forms a granuloma, and we call this as intubation granuloma. इसमें hoarseness होती है, that is the major complaint. अब इसमें treatment क्या होता है? Treatment सबसे आसान इसका क्या है? To do a microlaryngoscopy plus excision. इसको निकाल दो. You can also give a short course of inhaled steroids. So inhaled steroids work in this condition. So steroids generally decrease the inflammation और inflammation के साथ साथ इस particular granuloma को भी कम कर देते हैं. Right? So inhaled steroids together with MLS and excision, this is the core treatment. ठीक है? चलिए. Okay. Now we come to the next बड़ा question. Vocal palsy. अब इसके लिए मैं आपको सीधी सीधी बात बता देता हूं. Vocal palsy में आपको करना क्या है and how to identify such questions. मैंने टेबल आपको ऑलरेडी दी हुई है वर्कबुक में. राइट? वोकल पाल्सी. अब बेसिक से क्वेश्चंस देख लेते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट नर्व जो लैरिंग्स को सप्लाई करती है दैट इज वेगस नर्व. वेगस नर्व की दो ब्रांचेस होती हैं, सुपीरियर लैरिंजियल एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व. सुपीरियर लैरिंजियल नर्व की दो ब्रांचेस होती हैं, सेंसरी ब्रांच
which is also called as internal branch, and motor branch, which is also called as external branch. Sensory branches always supply sensations above the level of vocal cords. मतलब वोकल कॉर्ड के लेवल के ऊपर सारी सेंसेशन हमारी आ रही है फ्रॉम द इंटरनल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व. एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व जाती है और सप्लाई करती है एक इंपॉर्टेंट मसल जो होती है क्रिकोथायरॉइड. क्रिकोथायरॉइड इकलौती मसल है. दिस इज द ओनली मसल ऑफ द लैरिंक्स व्हिच इज नॉट सप्लाइड बाय आरएलएन. क्रिकोथायरॉइड का काम क्या होता है? इट इज अ टेंसर एंड एडक्टर ऑफ वोकल कॉर्ड. अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे बात कर रहा हूं, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैंने अपनी पिच रेज कर दी, एंड दैट पिच रेज इज व्हाई बिकॉज ऑफ द क्रिकोथायरॉइड. व्हाई? बिकॉज द एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व ने उसका कॉन्ट्रैक्शन किया है. तो रबर बैंड की तरह अगर आपने खींच दिया, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द वॉइस, राइट? तो एडक्शन और टेंशन, ये दो काम है हमारे क्रिकोथायरॉइड के. ये एसएलएन पे है. आरएलएन सप्लाइज ऑल मसल्स ऑफ लैरिंक्स. सारे के सारे मसल्स को आरएलएन सप्लाई करती है एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड. सारे मसल्स का मतलब सारे एडक्टर, सारे एबडक्टर, सारे एबडक्टर, सारे एडक्टर. द ओनली एबडक्टर ऑफ योर वोकल कॉर्ड इज पोस्टीरियर क्रिकोएरिटनॉइड मसल. हजारों बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन. तो दो मूवमेंट होते हैं, एबडक्शन, एडक्शन. जो दूर जाती है वोकल कॉर्ड को लेके, ये हमारी एबडक्टर है, यानी ये पोस्टीरियर क्रिकोएरिटनॉइड है. क्योंकि ये एबडक्टर ओनली एबडक्टर है, इसीलिए इसका दूसरा नाम सेफ्टी मसल ऑफ लैरिंग्स भी है. दिस इज द सेफ्टी मसल ऑफ लैरिंग्स. और बाकी सारे एडक्टर्स हैं, बाकी बचे कुछ एडक्टर्स हैं. इवन क्रिकोथायरॉइड एक एडक्टर है. अब मैं आपको चार सिचुएशंस बताऊंगा, आपको बस चार ही चीजें याद करनी है. यूनिलैटरल आरएलएन पैल्सी में क्या होगा, बायलैटरल आरएलएन पैल्सी में क्या होगा, यूनिलैटरल कंप्लीट पैल्सी में क्या होगा, बायलैटरल कंप्लीट पैल्सी में क्या होगा. ये चारों क्वेश्चंस हैं आपके लिए और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. अगर मैं आपसे पूछता हूं कि लेट्स से आपके पास एक इंडिविजुअल आया और उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पहला सिनारियो हो गया यूनिलैटरल आरएलएन की पैल्सी. एक साइड की रिकरेंट लैरिंजियल नर्व काम करना बंद कर गई है, ये उसका लैरिंग्स है. ठीक है, हम लोग एक ही डायग्राम पे बात करेंगे. तो यूनिलैटरल आरएलएन पैल्सी में क्या होगा, लेट्स फिगर आउट. यूनिट, आपके दो वोकल कॉर्ड्स हैं, एक साइड की आरएलएन हैज बीन पैरालाइज्ड. अगर एक साइड की आरएलएन पैरालाइज हो गई तो एक ही चीज उस पेशेंट की काम कर रही है, वो है एसएलएन. और एसएलएन अगर काम कर रही है, सो द ओनली मसल ऑफ दिस पेशेंट विच इज वर्किंग इज क्रिकोथायरॉइड. तो अगर इफ द पेशेंट सिनारियो इज यूनिलैटरल आरएलएन पैल्सी, दैट मींस एबडक्टर काम नहीं कर रहा, एडक्टर्स काम नहीं कर रहे, ओनली मसल विच इज फंक्शनिंग इन दिस पेशेंट इज क्रिकोथायरॉइड. If you get a patient of unilateral RLN palsy, the paralyzed cord will be in a paramedian position. Paramedian का मतलब क्या होता है? Paramedian का मतलब होता है the cord is 1.5 mm away from the midline. बस आपका जो vocal cord है वो बिल्कुल सीधा, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा. जो opposite cord है, that opposite cord will abduct and it will adduct. Will abduct, it will adduct. But ये कॉर्ड बिल्कुल पैरामीडियन पोजीशन में ही रहेगा. Why? Because of the unopposed action of the cricothyroid muscle, which is causing tension and adduction of the paralyzed cord. अगर RLN खराब हो गई, अभी भी क्रिकोथायरॉइड चल रही है, एंड क्रिकोथायरॉइड हमेशा टेंशन और एडक्शन में कॉर्ड को रखेगी, तो ये कॉर्ड ऐसे ही रहेगा एंड ऑपोजिट कॉर्ड मूव करता रहेगा. दिस इज द सिनेरियो व्हिच हैपेंस इन यूनिलैटरल RLN पैल्सी. अब सिंपली सोचो, कभी भी आप पैल्सी का क्वेश्चन देखेंगे, आपको तीन चीजें उसमें देखनी है. दैट इज SAR, स्पीच, एस्पिरेशन, रेस्पिरेशन. अगर एक कॉर्ड में आरएलएन पैल्सी हो गई और ये कॉर्ड ऐसा ही है और ऑपोजिट कॉर्ड मूव कर रहा है, तो ऑपोजिट कॉर्ड वापस भी आ रहा है, बंद भी हो रहा है, दूर भी जा रहा है, बंद भी हो रहा है, दूर भी आ रहा है, तो क्या इसमें स्पीच में कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं, स्पीच नॉर्मल रहेगी, या होगी भी तो माइल्ड होर्सनेस. क्या ये पेशेंट एस्पिरेट करेगा? एस्पिरेट तब करेगा ना जब थोड़ा सा गैप होगा बीच में, बट ये कॉर्ड तो कंप्लीटली बंद हो रहा है, ऑपोजिट साइड चल रही है, तो क्या एस्पिरेट करेगा पेशेंट? नहीं. क्या पेशेंट के रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं. तो ये पेशेंट्स में आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट. वी वोंट डू एनीथिंग, विल डू कंजर्वेटिव मैनेजमेंट. एंड कंजर्वेटिव मींस हाई डोज मिथाइलकोबालामीन. मिथाइलकोबालामीन बहुत अच्छा नर्व रीजनरेटर होता है, तो जस्ट गिव मिथाइलकोबालामीन, वेट एंड वॉच, कुछ नहीं करना है, वॉइस थेरेपी कराइए पेशेंट को, क्योंकि ऑपोजिट कॉर्ड अभी भी फंक्शनल है, एबडक्ट एडक्ट कर रहा है, एक कॉर्ड ही पैरालाइज है और दैट इज इन द पैरामीडियन पोजीशन. अब आ जाता है सेकंड सिनेरियो. सेकंड सिनेरियो, लेट्स से पेशेंट अंडरवेंट थायराइडेक्टमी. जो क्वेश्चन आते हैं, थायराइडेक्टमी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आरएलएन पैल्सी.
So now the patient underwent thyroidectomy, and post thyroidectomy now the patient has got bilateral RLN palsy. दोनों खत्म हो गई. बायलैटरल आरएलएन पैल्सी में दोनों साइड की आरएलएन काम करना बंद कर चुकी है, बट बायलैटरल क्रिकोथायरॉयड अभी भी फंक्शन कर रही है. अगर बायलैटरल क्रिकोथायरॉयड फंक्शन कर रही है तो दोनों मेरे वोकल कॉर्ड सेंटर में पैरामीडियन पोजीशन में हो जाएंगे, क्योंकि अब वो ना बाहर जाएंगे ना अंदर जाएंगे. दे विल बी लाइक दिस. Both the vocal cords are in paramedian position because now only cricothyroid is functioning, which is causing the adduction and tension of the cord. अब पेशेंट के फीचर क्या आएगा इन SANR? क्या स्पीच में कोई प्रॉब्लम होगी? कॉर्ड्स पास में है, स्पीच निकलेगी. क्या ये पेशेंट एस्पिरेट करेगा? नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली पेशेंट को जगह होनी चाहिए एस्पिरेशन होने की. कॉर्ड्स दोनों पास पास हैं. बट क्या ये पेशेंट के रेस्पिरेशन नॉर्मल रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों कॉर्ड्स पास में है, एब्डक्शन हो नहीं रहा है, तो पेशेंट विल एंटर इनटू स्ट्राइडर. सांस ही नहीं ले पाएगा पेशेंट, बिकॉज देयर इज नो स्पेस लेफ्ट. तो पेशेंट इज इन स्ट्राइडर. तो नाउ द प्रॉब्लम विद हियर इज स्ट्राइडर. द ओनली पैल्सी जिसमें हमारा स्ट्राइडर होता है इज बायलैटरल आरएलएन. रिमेंबर. तो इसके केस में आप क्या करेंगे? इसके केस में आपको कॉर्ड्स को दूर लेके जाना है ताकि आपकी जगह बन सके. तो इसमें द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस दैट वी डू इज काशीमास प्रोसीजर. ये क्वेश्चन है, व्हाट इज काशीमास प्रोसीजर? काशीमा का मतलब है कि वी कट a wedge shaped excision of the posterior 1/3 of the cord. ये posterior 1/3 of cord है ना. लेजर लेते हैं और ये posterior 1/3 को हम वेज की तरह कट कर लेते हैं ताकि एटलीस्ट कुछ जगह बने पेशेंट की ब्रीथ करने की. तो दैट इज वाई काशीमास इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हियर. ठीक है. अगर अब ये हो गई कहानी अबाउट इन जनरल जो मैंने बताया अबाउट बायलैटरल यूनिलैटरल आरएलएन पैल्सी. अब अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि देयर इज अ पेशेंट जिसकी थायराइडेक्टमी हुई एंड इस पेशेंट की अब एसएलएन और आरएलएन दोनों इंजर हो गई हैं. मतलब एक साइड की ना तो ये काम कर रही है और ना ही ये काम कर रही है, दोनों खत्म. सिर्फ एक साइड का कॉर्ड काम कर रहा है. अब रिमेंबर द रूल ऑफ द बुक. देयर इज अ पोजिशन ऑफ वोकल कॉर्ड विच इज कॉल्ड एज कैडेवरिक पोजिशन. कैडेवरिक को हम इंटरमीडिएट पोजीशन भी कहते हैं. इसका मतलब क्या होता है दैट इफ देयर इज अ पेशेंट विद एसएलएन प्लस आरएलएन पैल्सी, ये दोनों हैं, देन द पैरालाइज्ड कॉर्ड विल बी 3.5 mm अवे फ्रॉम द मिड लाइन. ये ऐसे ही रहेगा. जो ऑपोजिट कॉर्ड है दैट विल एडक्ट, दैट विल एबडक्ट, बट ये जो पैरालाइज्ड कॉर्ड है ये 3.5 mm अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऐसे ही रहेगा. This position is called as cadaveric position, also called as intermediate position. ये नॉर्मल लोगों में कभी नहीं दिखती. Cadaveric or intermediate position is only seen when either there is complete palsy of SLN plus RLN or post death or patient is under general anesthesia. तो या तो GA या फिर पोस्टमार्टम और या फिर complete SLN RLN palsy, इसमें the paralyzed cord will attain a cadaveric position or intermediate position which is 3.5 mm away from the midline. Extremely important. RLN palsy में alone पैरामीडियन थी, SLN RLN दोनों में कैडेवरिक है. तो अब ऑपोजिट कॉर्ड यहां सेंटर में आ रहा है, इधर जा रहा है, ये तो इधर ही है. तो ऑब्वियसली इसमें इतनी जगह है कि एस्पिरेशन भी हो सकता है. क्या स्पीच आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि इतना ये कॉर्ड्स एक दूसरे से कितना दूर है. तो देयर विल बी एफोनिया. द पेशेंट विल नॉट हैव एनी पर्टिकुलर वॉइस कमिंग आउट, बट रेस्पिरेशन विल बी नॉर्मल, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज स्पेस टू रेस्पायर. ये हुई कंडीशन जब एसएलएन आरएलएन दोनों इंजर हुई. अब मुझे ये बताओ कि इस केस में क्या करोगे? इस केस में मुझे चाहिए कि ये कॉर्ड ये सेंटर में आ जाए, ताकि जो ऑपोजिट कॉर्ड है एटलीस्ट वो क्लोज दोनों को तो कर लेगा ना. आई वॉन्ट दिस कॉर्ड टू कम इन द सेंटर. अब इसको सेंटर में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू डू अ सर्जरी टू पुश दिस कॉर्ड टू द सेंटर, ताकि ऑपोजिट कॉर्ड क्लोज हो जाए. Now, how will I push? This is called as medialization thyroplasty. Medialization thyroplasty means this is type 1 thyroplasty, where the cord is pushed towards the midline. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो थायरोप्लास्टी एक ऐसी चीज है जिसमें 4 तरीके की थायरोप्लास्टी होती है. टाइप 1 इज मीडियलाइजेशन थायरोप्लास्टी, टाइप 2 इज लैटरलाइजेशन थायरोप्लास्टी, टाइप 3 इज शॉर्टनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड, and type 4 is lengthening of vocal cord. टाइप 1 मतलब मीडियलाइजेशन. मीडियलाइजेशन मतलब कॉर्ड को पुश करके सेंटर में ले आओ ताकि दोनों बंद हो जाएं.
तो इसे कहते हैं टाइप 1। दिस इज डन इन केसेस ऑफ यूनिलैटरल एसएलएन प्लस आरएलएन पाल्सी, क्योंकि जो कैडेवरिक कॉर्ड है उसको हमने सेंटर में पुश कर दिया। टाइप 2 का मतलब है जैसे हमारे पहले हमने देखा था बायलैटरल आरएलएन पाल्सी थी, दोनों कॉर्ड सेंटर में थे। अब इसमें अगर मैंने वोकल कॉर्ड पे सूचर लगा के इसे साइड में कर दिया ताकि थोड़ी सांस लेने की ब्रीदिंग की जगह बने, इसे कहते हैं लैटरलाइजेशन ऑफ कॉर्ड या फिर लैटरलाइजेशन थायरोप्लास्टी, जिसमें हम कॉर्ड्स को एक दूसरे से अलग करते हैं। दिस इज डन इन बायलैटरल आरएलएन पाल्सी, जो हम पहले करा था, जिसमें हमने काशीमास भी किया था। व्हाट इज शॉर्टनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड? मैंने आपको बताया आपके वोकल कॉर्ड जो होते हैं वो बिल्कुल रबर बैंड की तरह है, जितने पतले, जितना उनको शॉर्ट करोगे उतनी भारी आवाज, जितना उनको लॉन्ग करोगे उतनी ऊंची आवाज। तो इसीलिए अगर कभी भी कोई मेल आपके पास आता है जिसकी फीमेल लाइक वॉइस है, आपके पास एक मेल आया जिसकी फीमेल लाइक वॉइस है, तो मेल जिसकी फीमेल लाइक वॉइस है उसे हम कहते हैं प्यूबरफोनिया। प्यूबरफोनिया में हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा? कॉर्ड को शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वी नीड मोर मेल लाइक वॉइस। तो उसमें हम कॉर्ड को छोटा कर देते हैं। और अगर आपके पास एक फीमेल आती है जिसके, या एक लेट्स से देयर इज अ ट्रांसजेंडर मेल हु वांट्स टू बी अ फीमेल, तो अब मुझे ट्रांसजेंडर वॉइस करने के लिए, मुझे मेल को फीमेल बनाने के लिए मुझे उसके वोकल कॉर्ड खींचने पड़ेंगे। तो इन ट्रांसजेंडर वॉइस सर्जरीज वी स्ट्रेच द कॉर्ड, दैट इज कॉल्ड एज लेंथनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड, ताकि फीमेल जैसा बन जाए। प्यूबरफोनिया जैसे मेल की फीमेल लाइक वॉइस है उसे छोटा करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज टाइप 3 शॉर्टनिंग ऑफ कॉर्ड। अगर वोकल कॉर्ड को दूर ले जाना है सो दैट द पेशेंट कैन ब्रीथ, दैट इज डन इन बायलैटरल आरएलएन पाल्सी, दैट इज कॉल्ड एज लैटरलाइजेशन ऑफ कॉर्ड। और अगर हम इसमें मीडियलाइज कर देते हैं पैरालाइज कॉर्ड को इन कंप्लीट पाल्सी, दैट इज कॉल्ड एज मीडियलाइजेशन थायरोप्लास्टी। ये बात समझ में आई? ये होती है 4 टाइप की। तो इसका निमोनिक है। इन सिंपल वेज आप क्या करते हैं लैरिंग्स में? एमएलएस करते हैं ना, माइक्रो लैरिंजियल सर्जरी, तो इसको याद रखो एज एमएलएस। और एस अगर याद है तो लेंथनिंग याद ही आ जाएगा। तो एमएलएस का मतलब मिडलाइजेशन, लैटरलाइजेशन, शॉर्टनिंग। 1 2 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं थायरोप्लास्टी में, ठीक है। अब आ गया लास्ट कम लास्ट सिचुएशन की, अब बायलैटरल कंप्लीट है, मतलब कुछ नहीं चल रहा। बायलैटरल कंप्लीट है मतलब कुछ नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा मतलब लैरिंग्स इज नॉट फंक्शनल। अगर लैरिंग्स नॉट फंक्शनल है कंप्लीटली, तो मतलब मेरे दोनों वोकल कॉर्ड्स अब कैडवेरिक पोजीशन में हैं, एक इधर और एक इधर। नाउ दिस इज, ये अब एक रास्ता बन चुका है सारे खाना जाने का, सारा पानी जाने का, देयर इज नथिंग लेफ्ट। तो व्हाट विल वी डू इन दिस केस? हियर वी विल डू समथिंग कॉल्ड एज ट्रेकियोइसोफेजियल डाइवर्जन। ट्रेकियोइसोफेजियल डाइवर्जन का क्या मतलब होता है? लेट्स से ये एक आदमी है, राइट, ये एक आदमी है और ये उसका फारिंग्स है, ये ईसोफेगस है, एंड दिस इज हिज लैरिंग्स, ये उसका लैरिंग्स है और नीचे उसका ट्रेकिया है, राइट। अब ट्रेकियो ईसोफेजियल डाइवर्जन का ये मतलब है कि इसका लैरिंग्स कंप्लीटली काम नहीं कर रहा, राइट। लैरिंग्स कंप्लीटली काम नहीं कर रहा है, उसमें सारा का सारा जो भी खाना खा रहा है, पानी खा रहा है, वो सब जा रहा है इनटू द ट्रेकिया एंड द ब्रोंकस। अब मुझे क्या करना है? आई कट दिस एरिया, आई कट द लैरिंग्स एंड द ट्रेकिया एट द अपर एंड। मैं इसको काट देता हूं, एंड काटने के बाद मैं क्या करता हूं? अपने लैरिंग्स और ट्रेकिया को डाइवर्ट कर देता हूं, एंड आई ओपन दिस इनटू द ईसोफेगस, ताकि अगर गलती से कोई भी खाना इसका लैरिंग्स के थ्रू आए तो इट गोज इनटू द ईसोफेगस, बिकॉज बोथ द कॉर्ड्स आर इन कैडवेरिक पोजीशन। और जो बचा कुचा ट्रेकिया नीचे का है, आई सूचर इट टू द स्किन। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रेकियोइसोफेजियल डाइवर्जन। तो अब खाना मुंह से जो भी खाएगा वो ट्रेकिया से होता हुआ चला जाएगा इनटू द ईसोफेगस, एंड द रिमेनिंग लोअर ट्रेकिया is sutured to the skin, so he will breathe from this permanent stoma. This is something which is done in cases of very bad cases, जिसमें bilateral SLN RLN दोनों चली जाती हैं। ये मैंने टेबल आप लोगों को दे रखी है, दिस इज गोइंग टू कवर अप एवरीथिंग, जिसमें मैंने स्पीच, एस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, मैनेजमेंट सब रखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन कि ये है क्या, राइट। चलो अब आ जाओ इनटू फेवरेट INI-CET टॉपिक, लैरिंजियल मैलिग्नेंसी, ठीक है। ओके, लैरिंजियल मैलिग्नेंसी में क्वेश्चन आता है सिंपल ग्लॉटिक कार्सिनोमा की स्टेजिंग एंड सीटी, यही पूछेंगे आपसे और कुछ नहीं पूछेंगे, यही आपसे हर साल पूछते हैं। तो लैरिंजियल मैलिग्नेंसी की जो स्टेजिंग है, दैट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टी स्टेजिंग, राइट। सबसे पहले हम टी स्टेजिंग देखेंगे। टी स्टेजिंग ऑफ लैरिंजियल ग्लॉटिक कार्सिनोमा क्या होती है? तो इट इज डिवाइडेड इनटू T1A एंड T1B, T2, T3, T4A, T4B।
तो ये तो आपको रात में भी अगर मैं सोते सोते पूछूंगा तो भी आपको ये आनी चाहिए, क्योंकि ये INI-CET का एक क्वेश्चन प्रोबेबल है, मत मिस करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस टी स्टेजिंग? T1A, T1A, A फॉर एक। तो अगर आपके दो वोकल कॉर्ड्स हैं और दोनों वोकल कॉर्ड्स में से एक के ऊपर ट्यूमर है एंड बोथ द वोकल कॉर्ड्स आर मोबाइल, वन कॉर्ड पे ट्यूमर, बोथ आर मोबाइल, so A for एक, one vocal cord has tumor and both are mobile, then we will call it T1A. T1B, B for both vocal cords have tumor and both are mobile, यानी दोनों पे अब ट्यूमर आ गया बट स्टिल दोनों मोबाइल हैं, दोनों मोबाइल हैं, फोनेशन में भी रेस्पिरेशन में भी, दैट इज T1B, B for both, A for एक। T2, तो यहां पे कॉर्ड्स मोबाइल है, याद रखना है, T1 में कॉर्ड्स मोबाइल होते हैं। T2, 2 for 2, if the tumor spreads to more than one subsite, मतलब अब दो सबसाइट आ गई हैं वोकल कॉर्ड से, या तो ट्यूमर ऊपर चला गया, ऊपर होती है सुप्राग्लॉटिस, या नीचे चला गया, नीचे होती है सबग्लॉटिस। तो मोर देन वन सबसाइट यानी टू सबसाइट्स आ गई हैं, आइदर इन्वॉल्वमेंट हो गया है ऑफ सुप्राग्लॉटिस or there is involvement of subglottis, then we call it T2. The moment cancer becomes T2, आपको एक हिंट दी जाएगी that now the vocal cord is become impaired mobility, मोबिलिटी स्लगिश हो गई है, थोड़ी थोड़ी मोबिलिटी है बट कंप्लीटली मोबाइल नहीं है, इंपेयर्ड है। T3 में याद करना है 4P, if the vocal cord carcinoma has spread to 4P, कहीं कोई भी 4P इन्वॉल्व है, 4P कौन से लिख दिया, बहुत बढ़िया, ऑलरेडी रिटन, तो ये है, मतलब फटफट याद है सब, वेरी गुड, ऐसे ही याद होना चाहिए। तो इफ इट इज पेरिकॉन्ड्रियम ऑफ थायराइड कार्टिलेज, इफ इट इज प्री एपिग्लॉटिक स्पेस, पैराग्लॉटिक स्पेस और पोस्ट क्रिकॉइड एरिया, we call it as T3. The moment tumor is T3, cord is fixed vocal cord. यही देखना है आपको, अगर उन्होंने फिक्स्ड बोल दिया है तो T3N प्लस है, उसके ऊपर ही हो सकता है, T3 से नीचे नहीं होगा। T4A stands for extra laryngeal extension, मतलब ट्यूमर अब ग्रॉसली लैरिंग्स के बाहर आ गया है, जो कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंग्स है वो इन्वेड हो चुकी हैं, इसोफेगस में आ गया, ट्रेकिया में आ गया, थायराइड ग्लैंड में आ गया, स्किन में आ गया, मसल्स में आ गया, एक्स्ट्रा लैरिंजल स्प्रेड हो गई है। और फाइनली T4B इज PCM, प्री वर्टिब्रल स्पेस इन्वॉल्व हो गई है, कैरोटिड शीथ इन्वॉल्व हो गई है और मीडियास्टिनम इन्वॉल्व हो गया। दिस इज द टी स्टेजिंग ऑफ ग्लॉटिक कार्सिनोमा। अब सिंपली ये सीटी स्कैन देखो, अब ये सीटी स्कैन में ऐसे सोचो कि ये जो आपकी वोकल कॉर्ड है ये अटैच्ड है टू थायराइड कार्टिलेज। सीटी स्कैन में कुछ भी जो व्हाइट है वो बोन है या कार्टिलेज है, जो भी ग्रे है वो सॉफ्ट टिश्यू है या ट्यूमर है, एंड जो भी यू आर सीइंग ब्लैक इज एयर, राइट? सो व्हाट यू सी ओवर हियर, यहां पे देखो थायराइड की कार्टिलेज एक साइड की दिख रही है बट एक साइड कुछ नहीं दिख रही। दिस इज योर वोकल कॉर्ड, but एक side you see something irregular coming out of the vocal cord. Can you see this grayish thing which is eroding the thyroid cartilage and coming out? देखो इधर की कोई भी thyroid cartilage, you cannot see the V that you should see, and if you cannot see the V, that means आप इसमें क्या देख रहे हो, आप इसमें ये चीज eroded देख रहे हो, and you see that this is something which has come out of the vocal cord. What is this? This is a tumor. Now if this is a tumor, then obviously what is this stage? इसकी स्टेज क्या होगी अगर इसे ग्रॉस कार्टिलेज इन्वेड करके बाहर आ गया? व्हाट इज दिस स्टेज? इट इज एक्स्ट्रा लैरेंजियल एक्सटेंशन, एंड इफ इट इज एक्स्ट्रा लैरेंजियल एक्सटेंशन, वेयर डज इट लैंडेड? इट लैंड्स इनटू T4A. तो अगर आपको ये दिखा कि कार्टिलेज टूट के ट्यूमर बाहर आ गया है तो आंसर है T4A, इन सिंपल वर्ड्स। बिल्कुल ठीक, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इससे एसोसिएटेड क्या आएगा कि इन्हीं के हिसाब से आप इनकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे। अगर कभी भी आपका स्टेज 1 या स्टेज 2 ट्यूमर हुआ, T1 या T2 स्टेज का ट्यूमर है, तो उसके केस में सिर्फ एक ही मोडालिटी ट्रीटमेंट करनी है, मतलब या तो सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन देना है
या फिर वी डू ट्रांसओरल लेजर माइक्रोसर्जरी, लेजर से निकाल लो। तो स्टेज 1 या स्टेज 2 ट्यूमर में डू ओनली वन ट्रीटमेंट, या तो रेडियोथेरेपी अलोन, जो कि ज्यादातर हम करते हैं। रेडियोथेरेपी इज गिवन फॉर 7 वीक्स, 5 टाइम्स अ वीक। तो 5 टाइम्स इन 7 वीक्स मतलब 7 into 5 35 साइकिल्स, ठीक है। दैट इज द मेन कोर ट्रीटमेंट, नहीं तो हम लेजर भी करते हैं। दिस इज फॉर स्टेज 1 and 2। अगर स्टेज 3 आया, 3 मतलब 4P, फिक्स्ड वोकल कॉर्ड है, अब यहां पे हमें असेस करना है ऑर्गन का फंक्शन। वी नीड टू असेस वेदर द ऑर्गन इज फंक्शनिंग, मतलब SAR देखना है, स्पीच एस्पिरेशन रेस्पिरेशन देखना है लैरिंग्स के केस में कि स्पीच है कि नहीं, एस्पिरेट तो नहीं कर रहा पेशेंट, रेस्पायर कर रहा है पेशेंट की नहीं कर रहा। अगर ये है, अगर ये प्रिजर्व्ड है, तो इसमें द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट विल बी कंकरेंट कीमो रेडिएशन। कंकरेंट का मतलब साथ साथ कीमो और रेडिएशन, क्योंकि जैसे ही 3 या 4 हो जाता है स्टेज ट्यूमर, वैसे ही ट्यूमर सिर्फ मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट देना पड़ता है, एक से ज्यादा चीजें देनी पड़ती हैं। तो इसीलिए अगर वी हैव स्टेज 3 ट्यूमर वेयर SAR इज प्रिजर्व्ड, स्पीच एस्पिरेशन रेस्पिरेशन नहीं है, तो वी कैन गिव कंकरेंट कीमो आरटी एज द मेन स्टे। तभी मैंने आगे लिखा है इफ फंक्शनल, इफ फंक्शनल कि SAR ठीक है, लेकिन अगर आपके पेशेंट में ये स्पीच एस्पिरेशन रेस्पिरेशन के इशू आ चुके हैं, तब आप सर्जरी करेंगे, और सर्जरी होगी ओपन पार्शियल लैरिंजेक्टमी, मतलब उतना पार्ट ऑफ लैरिंग्स हम निकाल लेंगे जिसमें ट्यूमर है, बट अगेन ओपन पार्शियल लैरिंजेक्टमी के साथ बहुत सारी एस्पिरेशन इश्यूज देखी गई हैं। तभी आज की डेट पे कंकरेंट कीमोआरटी इज द मेन स्टे ऑफ T3, ठीक है। अब आ जाइए 4 पे। द मोमेंट कोई भी ट्यूमर लैरिंग्स के बाहर आ जाता है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें लैरिंग्स को रिमूव करना ही है, एंड इन दैट केस वी डू टोटल लैरिंजेक्टमी। अब क्योंकि हर लैरिंजियल ट्यूमर या फिर हर वो कोई भी हेड एंड नेक ट्यूमर होगा तो वो जाएगा इनटू द नोड्स, तो इफ वी हैव गॉट नोड्स, then in that case we will have to do a bilateral neck dissection, and I told you कोई भी 3 या 4 की डिजीज है तो उसमें सर्जरी अलोन काम नहीं करेगी, even if you have done a good surgery still the tumor can come back. That's why you need to send the patient for post operative chemotherapy plus radiation also. So now coming that whenever you have got 4A, you need to do total laryngectomy plus bilateral neck dissection followed by concurrent chemoradiation. What incision will you give for laryngectomy? You will give a U-shaped incision from mastoid to mastoid, U की तरह, and this is called as Gluck-Sorensen incision. ये हमने पढ़ा भी था in the TND, जो हमने किया था in the last PYQ, जो अभी मैंने INI-CET का किया था, मैंने सब दिखाया था आपको। तो this is your Gluck-Sorensen incision. 4B, unfortunately, this is the sad part. We don't have any treatment, so we have to give palliative care to the patient to increase the life of the patient as much as we can. This is palliation therapy. ठीक है, ये हो गया कहानी अबाउट व्हाट इज द ट्रीटमेंट। चलिए अब नाउ द क्वेश्चन कम्स, अगर आपको, हाँ वन थिंग इज, अगर आपको कभी भी कोई भी पेशेंट की फोटो आई जिसमें यहां पे एक होल बना हुआ है, तो वो लैरिंजेक्टमी करा हुआ पेशेंट है। इफ यू सी अ परमानेंट होल, दैट इज नॉट अ ट्रेकियोस्टमी होल, दैट्स अ लैरिंजेक्टमी होल, दैट्स अ परमानेंट स्टोमा, ठीक है। कैन लैरिंजेक्टमी पेशेंट स्पीक? यस, दे कैन स्पीक, and there are basically 2 methods जिनको हम लोग rehabilitate करते हैं। One is called as tracheoesophageal processes, another one is called as electrolarynx, ठीक है। तो what is tracheoesophageal processes? तो basically हमने larynx को remove कर दिया है और ट्रेकिया को यहां पे होल बना के सूचर कर दिया है। तो what we have done in laryngectomy is कि let's say this is the man, right, this is the man, आपने क्या किया इस मैन में, you have now taken out, you have taken out the larynx and you have sutured this particular trachea onto the skin. अब ये suture हो गया, permanent stoma बन गया है, and now the pharynx is directly opening into the esophagus, ये, and आपने suture करके directly trachea को एक होल पे होल बना दिया है यहाँ पे completely. Now how will this man speak is my question. तो इसके लिए बनी tracheoesophageal processes, tracheoesophageal, trachea और esophagus में लगने वाली, so this is called as a Blom-Singer tracheoesophageal processes, इसे हम TEP भी कहते हैं, TEP। अब ये काम कैसे करती है? This has got one phalange which goes into the esophagus called as esophageal phalange and one phalange which goes into the trachea called as tracheal phalange, and this has got a central one way valve. एक इसके सेंटर में वॉल्व है, यानी एक तरफा वॉल्व है, कुछ भी अंदर जाएगा तो बाहर नहीं आएगा।
Now what we do is we basically create an incision in the posterior wall of trachea and in the anterior wall of esophagus. Anterior wall of esophagus और हमने posterior wall of trachea पे हमने एक incision दिया. And through this incision we keep this tip. इसको हम यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं. Now what will happen? Now whenever the patient is expiring, जब वो expire करेगा, तब हम पेशेंट से कहेंगे कि जस्ट क्लोज योर स्टोमा विद द थंब. इसको बंद कर लो. एंड द मोमेंट द पेशेंट विल क्लोज द स्टोमा विद द थंब, all this expired air will go through the one-way valve and it will go into the esophagus. And now, once it comes into the esophagus and the pharynx, it will vibrate the columns of the pharynx and esophagus, which will produce a voice, and that voice will be articulated by the lips in order to create speech. जब आप बर्प करते हैं तो बर्प में एक साउंड जो बनती है, that is because of the vibrations of your esophagus and pharynx. That is a voice. Same way, we are creating artificial burps by pushing air through this into the pharyngoesophageal junction, which is vibrating, and it is now coming as voice, and we are creating a speech. ठीक है? Fine. Javier is right. Very good. So Pange, Provox, ये सब type की processes हैं. I'm telling you Brom Singer because that is more enough for you. Provox, Pange, button, these are the newer ones. Pange button तो अब use भी नहीं करते. Provox is the newer one. अब क्वेश्चन ये आता है कि जब भी ये esophageal processes यूज करना है, इससे बेटर ऑप्शन है तो यस, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलैरिंग्स. इलेक्ट्रोलैरिंग्स हैंड हेल्ड होता है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, उसमें एक बटन होता है. तो व्हाट हैपेंस इज द पेशेंट पुट्स इट ओवर ऑन द सबमैंडिबुलर एरिया एंड प्रेसेस द बटन. द मोमेंट ही प्रेसेस द बटन, टे करके आवाज आती है, एंड दिस आवाज causes or sends vibrations into the oral cavity. Now, when this awaz or this vibration will go into the oral cavity, this can be created in the form of speech. Right? So, this is something which is causing a very robotic voice. ये बहुत ही robo-like voice है, बिल्कुल ठीक. Right? So, this is something that is causing robotic voice. Okay? What you are having through the electrolarynx, that is something which is created by the button when you are pressing, और वो हमारे मुंह के अंदर जो vibrations दे रहा है, that is something which is causing voice to create. नहीं, turbulent airflow से आवाज नहीं आएगी. Turbulent airflow जो create कर रहे हैं, वो जब vibrate करेगा हमारे pharyngoesophageal junction को, that is going to create voice. ठीक है? I think Javier, I hope you have understood. ठीक है, बढ़िया. चलो, तो ये हो गया कहानी अबाउट दो इंपॉर्टेंट चीजें. अब फाइनल टॉपिक ऑफ लैरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स खत्म और फिर लास्ट में आपका फैरिंग्स बच जाता है, और उसके बाद हम फैरिंग्स पे तड़ातड़ फटाफट खत्म करेंगे. तो ये हो गया लास्ट. इसमें मैं आपको बस एक इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा ट्रेकियोस्टमी ट्यूब से रिलेटेड. तो ट्रेकियोस्टमी ट्यूब में ये कौन सा ट्यूब है? दिस इज अ पोर्टेक्स और अ सिलिकॉन ट्रेकियोस्टमी ट्यूब. वो क्या पूछते हैं? वो पार्ट्स के बारे में पूछते हैं. तो व्हाट इज दिस? दिस इज द नेक ऑफ द ट्यूब, या इसे हम नेक प्लेट भी कहते हैं. दिस इज द शाफ्ट ऑफ द ट्रेकियोस्टमी ट्यूब. इस पार्ट जो फूला हुआ है, इसे हम कहते हैं बलून, या फिर इसे हम कफ भी कहते हैं. राइट? देन कैन यू सी दिस पर्टिकुलर लाइन? दिस लाइन इज जस्ट अबव द बलून एंड वी कॉल दिस लाइन एज सबग्लॉटिक सक्शन. इसे हम सबग्लॉटिक सक्शन कहते हैं. और फिर ये जो आ रही है ब्लू कलर की, एंड इट इज एक्सपैंडिंग ओवर हियर, दिस इज कॉल्ड एज अ पायलट. दिस इज कॉल्ड एज पायलट एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एज इनसफ्लेशन लाइन. ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इन्होंने ट्रेकियोस्टमी ट्यूब दिया हुआ है. दे हैव गिवन द पार्ट एंड दे हैव लेबल्ड एंड दे हैव आस्क्ड कि व्हाट एग्जैक्टली इज द वन व्हिच इज कॉजिंग व्हाट फंक्शन. राइट? तो बेसिकली क्या होता है कि जो ये पायलट होता है ना, ये इसमें हम एक सिरिंज लगाते हैं, एंड सिरिंज से वी पुश इन 5 to 7 ml ऑफ एयर. नाउ दिस पायलट में जो भी हमने एयर भरी, दिस इज गोइंग टू गो थ्रू दिस इंसफ्लेशन लाइन. And this insufflation line, when it gets filled, it will dilate the balloon या फिर cuff. ये cuff फूल जाएगा. What is the importance of the cuff? The cuff is basically for preventing aspiration. ये question था. Why? Because all the things जैसे saliva, food, it will get collected over the balloon, over the cuff. It will not get it go down, and that is why this is preventing aspirations. ठीक है? Fine. Now, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो कि बहुत बढ़िया बताया है आई थिंक जेवियर ने, कि अब ये जो कफ है ना, जब भी ये कफ अंदर होता है इनटू द ट्रेकिया, तो इट कॉजेज कंप्रेशन ऑफ द ट्रेकियल वॉल्स.
और एक बात हमेशा याद रखना कि जो हमारी ट्रेकियल वॉल है ना, जैसे ये ट्रेकिया है, इसके अंदर हमारा इसके अंदर ये ट्यूब है और ट्यूब का ये कफ है। अब ये कफ जो है, इट इज क्रिएटिंग प्रेशर ओवर द ट्रेकियल वॉल्स, एंड दिस ट्रेकियल वॉल्स, इनका जो प्रेशर होता है ना, इनके अंदर बहुत छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, एंड दीज आर्टरीज हैव गॉट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर इन देम, दैट इज अराउंड 21 to 22 mmHg। तो होता क्या है, व्हेन द कफ इज डायलेटेड फॉर द होल डे, अगर आपने इसे डिफ्लेट नहीं किया, so this particular arteries of the trachea become necrosed, ये इनमें कोई ब्लड नहीं बचता, and because they become necrosed, it can lead to tracheal perforation, क्योंकि ट्रेकिया कंप्लीटली नेक्रोज हो जाता है, that can lead to tracheal perforation। Fine। So what exactly you need to do is कि in post operative care जब भी आप करते हैं, you need to deflate this cuff every 2 hourly, 2 to 4 hourly। You need to deflate it for almost 10 minutes। तो 10 मिनट तक आपको इसे डिफ्लेट करके छोड़ना है, फिर उसके बाद आपको इसे रीइंफ्लेट करना है, फिर द सेम 5 to 7 ml ऑफ एयर, ताकि आप प्रिवेंट कर सकें ट्रेकियल नेक्रोसिस को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इसके ऊपर बहुत सारा एस्पिरेट कलेक्टेड है और आपने इसे सीधे डिफ्लेट कर दिया, तो ऑब्वियसली ऑल द एस्पिरेट विल फॉल डाउन। So now before anything, before deflating it, तब क्या करना है, this cuff के ऊपर एक लाइन है, and this line is called as subglottic suction line। तो before deflating हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सिरिंज लेते हैं, उस सिरिंज को इस सबग्लॉटिक सक्शन में लगाते हैं, एंड इस सिरिंज से सारा का सारा इस लाइन के अंदर का जितना भी फ्लूइड है वो सारा खींच लेते हैं, इट कम्स आउट एंड इट कलेक्ट्स इनटू द सिरिंज। तो उससे हो क्या जाता है, बिफोर डिफ्लेटिंग द कफ वी विल गेट टू नो कि हमने सारा का सारा जितना सिक्रीशन अबव द कफ था, वी हैव टेकन इट इनटू द सिरिंज, एंड नाउ वी डोंट हैव एनी सिक्रीशन लेफ्ट अबव जो एक्सीडेंटली नीचे चला जाएगा ड्यूरिंग द टाइम वी डिफ्लेट। इसीलिए ये सबग्लॉटिक सक्शन आपको दिया गया है, ताकि आप जितना भी कफ के ऊपर का जो भी आपका कलेक्शन है उसे आप सिरिंज से नेगेटिव प्रेशर से निकाल सके। ठीक है। इंट्यूबेशन बेटर है कि ट्रेकियोस्टमी ट्यूब बेटर है? ऑब्वियसली ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। ट्रेकियोस्टमी ट्यूब इसलिए बेटर है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये आपकी डेड स्पेस को रिड्यूस करता है। अगर आप देखें, आपका एंडोट्रेकियल ट्यूब 27 सेंटीमीटर ट्यूब है जो माउथ से लेकर ट्रेकिया तक जा रहा है। तो जितना बड़ा ट्यूब होगा उतनी ट्रैपिंग ऑफ एयर होगी इनटू अनवांटेड स्पेसेस, दैट इज डेड स्पेस। जितना छोटा ट्यूब होगा, ट्रेकियोस्टमी इज 14 सेंटीमीटर, इट डायरेक्टली गोज इनटू द ट्रेकिया, सो वेंटिलेशन भी बेटर होगा एंड डेड स्पेस रिडक्शन विल भी होगा मोर देन 50%। तो तभी ट्रेकियोस्टमी, क्योंकि डेड स्पेस रिड्यूस करता है, इसीलिए वी हैव ट्रेकियोस्टमी सुपीरियर टू एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशंस। अब एक और इंपॉर्टेंट बात हो गई, ट्रेकियोस्टमी हैज गॉट 3 लेवल्स, हाई, मिड, low. The only indication for doing a high tracheostomy is, high means done at the level of the first tracheal ring. The only indication is total laryngectomy. Why? क्योंकि उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रेकिया बचाना है to suture to the skin. So the only indication of doing a high tracheostomy is total laryngectomy patients. The problem with this is, the complication with high tracheostomy is subglottic stenosis. क्योंकि हमारा जो ट्रेकिया, let's say this is our cricoid cartilage and this is our trachea, तो अगर आपने इसी लेवल पे ट्यूब लगा दिया, so obviously this is very near our subglottic area, तो होगा क्या, आपका जो ट्यूब है it will keep rubbing against the cricoid, और cricoid में अगर ये रब करता रहेगा it will cause cricoid chondritis, यानी कि inflammation of the cricoid, and इसकी वजह से the subglottic diameter will reduce and that will lead to subglottic stenosis. That's the problem with high tracheostomies. Normally, we should do always between 2nd to 4th tracheal ring. This is ideal for doing a tracheostomy. If you're doing a low tracheostomy, then it is done at more than or equal to 5th tracheal ring. बहुत नीचे. Now, 5th tracheal ring पे क्यों करेंगे tracheostomy? Only in cases कि अगर किसी भी इंसान के laryngotracheal trauma हुआ है। Laryngotracheal trauma का मतलब ऊपर ये सारा का सारा एरिया ट्रॉमेटाइज्ड है. We can't do a tracheostomy here. If the patient has got burn wounds over here, if the patient has got an abscess over here, if there is a lymph node over here, cancer over here, तो वहां पे हम अप्रोच कर ही नहीं पाएंगे. In that case, we need to do a low. अब प्रॉब्लम विद लो क्या है कि यहीं पे हमारे दोनों एपेक्स ऑफ लंग होते हैं. So if you're doing a low tracheostomy, you might accidentally rupture the pleura
and that is why the complication of low tracheostomy is pneumothorax. ये सब इधर उधर के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे इधर उधर मिला मिला के पूछते हैं. whatever I feel is important, I have told you. This is something that is what is important for you at this level. बस इससे ज्यादा नहीं जरूरत है कुछ भी. ठीक है, चलिए फाइनली आ जाते हैं इनटू आवर लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज मैराथन. मुझे पता है आप लोग थक गए होंगे. ह्यूज भैया, ईएनटी एक दिन में निपटाना, जैसे एक साल पढ़ते हैं आप ये सब्जेक्ट, उसको एक दिन में निपटाना थोड़ा मुश्किल होता है. बट अगेन आप लोग सुबह से बैठे हुए हैं. दैट्स व्हाट मेक्स यू इनटू a very diligent person. That's what makes you into a good aspirant, because you are trying your level out. चलिए, high level temporarily done in laryngeal CA patients to preserve actual site for permanent. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. परमानेंट ट्रेकोस्टमी नीचे करनी होती है ना, तो इसीलिए हम प्राइमरीली ऊपर कर देते हैं और फिर परमानेंट स्टोमा नीचे बना देते हैं. ठीक है, चलिए. इफ टोटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रेकोस्टमी अगर हो गया तो आप क्या करेंगे, उसे निकाल देंगे. ऑब्वियसली ब्लॉक ट्यूब को तो रखेंगे नहीं, तो आप अगर आया कोई भी अगर जो ब्लॉक लेके, तो पेशेंट विल गेट एस्फिक्सिएटेड साइन हो, तो उसको तुरंत निकाल के नया ट्यूब डालना है. दैट्स व्हाट इट इज. ठीक है, फाइन. फाइनली फैरिंग्स. ओके, फाइनली हम लोग फैरिंग्स में चले गए. फैरिंग्स में हमारी क्वेश्चन स्टार्ट होती हैं फ्रॉम देयर फेवरेट जुवेनाइल नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा. इसमें हम सिर्फ यही बात करेंगे कि उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट आपसे पूछते हैं. तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आता है ऑफ profuse epistaxis, spontaneous epistaxis, patient has been an adolescent male. ठीक है, adolescent male, profuse, spontaneous, recurrent. What is this? This is all towards one side juvenile nasopharyngeal angiofibroma. जहां पे adolescent male दिखा, at the same time you have got profuse and recurrent epistaxis. Answer is simple. You don't need to worry about anything. It is juvenile angiofibroma. ठीक है. Now, what exactly they will ask you is कि juvenile angiofibroma में कौन सी investigation आप नहीं करते. The one investigation you contraindicate in juvenile angiofibroma is a biopsy. Why? Because juvenile angiofibroma की जो vessels होती हैं, they lack a smooth muscle coat. And because these vessels lack a smooth muscle coat, the moment you punch them, they will never stop bleeding. वो ooze करती रहेंगी. Right? That is why you should never do a biopsy. Because of lack of contractile element. ये straight forward ऐसे ही क्वेश्चन आया है. Because they lack smooth muscles, so there is lack of contractile element in vessels, and that is why they tend to bleed. What is the investigation of choice to see for angiofibroma? It is contrast enhanced CT. Why is that? Because obviously आपको bone देखनी है. What is the site of origin of angiofibroma? The site of origin of angiofibroma is superior lip of sphenopalatine foramen. Sphenopalatine foramen के superior lip से निकलता है. What is the theory behind angiofibroma? It is basically from the vascular remnant of first branchial arch artery. First branchial arch की artery कौन सी होती है? Maxillary artery. So what happens is कि let's say this is your sphenoid bone. Let's say this is your sphenoid bone. तो मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि क्या होता है इसमें. Okay, let's say this is your sphenoid bone, which looks like a Batman. Right? This is your sphenoid. Okay? This is your sphenoid. Okay? This is the body of sphenoid. ये आपकी body of sphenoid है. ठीक है? अब एक बोन और होती है, उसका नाम होता है पैलेटाइन बोन, और पैलेटाइन बोन बिल्कुल एल की तरह दिखती है. तो पैलेटाइन बोन बिल्कुल एल की तरह दिखती है. पैलेटाइन बोन में दो प्रोसेस होते हैं. वन प्रोसेस गोज टुवर्ड्स द स्फीनोइड, इसे कहते हैं स्फीनोइडल प्रोसेस, और दूसरी प्रोसेस को कहते हैं ऑर्बिटल प्रोसेस. तो व्हाट इज दिस? कैन यू सी दिस होल ओवर हियर? दिस होल which is basically bounded by orbital process of palatine bone, sphenoidal process of palatine bone, and body of sphenoid bone. इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को हम कहते हैं स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन. इसकी जो सुपीरियर लिप है, दिस लिप हियर, यहां पे एम्ब्रियोलॉजिकली समटाइम्स अ वैस्कुलर टिश्यू ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी रिमेन्स. एंड दिस टिश्यू, this vascular tissue contains a lot of receptors. And these receptors are testosterone receptors. So what happens is, during the time of puberty, your adolescence, testosterone comes and acts over these receptors, and it activates this tissue. And when this tissue gets activated, this forms a tumor which is called as angiofibroma. So ये हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, that's what the theory is. Okay. Now comes, what is the sign you see in angiofibroma?
तो द फर्स्ट साइन इज हॉलमन मिलर साइन. अब अगेन इसको देखो, whatever you see gray is tumor, whatever you see black is hair, whatever you see white is bone. If you cut your skull in this direction, this is again axial, और आप ऊपर से देखते हैं. Now what you see over here, ये आपकी नोज है, ये सेप्टम है, दिस इज द नेजल कैविटी, ये एक साइड का मैक्सिलरी साइनस है. And if you see the maxillary sinus posterior wall and anterior wall are also seen. Always remember one thing. Behind the posterior wall of the maxillary sinus is a fossa called as pterygopalatine fossa. ठीक है? Now, behind the nose is your nasopharynx. Nasopharynx से ये ट्यूमर निकलता है क्योंकि it is angiofibroma nasopharyngeal और ये posterior wall of maxilla के पीछे ग्रो करता है. अब जब ये posterior wall of maxilla के पीछे ग्रो करेगा, it will push the posterior wall of maxilla anteriorly. यानी अगर मेरी posterior wall of maxilla anteriorly push हो जाएगी तो वो anterior bowing करेगी of the posterior maxillary wall. And anterior bowing of the posterior maxillary wall is called as Hallman-Miller sign. It is classically seen at that stage when the tumor involves the pterygopalatine fossa, which is nothing but a fossa which is present behind the posterior wall of maxilla. तो अगर posterior wall of maxilla के पीछे ट्यूमर है तो वो obviously उस वॉल को आगे धक्का देगा. ठीक है, फाइन. चलिए अब हम आगे आते हैं. Now comes the next one. The next one is Horndusa sign. Right? Now what is Horndusa sign? Horndusa sign is basically a coronal CT sign. ये आपको coronal दिखेगा, coronal में, right? अब coronal CT स्कैन में क्या दिखेगा? कोरोनल सीटी स्कैन में देखो, ये मेरी मैंडिबल है. तो अगर मेरा ट्यूमर इंफ्राटेम्पोरल फोसा में आ गया, इंफ्राटेम्पोरल फोसा मतलब टेम्पल के नीचे. टेम्पल के नीचे क्या है कि ये मेरी मैंडिबल है ना, इसके जस्ट मीडियल मेरा इंफ्राटेम्पोरल फोसा है. तो अगर ट्यूमर इस इंफ्राटेम्पोरल फोसा में आ गया तो मेरी मैंडिबल लैटरली डिस्प्लेस हो जाएगी. तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रेमस ऑफ द मैंडिबल इज कॉल्ड एज हॉर्नडूसा साइन, क्योंकि अब ट्यूमर आ गया है इन द इंफ्राटेम्पोरल फोसा. This is second sign which you will see in cases of JNA. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इसी में ही मैं आपको बता देता हूं इसके ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी इज 4-handed एंडोस्कोपिक रिसेक्शन. सबसे इंपॉर्टेंट हमें रिसेक्शन करना होता है, विच इज अ 4-handed टेक्निक, जिससे हम पूरी तरीके से JNA को हटाते हैं. राइट, ओके, दिस इज डन बाय द ट्रांसनेजल रूट. बट इवन यू कैन डू अ ट्रांसपैलेटल अप्रोच. आप पैलेट के थ्रू भी नेजोफैरिंग्स में जा सकते हैं. Transpalatal approach is called as Wilson's approach. Transpalatal approach is called as Wilson's approach. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. रेयरली कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जिसमें सर्जरी में काम नहीं होता बिकॉज दे आर एडवांस ट्यूमर्स. तो इन दोज केसेस यू कैन गिव एन एंटी-एंड्रोजन ड्रग. द एंटी-एंड्रोजन ड्रग गिवन इन केसेस ऑफ JNA is called as flutamide. Flutamide. This is to shrink the tumor. Only in those cases where you cannot operate, then you do radiation therapy. There you give radiation therapy. अब क्योंकि हमारा एंजियोफाइब्रोमा ग्रो करता चला जाता है, so the dorsum of the nose gets widened. And because the dorsum of the nose gets widened, आपके दोनों आंखें दूर चली जाती हैं. अब अगर आपकी आंखें इधर आ गई और डॉर्सम बड़ा हो गया तो वो कैसा दिखेगा? फ्रॉग की तरह दिखेगा. That's called as frog face deformity. So frog face deformity is something which is commonly seen in such cases where JNA is markedly expanded. मतलब काफी जगह पे फैल चुका है. ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट. व्हाट योर क्वेश्चंस आर इन नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा. ऑलवेज रिमेंबर, एनपीसी के पेशेंट्स में हमेशा साउथ ईस्ट एशिया की ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जरूर देंगे, जैसे कि चाइनीज, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, हांगकांग. तो ये सारे एरियाज में ये सबसे कॉमन होता है. तो इट ऑलवेज हैपेंस इन साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन. मोस्ट कॉमन इन चाइनीज में भी इट बेसिकली बिलोंग्स टू ग्वांगडोंग डिस्ट्रिक्ट. सबसे कॉमन वहीं पे सबसे पहले ये मिला था. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज बिकॉज ऑफ एन एक्सपोजर टू सर्टेन थिंग्स कॉल्ड एज नाइट्रोसमीन. नाइट्रोसमीन एक चीज है जो सॉल्टेड फिश में मिलता है. तो होता क्या था, द स्टेपल डाइट ऑफ चाइनीज इज व्हाट? इज फिश. तो वहां पे बहुत सारी फिश आती थी और उनके हार्बर पे डाल दी जाती थी. नाउ दैट फिश यूज्ड टू गो स्टिल, सो दे एडेड सॉल्ट ओवर दैट फिश एंड फॉर प्रिजर्विंग इट. और सॉल्ट जब फिश के अंदर जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ कार्सिनोजन कॉल्ड एज नाइट्रोसमीन. एंड दैट इज द वन व्हिच कॉजेज दिस पर्टिकुलर थिंग टू हैपन मोर. एनपीसी में नाइट्रोसमीन का बहुत कॉमन रोल है एज अ कार्सिनोजन. It is associated with one virus and that virus is called as Epstein-Barr virus. Direct question.
एप्स्टीन बार वायरस के अगेंस्ट एनपीसी के पेशेंट्स में एंटीबॉडीज मिलती हैं. व्हाट एंटीबॉडीज आर सीन? आईजीए एंटीबॉडीज. एप्स्टीन बार वायरस में दो एंटीजन होते हैं. एक एंटीजन होता है वायरल कैप्सिड एंटीजन वीसीए, एक एंटीजन होता है अर्ली एंटीजन ईए. इन दोनों के खिलाफ देयर आर आईजीए एंटीबॉडीज विच यू कैन सी ओवर इन एनपीसी पेशेंट्स. दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर इवन स्क्रीनिंग मल्टीपल पीपल अक्रॉस. आप स्क्रीनिंग टूल की तरह यूज कर सकते हैं, उनके आईजी वैल्यूज ले सकते हैं. अगर वो रेज्ड है दैट मींस दे हैव अ चांस दैट दे माइट हैव एनपीसी. ठीक है, ओके. चलो, नाइट्रोसामीन्स इवन गैस्ट्रिक कार्सिनोमास करते हैं, इवन वो भी करते हैं. इवन एनपीसी में भी दे आर वेरी कॉमनली एसोसिएटेड. इट्स अ कार्सिनोजन, इट कैन कॉज एनीथिंग. नाउ ऑलवेज टेलिंग यू सिंपल क्वेश्चंस. अगर आपके पास एनपीसी का पेशेंट आता है, 75% ऑफ द पेशेंट्स विल नॉट हैव एनी सिम्टम्स एक्सेप्ट फॉर अ अपर लेवल 2 सर्वाइकल नोड. चाइनीज आदमी coming with an upper level 2 painless cervical lymphadenopathy, what is your answer? It has to be NPC. 75% of patients do not have anything except painless cervical lymphadenopathy. This is the earliest symptom which you will get in these patients. ये याद रखना, because NPC is highly lymphatic. वो तुरंत जाएगा into level 2 and level 5. तो posterior triangle level 5 and upper jugula level 2 will be the first nodes which will be involved, and that is what you will see in most of the patients. ठीक है. नाउ और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि एनपीसी में अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो यू विल सी 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स इन एनपीसी. एनपीसी में दिखता है एनपीसी, एन फॉर न्यूरैल्जिया विच इज टेम्पोरोपेराइटल न्यूरैल्जिया, पी फॉर पैलेटल पैल्सी, सी फॉर कंडक्टिव हियरिंग लॉस. That means अगर किसी भी इंसान के एनपीसी है, so basically they will have 5th nerve involvement which is trigeminal, which will cause pain over the parietal and temple area. They will have 10th nerve involvement क्योंकि सारी cranial nerves involve होती है, base of skull involve होता है, तो they will have palate की palsy and they will have eustachian tube invasion that will be causing conductive hearing loss. So any patient who comes with conductive hearing loss या फिर unilateral otitis media with effusion, ये मैंने आपको बताया भी था, ये सब क्लासिकल साइंस है कि उसके एनपीसी हो सकता है. तो अडल्ट में अगर ओएमई दिख रहा है, एनपीसी आंसर है. चिल्ड्रन में ओएमई दिख रहा है, एडिनोइड आंसर है. ये इंपॉर्टेंट है देखने के लिए. ठीक है, तो एनपीसी में एनपीसी इस ट्रायड को क्या कहते हैं? वी कॉल दिस एज ट्रॉटर्स ट्रायड. वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब अगर मैंने आपसे पूछा कि एनपीसी कैसे मेटास्टेसाइज करता है, तो मोस्ट कॉमन साइट वेयर एनपीसी मेटास्टेसाइजेस इज स्केलेटल. And the most common skeletal bone where it metastasizes, it is the thoracolumbar spine. सबसे common spine mets होते हैं. Second most common where it goes is lung and then it is liver. ठीक है? How will you treat NPC? NPC में surgery is never the first option. तो पहले तो देखेंगे कैसे? तो देखने के लिए I always told you, CT हमेशा bones के लिए अच्छा है, soft tissues के लिए हमेशा MRI अच्छा है. And NPC is an area जो हमारे base of skull से लेकर cranial nerves में जा रहा है. तो अगर जो चीज क्रेनियल नर्व में जाती है उसके लिए एमआरआई करना जरूरी है. तो एमआरआई विद गैट कॉन्ट्रास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू सी फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रेनियल नर्व्स. अब एक और इंपॉर्टेंट मैंने आपको चीज बताई थी, स्क्रीनिंग टूल है आईजीए, क्योंकि आईजीए अगेंस्ट एप्स्टीन बार वायरस, वायरल कैप्सिड एंटीजन टुगेदर विद अर्ली एंटीजन, दिस इज द वन which is going to have a very important follow up criteria for this, right? चलिए, अब how will you treat this patient? The only way to treat NPC is intensity modified radiotherapy followed by chemotherapy. यानी कि रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी साथ में, तो उसे हम कहते हैं कंकरेंट कीमोथेरेपी. इंटेंसिटी मॉडिफाइड रेडियोथेरेपी का क्या मतलब होता है कि एक होती है एक्सटर्नल बीम रेडिएशन, मतलब पूरे मुंह को रेडिएशन देते थे पहले, तो उसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते थे. इंटेंसिटी मॉडिफाई का मतलब वी मॉडिफाई द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन टुवर्ड्स इट एरिया विच वी नीड टू रेडिएट. हम सारी बीम्स को रेडिएट करते हैं टुवर्ड्स दैट एरिया एंड वी फोकस देम टुवर्ड्स द नेसोफैरिंग्स. That's called as intensity modification of radiotherapy and that is what we give with chemotherapy. इसीलिए हम इस चीज को concurrent chemo radiation भी कहते हैं. ठीक है, दैट्स द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. यहां पे सर्जरी ट्रीटमेंट नहीं है, यहां पे कंकरेंट कीमो रेडिएशन ट्रीटमेंट है. मोस्ट कॉमन ड्रग विच इज यूटिलाइज्ड इज सिस्प्लैटिन. तो सिस्प्लैटिन थेरेपी 75 mg per meter square. दिस इज समथिंग विच वी गिव एज ट्रीटमेंट टुगेदर विद रेडिएशन साइकिल्स. ठीक है, चलो
अब आ जाओ नेक्स्ट पे, डीप नेक स्पेस इंफेक्शन। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। आई एम गोइंग टू, नहीं, ब्रैकीथेरेपी इज नॉट IMRT। ब्रैकीथेरेपी क्या होती है? ब्रैकीथेरेपी में हम लोग छोटे छोटे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस लेते हैं, उनकी छोटी छोटी प्लेट्स बनाते हैं, जैसे इरिडियम हो गया, राइट, एंड उनकी प्लेट्स वी डायरेक्टली प्लेस दोस प्लेट्स, डायरेक्टली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हम इंप्लांट कर देते हैं विद इन द ट्यूमर। तो अगर हम उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को इंप्लांट कर देंगे विद इन द ट्यूमर, तो धीरे धीरे वो रेडियो एक्टिविटी निकलती रहेगी एंड दैट विल डिसॉल्व द ट्यूमर। तो दैट इज कॉल्ड एज ब्रैकीथेरेपी। ठीक है, IMRT means focusing the radiation towards the side where we want, modifying the intensity. That's called as intensity modified radiotherapy. ठीक है, अब डीप नेक स्पेस इंफेक्शन के लिए मैं आपको एक डायग्राम दूंगा और उसी डायग्राम में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल योर डीप नेक स्पेस इंफेक्शंस एंड आई एम गोइंग टू मेक थिंग्स अ लिटिल इजी फॉर यू। कि आप लोगों को समझना कैसे है, पैराफेरेंजियल के कैसे आंसर्स करने हैं, रेट्रोफेरेंजियल के आंसर कैसे करने हैं, पेरिटॉन्सिलर में आपको आंसर कैसे करने हैं, ये सब आपको अब समझने। अब ऐसे समझिए, लेट्स से मैंने अपनी नेक को ऐसे काटा एक्सियल सेक्शन में और मैंने इसे ऊपर से देखा। तो अगर मैंने नेक को एक्सियल सेक्शन में काट के ऊपर से देखा, तो अब हम कैसे करेंगे? व्हाट एग्जैक्टली वी विल सी। नहीं, IMRT इज डन फॉर ऑल हेड एंड नेक कैंसर्स। अब एक्सटर्नल बीम रेडिएशन का टाइम चला गया, IMRT में अपने साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ठीक है, तो अगर मैंने नेक को ऐसे काटा एंड आई सी फ्रॉम द टॉप, सो आई एम टेलिंग यू 3 इंपॉर्टेंट एब्सेस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, पेरिटॉन्सिलर, पैराफेरेंजियल, रेट्रोफेरेंजियल। ठीक है, अब देखो सबसे पीछे क्या है? सबसे पीछे मेरी वर्टेब्रा है, दिस इज माय वर्टेब्रा विच इज मोस्ट बिहाइंड। सबसे पीछे आप ऊपर से देख रहे हो काट के, तो पीछे मेरी वर्टेब्रा है, राइट? ओके, वर्टेब्रा के सामने देयर इज प्री वर्टेब्रल मसल्स, राइट? ये मेरी प्री वर्टेब्रल मसल्स हैं, स्केलिनस, सारी स्केलिन मसल्स हैं। अब प्री वर्टेब्रल मसल्स के सामने एक पर्टिकुलर फेशिया है जिसे कहते हैं प्री वर्टेब्रल फेशिया। द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन प्री वर्टेब्रल फेशिया एंड प्री वर्टेब्रल मसल, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज प्री वर्टेब्रल स्पेस। इसे कहते हैं प्री वर्टेब्रल स्पेस। प्री वर्टेब्रल फेशिया के आगे एक और फेशिया होता है, this fascia is called as alar fascia. The space present between alar fascia anteriorly and prevertebral fascia posteriorly, this space is called as danger space. इसे कहते हैं danger space. Danger क्यों होता है? Because this is the space which connects your neck to your mediastinum. कोई भी यहां पे अगर abscess हो गई तो सीधे mediastinum में जाएगी। ठीक है, अब अगर मैंने अपनी नेक को ऐसे काटा है और आप ऊपर से देख रहे हो, तो आप टॉन्सिल का टॉप पार्ट देखोगे, क्योंकि आपने ऐसे काट दी नेक, तो आप टॉन्सिल का टॉप पार्ट देखोगे दोनों साइड पे। तो अब आप देख रहे हो टॉन्सिल का टॉप पार्ट, दिस इज द टॉन्सिल, और आपको इसका टॉप पार्ट दिख रहा है, दिस इज द टॉप पार्ट ऑफ द टॉन्सिल दैट यू कैन सी, एंड यू कैन इवन सी द टॉप पार्ट ऑफ द टॉन्सिल ऑन दिस साइड। ठीक है, तो आप ऊपर से देख रहे हो, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगर हम सिंपल सी बात सोचें, अगर हम किसी का मुंह खोलते हैं तो आपको सबसे पीछे क्या दिखता है? पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल। दिस इज योर पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल, क्योंकि अगर आप इसको सामने से देखेंगे, मुंह खोल के देखेंगे, तो ये आपकी पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स है, सिंपल। ऊपर से देख रहे हैं तो ये हमें टॉप पार्ट ऑफ टॉन्सिल दिख रहा है। ठीक है, अब द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन, अब वन मोर इंपॉर्टेंट, अब टॉन्सिल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट कवरिंग होती है, और इस कवरिंग को ऑन द लैटरल साइड ऑफ द टॉन्सिल, इसे कहते हैं कैप्सूल ऑफ टॉन्सिल। वी कॉल दिस एज टॉन्सिलर कैप्सूल। तो lateral to the tonsil is an important covering of tonsil which is called as tonsillar capsule. ठीक है, टॉन्सिलर कैप्सूल के पीछे एक इंपॉर्टेंट मसल रन कर रही है, एंड दिस मसल बिहाइंड द टॉन्सिल, दिस इज योर सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। दिस इज योर सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। ठीक है, द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द superior constrictor laterally and the capsule medially, ये स्पेस, इस स्पेस को कहते हैं पेरिटॉन्सिलर स्पेस। व्हाट इज पेरिटॉन्सिलर स्पेस? पेरिटॉन्सिलर स्पेस इज अ स्पेस which is bounded by superior constrictor laterally
and your capsule of the tonsil medially. अगर यहां पे पस बन गया तो उस पर्टिकुलर पस को हम बोलेंगे पेरिटॉन्सिलर एब्सिस, या फिर इसे हम बोलेंगे क्विंसी। तो फिर इसे हम बोलेंगे क्विंसी। ठीक है, अब इसको देख लो। अगर पस इसके बीच में बन गया, बिटवीन द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर एंड द कैप्सूल, तो व्हाट विल बी द क्लिनिकल फीचर ऑफ दिस पेशेंट? सबसे पहले इसकी जो टॉन्सिल है ना, उसको धक्का पड़ेगा एंड दिस टॉन्सिल विल बिकम मीडियलाइज। ये टॉन्सिल सेंटर में आ जाएगी बिकॉज देयर इज एन एब्सिस लैटरल टू इट। ये टॉन्सिल धक्का पड़ेगा एंड इट विल कम इन द सेंटर। तो व्हाट विल बी द क्लिनिकल फीचर ऑफ दैट पेशेंट इफ दैट पेशेंट कम्स इन पेरिटॉन्सिलर एब्सिस या फिर क्विंसी? अगर पेशेंट पेरिटॉन्सिलर एब्सिस या फिर क्विंसी के साथ आता है, तो आपको अगर दिखेगा, तो जैसे ही वो मुंह खोलेगा, आपको दिखेगा कि उसकी जो एक साइड की टॉन्सिल है दैट इज पुश टुवर्ड्स द मिड लाइन। व्हाई? बिकॉज इसके लैटरली इन द पेरिटॉन्सिलर स्पेस पस भरा हुआ है, जस्ट शोड यू, एंड यू विल सी दैट द यूविला विल बी डिविएटेड मोर लैटरली। तो एक साइड की टॉन्सिल हैज कम टू द मिड लाइन एंड द यूविला हैज लैटरली डिस्प्लेस्ड। नाउ व्हेन आई सी दिस टॉन्सिल विल हैव फ्रैंक पस कमिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, इवन दिस पेशेंट विल हैव एडिमा ओवर द सॉफ्ट पैलेट, क्योंकि ये सारा इन्फ्लेम्ड एरिया। एंड एट द सेम टाइम इस पेशेंट का मुंह भी कम खुलेगा। एंड व्हाई द मुंह विल बी लेस? मुंह क्यों कम खुलेगा? क्योंकि उसका रीजन ये होता है कि जस्ट लैटरल टू द टॉन्सिल, लैटरल टू टॉन्सिल, टॉन्सिल के लैटरली यहां पे क्या है? यहां पे मेरा मैंडिबल है। लैटरल टू योर टॉन्सिल इज एन इंपॉर्टेंट थिंग विच इज कॉल्ड एज द ramus ऑफ मैंडिबल। एंड मैंडिबल के अंदर कौन सी मसल अटैच होती है? मैंडिबल के मीडियली एक जो मसल अटैच होती है दैट इज मीडियल टेरेगोइड। तो अब मैंडिबल के अंदर अगर मीडियल टेरेगोइड है, मीडियल टेरेगोइड का काम क्या होता है? मीडियल टेरेगोइड का काम है मुंह बंद करना, लैटरल टेरेगोइड का काम है मुंह खोलना। तो द ओपनर ऑफ द माउथ इज लैटरल, medial pterygoid closes your mouth. If there is an abscess which is here, this abscess will cause spasm of the medial pterygoid muscle. And if it causes spasm of the medial pterygoid muscle, the frank feature of that patient will be trismus. ये माउथ ओपन होना कम हो जाएगा। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि आपके पास एक पेशेंट आया और उस पेशेंट की एक टॉन्सिल मीडियलाइज्ड है, इडीमा है सॉफ्ट पैलेट पे, एक पेशेंट की ट्रिस्मस है, एट द सेम टाइम फ्रैंक पस आ रहा है टॉन्सिल से, यूविला इज डिविएटेड लैटरली, और कुछ नहीं मैंने बताया, देयर इज नथिंग एल्स, देन योर आंसर इज व्हाट? देन योर आंसर इज पेरिटॉन्सिलर एब्सेस या फिर क्विंसी। एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज नाउ द पस हैज बीन कलेक्टेड between the capsule and the superior constrictor muscle in the peritonsillar space. ठीक है, लॉक जॉ नहीं है, लॉक जॉ इज अ फीचर ऑफ टेटनस, ये लॉक जॉ नहीं है, दिस इज ट्रिस्मस। ठीक है, अब इफ आई आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन कि अगर मेरे पास ये पेशेंट आएगा तो इसका मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन है? तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। Streptococcus pyogenes is the most common cause of peritonsillar abscess. आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कि आप इसे ट्रीट कैसे करेंगे? हाउ विल यू ट्रीट इट? ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं कि लेट्स से ये यूविला डिविएटेड है एंड दिस इज द एंटीरियर पिलर एंड दिस इज द टॉन्सिल विच इज कम टुवर्ड्स द मिड लाइन। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं? वी ड्रॉ टू इमेजिनरी लाइंस. One imaginary line is drawn along the anterior pillar and another imaginary line horizontal is made passing to the base of the uvula. So एक imaginary line along the base of uvula, one imaginary line along the anterior pillar, the point where they both will intersect, इस point पे we will give an incision and we will drain it. This is the treatment of quinsy together with antibiotics. तो इसीलिए one drawn along the anterior pillar, one drawn along the base of uvula, and at the intersection we give an incision, and this is the point where we drain quinsy, और इसके साथ we give high grade antibiotics to the patient. This is the whole idea behind quinsy कि हम उसे drain कैसे करते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट एब्सेस पे, and that abscess is retropharyngeal abscess. मैंने आपको क्या बताया कि this is your superior constrictor muscle, ग्रीन वाली। सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के पीछे behind the superior constrictor is another fascia, and this fascia which is present behind the superior constrictor muscle, this fascia is called as buccopharyngeal fascia.
the space present between the buccopharyngeal fascia anteriorly and the alar fascia posteriorly, this is something which is called as retropharyngeal space. ठीक है? तो एलार फेशिया पोस्टीरियरली और बक्कोफैरेंजियल एंटीरियरली के बीच की जो ये स्पेस है, इसे कहते हैं रेट्रोफैरेंजियल स्पेस। रेट्रोफैरेंजियल स्पेस में सेंटर में एक फाइब्रस बैंड होता है और ये फाइब्रस बैंड इस स्पेस को डिवाइड कर देता है दो छोटे कंपार्टमेंट्स में, एक राइट पे एक लेफ्ट पे, और इन कंपार्टमेंट्स को कहते हैं स्पेसेस ऑफ जिलेट। ठीक है, जिलेट द बेस्ट द मैन कैन गेट, आप देखते होंगे ऐड, ये स्पेस ऑफ जिलेट है। ठीक है, अब ये जो स्पेस ऑफ जिलेट है, इसमें होते हैं छोटे छोटे रेट्रोफैरेंजियल नोड्स, जिन्हें कहते हैं नोड्स ऑफ रोवियर, जो हमारे नेजोफैरेंजियल नोड्स, रेट्रोफैरेंजियल नोड्स होते हैं। ठीक है, अब खुद सोच के बताओ, इस रेट्रोफैरेंजियल स्पेस में इंफेक्शन कैसे पहुंचेगा? दो तरीके से, अक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है। टू वेज इन विच रेट्रोफैरेंजियल एब्सेस कैन हैपन। अक्यूट का मतलब है देयर इज सेपरेशन ऑफ दिस रेट्रोफैरेंजियल नोड्स ऑफ रोवियर, ये सेपरेट हो गए। अब सेपरेट ये कैसे होंगे अक्यूट कंडीशंस में? या तो टॉन्सिल से इंफेक्शन इसमें पहुंच गया विच इज टॉन्सिलाइटिस, या फिर फैरिंग से इंफेक्शन अंदर पहुंच गया विच इज फैरेंजाइटिस। बच्चों में एडिनोइड होते हैं, एडिनोइडाइटिस। मोस्ट कॉमन कॉज ट्रॉमा, पोस्टीरियर फैरेंजियल वॉल पे ट्रॉमा हो गया, चिकन खाते खाते पीछे चोट लग गई, बोन चली गई, दैट इज पियर्स्ड, ट्रॉमा। सो ट्रॉमा, स्प्रेडिंग ऑफ इंफेक्शन फ्रॉम नियर बाई स्ट्रक्चर्स, दैट इज टॉन्सिलाइटिस, फैरेंजाइटिस, एडिनोइडाइटिस, ये सब नोड्स ऑफ रोवियर को सेपरेट कर देंगे। और अगर ये सेपरेट हो गए तो इनकी लिम्फेडिनाइटिस हो जाएगी, जिसकी वजह से यहां पे एब्सेस बनने लगेगी, एंड दैट विल कॉज अक्यूट रेट्रोफैरेंजियल एब्सेस फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर अक्यूट रेट्रोफैरेंजियल एब्सेस हुई तो पेशेंट का जो एग्जामिनेशन फाइंडिंग होगी ना, वो होगी दैट द पेशेंट विल हैव पैरामीडियन बल्ज, क्योंकि सेंटर में ये पार्टीशन है बाय अ फाइब्रस बैंड। तो इफ यू सी द पेशेंट्स थ्रोट, you will see a paramedian bulge in the posterior pharyngeal wall. Whereas अगर पेशेंट के मीडियन बल्ज दिखती है, अगर फारिंग्स में कंप्लीटली एक मीडियन बल्ज दिख रही है, that means that the prevertebral space or the danger space is involved. तो अगर एक साइड ऑफ फारिंग्स में, पीछे posterior pharyngeal wall के एक साइड में आपको बल्ज दिखती है, तो उसे कहते हैं पैरामीडियन बल्ज, which is a sign for retropharyngeal abscess. लेकिन अगर आपको मीडियन बल्ज दिखती है, that is a sign for prevertebral abscess और danger abscess. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंटर। अब आती है क्रॉनिक रेट्रोफैरेंजियल एब्सेस। क्रॉनिक जो होती है वो बिल्कुल शांत होती है, और शांत किस में होती हैं चीजें? टीबी में। अगर टीबी हो गई स्पाइन में, यानी केरी स्पाइन, तो ये ऑर्गेनिजम्स चले जाते हैं, दे सेपरेट दीज नोड्स एंड दैट आल्सो क्रिएट्स अ पैरामीडियन बल्ज। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक रेट्रोफैरेंजियल एब्सेस इज टीबी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अक्यूट रेट्रोफैरेंजियल एब्सेस इज ट्रॉमा। टीबी हमेशा शांत रहता है, टीबी क्रिएट्स कोल्ड एब्सेस। तो टीबी की एब्सेसेस पड़ी होती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना फीवर आता है, ना स्ट्राइडर होता है, ना ओडाइनोफेजिया होता है, पेशेंट आराम से जाता है, बस बल्ज होता है। दे हैव अ वेरी वेग सेंसेशन इन द पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल। ठीक है, सो दैट बिकम्स द आंसर फॉर रेट्रोफैरेंजियल एब्सेस। कैसे ठीक करेंगे? ऑब्वियसली वी कुड डू ट्रांस ओरल ड्रेनेज। मुंह खोलेंगे, वील पुट एन इंसिजन एंड वील ड्रेन दिस टुगेदर विद एंटीबायोटिक्स। दैट्स कॉल्ड एज ट्रांस ओरल इंसिजन एंड ड्रेनेज। ठीक है, रेट्रोफैरेंजियल स्पेस के लैटरल, ये हो गई आपकी पैराफैरेंजियल स्पेस। पैरा मतलब अराउंड, लैटरल टू द रेट्रोफैरेंजियल स्पेस। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैराफैरेंजियल स्पेस में अगर आप देखो, ये आपकी मैंडिबल है जो मैंने यहां बनाई है। मैंडिबल के ऊपर यहां पे कौन सा ग्लैंड है? पैरोटिड, राइट? तो मैंडिबल में यहां पे अंदर की तरफ, दिस इज आवर पैरोटिड ग्लैंड, एंड पैरोटिड का भी डीप लोब, ये सुपरफिशियल है, डीप लोब कम्स इनसाइड the parapharyngeal space. The parapharyngeal space is divided by a bone into two compartments. Styloid bone divides this parapharyngeal space into two compartments. ये styloid है। Styloid divide करती है एक into a pre-styloid compartment जो आगे, और दूसरा post-styloid compartment जो पीछे है। Pre-styloid compartment of parapharyngeal space
कंटेन्स इंपॉर्टेंट नर्व्स, 3 नर्व्स होती हैं, inferior alveolar nerve, lingual nerve as well as auriculotemporal nerve. If you see carefully, ये तीनों nerves are branches of V3 division of trigeminal nerve, right? Mandibular division of trigeminal nerve, lingual, inferior alveolar, auriculotemporal. ये होती है in the pre-styloid compartment. Together with this, there is an important artery, और उस आर्टरी का नाम है इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी. तो डीप लोब ऑफ पैरोटिड, ये तीनों और आईमैक्स, ये सब कंस्टिट्यूएंट्स हैं ऑफ प्री स्टाइलॉइड कंपार्टमेंट. और यहां पे थोड़ा बहुत फैट भी होता है, देयर इज इवन फैट. पोस्ट स्टाइलॉइड कंपार्टमेंट में क्या होता है? पोस्ट स्टाइलॉइड कंपार्टमेंट में सबसे अंदर कैरोटिड आर्टरी है, ये हमारी कैरोटिड शीथ है. सेंटर में 10th नर्व या वेगस नर्व है, एंड लैटरली आईजीवी है. वी कॉल दिस टुगेदर एज कैरोटिड शीथ. अब कैरोटिड शीथ के अराउंड भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि 9th नर्व, 11th नर्व, 12th नर्व, सिंपैथेटिक चेन, ये सब भी इसके अराउंड है, राइट? तो अब क्वेश्चन है कि ये न्यूरोवैस्कुलर कंपार्टमेंट पोस्ट स्टाइलॉइड है, स्टाइलॉइड के पीछे, और ये मेरा प्री स्टाइलॉइड है. अगर मेरे पास कोई भी पेशेंट की हिस्ट्री ऐसी आई कि उसके पस बन गया है इन द प्री स्टाइलॉइड कंपार्टमेंट, लेट्स से द पेशेंट हैज गॉट पस ओवर हियर, तो प्री स्टाइलॉइड कंपार्टमेंट में अगर पस बना तो हो गया क्या? दैट पस विल गो बिलो द मैंडिबल एंड इट विल कलेक्ट ओवर हियर. इफ इट कलेक्ट्स बिलो द मैंडिबल, देयर विल बी अ स्वेलिंग एट द एंगल ऑफ जॉ. यहां पे इसके नीचे एंगल ऑफ द जॉ पे स्वेलिंग होगी, जो पेरिटॉन्सिलर एब्सेस में नहीं थी. उसमें सिर्फ मीडियलाइजेशन ऑफ टॉन्सिल था. अगर एंगल ऑफ द जॉ के नीचे यहां पे एक बड़ी सी स्वेलिंग मिली, क्योंकि खुद देखो एंगल ऑफ द मैंडिबल के ही नीचे यही मेरी पैराफेरेंजियल स्पेस है, तो अगर यहां पे मेरा पस इकट्ठा हो गया, द फर्स्ट फीचर विल बी angle of the jaw swelling, which is a pre-styloid compartment feature. So the first feature of the pre-styloid compartment will be swelling at angle of jaw. ठीक है. Second feature is कि अगर ये पस यहां है तो it will contract the medial pterygoid. If the medial pterygoid contracts, it is a closure of your mouth, so the patient will develop trismus. सब anatomical है. And the third feature is कि अगर ये पस यहां पे collect हो गया, so again just like peritonsillar abscess, ये भी हमारी टॉन्सिल को पुश करेगा towards the midline. So exactly same feature, tonsil will be pushed towards the midline, uvula will be deviated laterally. Same जो हमने peritonsillar abscess में देखा था. But फर्क क्या हो रहा है? उसमें भी trismus था, उसमें भी displacement था. The only thing that differs them is the angle of the jaw swelling. जो इसका clinical sign है, peritonsillar abscess का नहीं है. ठीक है. अगर ये पस चला गया into the post styloid compartment, तो पोस्ट स्टाइलॉइड कंपार्टमेंट इज न्यूरोवैस्कुलर, और न्यूरोवैस्कुलर मतलब खतरा. अगर इसमें आ गया तो इट कैन कॉज आईजेवी थ्रोम्बोसिस. आईजेवी थ्रोम्बोस हो गया तो उसे कहते हैं लीमियस सिंड्रोम. लीमियस सिंड्रोम इज अ सिंड्रोम बिकॉज ऑफ पस आईजेवी थ्रोम्बस बन जाता है. इट कैन कॉज ऑल पैल्सीज, सिंपैथेटिक चेन इन्वॉल्वमेंट, जिसकी वजह से हॉर्नर सिंड्रोम होगा. इट विल गो इनटू 12th हाइपोग्लॉसल पैल्सी, ग्लॉसोफेरेंजियल पैल्सी, 11th मतलब स्पाइनल एक्सेसरी की पैल्सी, 10th मतलब वेगस की पैल्सी, ये सब हो जाएंगी if it goes here. And accidentally if it goes into carotid, it can even lead to carotid rupture. So this area post styloid is all neurovascular. यहां पे सिर्फ न्यूरोवैस्कुलर फीचर्स दिखेंगे, एंड प्री स्टाइलॉइड में ये सारी 3 चीजें दिखेंगी: ट्रिस्मस, मीडियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉन्सिल एज वेल एज एंगल ऑफ द जॉ स्वेलिंग. अब आ गई बात समझ में? बस यही है सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू तीनों एब्सेस. पेरिटॉन्सिलर, इनकी आइडेंटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, पेरिटॉन्सिलर की एज वेल एज पैराफेरेंजियल की एज वेल एज रेट्रोफेरेंजियल की. सब में यही काम करना है. वी हैव टू डू इंसिजन एंड ड्रेनेज, एंड एट द सेम टाइम वी नीड टू डू एंटीबायोटिक, वी नीड टू गिव एंटीबायोटिक्स. ठीक है, चलिए अब आ गया एक और इंपॉर्टेंट इंफेक्शन, लुडविग्स एंजाइना. लुडविग्स इज नॉट एन एब्सिस, ये इंपॉर्टेंट है. लुडविग्स इज अ सुपरफिशियल स्प्रेडिंग सेल्यूलाइटिस ऑफ द सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल स्पेसेस. तो ये एक सेल्यूलाइटिस है एंड इट इज नॉट पस फॉर्मिंग. इसमें कोई पस नहीं होता, ये याद रखना. ये एक हार्ड सेल्यूलाइटिस है. सेल्यूलाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यूज ऑफ द सबमैंडिबुलर एंड द सबलिंगुअल एरिया. तो लुडविग्स में हमेशा क्या होता है कि बेसिकली आपको ये याद रखना है दैट इफ यू सी योर फ्लोर ऑफ माउथ, इफ आई टेक आउट द डायग्राम ओवर हियर, दिस इज योर सबमैंडिबुलर स्पेस. सबमैंडिबुलर मतलब जस्ट बिलो द मैंडिबल. The submandibular space is divided by an important muscle, which is your mylohyoid muscle, into one space superior to the mylohyoid, one space inferior to it. Superior to the mylohyoid space को हम लोग क्या कहते हैं? इस space को हम लोग कहते हैं sublingual space.
क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है छोटा सा सबलिंगुअल ग्लैंड। बिलो द माइलोहायोइड वाली स्पेस को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सब माइलोहायोइड स्पेस। सब माइलोहायोइड, ऊपर वाले को सबलिंगुअल। दोनों सबलिंगुअल एंड सब माइलोहायोइड को मिलकर बनाती है सबमैंडिबुलर स्पेस। एनी पर्टिकुलर सेल्यूलाइटिस व्हिच हैपेंस ओवर इन दिस एरिया will cause Ludwig's angina. तो Ludwig's was the first one who noticed this swelling in a patient, and उसका इतनी बड़ी swelling में the patient was almost choking to death with pain, and that is why angina नाम रखा गया, because angina means severe pain. Right? Now, अगर आपके पास कोई Ludwig's का patient आया, so what will happen? Because it is a superficial spreading cellulitis, it will spread from one submandibular space to another. तो सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, ये सारा का सारा एरिया जो है ना, इट विल गेट इन्फ्लेम्ड एंड इट विल लुक लाइक अ बलून. सो द पेशेंट विल हैव अ ह्यूज फ्लोर ऑफ द माउथ स्वेलिंग. पूरा का पूरा बिलो द मैंडिबल रीजन swollen होगा, बोथ द सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल स्पेसेस. नाउ इफ द पेशेंट हैज गॉट so much of bilateral swelling, the floor of the mouth will become edematous. और अगर फ्लोर ऑफ माउथ edematous हो गया तो पेशेंट की टंग ऊपर चली जाएगी, और अगर उसकी टंग ऊपर चली गई तो पेशेंट सांस कैसे लेगा? So that is the reason tongue elevation will be the one which will be causing difficulty in breathing, and patient might come in stridor, तो breathe नहीं कर पा रहा है. ठीक है? Now when I touch this swelling, so it will be severely tender and it will be hard. अब जब ये severely tender होगी और hard होगी तो उसे हम कहते हैं woody hard swelling, also called as brawny induration. Brawny मतलब होता है woody hard, एंड इंड्यूरेशन का मतलब होता है फर्मनेस. तो दिस विल बी वुड फर्म, इतनी फर्म होगी कि वुड लाइक, बिकॉज इट इज नॉट कंटेनिंग पस. द मोस्ट कॉमन रीजन व्हाई लुडविग्स हैपेंस इज अनट्रीटेड डेंटल कैरीज और फिर डेंटल मैनिपुलेशंस. क्योंकि अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर ये टीथ में अगर कोई भी कैरीज हो गई तो इससे इंफेक्शन अंदर आएगा, और या फिर अगर मैंने यहाँ पे रूट कैनाल या कोई भी अनहाइजीनिक टाइप का कोई भी मैंने डेंटल मैनिपुलेशन किया, उससे इंफेक्शन अंदर आएगा. इंडिया में आधे से ज्यादा ये पेशेंट्स बिकॉज ऑफ एसेप्टिक इन्वायरमेंट नहीं अचीव कर पाते हैं, तो डेंटल ट्रीटमेंट जो फेल हो जाते हैं उनके बाद आते हैं लुडविग्स लेके. ठीक है? स्पेशली फ्रॉम विलेज एरियाज जिनमें ऐसे ही एक्सट्रैक्ट कर देते हैं टूथ को. अब नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ व्हाट विल यू डू इन लुडविग्स? क्योंकि क्वेश्चन आपका ये आएगा, लुडविग्स में आप करेंगे क्या? तो सबसे पहले लुडविग्स में आपको ये देखना है कि एयरवे कैसा है. तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ एयरवे. And the answer is do a tracheostomy. Because see, intubation करने के लिए we need space. There is no space at all. तो हमें intubation की जगह कहाँ है? तो we'll do a tracheostomy under emergency. इसके बाद we will give antibiotics to the patient. Right? तो पहले आपको एयरवे बचाना है, फिर एंटीबायोटिक देनी है. यही क्वेश्चन आया था कि what will be the first line of treatment? Airway is first. कोई एंटीबायोटिक के वेट नहीं करना है मेरे को वर्क है, बिकॉज एंटीबायोटिक्स टेक 48 to 72 आवर्स टू वर्क. बस पहले आप पेशेंट बचाइए, उसके बाद आप एंटीबायोटिक्स दीजिए. एंड इन केस अगर मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट फेल हो गया तो फिर वी पुट 2 incisions इन द सबमैंडिबुलर स्पेस एंड वी ओपन इट. बट इसमें पस नहीं निकलेगा. द मोमेंट वी पुट एन इncision वी विल जस्ट ओपन द कंपार्टमेंट टू डिक्रीज एडिमा. क्योंकि कंपार्टमेंट सिंड्रोम की तरह है, इतना कंपार्टमेंट प्रेशर बढ़ गया है कि देयर इज नो स्पेस फॉर द पेशेंट टू ब्रीथ, एंड दैट इज व्हाई वी विल जस्ट पुट एन इncision एंड वी विल ओपन दिस. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इncision एंड ड्रेनेज. ठीक है? ये याद रखना, यहां एयरवे भगवान है हमारे लिए. एयरवे के लिए वेट नहीं करना है, एयरवे सबसे पहले पकड़ना है पेशेंट का कभी भी, चाहे लैरिंग्स हो चाहे फैरिंग्स हो, हमेशा पहले एयरवे. ठीक है? चलो, नाउ वी कम इनटू, I think this is the final lecture. Yeah, this is the final part of, so I think post-styloid, pre-styloid ये मैं सब बता चुका हूं. I did it over on the diagram only. तो I think that is self-explanatory. वो सब आपकी वर्कबुक्स में लिखा हुआ है. I'm not going into each and every line about it क्योंकि वो सब मैंने आपको डायग्राम पे समझा दिया है. तो अब आ गया फाइनल कहानी, फाइनल चैप्टर, एंड दैट इज फेरेंजियल पाउच. फेरेंजियल पाउच को हम लोग ज़ेंकर्स डायबिटिकुलम भी कहते हैं, इसे हम लोग हाइपोफेरेंजियल डायबिटिकुलम भी कहते हैं. Why? Because in this particular डायबिटिकुलम का मतलब होता है आउट पाउचिंग. तो अगर बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्रेशर फेरेंजियल म्यूकोजा ऑफ द हाइपोफैरिंग्स आउट पाउचेस वो निकल के बाहर आ गया थ्रू अ नेचुरल डेफिशिएंसी, उसे हम कहते हैं ज़ेंकर्स डायबिटिकुलम या फिर फेरेंजियल पाउच. तो अब क्या होता है, व्हाट इज ज़ेंकर्स डायबिटिकुलम? तो अगर हम देखें क्रॉस सेक्शन ऑफ आवर फैरिंग्स, पोस्टीरियर वॉल ऑफ फैरिंग्स देखें, तो फैरिंग्स में एक इंपॉर्टेंट मसल होती है विच इज इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर.
इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के दो पार्ट होते हैं, थायरोफैरिंजेस पार्ट एंड क्रिकोफैरिंजेस पार्ट। थायरोफैरिंजेस जो पार्ट होता है दैट इज ऑलवेज ओब्लिक, राइट, एंड जो क्रिकोफैरिंजेस होती है दैट इज ऑलवेज ट्रांसवर्स। ये हमारी ट्रांसवर्स है। Can you see a natural deficiency present between the thyropharynges above and cricopharynges below? This natural deficiency is called as Killian's dehiscence. ठीक है, dehiscence का मतलब deficiency। तो ये natural opening होती है between thyropharynges and cricopharynges। अब एक और triangle होता है। Now this triangle is inverted V. This triangle is present between cricopharynges above and the outer longitudinal fibers of the esophagus below. तो ईसोफेगस के लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स एंड क्रिकोफैरिंजेस के बीच का ट्राइंगल, इसे कहते हैं लेमर्स ट्राइंगल। लेमर्स इज सेकंड मोस्ट कॉमन साइट, फर्स्ट साइट इज किलियंस डेहिसेंस। ठीक है, दोनों से हो सकता है। तो होता क्या है कि बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्रिकोफैरिंजेस, क्योंकि देखो जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय क्या होता है, आर थायरोफैरिंजेस कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिकोफैरिंजेस रिलैक्स, थायरोफैरिंजेस कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिकोफैरिंजेस रिलैक्स। तो जब हम खाना खाते हैं दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम हमारी एक मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, दूसरी मसल को रिलैक्स करना है। अगर हमारी ये मसल कॉन्ट्रैक्टेड रही तो हमारा यहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अनअपोज कॉन्ट्रैक्शन अगर रहा ऑफ द क्रिकोफैरिंजेस मसल तो हमारा यहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा। और अगर प्रेशर बढ़ गया तो ये जितना भी हाइपोफैरिंजियल म्यूकोजा है दिस विल कम आउट एज अ पाउच एंड इट विल फॉर्म अ डायवर्टिकुलम एंड दैट इज नथिंग बट दिस इज योर ज़ेंकर्स डायवर्टिकुलम। ठीक है, so this one, are you talking about circular? This is circular. No, this is outer longitudinal. This is longitudinal, this is circular. ठीक है, अब ये पल्जन है because it has been creating a धक्का, it has come out, right? Now this is a false diverticulum. Remember that. This is not a true diverticulum. This is a false diverticulum. Okay, right. Now, one more important thing is कि ये मैंने आपको बता दिया that this is Killian's and this is Lemurs. अब अगर ये particular swelling बाहर निकल आई, whatever the patient will eat will collect in this particular pulsion diverticulum या फिर ये Killian's, and what will happen is कि this will create a swelling in the neck just like laryngocele. अब if this creates a swelling in the neck just like laryngocele, तो इसमें खाना भरा हुआ है, तो when you press this swelling एक गुड़गुड़ साउंड आएगी, gurgling sound on pharyngeal pouch palpation. This is called as Boyce sign. तो याद ये रखना है कि ब्राइस साइन RYCE इज फॉर लैरिंगोसील एंड गर्गलिंग साउंड ऑन प्रेसिंग अ पाउच इज वॉइस। पाउच में ओ होता है तो दिस इज पाउच वाला वॉइस। ठीक है, तो दिस इज समथिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यू सी बॉयस साइन, लेमर्स एंड व्हाट इज किलियंस, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट दिस। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर pharyngeal pouch is a barium swallow. Now you do a barium swallow, right? तो आपको क्या दिखेगा? You will see this kind of a outpouching which is present in the pharyngeal mucosa, and this is a classical thing that you see on barium swallow, which signifies that this is pharyngeal pouch, क्योंकि इसमें barium भरा हुआ है। Now comes आप इसको treat कैसे करोगे? So the treatment of pharyngeal pouch is basically by two important methods. One is called as Dolman's procedure, and the other is called as external excision of pouch with CP myotomy. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि लेट्स से जो सेम है आपका, जो मैंने यहां पे आपको दिखाया था, लेट्स से पाउच बाहर आया हुआ है, तो व्हाट वी डू, वी गिव एन इंसिजन ओवर द नेक। नेक इंसिजन देने के बाद हम क्या करते हैं, हम इस पाउच को कट कर देते हैं, विच इज कॉल्ड एज एक्सिजन ऑफ पाउच। और मैंने आपको बताया कि अनकंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रिकोफैरिंग्स की वजह से हो रहा है, तो हमें क्रिकोफैरिंग्स को रिलीज करना है। तो वी पुट अ रिलीज इंसिजन ओवर द क्रिकोफैरिंजेस मसल ताकि क्रिकोफैरिंग्स रिलैक्स कर जाए। और अगर क्रिकोफैरिंग्स रिलैक्स कर जाएगी तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी कॉन्स्टेंटली, एंड दैट इज द रीजन पेशेंट विल बी एबल टू स्वॉलो बेटर। तो एक्सिजन विद सीपी मायोटोमी, क्रिकोफैरिंग्स में अगर हमने क्रिकोफैरिंजेस मसल को काट दिया तो हमने उसे कहा मायोटोमी, मसल को काटना। तो वो हो गया हमारा पहला अप्रोच। सेकेंड अप्रोच क्या है? दैट इज कॉल्ड एज डॉल्मन्स प्रोसीजर। अब डॉल्मन में क्या करते हैं? डॉल्मन में हम ईसोफेगोस्कोप के साथ अंदर जाते हैं। अब ईसोफेगोस्कोपी अगर आप इस पेशेंट में करेंगे तो एक तो आपको दिखेगा ईसोफेगस का लूमेन, लेकिन आपको एक दिखेगा छोटा सा पाउच। तो अब हमें इसके साथ क्या करना है? डॉल्मन सिंपल है। डॉल्मन ने ये बोला कि जो ब्रिज है ना, ये दिस ब्रिज विच हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द क्रिकोफैरिंजेस मसल, इस ब्रिज को काट दो एंड क्रिएट वन कॉमन कैविटी।
क्रिएट वन कॉमन कैविटी। तो अगर ये हो गया तो इससे मेरा लूमेन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट मेरी स्वॉलोइंग अब प्रॉब्लम नहीं देगी, अब कलेक्शन नहीं होगा, बिकॉज आई हैव कट ओपन द ब्रिज बिटवीन द इसोफेगस एंड द फेरेंजियल एंड द पाउच। दिस इज कॉल्ड एज डॉल्मेंस प्रोसीजर। बट डॉल्मेंस के साथ प्रॉब्लम क्या रही कि ये काटने के बाद ये लूमेन इतना बड़ा हो गया कि वी डोंट वांट दैट मच। सो नाउ वी स्टार्टेड डूइंग वन मोर अप्रोच, जिसमें हम ये ब्रिज कट करने के बाद इस एक्स्ट्रा पाउच को भी स्टेपल, हम इस एक्स्ट्रा पाउच को इस पर्टिकुलर लूमेन से स्टेपल कर देते हैं। और जब ये पाउच स्टेपल हो जाता है तो अब क्या होता है, नाउ देयर इज ओनली वन सिंगल लूमेन एंड दिस पाउच इज स्टेपल टू द esophageal wall and that is called as endoscopic stapling in simple words. ठीक है, फाइन, बस this is all that finishes off your entire ENT syllabus. Obviously this is what is high yield, this is what is the maximum, this is what can come over in your particular exams. इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, but by the end of the day my whole takeaway is कि whatever you are doing in these last 7 days is the most important for you to retain. तो आप जो अब बैठे हुए हैं, इतनी रात हो चुकी है, almost 10:39, we've been talking almost for 5.5, almost completing 6 hours. ये सारा मतलब इसी के लिए है that you do well in your exams and just give off with your full heart. Don't worry about what is going to happen. This is just an exam, this is just a phase, this is not complete life. इससे ज्यादा बहुत सारी चीजें, बट एक स्टीव जॉब्स ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही है, यू कैन नॉट हैव $1 million ड्रीम विद $1 वर्क एथिक। तो अगर आपकी $1 million ड्रीम है ना, तो उसके लिए आपको $1 million एथिक्स भी देने पड़ते हैं, और अगर आपको $1 million एथिक्स देने होते हैं तो ऑब्वियसली आप वही दे रहे हैं। अभी आप बैठे हैं, इतनी रात में हम दोनों बातें कर रहे हैं, और हम लोग बातें करते करते पूरे ENT सिलेबस को मजे मजे में खत्म भी कर रहे हैं। So this is all from my side, signing out. Again, if you have got any particular questions, you can directly ping me, कभी भी कहीं भी, Instagram पे, WhatsApp पे, we have got Telegram groups, कहीं पे भी आप मुझे बता सकते हैं। You can ask questions, you can follow up on any particular doubt. बहुत सारे questions आपके दिमाग में होंगे, PYQs होंगे, अगर हैं तो कभी भी आप उन्हें मैसेज करिए। And keep hustling, keep doing well, keep pushing yourself till the last limit and do your papers well. ठीक है, चलो. So this is all from my side. Wishing you all the very best. Thank you.